नमस्ते भैया नमस्ते। Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Awesome. We are live, guys, boys and girls, people, and भाई लोगों. We are live. We are playing some Valorant. क्योंकि हमें पुश करना है ना, पुश करेंगे तो खुश रहेंगे. सिंपल सी बात. चलो शेयर वेयर कर दे जरा. उसके बाद पढ़े तुम्हारी चैट वैट जो भी है. ये बात. चलो वी आर अबाउट टू स्टार्ट. 1 सेकंड दीजिएगा हमको. एंड बड़ी जल्दी आ गए आपके 2 मिनट. अरे मैं वो अपना खाना वाना खा के आराम से फिर कॉफ़ी पी रहा था. फिर मैंने कहा चलो एक ही बार ख़त्म करके ही आता हूँ. फिर मैंने सोचा कि अभी सोलो भी लाइव है ना, तो वही मैं सोलो का भी थोड़ी तो उसका ख़त्म होने वाला है. वैलोरेंट पुशिंग रैंक लाइक रुको लाइक गॉड भाई. अब आप पुश करते हैं. ठीक है ये डन. अब रहता है या. चलो शेयरिंग का काम डन हो गया. लाइक करना शुरू कर दो एंड लेट्स स्टार्ट पुशिंग. पुष्पा वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम. कैमकरन वेलकम. कैसे क्या हाल है कैमकरन के भाई? हाउ यू डूइंग कैमकरन? नूब किड व्हाट्स अप. What is up? बाकी लोग भी आने वाले होंगे probably. And the issue has been fixed. इशू इतना था कि हाँ वो इशू इतना था कि मुझे अपना USB पोर्ट चेंज करना था एक्चुअली. बस इतनी सी बात थी. मैंने USB पोर्ट चेंज नहीं किया हुआ था. सिंपल एज दैट. हेलो अबिस, हेलो ग्रिम, वेलकम बैक. स्वागत है आपका अगेन. वेलकम बैक. दिस हुडी इज सो नाइस यार. इतना कंफर्टेबल है ना भाई. वुडलैंड की सारी हुडीज अच्छी होती है भाई. एक भी हुडी बुरी नहीं मिली मेरे को अभी तक वुडलैंड की. कंफर्टेबल वेरी. KaIdo guys like yes, let's fucking get it. Yes, let's go guys. पिन मैसेज करेंगे. We will enjoy some coffee till then. मजा आ गया भाई. मैच फाउंड. चलो लेट्स होप आज कोई रेड वेड आ जाए. रेस खेलेंगे भाई. लेट्स प्ले रेस. हाँ जेट का थोड़ा नर्फ वगैरह सीन हो गया. लेट्स नॉट रिस्क. अगर आज तेरी मेंबरशिप होती तो आज मेंबरशिप ले लेता. आज बड़ा अमीरों वाली फीलिंग आ रही है. अमीरों वाली फीलिंग आ रही है ना, तो पेटीएम कर दो एक्सक्लेमेशन डोनेट, या फिर जीपे कर दो एक्सक्लेमेशन डोनेट. सॉ यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई. आई केम आफ्टर 15 ईयर्स ब्रो. लाइव स्ट्रीमिंग का सिस्टम ही खत्म हो गया था मेरा तो. क्या बात है. 3 डुअलिस्ट, 1 कंट्रोलर, 1 सेंटिनल. गुड शिट. माई गोल कंप्लीट कराओ गाइस. वी आर हाउ मच अवे. लेट मी चेक. लेट मी स्विच विंडोज. हाँ देन विल सी कितना अवे है हम. हाँ वी आर हाउ मच अवे. 1019 हो गए ना अपने. तो वी आर अराउंड 7. हाउ मच 720 780 राइट. 780 अवे. 780 अवे. AB7 वेलकम बैक. यस ब्रो. सिर्फ गूगल प्ले में पैसा है वैसे नहीं है. डैम. रेस फ्रॉम इंडिया. दैट इज मी. ओ इमॉर्टल. अपनी में भी सामने में भी. ऐसा है क्या जेट? सही आवाज. लेट मी चेक. हाँ वॉल्यूम वगैरह बूस्ट करना है क्या? बूस्ट कर देता हूँ शायद. इसके बाद बूस्ट करता हूँ वॉल्यूम. हल्का सा बूस्ट करना पड़ेगा प्रॉब्ली. आज सोलो के साथ खेल के मज़ा आएगा. इस देखा तुमने दोपहर को जिसने स्ट्रीम देखी होगी ना, मज़ा आ गया होगा. गॉड टियर प्लेस हो गया तुमने. गॉड टियर प्लेस भाई. नावी ने क्या कम बैक करा है 15-4 से 15-14. कल भी उन्होंने यही किया था भाई. वो बाज नहीं आते. गेट स्पाइक. Coming.
Oh, one heaven. Double heaven, double heaven. Nice. Let's go. Good round guys. 15-14 से 15 जेट का कुछ ज़्यादा नहीं, बस स्मोक 7 से। हाँ पता है मेरे को। तब माइक कैसे ठीक कर रहा, बस मेरे को अपना दूसरे वाले पोर्ट में लगाना था USB वाला, क्योंकि जब मैंने सेम टाइम पे प्लग इन किया तो वो दोनों चीज़ें कैच करना शुरू कर दिया, एंड दोनों चीज़ें कैच करने के चक्कर में वो एक चीज़ पकड़ना भूल गया, तो वो उसने सीधा वेबकैम का माइक उठा लिया जो ऑन था। बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं है भाई। Let's go guys, let's win this. One shot. Ah, they pushing. One shot down. One close market. 95 in smoke, 95. Down probably. Down. Nice. मैं boost करूँ तब तक माइक्रोफोन गाइस। साउंड सेटिंग का है। ओपन साउंड सेटिंग। मैनेज साउंड डिवाइसेस। नहीं। एडिशनल कुछ होता है ना? कहाँ गया? साउंड कंट्रोल पैनल। हाँ, स्पीकर्स का है भाई। ये रहा ना। कॉन्फ़िगर स्पीकर्स प्रॉपर्टीज यहाँ कहीं होता है। लेवल्स, एडवांस। नहीं, फुल करेंगे भाई। और क्या चाहिए अपने को? एडवांस में एनेबल ऑडियो एनहांसमेंट अप्लाई कर दो उसको तो। ठीक है, जैसा भी है चल रहा है, चलने दो, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तब माइक एफ से सच में तौबा ईयर ब्लीड हो गए थे विदाउट नॉइज कैंसिलेशन। या आई अंडरस्टैंड भाई, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ कर नहीं सकते ना उस टाइम। मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तो जब मेरे को समझ आना शुरू हुआ देन आई वाज लाइक ओके, काफ़ी टाइम हो गया है। शॉट वन, शॉट। नाइस जैस्मिन। वन मिड। Rotate. Go, B, go. One was mid, yeah, guys. Let me nade. Cypher side. Cypher CD. Oh, Cypher CD. Guys, Cypher CD. Oh my god, bhai. Two mid. Time to jump. Woo, last one middle. One market. Both market. Guys, like कर दो जल्दी से and share कर दो यार. Like एक रेड वेड आ जाए ना, मजा आ जाए। मैं तो कह रहा हूँ। Come on, you can do this, brother. Last 135 tag. Woo! Nice one kill there. जीतना भाई, आज तो रैंक अप करा के छोड़ूंगा मैं। करना ही है मेरे को तो भाई रैंक अप। सनक चढ़ गई थी मेरे को। यस गाइस, अगर तुम में से कोई डोनेट कर देना प्लीज़ एक बार मेंशन कर देना चैट में, बिकॉज मैं ऑलवेज फ़ोन में नहीं एकदम से नोटिफिकेशन आता, तो इसीलिए। जासमिन इज़ लाइक एंजल प्रिया फेसबुक वाली, बस एक्सेप्शन ये है कि इसका नेम और आवाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जासमिन मर्दाना है। हाँ, 85 है शॉट। Nice one. 85 है शॉट। ओके, नोटिफिकेशन गया क्या गाइस? मनीषो I'll handle this. I'm back. I'll return. वाह, ये क्या है भाई? प्लांट करके वापस जा रहा है क्या? प्लांट करके वापस जाएगा गाइस ये, बट नहीं dude, why nice? Damn son.
time, remember what worked in the past. I can drop Lish. Need a drop. हाँ बढ़िया सही है ना सीन Ray, you wanna? थैंक यू जैस्मिन Yo. इस जैस्मिन की आवाज इतनी Can you get the bomb? Here. Can you get the bomb to there? Oh. Yeah. Yeah, here you Watching go. flank, watching. Come. I dropped Give me. mine. Yeah, watch your flank, bro. Watch this. I'm watching your flank, bro. Enemy spotted. Short one. Oh, it's okay. Decoy. Walk, Yoru. योरू आउटप्ले का ट्राई किया खुद आउटप्ले हो गया टट्टी है योरू भाई खेलना नहीं आता इसको Oh guys, two guys need help. B-men, two guys very close. Woo! Very close. अबे यार ये लोग फिर से स्लो करना शुरू हो गए पहले फास्ट जाते फिर स्लो चले आते हैं रुको इसमें बूस्ट का ऑप्शन है क्या गाइस रुको साउंड से वॉल्यूम मिक्सर में भी नहीं साउंड ओपन साउंड सेटिंग्स है ना साउंड सेटिंग में ही रहेगा मेरे ख्याल तो 30 seconds left. डिवाइस प्रॉपर्टीज बूस्ट नहीं होता क्या एडिशनल डिवाइस प्रॉपर्टी लेवल्स तो मैक्सिमम पे ही है भाई 10 seconds left. क्वालिटी भी अच्छी है भाई वो कहाँ होता है इसमें enable audio enhancements allow extra signal processing by the audio device properties खोलें इसकी तरह नहीं ये तो ड्राइवर वगैरह है इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है which one is best to buy Primax Oniclaw Reaver knife Elder Flame knife Here. Elder Flame knife and Glitch Pop Here. these two knives if you want to buy go ahead buy these two knives मेरे को तो बस Here. भाई Elder Flame Vandal चाहिए यार मैं उसके लिए बस पैसे चाहिए मेरे को इकट्ठा कर रहा हूँ जैसी आएगी मैं ले लूँगा जैसी आएगी मैं ले लूँगा बिल्कुल वेट नहीं करूँगा भाई एल्डर फ्लेम वैंडल अलग ही लेवल की है भाई चीज़ प्राइम वैंडल भी कुछ नहीं है उसके सामने थोड़ा अग्रेस करना है क्या यहाँ पे पीछे से खेलें Women one down. Nice. Go back. Yeah, going back. Don't die. Get out of my way. मरेंगे यार ये लोग मर जाएंगे मैं भी लोग You're dead. A shot. Yeah, he's rushing mid. B-man. No. Two mid, bro. Can't go mid. Let's try to go away. Last player standing. Get out of here. Three for me. Yes. Oh, what? Nice time. Okay. Oniclaw also seem good. Oniclaw is only good if you are raised. If you are not raised, then not that good. Just अगर तुम raise हो, only then go for Oniclaw. Otherwise, it's not that good. Guys, are we ecoing or are we buying? Ace time, baby. I tried ace, bro. नहीं हुआ यार. But कोशिश तो किया मैं. Guys, are we buying this round? Are you sure? I think we should eco. Push. Okay, we guys eco. We guys eco and push A. Okay. I'll ultimate. Okay, bro. Let's go. Let's win this. Hype नहीं है यार बच्चों में hype का. Nice, Jasmine. Nice kill joy. Out of charges. Oh. Two heaven. No way. Sorry. Two heaven. Dude, why are you swarm grenading? No. Oh, sorry. पागल बंदा मेरे को ही मरवा दिया. Last player standing. Oh. Great.
ट्रैश है रे. अपना प्लाट अबे डायमंड Damage someone can hit my 17 HP, bro. Why you cry? Hey, dude. he got to know that I was there in heaven, bro. I was hiding from him. Okay, let's buy. Jet, can you dash in B? Yup, Just- yup. Yeah, let's. Boss. Video loop. You have to give us a flash from here Here. somewhere. Bounce flash. There. We'll go inside, okay? Jet and me. Jet double smoke and dash in CT. Okay, I'll go side. Let's go. Let's go, guys. Let's take side. Here. They're paying. Cover going out. Oh, close right. Nice. Go. Rush. More. Yeah, wait. Back over. Hey. Why are you Oh, what the fuck? Oh. कॉमन सेंस रे. गन आउट तो रखना पड़ेगा ना. एलडी फ्लेम का ये चक्कर है कि दूसरे बंदों को उसका एनिमेशन नहीं दिखता, बाकियों का फिर भी चलता है. नहीं ना, ऐसी बात नहीं है. एल्डर फ्लेम ऑप्शनली अगर तू यूज़ कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है. आई वुड 100% रिकमेंड एल्डर फ्लेम. गेम बदल जाता है एल्डर फ्लेम से. मैंने ट्राई किया, मैं रियान के अकाउंट पे सारी नाइट ट्राई की. एंड मेरे को फैंटम में ओनी फैंटम बेस्ट लगी. वांटल में एल्डर फ्लेम बेस्ट लगी. उसमें ऑपरेटर में आयन ऑपरेटर बेस्ट लगी. और क्या सीन चाहिए, और क्या चाहिए. डीगल में शेरिफ में रीवर शेरिफ बेस्ट लगी. बस और क्या चाहिए. और ग्लिच पॉप बुलडॉग भाई. ग्लिच पॉप बुलडॉग क्या लगती है तुम देखोगे बोलोगे बाहर से आई है. एलियन वाली करने कोई बवाल चीज़ है भाई. वेरी क्लोज. Bomb grenade out. Good try. आयन ऑफ पागल है क्या. आयन ऑफ बहुत अच्छी है भाई. फ्रेंजी ग्लिच पॉप टू सेक्सी. यस, फ्रेंजी ग्लिच पॉप भाई बहुत सही चीज़ है. काइडो ने एक राउंड नहीं ऐसा जाता जिसमें वो मांगता नहीं मुझसे. वो यूफोरिया कस्टम खेल रहा है. यूफोरिया अच्छा अपने सब्सक्राइबर्स वगैरह के साथ खेल रहा है. सोलो क्यों कर रहा है. Can we just stay above me? Okay, let's play slow. No need to rush. Jet, hold B main. They push B main. Someone watching me. Yeah, I'll watch mid. You guys, you hold B main, okay? One was mid and one was B short. Short. Two guys short. Two guys short. Too short, but we can go B this time. Too short. Decoy. Oh, Killjoy is trapped. You have ultimate, okay? One market, one short. One enemy remaining. Last was short, unknown. Woo! हमको एक VFX वाला स्किन दे दो. That's like welcome to the live stream. पहली बात तो, और दूसरी बात नोटिफिकेशन ऑन करो. तुम नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रहे, तुमने बता दो. Joke's over. You're dead. Yeah, he's rushing heaven. Down. What are you doing? Hey, you can see me, bro. Shut the fuck up, Liz. You have glitch pop frenzy, bro. Here. ग्लिच पॉप फ्रेंजी रियान के अकाउंट में ब्रो. मज़ा आ गया मुझे खेल के उससे. अबे मर गया ये भी. ऑब्वियसली भाई. नाइस ब्रो, गुड वन. किलजॉय के ट्रैश है अपनी भाई. क्या बोलूं मैं उसको यार. कल ट्रिगर हो गए थे क्या. कौन ट्रिगर हो गया था. मैं नहीं बस. अबे वैलोरेंट ट्रिगरिंग गेम है ना, इसीलिए मैं बस टाइटल में डाल दिया. आज नो ट्रिगर भाई. वैसे ही ट्रिगर नहीं होते हम तो. कॉम्प्लेक्सिटी जीत गई. अबे क्या बात कर रहा है. सही बता. कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस नावी था क्या. कौन सा मैच था मैं भूल गया यार. Here. 1917. Actually. अरे बाप रे. इतना खिंच गया. खिंचने की वाली हालत थी इतनी. One shot. Don't go race. You have like boom, but you have anything.
for information. Cypher has camera. Wait. Go get it. Two. Yeah, 2B, 2A, 1 mid. Here. Oh, middle, market. 40 seconds, guys, 40 seconds. Close. One still market. Decoy. Walk, killjoy. One market. Sage kill. One more. One down. Right. 30 seconds left. Oh, Oh, Raze. just run. Last player standing. Nice aim, bro. Bro, you die. I didn't die. You died. Save, you can save. Let's save. Have no time. Saving. Let's save. What the fuck? Shut up. Don't die. What? Oh, duelist, come on. जब से तेरा फेस कैम नहीं था और सब लोग बोलते थे कि तेरी जियो जरीन है तब से नोटिफ ऑन है जरीन अबे याद दिला दिया तूने जरीन को नाउ न्यूक 15-4 से 19-17 तू मुंबई सर्वर पे खेल रहा है नहीं सिंगापुर सर्वर पे खेल रहा हूँ सिंगापुर सर्वर पे ट्रैश आ जाते हैं भाई लोग कल बहुत बढ़िया लोग मिले मेरे को सिंगापुर सर्वर में Oh, let's come on. अभी बहुत Duelist. ट्रैश लोग आ Rush रहे me, हैं rush. इतना गंदा माइक है इस बंदे का Here. भाई Get out of my way. City one market out down. One B-man, one market. B-man. ओके जास्मिन के हाथ का गेम है भाई पूरा बूस्टेड डायमंड अब पता नहीं कैसे खेल रहा है बंदा ओमन को देखो ऑन साइड नाइस जास्मिन Fuck. प्ले टाइम नाइस ब्रदर hey behind you guys nice it's okay good shit Thrifty. boosted diamond भाई diamond 2 player है वो If you're gonna fight, then shoot. diamond 2 player है वो Last round before the switch. कमाल की बात है नहीं diamond 2 ऐसा खेल रहा है भाई अल्टी मार देगा ए पे अल्टी मारे क्या तुम बताओ जल्दी 20 सेकंड है जल्दी बताओ अल्टी मारूं क्या ए पे अगर क्लिप निकला तो अल्ट्रा एपिक क्लिप निकलेगा अगर फेल हुआ तो अल्ट्रा एपिक फेल होगा बताओ जरा Don't rush. चलो डोंट रशिंग कह रहा है रुक जा कौन अल्टी रुक जाओ अपने बंदे ने क्या दिया ना नो रश थोड़ा वेट कर लेते हैं You're dead. ए शॉट रशिंग या ओ ए शॉट Be Phoenix quiet. Phoenix A shot boys Be quiet, Rage. I'll kill you right now bro. Be quiet. Satchel out. थोड़ा सा हाक दिया शॉट हेवन Bomb buddy out. 2A go B Can you find some kill? Rest. Find some. Loosen up. okay 170 tag 149 one guy is 149 tag 1 HP I know exactly where you are. Placing alarm. निकालो क्लिप भाई फेल हो गया सब रोज अल्ट बोलते हैं भाई वो 149 टैग दिया दूसरे वाले बंदे को Initiated. ओके गुड सिक्योर आखिरी राउंड है भाई आखिरी राउंड था बनता है क्लिप हाँ Here. ये क्या रही है किलजॉय यार इसको रिपोर्ट कर दूं क्या मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इसको भाई ग्रीफिंग कर रही है क्या नाम है सैबोटाजिंग डिसरिस्पेक्टफुल एंगल कुछ नहीं देख रही भाई लास्ट 149 1 HP
Whoa! Nice job. क्या बात है. लाइक वाइक कर दो गाइस, शेयर वेयर कर दो. Switching अपने sides. पुराने बंदे गायब हो गए भाई. स्ट्रीम वापस खोली मैंने, अब पुराने बंदे गायब हो गए. ये कोई बात होती है बताओ? कोई बात होती है? कोई गल है? हाँ ठंडे पड़ गए मेरे सही में भाई. दिल्ली में ठंड हो रही है मस्त वाली. कह रहे बर्फ पड़ेगी 3 दिन में. कह रहे 3 दिन रुक जाओ बर्फ पड़ेगी. मैं नहीं मानता लेकिन पड़ गई ना जी हो जाएगा भाई. दिल्ली में जी हो जाएगा. फिर होगा कंबल का इस्तेमाल. फिर हुडी वगैरह से काम नहीं चलेगा. फिर कंबल लाना पड़ेगा. वो देखो किलजॉय को देखो जरा भाई, कितनी ट्रैश प्लेयर है ये. आई डेथ राइटर वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम. क्या हाल भाई, कैसा का है? Okay. Speed. 2-3B 2-3B. Repeat, dude. They coming. Yeah. Rotating right now. What the fuck? Why you high, bro? You're doing nothing, Killjoy. You're doing nothing. Turrets destroyed. Found them. On side, two guys on side. One more. Here. One enemy remaining. Lane, last lane. Woo! Nice Jasmine. अपनी Killjoy बहुत गंदा है, ट्रैश प्लेयर है यार ये. ऐसे लोग भी बूस्ट हो जाते हैं यार. ऐसे लोग भी बूस्ट हो जाते हैं. क्या बोलूं मैं? Why you hide this, bro? What the Smoke के fuck? अंदर से दिख रहा था. अरे उसको लगा मेरा हाथ पर पैर वैर दिख गया होगा. It's okay, it's okay. You're both good. Omen is Can I get a drop? actually, you know what? Let me spectate this. Let's buy some Stinger, right? Yeah, I'm buying Cinder. It's okay. Yeah. No sound B. Carefully. Oh, Yeah, fuck. 3 That's 4. not, sorry, my bad. It's okay. Don't die. We'll retake, guys. Spike planted. One got in. Got in dead. It's dead. Use your ability. Bomb buddy out. Last player standing. Don't walk. Oh, Ian. Satchel out. Satchel out. One enemy remaining. Oh, let's go, baby. Let's go. You're so cute, bro. Yes, it's okay, bro. Oh, come on, man. Let's keep it Guys, going. was that a clip or not? I think that was a clip. You lost 10 armor, ना? हाँ ठीक है. It's okay, भाई. Let's go. भाई आज एम ही नहीं हो रहा क्या गेम? कोई भी गेम में ये कैसे ऐसे क्यों? संडे सब गेम्स है क्या? लेट्स सी. बट अगर एम नहीं हो रहा तो एम लैब्स में प्रैक्टिस करो. इजी क्लिप. माँ खींचे. गॉड व्हाट? गॉड है भाई. आई एम बैक टू रेज ना. अभी देखो तुम, मैं जेट एज किलजॉय का काइडो का एजेंट चुरा के खेल रहा था. नाउ वॉच सम ओपी गेम प्ले गाइस. Go get it. Wait. One down. Go back. Going Yeah. back. Can someone mid? Someone watching. I think For outside me, market. Outside. 2B, maybe more. Market open, by the way. Yeah. Right side. Killjoy वहीं खेल रही है अपनी. 2B main, हाँ 2B main. 1 B main, unknown others. Go A. Lesh, you can. Hey. I'm coming. 1 B main. Yeah. Okay. Spike तो ऐसे क्यों planted. सेव करता है? सीधा Alt F10 दबा. ना. मेरे को मजा आता है रे. मेरे को फील आती है इसमें सेव करने में. Joke's over. You're dead. Reloading. Jenny का. There. One shot. Kill shot. One. Default. Enemy remaining. Defuse. Defuse. Use your all. One defuse. Let's go, guys. Good round.
गॉड 1 mm खेल के आता हूँ पाजी ऑल राइट ना बे आराम से आओ कोई टेंशन इच नहीं है ब्रो कोई टेंशन इच नहीं है तुम्हारा भाई है ना अकेले निकाल लेगा भाई Dummies when you have यू नो दैट ऑल्ट प्लस F10 से भी इंस्टेंट रिप्ले सेव होता है आई नो ब्रो वहाँ पर लिखा है मेंशन्ड है वहाँ पर ब्रो लुक एट दिस ब्रो टर्न ऑन टर्न बट ये टर्न ऑफ का है जो तू बोल रहा है ना लाइक ऑल्ट F10 दबाऊंगा सीधा क्लिप सेव हो जाएगा दैट इज व्हाट आई नो मेरे को पता है बट मेरे को ये करने में फील आती है एंड इट्स ईजी फॉर मी बिकॉज मुझे एडिटिंग करने में आसान रहता है वो एंड पॉइंट मिल जाता है They क्लिप don't का have a chance. तो मेरे को बहुत आसान रहता है ऊपर से जब देखता हूँ मैं तो 3 B main 3 90 100 tag 3 guys आगे मारना चाहिए था मिड लिंक Get out of my way. I know exactly where you are. They're coming A guys probably Be quiet. it's Yaru you have flash Player yeah standing. damn it's okay Spike planted. one guy is 125 tag can he clutch this मुझे नहीं पता nice yes bro very nice ये नाइफ लेके मुझे नया नाइफ लेते हैं और फिर उछलना शुरू कर देते हैं वो वाला बंदा है नाइस वन हैज टू बी अंडर ना ऐसा कैसे हो गया नहीं है सारे सेव खेल रहे सामने वाले Alarm bot out. कैमरा ही वाओ Imagine if I died right now. One enemy remaining. 125 tag last guy नाइस टरेट वही ना बॉट है एकदम भाई बॉट है भाई खेल रहे आई यू सो सैड नो टाइम guys are we ecoing or are we buying Hoy. eco okay I can drop someone Yep, sheriff yep. yeah No. You don't need to. are you sure I can drop you want a sheriff I can drop you a sheriff oh अच्छा वो अल्ट पे खेल रहा है okay makes sense चलो let's eco next round we buy bot kill joy yes bot kill joy कोई नहीं अब मैं ना काफी है भाई one tap Okay. wow 1 A pushing जिस सेकंड मैंने Oh, are you pushing, bro? nice good shit nice spike down guys oh he'll revive Alarm bot out. One enemy it's okay. remaining. One last amen he can Amen. revive he will revive someone God abyss thank you so much भाई but मेरी टीम अच्छा खेल रही है किल जॉय के अलावा बाकी सारे अच्छा खेल रहे हैं ओमन के अलावा ओमन अनकिल जॉय अंग्रेजों को फोड़ देते रे बाबा मीम बनाऊंगा इसका There you can buy Phantom. So it can me. Please. Now. I'll buy There you can buy Phantom. Oh. bro your Yeah, mic please. is very trash bad. bro your mic is very Yeah. trash Killjoy please don't speak ever again bro है ना सही बोला ना गाइस इतना ट्रैश माइक है बंदे का ओमन can you play from there I might need cover yeah एक शॉट मारेंगे और वापस two guys Okay. यहाँ वापस चले आते पास आएगा पता लग जाएगा ठीक है सर चार्ट मिस कर लो क्या चार्ट मिस किया वापस लिख दे क्या मी मिस हो गया रे मुझसे मिड लेन गाइस mid spike drop I think so mid Stay mid. yeah mid Careful, mid, market care smoke off three market अरे यार वो smoke short कर दिया इन्होंने मैं भूल ही गया था spike down two more Last player standing. what is Killjoy doing I don't know Bomb grenade out. Be quiet. That's done. क्या कर क्या रही है यार ये बंदी समझ नहीं आ रहा लगता है अब राधिका स्कूल जाने की लगी नहीं वो आई थी सुबह आई थी Spike planted. सुबह आई थी बट वो जो स्ट्रीम में बग हो गया था ना तब आई थी वो तो आई गेस उसको नहीं पता कि सेकंड स्ट्रीम हमने स्टार्ट कर दी Out of charges. Bot coming back.
मैं Alt F10 करके विंडोज़ की मूवीज़ एंड टीवी वाले तभी एडिट करके क्लिप, हाँ मैं भी वही करता हूँ, बट मैं बाद में करता हूँ, लाइक वो सारा मैंने जब क्लिप बना लिया उसके बाद में करता हूँ। You say something? Sorry, ears still ringing. बट कभी कभी OBS से कर देता हूँ ना मैं, तो वो आसान पड़ता है मेरे को, कभी कभी जब मेरा रिएक्शन वगैरह भी चाहिए होता है, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। Can I get a drop? ये रुकिए drop में, thank you. Let me boom bot A main, okay Jasmine, just stay there. Yeah. Thank you. Bomb buddy out. It's B. Is B? It's B. Watch it. Middle one. Market care, middle one. You Can will not kill my allies. No one high mid? B main, jet. Oh, I'm holding mid link. can't say shit. Spike planted. किल जो एटलीस्ट दो लोग निकाल किल जो है, अबे हक दिया यार। Joke's over. You're dead. Last player standing. Oh, wow, nice. Wow. Guys, can you report kill जो है? He's just trash, bro. Super easy to pick. Oh my god भाई, क्या ही माइक है इस बंदे का। Holy shit, bro. Valorant खेल रहे हैं ये लोग। मेरे पास अब तक 153 क्लिप्स बन गई हैं, लेकिन Wait, can you washing it? I can washing it for you. Okay, I'll do that. लेकिन मोन्टाज अब तक एक भी नहीं बनाई मैंने, मेरी तो बन रही है अभी। ग्रिम अगर चैट में है तो बना रहा है ना तू, कहीं पता लगे नहीं बना रहा। बना दियो भाई, ऐसे ना करियो कि स्कैम हो जाए। Bomb buddy out. 2 MN, 1 down. Nice. Can you go back? Can you net some shit? Yeah, 2 MN. जेट अल्टी मारेगी तो यहाँ से देखिए। ओके हाँ भाई, काम शुरू हो गया ना ग्रिम? Turret out. या स्टिल एमन coming forward guys. Nice, 2 guys amen. Go back, go. Get there. Both amen. Enemy Right side remaining. amen. Nice, very good flash. Time to kill. This was Nice theory. ये बहुत गंदी चीज़ है यार, वो वॉल के थ्रू चला गया उसका। ट्राई करता हूँ आफ्टर पेपर से छोटी सी मोन्टाज बनाने की 153 क्लिप्स में से, तो काफ़ी कल बीट सिंक हो जाएगी। Same as Yeah, let's do the same thing. Okay. Can I get a drop? Killer, drop me a vandal, bro. Thanks. Awesome. बीट सिंक हो जाए ना, फिर मेरे को एक बार दिखा दियो रे ग्रिम। इफेक्ट डालने से पहले मेरे को दिखा दियो बीट सिंक, उसके बाद काम करते हैं अपना जो भी करना है। Okay. Get out of my way. No one amen. Speed. या नो, ए पूरा क्लियर, ए फुल क्लियर गाइस। मैं बोल रहा हूँ ए पूरा क्लियर भाई, है ही नहीं कोई यहाँ पर। हैमिट क्लीन। T-base clean boys, T-base clean. Oh, motherfucker. Mid a lot. Mid. At mid. Okay. Satchel out. Party. Enemy remaining. Oh lol. Unknown last guy. Nice guys, awesome, let's go. क्या शॉट मारा यार इसको मैं। Match point. Let's end this. किस्मत भाई। अच्छा था ना वो, अच्छा था ना, अल्टीमेट बहुत सेक्सी सा था। खत्म करें ये वाला मैच, जल्दी खत्म करते हैं, इसके बाद एक और जीतना है।
There. Okay. They smokes. 2 mm outside him. Minimum 2. Coming here, they're coming here. It's grounded. Nice. You will not kill my ally. They're still left side, bro. Don't overpeak, don't overpeak. लो ammo है भाई, लो ammo है. I'll hold short, it's okay. मैं पढ़ता हूँ तुम्हारी मैसेज, तुम्हारा पढ़ता हूँ मैं, क्या नहीं. मार दे डबल सैचल. Left side. 30 seconds left. Satchel out. Satchel out. No one One T-base. enemy No, yeah, remaining. last still there, still there. Yeah, he's not aiming. He's right side probably. Where is he? I don't know. Saving? 10 seconds left. Good match, guys. Spike planted. Oh, never mind. Lord. प्राइम हैंडल तो पहले से ही है. मे बी गोस्ट. मैंने सोचा बर्थडे पर बस लूंगा एक फैंटम, ओनी फैंटम, एक एल्डर फ्लेम ऑफ और एक एल्डर फ्लेम नाइट और एक सिंगुलैरिटी. सब ले ले ब्रो तू. 80. On side. Come on, go from the other side fast. Oh. Nice. Nice match, guys. Let's go. मेरे भी स्कूल खुलने वाले हैं. अभी तक मेरा फेयरवेल नहीं हुआ. फेयरवेल भाई स्कैम है. हमारा फेयरवेल तो बहुत गंदा हुआ था क्योंकि उस टाइम पे किसी बच्चे की डेथ हो गई थी. And gunpowder. तो हमारा फेयरवेल थोड़ा गलत तरीके से मना था. एक सेकंड रुकना गाइस, मेरे को किसी की कुछ काम है. एक सेकंड रुक जाओ. I'm back. बढ़िया था यार, बढ़िया था. मस्त क्लिप निकली यार वो लास्ट मैच की. कितनी क्लिप निकली? 2 क्लिप निकली, 3 निकली मेरे ख्याल. 3 निकली ब्रो. आई थिंक 3 क्लिप्स निकल गई. अपना सब गोल इधर भी लगा दूँ ना मैं. रुक जाओ. ऐड टेक्स्ट कहाँ गया? टेक्स्ट ऐड एग्जिस्टिंग. Match found. देखो ऐड एग्जिस्टिंग. यस ठीक है. रिप क्या हुआ? रिप अभी तक मेरा फेयरवेल नहीं हुआ. रिप वाला क्या सीन भाई? रिप वाला क्या सीन? चलो ठीक है. तब तक माइक गोल का माइक वाला वो टेक्स्ट सेटअप कर देता हूँ. टेक्स्ट माइक. यस दिस इज गुड. बढ़िया. अब कहाँ है वो? कहाँ गया वो? ग्रुप सिलेक्टेड आइटम्स. नाइस. बढ़िया है ना. सेक्सी बात भाई. हो गया ना सब सही? हो गया. हाँ सब सही है. चलिए अपने में. हाँ ठीक है. परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है. बना लो, लॉक कर लो. क्या बोलते हो? जो क्लिप्स है उनके वाईटी पे डालूं या इंस्टा पर? वाईटी पे भाई, वाईटी पे. अभी तक मेरा फेयरवेल नहीं हुआ भाई. मेरी क्लिप्स का मस्त अगर मोन्टाज बन जाए ना, अगर ये बना दे ग्रिम, तो भाई मज़ा आ जाएगा. ग्रिम भाई अगर बना दिया ना तूने, एपिक हो जाएगा. सही बता रहा हूँ, नो जोक. खत्म. लेट्स गो. कॉफ़ी के नशे नहीं हो पाएंगे. और अब लाइक वाइक बढ़वा दो यार. आज लोग भी नहीं आ रहे. क्या हो गया भाई? नोटिफिकेशन नहीं गया क्या? मेरे ख्याल नोटिफिकेशन नहीं गया भाई. मेरे ख्याल नोटिफिकेशन नहीं गया स्ट्रीम का.
सामने कौन लास्ट मैच वाला तो कोई नहीं आना भाई बस ठीक है लास्ट मैच इमॉर्टल था अपनी टीम में भाई अबे ओमन वही तो नहीं है अपना ट्रैश वाला ओमन अगर ट्रैश वाला है तो फिर सीन खराब है भाई फिर से कैरी करना पड़ेगा इसको बंदा बोलने में अच्छा था लेकिन है तो ट्रैश ही भाई बाल क्या सीन है बाल आगे आ रही है बार बार ऐसे कितने ऐसी भाई बढ़िया लेट्स स्विच स्क्रीन एंड लेट्स प्ले चलो फ्लैट 3 पहुंच जाएंगे अगर हम ऐसे 2-3 मैच जीते तो 4 से पहुंच जाएंगे फ्लैट 3 तो चेक करना पड़ेगा सामने वाले कैसे खेलते हैं अग्रेसिव या पैसिव वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू न्यू अगर पुराने हो तो आओ बात करते हैं कुछ चैट वैट करो एंजॉय मारते हैं चैट में लेट्स गेट इट टेक्निकल पॉज जेट आएगी आगे आनी चाहिए उसको I'm jumping in jet. Satchel out. No one elbow. Yep. Guys, come be fast. Coming. Come back. Yeah, boy. One telly. Roger. Woo! Double kill. Oh, nice name, man. Yep. Let's go, guys. Here, amigo. Double kill. Let's go. अरे अबे से क्या ठंड में Bro, go where? You must tell me go where. That is me, Aditi. Welcome to the live stream. क्या हाल है Aditi के? What is up, Madam G? How you doing? इस मैच में चल लगाया क्या? चाय लगाएगा क्या? नहीं चाय नहीं ब्रो, कॉफी पी ली मैंने. कॉफी इज नो मोर नाउ. कॉफी खत्म हो चुकी है अपनी. अब हम एंजॉय करेंगे अपनी कंपनी खुद एंड तुम्हारी कंपनी. तो इफ़ यू वांट टू लेट्स टॉक अबाउट समथिंग बिकॉज बोरिंग हो जाएगा वरना चैट. लेट्स रैंक अप. हाँ आज रैंक अप करना है मेरे को. कल एक रैंक हो गया आज एक और रैंक चाहिए. एनीवन हियर? नो. ओके एक नीड मारते हैं बैक से निकालते हैं उसको. Okay. यस लेट्स बूम बोट दिस साइड. One top. One backside. Two backside. Flashing. Flash. नाइस बॉयज लेट्स गो. One enemy Hey, remaining. Oman close. डाई Yeah, रमन last guy you haul. Let's get you haul. ओके ओके. Hey, there's a Spectre at backside of A. ये बहुत लाउड नहीं है क्या? रुको मैं you know what इनकमिंग Please take साउंड it. कहाँ था वो इनकमिंग साउंड. या ओमन what were you saying? There's a Spectre at the backside of A. हाँ ठीक है अब ठीक है. उसकी तेरी भी मना मैं आऊँगा श्रद्धांजलि देने. सैड फॉर कॉफी. डैम ब्रो मैं दोनों चीज़ें पीता हूँ. मैं चाय भी पीता हूँ और Race, कॉफी you भी Indian? पीता हूँ. गाइस वॉच दिस. मैं ये मटका तोड़ूंगा नहीं वापस नहीं आएगा पूरे मैच. यस ये पूरे मैच वापस नहीं आएगा. I won one. Deploying drone. Deploying drone. Slide down bro. Reloading. No one showers. Hello, Malan. Welcome back, broda. Welcome back. ये क्या हुआ था अभी? Nice, someone. I got Spectre. One went teleport. We can still go A, guys. If you want, we can go A. I heard Omen teleport somewhere. No, the door is open. Omen probably on the right side, not sure. Or could be on the left. Yeah, I can smoke left. Oh, you got anything? Scanning ahead. I'm going in U-hole. Get the bomb. I dropped the spike. Satchel out. Move. Last player standing. What? Okay. Hello, D-Ranker. Bro, ranked up, man. Who ranked up? Oh my god. Opposite of Anyone Microsoft have any Office is spins? I may Macro have jammed hard my online. fingers. on Multiple fire. Oh, fingers. off ice. Okay, I get it now. I get it. That's not clever, but ठीक है. मान लेते हैं bro. अगर तुम कह रहे हो तो funny होगा. Like कर दो guys. जल्दी से let's get to 30 again if possible.
Killjoy, can you drop me Spectre? Hey, buy Spectre for him. Buy Spectre for him. Thanks. Thank you. One under hook, I think so. Not sure. We push hooker first. अभी You got इसको कोई anything? joke सुना? You got anything? Dude, boom bot or something? No one hookah by the way. No one hookah. What nonsense? Jet's Boom grounded. body, bro. You dead already. City one. Both city. Attacked both of them. City. अबे इसको एक joke है. वाह. Thank you for that, bro. Jet, you have ultimate. Take the spike. Blocking sight. Oh, अपनी jet अच्छी है. Game sense अच्छा है इसका. Last player That's it. standing. Oh. Bro, Dude, hookah is boom clear. bot before we go inside hookah, bro. No, I cleared it, bro. You died from Cleared it? teleport, There bro. was a jet here, bro, behind the thing, bro. Yeah, I killed him. Hey, no, dude, I died already by the time you came. Oh, acha, oh, he killed you. I'm so sorry. My bad. I can ultimate on A shot if you guys want to rush A. Eyes on target. बावले हो गया भाई ये सही में सही कह रहा तू बावले हो गया. Take flight. Reloading. Satchel out. Guys, can you come out please? I killed. Oh. No, we don't have Jet satchels, is- bro. Oh. ये सोलो जाके मर रहे हैं यार. Scanning ahead. Go shop. हाँ, कोई फायदा नहीं है यार स्कैन वगैरह करने का जब जाना ही नहीं इन्होंने तो क्या ही करूं. अल्टी सही था ना भाई. प्यारा अल्टी था वो. बेचारी रेना के साथ एफ हो गया. ओमन भी मर जाता लेकिन वो भाग गया वहां से. बेस प्रॉब्लम Last player standing. मर गया भाई. मर गया. 0-2 ने मार दिया नूब शिट. ठीक था तेरी ऐसे खेलते हैं. ओ गुड ट्राई. अबे इस भाई जोक सुनाना है क्या I'm amped. यार. Let's ऐसे तो go. नहीं आता मेरे I को got कोई जोक things to दिमाग do. में ऊपर से तो आ नहीं रहा सच्ची बताऊं तो. ऐसे याद हो तो मैं जोक सुना भी दूं तुमको लेकिन आ नहीं रहा मेरे को जोक. तेरी बाकी क्लिप ज़्यादा अच्छी है. हाँ भाई ठीक है भाई ठीक है. मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ लेकिन अच्छा था भाई. मैं इतना कह रहा हूँ बस. इट वॉज नोट वर्दी कि वो अच्छा था. शॉर्टी मार दूँ अभी ये वाला क्लिप देख. किरण तू ये वाला क्लिप देख ठीक है. तू बोलेगा अभी कि क्या मार दिया भाई आपने. Satchel out. इट्स ओके गाइस इट्स ओके. A flash for you. One. चल कल याद करके आइयो. वाह ठीक है कल याद करके आऊँगा जोक. रुक जा. एक जोक सुना दो तुमको. Coming back. नहीं एक्चुअली रहने दो भाई. ये थोड़ा स्क्रीन फ्रेंडली नहीं है. कुछ नहीं देखा अच्छी बात है भाई. देखने वाला था भी नहीं. अबे No more. Placing swarm grenade. Gun here. Two guys at hookah. You all still got time to rotate to A. yeah Omen you can Revealing go. I am the Last player standing. Last, elbow. That's right. he's already in hookah. आज कोई चार्ट में क्यों नहीं है. आज पता नहीं शायद नोटिफिकेशन नहीं गया. रिमलन सेकंड वाली स्ट्रीम का. पहली वाली स्ट्रीम का तो चला गया. सेकंड वाली स्ट्रीम का नोटिफिकेशन नहीं गया. 30 seconds left. planted. भाई मैं हूँ. हाँ तो तुम तीनों ही हो अभी. बस 3 लोग हैं अभी चार्ट में. बाकी कौन है मेरे को आइडिया नहीं. रुक जाओ.
शायद राधिका आई हुई है, नॉट श्योर। आई थिंक सो राधिका आई है, आई एम नॉट श्योर। Act on my intel. Act on Don't my give intel. them time to reposition. ठीक है भाई। यार ये लोग ना रश नहीं कर रहे, ये लोग ना होल्ड कर रहे हैं। Killjoy, can you get the spike? You're Yo, sentinel, bro. raise. Yeah. Just boom bot before you push in, man. Don't just jump in like that. You boom bot, Yeah, okay, then I smoke here. Okay, I'll do that. Then we just look here. I'll Okay. smoke heaven also. I'll boom ball on the right side, okay? Yeah, boom bot to the right side. Yep. So Through the recon- one way. Through the one way. Yeah, I'll do that. I'll smoke heaven. भाई I'll मुश्किल smoke है यार heaven. ये मैच। Deploying drone. Bomb buddy out. Yeah, I think right Flashing. side. Flash Flash them. I flash them. Keep going. I'm blind. Yeah, nice. One Backside. city. Down city. I double one. you. Careful A shot. I double you how with you. Yep. Nice, last unknown. It should be A shot यार, आना तो उसको A shot ही चाहिए। Nice kill bro, good kill. Vando, prime Vando. Just let them try to catch फिर स्ट्रीम क्यों बंद करी थी? अरे वो ग्लिच हो गया था, अरे कुछ ऑडियो बग हो गया था। मैंने ईयरफोन प्लग इन किए तो ऑडियो ही चली गई दो सारी की सारी। मेरे को भी नहीं आ रही थी और उनको भी नहीं जा रही थी। और फिर किल प्लीज गेट द बॉम्ब ब्रो। और फिर जब आ रही थी आवाज़ तो उसकी आ रही थी वेबकैम माइक की आ रही थी जो ख़राब है, मतलब इतनी आवाज़ अच्छी नहीं है उसकी, इतनी क्या बहुत ही वाहियात आवाज़ है। तो वही सीन था कि मैंने इंस्टेंटली बंद कर दी बिना बात टॉर्चर करूँ तुमको इससे अच्छा। Boom bot hookah. Yeah, doing that. So what? Don't recon. Why? Okay. Hey, up. Yeah, Jet is B long. Jet is B Yeah, long. two guys on B. Come. Go away. Reloading. Shock dart. M4 क्यों बेच रहे? मेरे को M4 देख, मैं A1S चलाता हूँ top. और A4 है पड़ी हुई और थोड़े पेटीएम में पैसे आ जाएंगे तो वैंडल, मेरे को इसमें एल्डर फ्लेम वैंडल लेनी है। Go. Let's go. I'm holding up. I'm holding Hey, heaven. he holding heaven. Okay. One elbow. Check spawn. You hold not covered. Yeah, one showers. He's coming close. Tank. Elbow one. I think, bro. Copy. Copy and triple box. Guys. Oh. Last You player hold. standing. 30 seconds. It's okay, slow. वो बूमर लाइनअप देख के मैंने गेम अनइंस्टॉल कर दिया। अरे वो सीधा जा रहा था, वो वापस आ गया। वो लाइनअप की गलती नहीं थी, वो लाइनअप का कोई इशू नहीं है, वो वॉल में अटक गया कहीं ना कहीं। तो सीएसगो को बाय बाय बोल दिया है ना? नहीं ना, सीएसगो को बाय बाय नहीं बोला, मैं A1S से खेलता हूँ सर, और A4 पड़ी है बिना बात मेरे पे। तो प्लस मेरे पे थोड़ा क्रिप्टो करेंसी पड़ा ही है, तो इट्स बेस्ट इफ आई कीप क्रिप्टो, और स्किन में अगर निकाल सकूँ तो निकाल दूँ। आई वॉन्ट टू कैश आउट माई M4 A4, सिंपल एज दैट। सीएसगो को तो बाय बाय बोल ही नहीं सकते भाई हम कभी। सीएसगो जान है अपनी। Go get it. One triple. Yeah, 2B. Oh, dude. I'm coming with the spike. I have to No, he 38. He's A short. A short. Okay, down. One more. I think. He should be A short, yes. Placing sentry. Yeah, smoke, Omen. Wait. last player standing. Towers. I think one CT. सुन लिया इसने। अब भी पागल आदमी। ये कोई क्लच प्लान बना रहा है भाई, ये कुछ तो प्लान बना रहा है बढ़िया वाला। ये लड़का बवाल करने जा रहा है। 30 seconds ये left. बवाल होगा। जेट अल्टी मार दे भाई।
सामने वाली भी जेट कल्टी निकल जाए, जेट कल्टी निकल जाए। Get out of my way! बहुत बढ़िया, बढ़िया। काक के सिटी देख ले एक बार, दोनों बोथ हुका। One enemy Left side. remaining. Oh, good try, good try. Nice. अच्छा खेल रहे हैं यार सामने वाले भी, अपने वाले भी। अपने वाले थोड़े बेटर खेल सकते हैं यार। अभी इतना खास नहीं खेल रहा कोई भी। अपने में भी काफी कम लोग अच्छा खेल रहे हैं। बाकी लोग तो हम लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। Surrounded by minha família. We won't कौन जीतेगा? lose. न्यूक नावी या कम्प्लेक्सिटी? नावी, नावी। न्यूक नावी का बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। कल देखा ना सबने भाई, कुत्ता बना दिया था नावी ने लिक्विड को सेकंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में लिक्विड ने उनको कुत्ता बनाया, सेकंड हाफ में नावी ने उनको कुत्ता बना दिया। Reloading. Bro, crazy or what? Guys, we can do aggressive. Guys, we are not going aggressive at all. Come on, let's try aggressive once. We can go B, we can go B. Okay, so they pushing out, they pushing out, they pushing out. B, hookah 2, Okay. hookah 2. I have the spot. Bomb buddy out. Take flight. Omen probably in elbow. Yeah, one Omen elbow probably. Yeah, Omen elbow. One shoot. Okay, nice one. Ouch! Out of charges. KO, KO. Satchel out. You all want. Okay, inside, inside, inside. I miss. Inside, you hold. It's coming to Will you. not No. kill my ally! Last time. Shit, one you hold, one One heaven. enemy remaining. What? कौन जीतेगा न्यू? ग्रिम इज अ सिम्प। कहाँ है ग्रिम भाई? कहाँ है ग्रिम? सिम्पनेस दिखाओ भाई थोड़ी अपनी। Everyone here. makes fun of German efficiency. Ha ha. अटेम्प्ट सही था यार, लेकिन बात वही आ गई ना कि नहीं घुस पाए ना सारे अंदर। कोऑर्डिनेशन का भी थोड़ा कमी हो रहा है, दिख रहा है वो तो, विजिबल है कोऑर्डिनेशन Let का। me see how aggressive can you be. Let's go. It's not how aggressive I can be, it's how aggressive we can be, bro. I'm not the only one who's winning, who's losing. Go lah, go. I'm waiting for you, bro. I still the one entering. You, wow! Watch backside someone! Bro, jump in. Reina killed. He's You on, jump in he was on with side. 4 angles to cover. Nice, one head. One enemy remaining. Not there, not there. Nice. Yeah, no, kill him. Nice, guys. Good set. मैं G2 का मैच जरूर देखूंगा, मेरी फेवरेट टीम है भाई। G2 है बहुत Last अच्छी, बहुत round अच्छी in टीम the है, half. अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग टीम है G2। Can I get a drop? Thanks. उसके सही में यार पीछे आ गया था मैं, सही साचल मारा था मैंने, उसके पीठ के पीछे था, बट उसी सेकंड किल हो गया जिस सेकंड मैंने गोली फायर करी। और ये यहाँ पे पिंग डिफरेंस है तो उसकी गोली पहले लग गई मेरे को। कितना पिंग है उसका? रेना 32 ना, मेरा 86 है भाई। वही पिंग डिफरेंस में मारा गया मैं, यही सीन है यहाँ का। सिंगापुर में बस इतना ही प्रॉब्लम है कि पिंग डिफरेंस में मारे जाते हैं सारे। सर्वर बुरा नहीं है, सर्वर बुरा नहीं है कहीं से भी। Long one down. Continue pushing, Jerry. Race, continue pushing. 95, There. 95. Yeah. I think I faked it enough for you guys. You guys can probably go. On side. Oh! D10. City. City once. One behind. One A triple short box. probably. Last A short should be. Last guy was at B, but I don't know Yeah, where yeah. now. 95 tagged.
He's on blades, bro. I He's have on the ultimate. spike. Ooh. Yeah, sure. नावी T side pistol जीत गई. Nice, nice. नावी very Switching strong bro. sides. T side में बहुत strong है नावी. Make sure अटैक you करना आता है उनको, होल्ड करना थोड़ा टफ है उनके लिए. यार ये लोग मेरे अगेंस्ट क्यों खेल रहे हैं? मेरे साथ खेल लेना. इन लोगों को मेरे अगेंस्ट खेलना है, पता नहीं क्यों. क्या चुल है इनको भी. बस इस रैंक में इशू है ना, वही ना. प्लैटिनम 3 के ऊपर कोई इशू नहीं है. Hey, डायमंड Raze, में if they सारा are in hookah, let us know. ओके ओके. Or right outside hookah also. या मेरे अगेंस्ट ना खेले यार ये लोग, बस साथ में खेले थोड़ा. 8 बज गए क्या? 8 हो गए ना, ठीक है. Go get it. 3 होगा, आउटसाइड होगा. Okay. Hey, come on. Let me drone this. Or One dart pushing. this. Yeah, yeah. A long 2. B long, I mean B long. Loosen up. One more. Going back probably. Going back guys, going back. One more. T-base. Nice. Long. Too long. One enemy remaining. One, yeah, planning it. Oh, planting A. Flawless. Nice shit bro, good shit. बहुत सही. अब 2 राउंड तो बनते हैं अपने हाथ के. जाने नहीं चाहिए 2 राउंड किसी भी तरीके से. पक्की खेल रही है भाई. पागल हो गए हैं क्या ये लोग? alarm bot. सिंपल ने Placing swarm grenade. कुछ सीक्रेट से हेवन 1 डिग मारा. वो भाई सिंपल पागल बंदा है नावी में. नावी का सिर्फ और सिर्फ सिंपल है ऐसा जो पागल है. Placing sentry. बाकी सारे थोड़े से Keep it cool. चिल में है. वो सिंपल इज क्रेजी ब्रो. Roman, can you flash for me? Go get it. Yeah, no one here. One here actually, I think so. Go. Spike down. Spike down. I have the spike. Caution here. One shower, then the other one. Can you hold my T-base kill though? Turret out. One enemy remaining. Yeah, last guy shower. Okay. Who's got this? Hey, map? Cortex, welcome to the live stream. GG play. Thank you brother, thank you. Sim. अच्छा. मैंने कहा सिम्प की बात हो रही है, अभी भी सिम्प वाली बात चल रही है क्या? नाइस. यार पता नहीं आज क्या हो गया. आज शायद सेकंड नोटिफिकेशन गया नहीं किसी को, शायद से. Placing swarm grenade. पहला नोटिफ तो आया होगा, सेकंड नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, या फिर मैसेज नहीं देखा होगा Turret किसी ने. out. मतलब एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे ABYSSAL में वापस डाल दे, शायद वो कहीं गायब हो गया होगा मैसेज. Outside of the 2 guys, minimum 2. Okay. Right side. Oh yeah. I see one. 2 guys. Wow, nice shot. I see 2 guys. Yeah. They're coming hookah. 1 guy coming hookah. 2 guys coming hookah. Come B. Yeah. Fast. Found them. Yeah, they're rushing. One on site. Could be able already. Yeah. 1 hookah. Oh my god. What Okay. simp is going on? One on site. Player standing. 140. Sure. Simple. Navi versus complexity. CS:GO match. Spike planted. उसके लाइव स्कोर अपडेट पता लग रहा है यहाँ पर. Oops. Reina was backside. You have blades. One enemy remaining. Woo! Nice clutch, bro. Nice clutch. रुको. Get out.
पागल। मंथन मंथन कहाँ है भाई? ओके मंथन आता है, अभी थोड़ी देर में आएगा मंथन भी, प्रॉबेबली आएगा। इसमें लेटेस्ट डोनेटर में मेरे को दीपक को लगाना पड़ेगा 69 रुपीज़। यस कल के 69 रुपीज़ एंड मंथन के भी 900 लगाने पड़ेंगे। पहले किसने दिया? मंथन ने लेटेस्ट दिया था ना, आई थिंक मंथन का लास्ट था, एंड करते वक्त आया था प्रॉबेबली, नॉट श्योर। ऐसे Look at this photograph. Dying. One probably CD. Careful. Bomb grenade out. Placing sentry. Spike planted. Last player standing. Side. Oh, you all. Okay. I'll save. Satchel out. Why is she fucking in heaven? They are planting, just run out. 5-0. Nice, bro. Navi very nice. Navi very good team. What do you say, drone? Ready to stretch your wings? 5-0. Welcome to the live stream, by the way. Manan, sound quality सही है ना? Let me know, हाँ? Because मैंने सच्ची बताऊँ तो ढंग से चेक नहीं किया था. Maybe sound quality का कुछ issue आ रहा है. एक बार चेक करके, वही है ना पहले वाली जैसी है ना? यहाँ पे कुछ change हुआ, मेरे को बताइए. Let me know. I need to know. मेरे पे अल्ट आ जाता ना, मैं मार देता उसको पक्का से. मेरे पे अल्ट नहीं आया, बात ही यही है. किल होल्ड कर ही रहे हैं ना, बस करे रहने दो होल्ड. हम क्या करें अब? हम कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ करना भी नहीं है, सब बराबर है. पता नहीं आज क्या हो गया फिर. हु का फ्लैश? Heavy. हु का डबल फ्लैश? वन डिंक हु का. Coming B. On right side, hookah. Reloading. Nice. One A. Don't die. Just hold. Yeah, they went back. Yeah, they are. 5-0 हो गया भाई. Yeah. साहब 5-0 30 हो गया. seconds left. I need 1 kill यार. Spike planted. Last player standing. Nice shot. Just save. No need to 1v5, dude. Ace 6-0. What? Ace भी ले गया. अबे चल क्या रहा है नावी वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी में? रुक जरा एक बार, नजर मारे जरा. नावी वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी. नावी वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी. कितना स्कोर है? 0-6. 9 किल एक डेथ पे है भाई. बूम बिच. वाओ क्रेजी लोग हैं भाई नावी में. I'll play on A shot, I'll play on A shot, guys. Here. इको राउंड है यार, हम हार क्यों रहे हैं यार? मेरे को अल्टीमेट मारना पड़ेगा. So what, can you recon there? There. I'm ultimating A shot, bro. There's nothing else we can do this round. Fine, we try to push out all together with your utility.
He did not come there when I was speaking, bro. Outside showers. Boomilk A60. कमाल है यार. नावी वाले कुत्ता बना देते हैं. Showers one, I guess. B need help. B need help. B needs help. Side already side. Jet, use your blades. Jet, use your blades, dude. Player standing. Spike Gaya planted. Good try, good try. कमाल यार. क्या करें हम करें तो करें क्या? 9 किल 6 डेथ 6 किल और 9 किल वाले भी हैं नहीं से. वो अल्ट फेल ना होता हो जाता पक्का हो जाता. वो अल्ट फेल ना फेल भी नहीं हुआ मतलब उस टाइम उसने पीक ही नहीं किया. किस्मत ही खराब यार. Woman, can you play A? Placing swarm grenade. Killjoy, why is Killjoy playing with? Oh damn. 1 foot. Wow, nice. क्या ही है यार ये. Player standing. Bot coming back. Recalling my bot. 7-0 हो गया. क्या बात है भाई. Oman 113. Spike planted. Close city. गाने वाने चलाओ क्या बैकग्राउंड में. Match point. काइडो आ रहा है क्या नेक्स्ट. Only as good as their skill. And there we have some beats. मुंबई सर्वर में बस ये लोग टॉक्सिक हो जाते हैं. बात यही है. खेलने का मन तो है मेरा मतलब खेल लूँगा ऐसी कोई बात नहीं है. बस वहाँ टॉक्सिक बहुत हो जाते हैं लोग. बिना वहाँ टॉक्सिक हो जाते हैं. और ये किलजॉय को खेलना नहीं आता. किलजॉय व्हाई आर यू प्लेइंग बकी डूड. आर यू थ्रोइंग. If I rifle B by you and you still ship over there, what's the point? Look at the scoreboard dude. Okay. 2 भी long. आ रहा हूँ. आ जा. Uka. Oh बाप रे. Very low. Enemy remaining. Ace it. Last Uka. Last hooker, yeah. Ace it. क्या ही बात है भाई. He's Bucky 1v4, bro. On side. Back side. Side the tube, side the tube. Player standing. Wow. Go ahead. Call me tech support again. क्या है भाई. क्या गेम क्या है यार ये. क्या सीन क्या है भाई ये. बकी खेल लेते हैं सारे बकी खेल लेते हैं फिर. कमाल है यार कमाल. Insane bro, insane. Can I get a job? Thanks. 8-0 16-0 जाएगा भाई. 16-0 जाएगा. नावी है ही इतनी स्ट्रॉन्ग भाई. न्यूक में उनको चैलेंज करने वाला पागल है कोई अगर करेगा तो. Turret out. Ansh to OP for you. Bomb buddy out. Cover going out. There. Oman cancel. No one outside. Say okay. Okay. और 2 साइड पे हैं भाई. साइड का कॉल ही नहीं.
I'm on B. I'm on B. I'm on B. One TP. Yeah, I'm on B. Okay. Reyna One going B, B. one market. Reyna was here. Mike. One enemy remaining. One more. Reyna. Okay. Market. Roger that. Haven't go B yet. Somewhere here. No. Strike with Reyna. Yep. 30 seconds left. He's on ultimate, by the way. She got no armor. 100 HP. Okay. Yeah, hookah. Nice, Killjoy. Let's go. Good round, guys. Good round. Let's stretch this to overtime. Let's go. I can drop someone if you want. 9-0. Oh my god. Bye. 9-0. वैसे लिक्विड ने भी किया था कल ये 9-0 8-0 वाला सीन काफी ज्यादा स्ट्रांग है भाई नावी का सीन इसमें मैं तो बोल ही रहा हूँ तब से भाई नावी अनबीटेबल है कभी तो न्यूक में हारती नहीं वो नो वन हुक्का मुझे लग रहा है फेक हो रहा है belong rushing How many? KaIdo की पार्टी कहाँ है भाई KaIdo की पार्टी only one I saw one yeah site Smoking belong उसने जंप किया क्या मुझे पता नहीं उसने जंप किया नहीं किया Okay wait hookah they're coming no wait they're going back why they teleported back to A guys two guys Shot done. they're planning it Spike planted. Hello One shot. One you off Last player standing. GGWP Oh GG boys अल्ट मार दिया भाई बेचारे पे अल्ट मार दिया You will not kill my allies. टैप ओके Attackers win. आजा KaIdo आजा फ्लैट 3 दाना यार आज कितना भी चल रहा है ये लो लेट मी चेक और लॉस कितना हुआ वो भी दिख जाएगा ना अभी -21 आ रहा है लॉस हुआ 23 सो अगर हम ये हारते हैं तो डी रैंक हो जाएगा बेसिकली सिट स्कैन सिग्मा AB7 श्राउड इन कॉम्पिटिटिव KaIdo आजा हेलो वैलोरेंट आ रहे हो किड्स रुक जा एक सेकंड रुक जा हाँ बोल वैलोरेंट आ रहे हो क्या नहीं मैं नहीं आ रहा मैं तो फिर उसके मेन अकाउंट पे जाके खेलूंगा मैं अपने CS अच्छा CS नहीं मेरे को चलो KaIdo को बोल देता हूँ मैं इधर आ जाए KaIdo कहाँ है KaIdo DC आ जा KaIdo डेड सेक नहीं होगा या ये हारा और फिर उसके बाद वाला हारा फिर डी रैंक हाँ वो बात तो चलो ठीक है आपकी सही कह रहे हो हेलो अनम्यूट कर लो सर अनम्यूट कर लो नमस्कार तो ये ना वो गंदा सा बच्चा हाँ दैट इज नंबर का मादरचोद दैट इज मी ब्रो आपने कैसे जाना ना मर जाइए बस हमारी सहायता करने की जरूरत ही नहीं आपको कुछ कैसे पहचाना आपने अरे आप किसे ठंडी बदबू आ जाती है यार हराम पने की कुड नॉट एंटर मैच मेकिंग तू गेम में है क्या मैं डीएम में हूँ ना कुछ वार्म अप वगैरह तो कर लूँ मेन आइडिया मेन पे खेल रहा है प्लाट 2 पे ही है तू अभी भी प्लाट 3 नहीं था तू जेट नहीं ले रहा ना वैसे भी तेरी गांड फट गई ना अपडेट देख के जो असली प्यार करते हैं ना वो अपने प्यार को अपडेट के बाद नहीं छोड़ते हाँ तो मेरा प्यार पहले से यही था हेलो वाचिंग हेलो कार्मिक
गाइस तुम्हें मैं तो नोटिफिकेशन leave पे गया था क्या कार्मिक डेडसेक जो अभी आ रहे हैं? ये सेकंड स्ट्रीम का नोटिफिकेशन देख के नहीं आया था, सेकंड स्ट्रीम का भी नोटिफिकेशन आया था। चलो लाइक कर दो जो मेरे जो को अभी आ रहे हैं जल्दी जल्दी से। बहुत बहुत ढीला शुरुआत हुआ है स्ट्रीम का, मैं इतना बता दूं तुमको। 7 पीपल, लेट्स गो। वापस बढ़ने लगा है, वापस बढ़ने लगा है। सिंगापुर खेलना मुंबई खेलना है? मैं मर्जी है, कहीं भी खेलूंगा। मुंबई लगा दे, पहला गेम है। वही मैं सोच रहा हूँ यार, सिंगापुर में थोड़े अजीब से लोग आ रहे हैं। यप आया, देखते हैं। नाइस यार। चलो एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो जा रहा है, यूट्यूब परेशान नहीं कर रहा। वॉइड में भी आ जाए, वॉइड को बुला लूँ। गोल्ड 1 है वो, तो वैसे नहीं खेल पाएगा। कल रात को रैंक अप कराया। अरे मैं बोल नहीं वाला था, अवॉइड। अरे मेरा इन गेम आवाज क्यों नहीं आ रहा लॉबी में? हेलो वो क्या बात है? मेरे को तो तुम्हारा भी आवाज नहीं आ रहा। मैं म्यूट हो गया क्या इन गेम? एक सेकंड। टॉक्सिक वाला सीन हो गया क्या मेरे साथ? हाँ बोल वाइट, क्या बोल रहा है? हाँ तो खेलना सीखना। हाँ तो सीखना फिर, रैंक ज्यादा है तो। कब आएगा यहाँ पर? कब इधर आएगा? कब आएगा रैंक पे फिर ये वाले? कब आएगा? कब होएगा? कब आएगा कब आएगा भाई। ठीक है भाई, बुली क्यों कर रहे हो? बुली कर रहा है यार काइडो, तो उसको शर्म नहीं आ रही? वॉइड खेलते हैं 15 साल बाद, हाँ एक साथ। ये अच्छा था एक्चुअली, अच्छा था। अरे कोई नहीं यार। वॉइड सुन, रात को खेलते हैं। साला देख रहा है, असिस्ट ले रहा है बराबर। रात को खेलते हैं, दूसरी आईडी से आ दूंगा। थोड़ा ऊपर आ यार, कोई दिक्कत नहीं, खेलो। थोड़ा ऊपर आते को प्लेट पहुंचा के रहना। अरे नहीं, वो ऊपर जाऊंगा तो औकात से बाहर हो जाऊंगा तो। अबे यार ओके, आई एम गोना एक्ट लाइक आई डिडंट हियर दैट। देख ले ब्रो, तेरी मर्जी। अगर चलो गो कर देता हूँ। Match ओ Face भाई it. फेस इट, Face it. 10-2 ना भी ओह भाई, जीता एसेंट ही मिल रहा है कल से मेरे को। भाई। मेरे को स्प्लिट कम मिल रहा है इस बार, नया अपडेट के बाद स्प्लिट बहुत कम मिलने लगा है। क्या लॉक मारा है भाई, क्या लॉक मारा है दोनों ने सेम टाइम पे। तो मैं क्या कर सकते हैं? अबे मेरे को इमॉर्टल वाले लोग जो आ रहे हैं, इतने ट्रैश प्लेयर है इमॉर्टल में मेरे साथ जो आते हैं, सामने जो खेलते हैं वो अपने हिसाब से डायमंड के हिसाब से खेलते हैं। इमॉर्टल है गंदा रैंक भाई क्या कोई भी इमॉर्टल पहुंच कैसे जाता बन है। जाते हैं लोग इमॉर्टल? लास्ट एक्ट के एंड में तो भाई कोई भी इमॉर्टल पहुंच जाता है, कोई भी लेजेंड। लोग रास्ते पे बड़े लोग मिलता है ना, वो लोग इमॉर्टल पहुंच गए थे। लोग मजाक में खेल रहे थे शायद, इसी वजह से, आई गेस इसी वजह से। मेरी फ्रेंड लिस्ट में इतने नल्ले लोग पड़े, लास्ट एक्ट में इमॉर्टल पहुंच गए, ये एक्ट में उनका रैंक ही गोल्ड खुला। 5 ड्यूलिस्ट, हाँ 5 ड्यूलिस्ट, मुंबई सर्वर क्रॉनिकल्स। क्या हाल है कार्मिक भाई? क्या हाल है डट सक के मलन के? क्या हाल है? क्या चल रहा है भाई? मलन तो अपना मैच एंजॉय कर रहा है। ऑटोलॉक से क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को? कह रहा आरटीएक्स, कह रहा अबे डॉज कर दिया उसने। क्या ट्रिगर किया? डॉज कर दिया उसने, पागल काइडो भाई। सेंट अच्छा खासा मैप मिल रहा था यार। अबे मैं क्या करूं, मेरे भी पप्पी लोग इसकी देखी। गोल्ड चिढ़ गया हो भाई, ले लिया डीएलएस। ये आरटीएक्स हो गया अपने आप लॉक। ओ बेसिक कहता वो लॉबी में लिखता उसको गाइस, वो कहता देन व्हाई यू गाइस ऑटो लॉक। हां न्यू मैप ओ भाई मिल गया फाइनली। सोलो के साथ खेल रहा था, यही खेला था हमने वो कस्टम में भाई। अब जाके वापस खेल रहा हूं। ओ गोल्ड 1 सिल्वर 3 फक Void, where are you bro? Void, are you in chat bro? मस्त रे, अच्छी बात है यार में, अच्छी बात है, मस्त रहना भी चाहिए। अबे अगा हाँ लिख रहा था भाई, अगा हो गया यार। S3 with plat 2 अगा कौन सा मैच देख रहा है? वो देख रहा है ब्लास्ट सीरीज भाई, वो फटने के साइफर ले रहा है, सामने वाले प्लाट डॉज करेंगे रे मोस्टली, मेरे को लग रहा है। ना भाई, वो अपने अगर वो मूड में होंगे तो नहीं करेंगे, अगर वो मूड में नहीं होंगे तो कर देंगे। भरोसा नहीं भाई, भरोसा नहीं। मूड में तो वो थी यार, छोड़ गई मूड में।
चलिए ये दोनों किल जाए और ये ले लेंगे, उसके बाद कोई जिसको जो क्या लेना स्कोर है। चल रहा है एक बार देखे ब्लास्ट सीरीज का। 100 आता है क्या भाई? क्या स्कोर चल रहा है देखने। 3-11 और मिस कर दिया युगी ने। युगी गुड फ्लैश। अबे आग दिया युगी के बच्चे, छोटे बच्चे। अबे क्या है ये? अबे चूंकि युगी इतना अच्छा खेलता है ना। छोटा है भाई युगी। तो कितना भी छोटा भाई, इतना प्यारा खेलता है ना युगी। कॉलर से पकड़ के उठा दूंगा इसको तो। तो तू भी तुझसे छोटा है यार नहीं भाई। अबे क्या है, डॉज पे डॉज हो जा रहा है यार। अच्छा है ना, गोल्ड आ रहे हैं अपने साथ। फेसिट 3 वैसे वो बात भी सही है भाई। अब फुल्लो तो भी भाई जाना है क्या तेरे को? अब इमॉर्टल में खेल के मजा आने लगा है, पता है सच्ची बताऊं तो। मैं नाचू वगैरह को बुलाने वाला था, कल खेल रहा था बैठकर के साथ, बहुत टाइम पास कर रहे थे। बाइंड फिर से खेलते हैं, चलो बाइंड ही खेल लेते हैं। बाइंड तो अच्छा मैप है भाई। बाइंड इज अच्छा मैप, Cute map रीजनेबल है मैप है। ओ मेरे हो गया 3 ड्यूएल्स खेलो मैच दो। ओके अब हमको सेंटिनल चाहिए। इसका रैंक अगर कम रहेगा ना मैं इसकी मैच दूंगा। देखते हैं लास्ट टाइम कम रहेगा तो नहीं क्या है भाई, मैं तो मूड ही नहीं है मेरा। हां देखा मैं, देखा अभी देखा। चल मूड में मैं, चल मूड में खेल लाइव स्ट्रीम जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो। ये वाला जीत के रहेंगे नो मैटर व्हाट। मत करो अरे यार गोली मार दूंगा घर घुस के। बंदूक नहीं है तेरे पास? बंदूक नहीं है मेरे पास। कार्मिक बजाज ब्लास्ट प्रीमियर। यस ब्लास्ट प्रीमियर तो रेस करती है ब्रो। ब्लास्ट स्मोक ले ले। स्मोक ले ले। मुझसे नहीं आता। मुझसे नहीं आता। मुझसे नहीं आता। मुझे नहीं आता। मुझे भी नहीं, मुझे नहीं आता। कुछ भी ले ले भाई। वो ले ले जो तेरे को खेलना आता है ब्रो ढंग से। ऐसे तू तो रहने ही दे भाई, कुछ भी ले ले वाले। ले ले भाई, रेना जितवा देगी गेम। यस सही बात है। ना रेना जिताएगा। बाद में गोली दोगे, बाद में सर में गोली देंगे अगर अच्छा नहीं खेला तो। कोई गाली नहीं देगा ब्रो, तेरे को टेंशन मत। तू तेरे को कोई गाली नहीं देगा, तू स्मोक ले। भाई उससे लिखा नहीं जा रहा, पहले वो लिखता है टाइमिंग पे स्मोक। अरे भाई पहले वो लिखता भाई बाइंड पे कौन बिना स्मोक के। अरे अटैकिंग साइड आया भाई। सामने आईसीओ ओडिन। अबे सामने ही ओडिन और इजी अच्छा खेलने वाला है। अच्छा मैंने नाम देखा हुआ इनका आईसीओ और ओडिन का। भाई ओडिन वो दिन अपने साथ आया था वाचिंग, याद है जब? अब याद आया ना। हाँ याद आ गया। वो थ्रोवर आया था, क्या नाम था उसका? सामने सब डायमंड है। हाँ याद आ गया। वो तब भी रेना ही खेल रहा था। हेवन मैप था ना अपना हेवन। सामने एक डायमंड है, देखते हैं ना। एक क्रिमिनल अगर नहीं खेलेगा तो सुनेगा। और क्रिमिनल रैंक क्या है ब्रो तुम्हारी लास्ट सीजन की? डायमंड बनने का नहीं है। मैंने देखा नहीं ना इसलिए बोल रहा था। उसको बोलने दे एक बार उसकी क्या रैंक है। गाइस कहां जाने का प्लान है, कुछ सोचा? 11-4। ओहो आई हैव 2k पॉइंट्स। क्या करोगे इतने पॉइंट्स का? भाई स्मोक्स नहीं है यार। ये बना एक करो ना, तेरे फ्लैशेस लगेंगे मेरे को डियाब्लो और जेट स्मोक्स बाय कर। तीनों स्मोक्स बाय कर चाहिए तो बाकी कुछ यूटिलिटी मत बाय कर, स्मोक्स बाय करने पड़ेंगे। सही कह रहा है। अंदर जाने का प्लानिंग बनाओ यार। तू यू हॉल जाइयो जेट। अबे शॉवर से आ रहा हूं। शॉवर से आ रहा हूं। शॉवर एक मारो उसे अंदर घुस के। भाई क्या कर रहा है यार जेट भाई? इतनी देर से देख रहा हूँ। कमाल भाई, क्या बात है यार। डीगल लूंगा। डीगल लेगा? हाँ ये इसने मेरी डीगल ले ली। 3 शॉट। बाय 3 शॉट। जेट भाई क्या हुआ उधर? मेरे एंगल पे नहीं था। अबे यार इतनी देर घुमाया इसको मैंने, इतनी देर घुमाया। साइफर के पास तो माइक नहीं है, माइक आ रहा जा रहा है साइफर के पास। कोई नहीं काइडो, हम दोनों को खेलना पड़ेगा। बेट कर ले इनको यार। अरे मेरा पहला गेम है भाई। ये क्रोमियम ओनी, हाँ ओनी पिक्सल सारे एक साथ खेल रहे हैं ना? वो ही है क्या सामने? नहीं वो नहीं। माय नेम शेफ। इसका मैसेज आया जा रहा है भाई तब से। बंदी है ना मैं डैश के बजाता। मैं वो हुक्का के बाहर वो लगा के बैठ रहा हूँ भाई। शॉर्टी तू डैश मत मारियो। शॉर्टी लगा के बैठ रहा हूँ। कब रीच मत कुछ मत कर। वो आके होल्ड करेगा, स्मोक करेगा। रुक जा, लेट गेम जाएंगे। ए अड़े जेट सर मान नहीं रहे। देखना आगे जाना है ना पीछे जाना है। ओह शॉट। अबे बंद कर दिया। मैं टर्न करो।
ये आ जाओ सिटी ले ले ये कभी भी ए पे कैंप कर रही है वाह। अरे तुम अंदर जाओ ना भाई, इनको राउंड में होल्ड कर रही है। हुका रश गुड ट्राई। अरे इस राउंड में क्यों पैसिव खेल रहे हो भाई, घुसो ना अंदर। रहने दे लव क्यों नहीं करता है? अर्ली मैच मत बोल, अब बाय राउंड के बाद बोलेंगे, अभी नहीं भाई। बच्चे ट्रिगर हो गए ना, प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ मैं कहाँ भाई, मैं कहाँ मारा मारी कर रहा हूँ। ऑफ रह सकती है, ग्लास कैनन आप निकाल सकती है। वो ब्रिमस्टोन को बोलेगी निकालने को। अबे ये किसने ब्रिम को बोलेगी निकालने को। इधर की बॉल तोड़ दो। अरे बॉल तोड़। रेना प्राइम है ना तेरे पे, काइडो है ना तू? हाँ ये रिक्वेस्ट कर। Thank you. मैं वही सोचूं रेना कौन है, काइडो है। कभी खेलते देखा नहीं यार, रेयर है ये मंजर। नाइस बना लो, अब डैश मारते जाओ अंदर बना तेरा। स्पाइक कौन लाएगा? साइफर स्पाइक। अरे शावर आउटसाइड शावर। अरे यूहॉल के अंदर क्यों जा रहे हैं सब? बाहर आओ भाई, बाहर आओ। कल के अंदर हो रहे हैं। प्लांट यहाँ का है। हाँ एक शॉट। One enemy remaining. अननोन शॉट लास्ट। इसमें शॉटगन है भाई। ये लोग शॉटगन ही, उसको वैंडल मत लेने दियो साइपर, उसको वैंडल मत लेने दियो। और वो लो है आराम से, लो है आराम से। 80 टैग आराम से। रिएक्शन टाइम भाई। उसको किल जाएगा, थप्पड़ बहुत गंदा पड़ा था फर्स्ट राउंड, वही को राउंड में 1D घुमा के ड्रॉप दियो। मुझसे मांग ले अगर सही है तो। अरे थैंक यू डियाब्लो मुझसे मांग ले। नहीं मिल गया। क्रिमिनल दे देगा एक्चुअली, क्रिमिनल पे थोड़ा ज्यादा है। क्रिमिनल सॉरी नॉट क्रिमिनल, माय बैड। क्रिमिनल इसको एक ड्रॉप दे दे यार डियाब्लो को। ताक ब्रो, ताक हुक्का पीक आएगा। ऑपर है। हुक्का पीक लेगा ऑपर मोस्टली ऑपर हुक्का पीक लेगा। कर प्री दे दियो ना उसको, प्री दे दियो, फिर खत्म करते हैं। फ्लैश ही कर रहा हूँ मैं, तो ब्लाइंड हो गया सही। कर लॉन्ग ऑपर एज वेल। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। रुक जा थोड़ी देर में तोड़ते हैं साइफर। बढ़िया काइडो उधर वेट करते थोड़ा सा। सीटी ऑफर 2 सीटी। अरे एक कमिट करो ना, मैंने फेक करके रखा है इधर। मैं बाहर भी नहीं निकल सकता, डेड हूं मैं। फ्लैश करता हूं। बैक साइड है। करियो बैक साइड है। बाहर निकल जेट, बाहर निकल जा काके। बी आओ ना बी बना साइफर। बहुत बढ़िया। आजा साइट है मेरे पास, जल्दी जाओ तुम लोग कांड करो। ढूंढती है कातिल आंखें। ये देख इधर ही है भाई। I just bought a Oni claw on my Smurf account because I'm cool like that. रियान भाई कोई सर्टिफिकेट हो आप? अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी ले लो कूल होने का। मुझे लगा साइड क्लियर है। कूल डूड रियान ब्रो, क्लियर होगा। बढ़िया यार ओनी क्लो। आई रियली लाइक ओनी। गुड चॉइस ब्रदर, गुड चॉइस। मार करो। ये रहा नीचे मार्क करवा के आगे कहाँ जा रहा है ब्रो? चलो काइडो सुन मेरी बात। हम ए लॉन्ग चलते हैं शावर्स में। ए से शावर से चल, और पहला मेरे को निकालने दियो डैश। मैं आगे जाऊंगा ग्रीन बॉक्सेस पे, तू कभी क्लियर करियो और साइड देखियो, या फिर मैं ए शॉट से अल्ट मार दूं। क्या कहता है? वी कैन डू बोथ। आई कैन अल्टीमेट ए शॉट एंड आई कैन गो शावर्स। तो भाई डिफेंडिंग साइड अपना है पूरा। मैं बोलना भूल गया। काइडो सुन, हम दोनों शावर्स चलते हैं, या फिर मैं ए शॉट से अल्टीमेट मार के पहले निकल लूं। जा ए शॉट जा। मैं अल्टीमेट मार रहा हूं ए शॉट से। हां वॉल तोड़ क्रिमिनल, वॉल तोड़। बाकी लोग वॉल तोड़ो, मैं अल्टीमेट मार रहा हूं। ठीक है अल्टीमेटिंग। भाई अबे इधर वॉल बनाई हुई है। ए वहीं है राइट साइड शावर्स पे। वहीं है काइडो। हां बढ़िया। बॉम्ब ले ले साइपर। I have retrieved the spike. अरे 80 टैग 7-1। You all.
One enemy remaining. आराम से नाइस। Anonymous, welcome to the live stream. Hello Anonymous. Welcome brother. कैसे हो आडो भाई? How you doing? ये क्या? अरे भाई बाहर क्यों निकल रहा है? ऑब्वियस फेक है। क्या कह रहा है रे साइफर? एंटी जेड देख अपना, जेड देख कितने किल पे बैठा है। एंटी अरे कोई बात नहीं भाई, सॉरी क्यों बोल रहा है? कुछ अच्छी थी। जेट ब्रो आगे जा यार, जेट तू आगे जा, डुएलिस्ट का काम आगे जाना आगे ब्रो। मैं हूं यार, सबसे आगे मैं हूं, सबसे पहला मर ही मैं रहा हूं। आगे जा भाई, तू आगे जा रहा है जेट, फ्रैगिंग नहीं कर पा रहा भाई मैं कह रहा हूं फ्रैग करने का ट्राई कर, फोकस कर फ्रैग करने पे, ठीक है? और शॉट सिर्फ बात तेरे फ्रैग्स की जरूरत है अभी, सही में तेरे फ्रैग्स की जरूरत है। शॉट आओ तुम लोग, शॉट आओ सारे शॉट आओ, सिर्फ बॉल तोड़ो, सही है भाई। केजे को मार देता मैं, चुतिया भाई। ठीक है बॉल तोड़ते हैं, आजा बॉल तोड़ते हैं ब्रो। हैंड की लॉडीज जेट सामने ऑफ। लेट्स गो। है नहीं यहां पर बॉल, बनाता जा, अंदर जा। शावर्स के बाद बड़े शावर्स के बाद भी एक सेज शैडो शावर्स के बार बना। मैं गोल्ड कर रहा हूं। ऑपर बैकस्टैप आ सकता है, बैकस्टैप देखो ना कोई। किल जो हेल्थ मारने वाली है। मैं हाइड करके बैठा है। ढूंढती है कातिल आंख किसका निशान। एक हेवन आया शायद, हेवन वन प्रोबेबली गाइस, नॉट श्योर। नाइस शॉट। एक शॉट, दो ही शॉट। ओके पीछे से काइडो। One enemy remaining. नाइस बॉयज, बोथ हार्ड। काइडो तेरे पे कौन सी स्किन है अभी? मैं प्राइम ही यूज करता हूं भाई। दैट वेट तो मेरे को पता था ये मांगेगा, मेरे को पता था। केमिस्ट्री अवार्ड से अल्ट कर सकते हो और बी मिल जाएगा साइड। हां चल बी। जेट अरे यार जेट को ऑफ निकाल के डैश करना देखो, ब्लेड लेके डैश कर दे, लेकिन नहीं इतना ऑफ नहीं निकाली ना, अच्छा डैश करना देखो जटा का। हां आजा। ब्रेम ब्रिज अल्ट मार दियो, पहले कंट्रोल लेते हैं ना। ओ नहीं उन पे ऑपर नहीं उन पे ऑपर नहीं है। सारे वॉक करके आगे चलो, वॉक कर। यस ब्रेम यार अल्ट मार दे। नहीं चाहिए अल्ट, छोड़ो इको डाल। ओके चलो नाइस। लॉन्ग डेड कभी वहां एल्बो चले Reloading. Still मैं inside. शब्द देख रहा हूं। सीटी होना चाहिए। एल्बो क्लियर One enemy remaining. हुक्का आएगा प्रोबेबली। हुक्का है सीटी, आई एम होल्डिंग सीटी। हम जंप पिकिंग हुक्का, आई डोंट सी। बैक स्टेप थी, सही है बैक स्टेप नहीं है वो, अभी हुक्का नहीं है ब्रदर। दिखा उसको दिखा। हां डीप लॉन्ग है, अगर उस पे गन रहेगी तो सेव करेगी। एल्डर फ्लेम मिली गाइस, यही तो लेनी है मेरे को यार, एल्डर फ्लेम वैंडल। आजा साइफर मेरे साथ आ गया। वॉक मत कर यार, जल्दी आ। किधर है वो? प्रोबेबली स्पॉन। ए शावर से दिखा लास्ट सेकंड दिखा। ये ले ब्रीच, ये ले एंजॉय। ताक टू यू ब्रो, ताक ब्रो। शॉट पे ऑफ होगी हां बढ़िया गाइस, अग्रेसिव खेलते हैं ये लोग, अग्रेसिव हैंडल नहीं कर पा रहे। हां ये चलते हैं ओके। अरे मैंने तेरे को म्यूट किया था, मैंने जेट को म्यूट किया हुआ है तब से। वो पुश कर रहा है पागल काइडो, मेरे को लगा मैंने तेरे को म्यूट किया है। चल जेट और साइफर आगे बीच लॉन्ग जाओ। आई एम लर्किंग। रेना वहां लॉन्ग पे आई थिंक सो। ऑपर है पैसे कैसे आ गए इनको? नो आर्मर ऑपर। फुल रोटेशन है, इसे फुल रोटेशन गया, वॉक करके आओ बस। लिसन टू मी, ट्रस्ट मी है। ए जाओ सही कह रहा है। पूरा एक खाली हो गया था यार। अब वो साइड पे डियाब्लो को कवर दे, प्लांट बना दे। आ जाओ क्या ए पे बोलो ना, प्लांट बना अब खाली चल। अब आओ अंदर जा। शावर क्लियर करके अंदर कैसे जाऊं भाई? ये देख, तोड़ दे ट्रस्ट। वन मोर सीरी। आजा प्लांट। वन हेवन वन सीरी। छोड़ दे हेवन। बस प्लांट दे डियाब्लो। बहुत अच्छा, नाइस प्लांट।
Still 11. One enemy remaining. अरे बहुत बढ़िया बॉय बहुत सही. Very nice. You're not being shot at. You're doing something wrong. ऐसा है क्या ब्रीच? क्या बोलते हैं लड़कर गेट राइट बोलते. नहीं प्लीज ब्रो वापस ले लो ये सब. कैडो रिक्वेस्ट मांग जल्दी से. देना यार वैंडल देना मैंने तुम लोग को पहले बोला था देना. What just happened guys? I don't think he realizes. मैंने उसकी सिंगुलैरिटी ले ली. Punch in. Okay. ऐसे घूर रहा है भी खा लूंगा. I'll apologize. You apologize first. Offer. शॉटगन है यार उसका. जेट और क्या कहते हैं जेट उसका में है वो गन लेगी मेरी. माइक स्मोक में मत जाइयो. अरे नहीं स्मोक में नहीं है स्मोक. काटो माइक. Satchel out. हुका. Satchel out. वो दो हुका. एक और डियाब्लो. ओ शॉटगन है यार. एक हुक्का एक ए साइड क्लियर करने की कोशिश कर रहा था. ये अरे तू भी इधर भागता है. अबे क्या कर रहा है यार सुन नहीं रहा तू. आएगा तेरे पास आएगा. बहुत लास्ट में उधर टीपी लास्ट में टीपी लिया लास्ट में उधर ही है. होगा Blockade trigger. मार्क कर दूं इसके लिए. जंप डाउन कर गया. अपने साइफर के रीड के ऊपर डिपेंड करता है. परफेक्ट रे खेल गया भाई. Oh my god, let's go साइफर. कैमरा है अभी. मत ले अभी टाइम वेस्ट कर. अबे मत ले. अरे कोई ना नहीं कर रहा बस ऐसे ही करते रहे टाइम वेस्ट. ओ अरे आई गेस हो जाएगा. कोई ना. नाइस ट्राई. काइडो को बोल उसका चैनल भी है एक याद है क्या? ओह 0078. काइडो को बोल उसका चैनल भी है क्या देखा. नहीं ब्रो भूल गया मैं. मेरा चैनल विनल कुछ नहीं है. फ्रोजन लाइक कर दे जल्दी से लाइक कर दे फ्रोजन. अरे मैं भिखारी है ब्रदर. शॉटगन निकाल रहा है तू भी. है नहीं. अरे रुक जा हां तू रिक्वेस्ट कर. दे उसका क्या करेगा फिर. बेच दिया ना मैंने उसको. सेल बैक किया. नहीं दे रहा. हां ये ले. मेरे में पैसे है फिर भी भीख मांगूंगा मैं. वो बात भी सही है. लेट्स गो. कहां जाना है? फ्लैश देता हूं. ये करते हैं चलो. इनिशियल प्लान जो ना वॉल बनेगी. वॉल तोड़ के जेट को डैश करना है. Don't even dare to come one by one to me. Guys, क्या करना है अब? जॉब छोड़ दूं? क्या थ्रो किया है भाई इन लोगों ने. मैं जॉब छोड़ रहा हूँ काइडो. क्या? मैं जॉब छोड़ रहा हूँ. अरे भाई ऐसा इतना बड़ा डिसीजन क्यों हो रहा है. मैं जॉब छोड़ दिया भाई. अपनी सारी. बेटा कैसे मेरा है. ये देख काइडो. लुक बिहाइंड. कितना गंदा प्लेयर है भाई. अबे यार देगा ही नहीं है तेरे को. क्या है अभी थ्रो मत प्लीज. ये देख काइडो. अभी मैं नाइफ कर देता तेरे को अभी. ये तो क्लिप है भाई. क्लिप है. बना लिया ना तूने क्लिप. I want their life, not yours. बिना स्मोक के भाई 5 स्कोर करके रखा है हम लोगों ने. मैं स्टार लगा के भी पूरा वर्ड लिख ही दिया काइडो. मैं पागल हूँ भाई. वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम गाइस. आफ्टर पीस. Let's start this party. शॉटगन लेके घर पे जा. और जेट वहीं होगी ना. नहीं है. होनी चाहिए भाई. अंडर हुक का होगा. अंडर हुक का कह रहा. ऑक्टागन क्लियर करो पूरा. कर खोल. That's what he said. नाइस. हाइड्रो.
सीटी यही मार रहा है साला हर बार मेरे को। नाइस नाइस फिनिक्स बोलता है ना नाइस नाइस नाइस। विजन जो याद है देखो जो सामने ओडिन आया था। अरे बीच चलो वापस, एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। मैं अल्टी मार रहा हूं बी पे, मैं अल्टी मार रहा हूं गाइस, मेरा अल्टी है, मैंने एक भी बार नहीं मारा बी पे यार, हट जा। अब मैं मेरे को अंदर से चुल मच रही है, क्या मच रही है? चुल। अब मेरे को मारने का है क्या? अल्टी आ जाओ। हमको चाहिए एक बंदी। I'm just so funny guys, कैसे कंट्रोल करूं मैं इतना फनी। चलो भी साली कपिल शर्मा जाना तू। वो भाई खाई पटका खाई तेरा पटका राइट कर। इधर लेफ्ट में भी एक है। तेरा बूमट कितना गंदा है भाई। एक और है। बढ़िया 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 भाई क्या गंदा बूमट है भाई तेरा। ऐसे क्लियर नहीं किया, मेरी गलती थोड़ी है। सीरियसली क्रिमिनल। भाई तेरा बूमट इतना गंदा था ना। बेचारा नावी जीत गई। न्यूक नेक्स्ट इन्फर्नो 68 से जीत गई। नाइस डिजर्विंग था भाई। अबे वो इन्फर्नो और न्यूक क्यों कर रहे हैं वो लोग? इन्फर्नो इतना स्ट्रांग नहीं है उनका। क्या नावी वालों का इन्फर्नो इतना स्ट्रांग नहीं है। नावी इन्फर्नो खेल रहा है। नावी का पिक है भाई, मैंने लेजिट कभी नहीं सुना ये नावी इन्फर्नो पिक कर है। नावी वर्सेस एस्ट्रालिस में भी एस्ट्रालिस इन्फर्नो पिक करता था इनके अगेंस्ट। इन लोगों को D2 अच्छा लगता है, न्यूक अच्छा लगता है, ट्रेन अच्छा लगता है भाई बहुत। मिराज तो इनका D2 बहुत अच्छा है। बहुत D2 खेलते हैं ये, रगड़ देते हैं मैंने सुना भाई। हाँ ये बहुत D2 खेलते हैं। बहुत D2 खेलते हैं गाइस ये तो। लिक्विड मिराज बहुत खेलती है। लिक्विड हाँ स्टूई वगैरह राइट। हाँ I'll with the flash. I think one B long, not sure. A shot. B clear है पूरा। Flanking them. अबे यार गोलियां खत्म हो गई मैच। राइट। Oh lol. हाँ बोट टेलीपोर्ट। बुमट एक ही साइड है। साइड लास्ट हुक्का के अंदर है। हुक्का के अंदर बाहर आ रही है। हेलो हाँ बोल। क्या खेल रहे हैं? वैलो। रेटेड ब्रदर। अभी क्या स्कोर चल रहा है अपना? 8-5। मैं तो प्लैट 2। मैं भी प्लैट 2। ठीक है नेक्स्ट आ जा। स्ट्रीम पे आ जा। क्या स्कोर था? स्ट्रीम पे आ जान तब तक। 8-2। स्ट्रीम पे आ जा। 8-5 सॉरी 8-5। कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ वही चल रहा है अभी स्ट्रीम पे स्कोर बता रहे हैं लोग भाई। लास्ट 2 ओवर ओवरपास इसके बाद है G2 वर्सेस एस्ट्रालिस। तो वो तो देखना ही पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। तो सब कुछ बंद करो वो देखो। एग्जैक्टली ब्रो फैक्ट। KaIdo आगे जा रहा है नहीं ना? अच्छा क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है। ए शॉट पे एक बंदा है क्रिमिनल। ए हुक्का। हाँ वही है। आने दो साइफर उनको आने दो। ए आउटसाइड उसका स्पाइक फेंका है। हाँ मैं वहाँ नेड मारूँ KaIdo जब तेरे पे आएंगे तो। अभी नहीं पहले बूमट अभी मत। पहले बूमट फेंकना बाद में नेड। हल्का सा KaIdo इसको बताना कल का स्टोरी। भाई कल अंशु शॉट देख क्या खेल रहा था भाई। बीच ए शॉट देख। बी लॉन्ग केयर गाइस, बी लॉन्ग केयर। अबे शावर से बाहर आ गई भाई। क्या पागल है क्या थोड़ा सा डियाब्लो? और कौन है मेरे साथ खेल रहे हो? शॉट गन है बच्चा। एक और है वहाँ शॉट में। अबे क्या चल रहा है KaIdo? हाँ भाई बहुत लॉल KaIdo जरा हल्का सा स्टोरी। भाई हाँ कल अंशु कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहा था भाई। लेजिट हो जाता है सालों में एक बार। अपना रेजोल्यूशन चेंज किया और डुएलिस्ट लिया। मैच एमवीपी। कल अंशु एक्चुअली अच्छा खेला मालूम है क्या? मजाक नहीं कर रहा मैं। बोबा चला के अनरेटेड में साथ में सिल्वर थे सारे तो नहीं फर्क पड़ा। हाँ वो तो ऑब्वियस बात है। KaIdo अपग्रेड कर रहा है क्या? ना तो भी 1v3 1v4 निकाले थे भाई। रेना के साथ अपग्रेड नहीं किया तो भी चल जाता है। रेना ही खेलूंगा भाई मैं। अब मैं सपोर्ट प्लेयर नहीं भाई।
फक सपोर्ट संपोर्ट 5 डुएलिस्ट खेलूंगा अब मैं भैया जी फुल ऑन संपोर्ट। अभी नहीं प्लाट में नहीं खेलना वो डुएलिस्ट, रुक जा। मैं खेलूंगा डुएलिस्ट। अबे थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। ठीक है तो खेल, फिर मैं दूसरा आईडी से आता हूं। मेरे में नहीं है यार, मेरा तो मेरा ना। ये शॉट दो। क्या हो गया? करो तेरा मैंने ना 3 ये शॉट। ओह माय गॉड भाई, तीनों ये शॉट ही थे। काइडो स्लो हो जा। आई नहीं आगे तो तेरे 2 लोग हैं। मुझको पता था क्या उधर परफेक्ट रीड था मेरा। हां सही कह रहे हो। तीनों ये शॉट थे, तीनों ये शॉट थे। साइफर स्लो करना। तेरा राउंड है साइफर पूरा। कैमरा अच्छी जगह लगाया इसने। कैमरा मैन चिंदी चोर के साथ। जेट रोटेट क्यों कर रहा है अभी? ए शॉट। 2 ही शॉट आ जा साइफर। हां दोनों ही शॉट। 1 HP 1 अबे क्या शॉट लो प्लांटिंग। अबे लो 1 HP जेट 1 HP। रीलोड मार ले, अपना बंदा आ रहा है। एक यू हॉल 1। साइफर ने कैमरा क्यों नहीं निकाला अपना? साइफर स्लो, तेरा गेम है ब्रदर। One enemy remaining. लास्ट भी यहीं लास्ट लो आराम से लो है लास्ट। शॉट लेफ्ट साइड होगा। साइफर तेरे को स्पैम देना, काउंटर स्पैम। नाइस लेट्स गो। गुड राउंड भाई, गुड राउंड। वैंडल ले लो जा। ये शॉट पड़ी और एक कभी में पड़ी है वैंडल। हां चल ये भी ठीक है। कभी में भी पड़ी है वैंडल, कभी में वो पड़ी। हां The enemy only looks composed. Careful the drop. Your heart still different story. ब्रीच एक बार ताक बोल दे भाई। नो दे देना ब्रो। अरे पैसे, अरे क्रिमिनल उसको ड्रॉप दे यार। ऐसे ना करो अपने टीममेट्स के साथ। केजेड बोल रहा है क्या? नाइस ब्रो। Get out of my way. आउटसाइड हुक्का 2 गाइस। 1 अरे हक दिया भाई मैं पूरा हक दिया। 1 ए शॉट इको राउंड बॉयज। बड़ा बेशरम। याद है कमिंग रशिंग नाउ। ए हुक्का रश्ड। अबे खत्म है ये रेना, खत्म है इनके भी। बूम बिच बढ़िया खेला आज। उसने एक एस लिया। हां बताया मेरे को उसने एस लिया। 2 गाइस है लो। हां एक 50 टारगेट, एक 80 टारगेट और एक 105 टारगेट। क्या बूमेज ने बताया था कि उसने एस लिया? अबे गवार आदमी से 8 पे आके एक बंदा ग्रे में अपना Last player standing. डियाब्लो टट्टी खेल गया यार। कोई ना गलती उसकी नहीं थी। क्या कर रोटेट मार गए क्या 1v5 में ये लोग? 1v5 में रोटेशन दिया भाई बंदों ने भाई। है ना वही ना। इतनी बुरी चलता है भाई, कॉपी है भाई, ट्राई ही करेंगे ना। इतनी बुरी जेट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। व्हाट क्लोज है भाई, तेरे को देख रहा है वो शायद से। मैं मारूं चलती हूं बता। 4 मार दे, 5वां मत मारियो। अबे गया तू, खत्म। सामने वाली जेट इतनी ट्रैश है ब्रो। सावेरी पीक मार गया। ये कॉर्नर नहीं चेक कर रहा। ये लेफ्ट साइड है। अरे उसको मार दिया तूने। नाइस है। इसको मार दिया किल को बेचारे ने। गलती उसकी बंदी की थी, उसे छोड़ के चली गई बेचारा काइडो। व्हाट मेरे को एक किल चाहिए यार, अल्टी आ जाएगा। शुड आई प्ले बकी? हां चाहिए किसी को ड्रॉप। मेरा ना इको है। स्क्रीन टाइम आउट देना था कोई बात पे मैं। नहीं टाइम आउट बात करी उम्र है क्या बंदी की बात करने की? भाई 2 मैच खेला, बोथ टाइम हैकर आ गए। और खेलो ब्रिज मत ब्रिज में आगे जा रहा हूं मैं, योलो कर रहा हूं। कह रहा व्हाट डूइंग डैडी, ही इज गिविंग यू टाइम आउट ब्रो। अबे 5v4 खेल रहा है। नाइस किल दो। हक दिया ब्रो। मेरा अल्ट आ गया भाई। होल्डिंग है शायद। दोनों ए शॉट, तीनों ए। ठीक है आ रहा हूं। मेरे पे रीटेक के लिए अल्ट है। हां टेंशन ना लो। काइडो आवाज आ रही है तेरे घर से, वहां से। लो बा वॉच दिस। 3 डाल दिए भाई। अरे उसको पता था मैं उधर हूं। साइफर रुक जा। जिंदा रहा भाई मेरे। Spike planted. प्लांटर को मारने की सोचता था। वहां पास आए तो बता। दिखा दे यार, इस खुदा का वास्ता सैचल दिखा Last दे। player standing. देख ले खुदा का वास्ता। Here comes the what में? Here comes the what? ए थ्रो मत करो भाई, खत्म करो।
बिना उन पे अपने पे डिफेंडिंग साइड एडवांटेज है। जेट ऑफ निकाल रहा है क्या? नहीं ना, अपन 4v5 में भाई। बोल तो डाल कहता फायर इन योर होल। एशियन आवाज में व्हाट्स दिस इका बोल दिया व्हाट्स दिस ऐसे बोलता है भाई वो। कर देते हैं उनकी रिपोर्ट जेट को भाई, सेज को आई मीन नहीं सैबोटाजिंग लीविंग। भाई क्या ट्रैप लगा रहा था इधर। पीछे आ जा आगे मत जा ज़्यादा। ये लो उनको ए पे आने को मजबूर करना जरा। अरे खत्म ही कर दिया तुम। अरे भाई ठीक है। क्या बोल रहा था? फायर इन योर व्हाट हो गया? नहीं लास्ट राउंड रह गया। तक रेना डेव बोल रहा है। इनसेन फ्लिक्स। वो क्लिप दिखाऊंगा भाई अभी जो 4K मारा है ना वाचिंग। हाँ जो 4K मारा है ना अभी फुल बाय राउंड था क्या? Put that shit in your 2 viewer montage. What? इधर डियाब्लो मेरी बेबी डाले जरा। Okay. इधर ब्लास्ट पैक डाल। फ्लैश नहीं ब्लास्ट पैक ब्रो, अभी उनको पता है कुछ करने वाले हैं। बस अभी होल्ड कर, उधर होल्ड कर। ये शॉट दो है। अरे ऑपर कैंपर साला। मेरे को देख, मैं फुल फ्लैंक मार रहा हूँ भाई इनको, फुल फ्लैंक। अबे ये खाली हो गया क्या? रिपेयर खाएगा सही जेट। हक दिया भाई जेट अपना। जेट है क्या एक्सपेक्ट करूं इससे? अरे डैश तो सही से मारो भाई। क्या डांस कर रहा है भाई तू? वैलोरेंट अच्छी गेम है, बुरी नहीं है वैलोरेंट। Last player standing. कितने किल चाहिए गाइस? थ्रो कर रहे हैं भाई। तीनों तीन चल। सुन एक बंदा लेट गेम शॉट आएगा। अभी गए भाई। क्या ट्राई हार्ड कर रहे हो भाई? रियली ठीक है, सारे इधर है ना। क्या बच्चोदियां कर रही है? वॉक चुप कर दो, चुप। भी आया एक जस्ट। Spike planted. हाय। Oh shot. अबे वो अंदर ही था अभी तक। Oh my god. कसम। They're so secure. रेना बेटर या फैक्ट्स। इजी क्लच तो कर देता मैं, लेकिन वो कैंप कर गई यार। कैंप का नहीं पता भाई फेट किया उसने इतना गंदा अपने टीममेट को भाई। मार दिया भाई, बिना बात मरवा दिया उसने सही में। सेक्सी शॉट, थैंक यू, धन्यवाद। ब्लास्ट पैक डाल इधर और बिना डरे जाके लेफ्ट साइड वाले लाइक कर दो गाइस, जल्दी से लाइक्स बढ़ाओ यार। मार के आजा ब्रिज जा भरोसा रख। इधर ब्लास्ट डाल, इधर फ्लैश डाल लेफ्ट साइड पे। इधर ब्लास्ट डाल, इधर फ्लैश डाल, जाके मार। अरे आना बीच क्या कर रहा है भाई? ओवर बी शॉट काइडो, बस भाई इतना रेज नहीं करते। ये भाई टिल्ट कर रहा है भाई। एक और राइट साइड है और ऑपर ए लॉन्ग। हां बी लॉन्ग, ऑपर बी लॉन्ग और एक ए शॉट बैक साइड। ए शॉट साइड ड्रॉप। बम ड्रॉप। साइफर तेरा गेम में अगर वो आता है तो। साइफर दे इधर। हां इधर आ रहा है। अल्टी मार दे डियाब्लो, डिनाई कर दे। पीछे जा रही है राइट साइड। बी कर सब वेस्ट हो गया। साइफर तेरा गेम है। बी निकल। साइफर है वहां पर, मत निकल। जा निकल, संभालूंगा मैं, ट्रस्ट मी। ए शॉट मत निकल। I take my words back. Please don't take your words back. काइडो भी ear rape कर रहा है। वही ना, चिल कर थोड़ा सा। ए नब्या अबे अभी एयर रेप चालू करूंगा। भाई Oh my god. I didn't mean it. नब्या क्या करूं मैं इस बंदे का? नहीं I didn't mean it नब्या। साइफर क्या बात है? अभी आ गए। ऑन कर रेज ऑन कर। हां साइट ऑन साइड। ऑफ ले ले, चाहिए। रेना बेटर रिपोर्टेड। एक वैंडल दे। ऑफ का ये ले यार। अरे मेरे को दे। चला रहा हूं मैं, निकल। चल ठीक है यार, तू चला रहा तो मान लेता हूं कि मैं अच्छा खेलता हूं। 3 फ्लैशेस स्टिल बॉटम फ्रैग। वाओ भाई, पैसा नहीं है भाई ड्रॉप पे। वो एक चीज है पूरी दुनिया में जो मैं तेरे लिए नहीं कर सकता हूं, वो मैं तेरे को ड्रॉप नहीं दे सकता हूं। अब तू ड्रॉप मांग रहा है। ओके काइडो फुल हाई क्वालिटी। तेरे लिए मैं दुनिया में कुछ भी कर लूं। अरे आई नो काइडो,
काइडो इतना हाई क्वालिटी माइक यूज कर रहा है। अब भाई फुल हाई क्वालिटी भाई। अरे उसको ड्रॉप दे क्रिमिनल। कोई है ही नहीं इधर। बी पूरा क्लियर है, ये जाओ, एक का गेम है हार्ड। होल्डिंग है शॉवर। Stabbing their mother in the back. Stabbing their mother in the back. Hold up, hold up. Planting, planting. 140 टैग केजे 140 टैग आराम से केजे 1 एचपी लास्ट 1 एचपी 1 एचपी 1 एचपी। अरे अरे मैं इतना अच्छा खेलता हूँ गाइस, मैं कितना अच्छा खेलता हूँ यार, आई एम गॉड। अंशु आजा आजा अंशु आजा अंशु राय। अबे दिखा दे तुमको, पैन सीधी कर दूंगा अभी, तुम देखो। कौन सा डुएल है ना? क्या करेगा? देखो अभी तुमको पता चलेगा। ये रैंक अप गेम है मेरा। हिस्ट्री। अबे मेन से खेलेगा काइडो? अबे नहीं, देवशिल गोल्ड 1 है, गवार आदमी, हम फ्लैट 2 है। फ्लैट का तो फ्लैट आईडी नहीं है भाई। हाँ तो मत खेलो फिर आप। मेरा रैंक अप गेम है। हाँ मेरा भी रैंक अप गेम है आई गेस। नहीं नहीं मेरे दो गेम पूछा किसी ने। तेरा लंच रैंक अप गेम नहीं है, तेरे और 3 जीतने लाइन पे रैंक अप। हम शायद कस्टम खेल सकते हैं। वेलफोनस वगैरह। क्या? वेलफोनस वगैरह कस्टम खेल रहे हैं तो वो लोग खेलना है क्या? 4 5 लोग हैं। आई एम आस्किंग। हां रुक जाओ। हां रॉजर की आईडी साथ है, गोल्ड 3 से हो जाएगा। गोल्ड 3 से हो ही जाएगा। लेट्स सी स्मर्फ की आईडी मैं सीधा रिक्वेस्ट ज्वाइन कर रहा। मैंने पार्टी ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव रियान आजा प्लाट 2 है ना स्मर्फ। तेरी स्मर्फ अगर आईडी है तो आ जा इधर। गोल्ड 3 से आजा गोल्ड 3 से। रियान भी आ रहा है। प्लाट मेरी इसमें हाँ प्लाट 3 जाने वाली है। रॉजर चिल्लाएगा लेकिन ठीक। उस बिना बताए मत खेलेगा तू अंशु। बिना बताए मत खेल। वो वाली आईडी से नहीं वो तो काइडो माइक थोड़ा दूर कर यार थोड़ा। या फिर नहीं होगा मतलब रॉजर की आईडी ही। रॉजर की आईडी से बिना बताए मत खेलियो, उसका मैं तेरे को पहले बता दूं। दोस्तियां खत्म हो जाती हैं ऐसे। नहीं छोड़ चल ठीक है फिर एंजॉय कर रियान भाई, क्या बोलूं मैं। सोलो डेथ मैच क्यों खेल रहा है? पागल हो गया क्या? सोलो क्या कर रहा है सर? उसकी मर्जी भाई। अभी 4 कॉम्प खेल के आया बंदा। तो क्या हो गया भाई? इतना का प्रॉब्लम है तेरे को हर एक इंसान से? अरे वो कल वाली जो आईडी थी वो उससे आ जा। रुक जा उससे हो जाएगा। रुक जा थोड़ा माइक लाउड नहीं उसमें सिल्वर रैंक होने वाला है मोस्टली मेरे को लग रहा है। थोड़ा माइक लाउड नहीं लग रहा क्या उसमें? लेकिन रैंक नहीं खुला तो उससे आ सकता। रुक यार थोड़ा माइक एडजस्ट कर मेरे पे आईडी है तेरे पे आईडी। आजा फिर आजा, मर्जी है तेरी, आजा कल खेलते ठीक है। फर्जी वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। हेलो स्वागत है फर्जी भैया आपका। कितनी आइडिया पड़ी है भाई मेरे पे। अच्छा ये लोग कॉम्प पे खेल रहे हैं, देन इट्स ओके। आई थॉट कि कस्टम खेल रहे हैं। ओके मेक सेंस। यार आज सुबह सोलो के साथ खेला, मजा ही आ गया यार। मस्त स्ट्रीम थी गाइस वो, लेकिन बहुत अच्छे क्लिप्स निकाले मैंने रेस के काफी अच्छे क्लिप्स निकाले। जितना भी हम फन कर रहे थे लेकिन क्लिप्स बहुत अच्छे निकले, बहुत अच्छे क्लिप्स निकले इसमें। 3 इधर अच्छा क्लिप देख, अच्छा क्लिप अभी वाला क्लिप। हां दिखा रुक मैं डिस्कॉर्ड पे एक बार स्क्रीन शेयर वेंचर कर देता हूं। विंडो कैप्चर में इतना थोड़ा सिंपल था लेकिन वो लोग एक एक करके आए मालूम है। लाइव जाओ और पॉज कर दिया 1 मिनट। इस पे क्या खुलेगा आईडी? मतलब क्या खुलेगा पता है? क्या खुलेगा? तू खेलेगा उस पर डिपेंड नहीं करता है। कितना बाकी था याद है कुछ? 2 और बाकी है, नहीं 3 और बाकी है सर। हां तो काइडो सर आप लाइव जाओ एक बार डीसी में जल्दी से। हां जा रहे हैं। हां अब 1 मिनट पॉज करके रख। लेट मी जस्ट डू दैट। CS:GO 1 Discord. Yes guys you can see it right? Yes कर दे मेरे पे पता है आईडिया। एक सेकंड रुकियो ये वाला मुझे देखना है यार, ऐसा क्या हुआ था? फुल बाय में लोग एक करके मेरे मुंह पे आए। Guys can we get some plus rep? OMG रियान पराग here। रियान भाई गॉड। ओनी क्लॉ ले लिया स्मर्फ पे यार। मेरे को एल्डर फ्लेम वैंडल लेनी है भाई, आ जाए एक बार प्लीज, आ जाए भाई। ब्लेड कौन है अपने साथ? ब्लेड खेलता है क्या? सिल्वर 1 भाई नहीं यार, सिल्वर 1 क्यों है मेरे साथ? ये मैंने शायद सिल्वर वाले डेज में रखा हुआ था। गॉड प्लस रैप है ना, आई नो। अरे रात के टाइम पास पता है, रात में खेलने इन लोगों के साथ खेलने का मजा आता है। रात से टाइम पास कर दे बैठ, कल रात के तरह टाइम पास किया ना हमने बैठ। कल मैं सिंगापुर सर्वर में खेला भाई, मजा आ गया। क्या अंशु आ रहा है क्या तू? 1 मिनट ऐड कर काइडो। हां ऐड कर APE। हमें मेरे पे ऐड कर ले तू करना यार। APE स्पेस KA1DO #YEET।
ये ठीक है ना? हाँ बढ़िया। इनवाइट इनवाइट कर दे उसको जरा काइडो। पार्टी ओपन करिए, पार्टी ओपन करिए। अच्छा ऐसे आ नहीं पा रहा, ये ले ओपन कर दिया मैंने, आजा। कर ज्वाइन कर पार्टी। ग्रुप करते। मेरे को मैसेज कौन किया स्ट्रीम पे? लूसीफर हेमलो। काइडो व्हाट यू सेइंग ब्रो? व्हाट यू सेइंग ब्रो? वैसे आवाज आई नहीं होगी किसी को क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़े गाने चल रहे हैं। मैं क्लोज करना भूल गया पार्टी, चलो कर दिया। 8, 9, 13 हो गए गाइस। 10:30 करते हैं, 10:30 या 11 बजे तक करते हैं स्ट्रीम। इसमें कितने 2 और मैच जीतने हैं, मेरे को प्लैट 3 हो जाएगा आज। मैं प्लैट 3 होने के बाद ना ये आईडी बंद हुआ। कल डायमंड पुश करूंगा बैठ के सुबह। डायमंड पहुंचना इतना टफ नहीं है, अब लग रहा है मेरे को। पहले लगता था कि टफ है, अब इतना टफ नहीं लग रहा। करियर में अगर देखें 15, 17, 22, 27 टाइम पास करते करते पहुंच गया था डायमंड। मैं यहाँ बहुत बुरा हारा था और टीम एमवीपी था, फिर भी 113 हारा था फिर भी। कल पता है मैं इन लोगों के अंदर करियर देखना, कल इन लोगों के तो इन लोगों के मैंने यहाँ से अच्छा खेलना शुरू कर दिया। 27 किल्स। सिंगापुर सर्वर इज वेरी नाइस गाइस, इफ यू वांट टू रैंक अप सोलो क्यू करना, सिंगापुर सर्वर इज द वे टू गो प्लैटिनम में। तो कोरोना ड्रैगन है इसमें बे काइडो है। ड्रैगन ही ड्रैगन कलेक्शन, और भाई वो अच्छी वाली शेरिफ है इसमें। ड्रैगन वैंडल है, वैंडल पूरा ड्रैगन का कलेक्शन। क्या बात है, देते रहियो। हाँ कितने का पता? कितने का था काइडो? 12,500 का ना पूरा? ज्यादा महंगा नहीं है। ड्रैगन कलेक्शन सबसे महंगा स्किन है पूरी गेम में। हाँ रुक मैं कैलकुलेट करूं। 2000 का वॉचिंग अब सबसे सस्ता इंसान है पूरी दुनिया में। 2000 का एक स्किन आता है और कलेक्शन में कितना स्किन होंगे? 3, 4 देख नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ। 2000 के उसमें मिला के टोटल 4 स्किन्स है। एक ऑपरेटर, एक वैंडल, एक फ्रेंजी और एक ये क्या नाम है इसका, जज। और फिर उसके बाद एक नाइफ है, वो अलग से मिला के 5000 का है। टोटल 17,000 का जाता है। अगर पूरा बंडल बाय करते हैं तो 14। या मेक सेंस। प्राइम वैंडल भी है। 2000 into 6 क्यों कर रहा है? नाइफ थोड़ी है 2000 का, नाइफ 4 या 5000 कुछ तो का है। हाँ राइट। मैं आइटम्स गिन रहा था। काइडो इसमें प्राइम भी है। हाँ पता है करा। मैच फाउंड। नॉट प्राइम डाल आखिर में। वैंडल लगा, एल्डर फ्लेम लगा। ओए ड्रैगन लगाई हुई है ना, प्राइम लगाई हुई है। ओ जल्दी लॉक कर बे। हाँ अंशु मर गया अंशु। गाइस अंशु इज गॉन। वो थ्रो करेगा देखना वाइपर लेके। प्राइम दिया प्राइम। अबे यार एल्डर फ्लेम क्यों नहीं लगाया? एल्डर फ्लेम चलती नहीं भाई, गंदी है वो गन। तू भी गंदा है, तेरे को थोड़ी ना लॉबी से निकाल दिया। गन की गलती नहीं है अंशु। एल्डर फ्लेम बल्कि ज्यादा उसमें रिकॉइल कंट्रोल है। खरीद क्यों नहीं लेते? हाँ मेरे को खरीदना है यार, मैं तो वेट कर रहा हूँ जब स्टोर में आएगी तो खरीदूं। हेलो हाय क्या चाहिए? आप सेज ले लो, वॉल चाहिए होगी। सुख चाहिए जिंदगी। और सोवा, अगर प्लेयर 5 सोवा आता है तो सोवा भी ले। अबे स्मोक्स नहीं है, स्मोक नहीं, हम पे स्मोक नहीं है बाय द वे। तुम ओमेन लेने को बोलो। ओमन ले लो यार, ओमन ले लो, बढ़िया रहेगा। वरना ब्रिम ले लो, ब्रिम। हमको बोलना नहीं चाहिए, हमने इंस्टॉल किया। हाँ वही ना, मैं फिर भी थोड़ा प्यार से बोल रहा हूँ ताकि बुरा ना लगे। हाँ वही एग्जैक्टली। हाँ ये थ्रो करना है, थ्रो करेगी, थ्रो करना है, करना डॉज करना है। हाँ कर सकते हैं। नहीं कूलडाउन नहीं अरे लगता, उसकी भी कूलडाउन स्ट्रेटजी लगना होगी भाई, वो थोड़ा नहीं वो थ्रो कर रहा है, वो उसने डॉज कर दिया। ओ कर दिया, डॉज कर दिया। हाँ उसने किया डॉज। ऑल कर दिया। कब दिखा देखो, दिखता है क्या नीचे? 3 ड्यूलिस्ट मत करो रे भाई, बहुत गंदा है बहुत। 3 सही में यार। काइडो सुन अंशु, रैंक पुश कर लेने दे यार, उसके बाद आराम से कर लियो प्लीज यार। एक बार प्लैट 3 जाने दे यार। मर्जी है अंशु तेरा। हाँ यार देख ले यार, प्लैट 3 जाने दे एक बार। अरे मर्जी है तेरा यार, अंशु करना। उसने भी कर लिया। रोक अबे भाई, जेट की जरूरत है नहीं वैसे काइडो इधर। ओके कैन यू पिक स्मोक? आई एम नॉट गुड एट स्मोक्स ब्रो। इवन आई डोंट नो हाउ टू पुश। चलो सेंटिनल लॉक हो चुका है अपना। कैन यू पिक ब्रिमस्टोन और वुमेन ब्रो? आई डोंट। भाई मेरे को भी नहीं आता भाई। तू डॉज कर सकता है क्या? ना
कूलडाउन पड़ेगा ना आई थिंक इसको 30 मेरा मिनट्स पीसी स्लो है ब्रो, अभी मेरे को डॉज करूंगा, मेरे को चालू करने को बहुत टाइम लगेगा। चलो एक तो आईडी है भाई। अगर आप देख लो, अगर आप स्मोक कर सकते हो थंडर तेरे को स्मोक्स आते हैं तो ले ले। खेला ही नहीं वो, सेंटिनल खेल लेता मैं बट अबे तो पहले बोल देता ना भाई वो। एक काम करो अरे उसने बेस्ट एजेंट कौन सा है? मैं फिनिक्स ही खेलता हूँ स्प्लिट पे। और कोई एजेंट, इनिशिएटर, कुछ और? जेट खेलता हूँ मैं। इनिशिएटर वगैरह, डुएलिस्ट नहीं ब्रो। नहीं ब्रो यार ऐसा कैसे होता है रे? अरे मतलब ये मैप में सोवा नहीं आता है। अच्छा कुछ कोई और एजेंट आता है? ये मैप सोवा के लिए है क्या भाई? कुछ भी बोल रहा है वाचिंग। अरे उसको लेने तो कुछ तो लेगा वो। चलाना तो जो फोर्ड डुएलिस्ट देख लो यार, बहुत चलता है, बहुत गंदा होगा कॉम्बिनेशन। छोड़ दे भाई उसको, उसकी जिद है, आता होगा उसको भाई अच्छे से। अभी छोड़ चलो कर लेते हैं सर। मैं कर दूंगा स्पॉट, मैं कर दूंगा स्पॉट भाई। अटैक अबे NCX690 भी तो अभी आया था ना लास्ट हमारे साथ। हाईलैंड कल आया था सामने। अंशु तेरे पे कौन सी वैंडल है? मेरा ही अभी प्राइम है यार, प्राइम मेरे पास भी है एल्डर फ्लेम प्राइम लगाने है। के अरे यार। मैं चेंज करने वाला था तब तक हां भाई वो प्लैट 2 है भाई, उसको ड्यूलिस्ट चाहिए। कोई नहीं काइडो जज नहीं कर सकते ना, ऐसी बात नहीं है, जज नहीं कर सकते। Why did you never try that? देख छोटा सा ड्रैगन, देख प्यारा सा ड्रैगन। अंशु प्लीज यार अपनी पैंट वापस कर, बंद कर ले पैंट अपनी, नहीं चाहिए भाई। किल जाए बॉम्ब ले लो यार, सेंटिनल बॉम्ब ले लो यार, किल जाए। No. काइडो सीरियस खेलना पड़ेगा बे, मुझे लगता नहीं इनके बस की है। सच्ची बता रहा हूँ। लेट्स सी, वो तो पहले राउंड के बाद पता लगेगा। लेट्स सी हम स्प्लिट होके क्या खेल रहे हैं उससे, एनी आइडिया? फिनिक्स साइड जाने की कोशिश करियो, आई विल ट्राई टू गो हैव ना। सॉरी अबे हम लोग साइड स्प्लिट जाने क्यों की खेल रहे हैं? पुश कर रही है। हेवन है, वापस भागो। मार किल जा नीचे। नहीं आ रहा अपने पे, छोड़ दे भी। आजा धीरे आजा। बढ़िया, यहाँ पर 3 है, वापस जा वॉक कर। अंशु क्यों भाग गया यार? आजा बोला मैंने देखो। धीरे भाई चिल्ला रहा है, वापस जाना है भाई। आजा बोला मैंने। चलो वापस चलो। अबे जान के थ्रो कर रहा है यार, बॉम्ब छोड़ के आया उनके मुंह पे। अबे रिपोर्ट कर यार। क्या कर रहा है ब्रो? अरे किल जो है। Last player standing. निंजा कर दिया सिंपल ने। वाओ भाई, कल ट्रोल कर रहा था वो, आज निंजा कर दिया। कल उसने देखा था फॉलन को क्या ट्रोल किया था काइडो इन्फर्नो पे ऑप से। यार थ्रो कर रहा है बिना बात। 30 seconds left. यार निकलता है। रीलोड कर ले, बढ़िया। पास आने दे। ए पीछे सीटी वेंट्स है, सीटी वेंट्स। ओ गुड ट्राई यार, इसमें किक का ऑप्शन डाल देना चाहिए यार इनको। लीविंग द गेम ऑफेंसिव। एल्डर फ्लेम क्या मांगना है? एल्डर फ्लेम फ्रेंजी मांग। अंशु मांग एल्डर फ्लेम फ्रेंजी रिक्वेस्ट कर फ्रेंजी। बढ़िया। कॉम्प्लेक्सिटी 4 नावी 1। मेरे को स्वर्ग से आना चाहिए बराबर। अबे यार ये फुल थ्रो कर रहा है यार। प्लाट 3 में क्यों थ्रो कर रहा है बंदा? इट डजंट मेक सेंस यार। Reloading. आएगा काइडो, रश करेगा। मेरे पे सिर्फ शॉट ही है। नाइस। Come here. I dropped the spike. चलो ना पीछे भाई, अभी क्या वहीं पर जाना है क्या? अंशु तू क्यों रुका? उधर आना पीछे। एक सेकंड। अरे मैं अबे राइट साइड। ओह माय गॉड। जी ब्रो, G2 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्ट्रीम करेगा क्या? यस अनस, यस ब्रो। अभी इस मैच की बात करते हैं, ये मैच जल्दी खत्म होने वाला है। थ्रो कर रहा है अपना बंदा। अभी स्लॉट स्ट्रीम कर। हाँ बिल्कुल करूंगा ब्रो, बिल्कुल करूंगा। अरे यार ध्यान से।
अब इसके बाद G2 वाला मैच स्ट्रीम करना, ठीक है? भाई मेरा लाइक करो यार, तुम लाइक्स नहीं करेगा, एटलीस्ट लाइक का बटन दबा दो तुम, और कुछ नहीं भाई। भाई रैंक अप गेम था यार, क्या करें इन लोगों का, क्या करें? छोड़ दे उसको, अपने हाल पे छोड़ दे तो अपना गेम खेल भाई। छिपकली किस पे है? थैंक यू, नो प्रॉब्लम भाई, सबका मन है वो करने का, बस तुम लाइक्स करो और शेयर कर दो यार प्लीज, दैट इज ऑल आई रिक्वेस्ट प्लीज। तू शेयर कर रहा है, क्यों थ्रो कर रहा है भाई? खेल जो क्या हो गया? कह रहा क्यों शेयर कर रहा? अबे यार खेलना भाई, तेरे को कुछ बोला क्या किसी ने? वापस गई भाई क्या चूतिया गिरी है यार, सीधा हेडशॉट डैश खत्म होता, और क्या क्या मारा मटका उसने मेरे को। अरे वो आएगा पीक लेने को, पता है मेरे को। बी आ जाओ। गोभी गोभी गोभी, ए दो साइड। चल भागता चल, भागता चल। मैं टीवी से बी में जा रहा हूं, एक मिड आएगा। फेज मिड है अभी। या और ओमन भी हेवन में था तो मिड जाएगा ओमन। सिंपल आउट ऑफ फॉर्म है भाई, उसने सामने से पास होता हुआ टारगेट मिस कर दिया 3 बार। एक सेकंड रुक, फोन आ रहा है मेरे को। अपना फिनिक्स अच्छी पोजीशन पे है। अरे साइड के अंदर जा जल्दी, फिनिक्स मर जाएगा। ये उसका कॉल आया। मिडल अंशु इतना स्लो क्यों जा रहा है? जल्दी भाग के जाना। फिनिक्स लेके बैठा है पूरा उधर का कंट्रोल। सिटी देख रहा हूं। Player standing. One enemy remaining. हाय वो गया तो नहीं। अरे ऑफ कोर्स ऑब्वियस पिक करेगा वो भाई, जब उसके पास इतना अच्छा पोजीशनिंग है। तो ये जा रहा क्यों नहीं छूट गया? अरे चुपना घुसड़ी गए। सिर्फ 2 रुपए का फ्लैट तो करने को आ जाते हैं मुंह उठा के। क्यों थ्रो कर रहे हो भाई? जीत सकते हो। माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा शायद उसको घर पे। कौन थ्रो कर रहा है? अरे किल जो है अपना, जानबूझ के कर रहा है वो। हाँ मालूम क्यों थ्रो कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। उसको कुछ बोला रहेगा फर्स्ट राउंड में। Last player standing. मिडल पुश। बैकस्टैब होल्ड करना चाहिए था। निकाल सकते हैं। Thirty seconds left. No charges left. एंटी रेडी ने चल मेंटेन निकालता हूँ। चल अरे बट थ्रो क्यों कर रहा है ब्रो तेरे को? अरे भाई क्या मालूम भाई, घर पे प्यार नहीं मिल रहा। किसी ने कुछ बोला भी नहीं। किसी ने कुछ नहीं बोला उसको। फर्स्ट राउंड से थ्रो कर रहा है, पता नहीं। थैंक यू फॉर दैट ब्रदर, मैं भूल गया था मैं म्यूटेड हूं। अंशी रिक्वेस्ट कर जल्दी से रे। क्या चाहिए? अरे तू रिक्वेस्ट कर वैंडल भाई, इतना धीरे। अबे अच्छा मेरे को दे। क्या बेवकूफ है अंशी भाई तू। तो मेरे को अरे ऐसा बोल क्यों? 1 HP है।
एल्बो 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 एल्बो। अरे कब बोलेगा भाई? Player standing. तेरी आवाज नहीं आ रही स्क्रीन पे। अब आ रही होगी, अब आ रही होगी। मैं नहीं होता रैंक अप कभी। Going to scatter from my side. कर दे सरेंडर कर दे कर दे कर दे कर दे सरेंडर कर दे। यही है यार, यही है पनौती का बच्चा, जान के नहीं। तूने किया क्या सरेंडर? तूने नहीं किया क्या अंशु? फिनिक्स सरेंडर कौन तू कर दिया ना फिनिक्स? बराबर क्या मैंने? फिनिक्स सरेंडर कर दिया था ना? अरे भाई मैं ही वोट डाला था सरेंडर का। अबे यार ये किलजॉय है। अंशु तूने किया था कि नहीं सरेंडर? No. अभी नहीं कर सकते हो? भी पुश हो रहा है। अबे स्मोक थ्रू मार रहे हैं यार। किलजॉय वही ना यार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों यार, क्यों भाई, कोई रीजन तो हो। लॉल टाइमिंग भाई। यही औकात है भाई तेरी। थोड़े राउंड भाई उनको बोलना पड़ेगा यार, थोड़े राउंड दे दो वरना बहुत गंदा ये ड्रॉप होगा। और दे देंगे। मैं सबको मारा कह रहा। माइक ऑन करने की क्या लिखा? हाँ भाई माइक ऑन करना, तेरी मम्मी चोदता हूं। अल्ट मार रहा हूँ बी पे। हट जा अंशु पीछे रह अल्ट मार रहा हूँ 1 मिनट। अबे पक हो गया ना। जाना मार। मेरा लैग आउट। मैं कॉर्नर से होके जा रहा हूँ यार। मेरा लैग आउट हो गया भाई। हिला मेरा वो हो गया था यार। होल्डिंग रखता। दो मिनट है, 2 मिनट। एक हेवन 2 मिनट। जा रहा है, जरूरत है क्या? मैं लूं। करना है क्या वैसे भी? एक और है 135। रैप्टर डाउन डाउन डाउन। नाइस डाउन। One enemy remaining. किलजॉय अननोन है। किलजॉय नहीं, किलजॉय ने मेरे को मारा, सीटी दी। मत देना स्पैम, चूतिया है क्या? मैं एक एचपी। अंची स्पैम मत दे भाई। अबे गवार वो स्पैम देगा। अंशु ऐसे नहीं होता कि तेरे को नहीं मार रहा। अगर उसने स्मोक में स्पैम दिया काइडो मरेगा, तू पीछे है, काइडो आगे है। अंशु अंधा है क्या? देखो नहीं दिखा कोई 1 HP भाई। अबे मैं खड़ा हूं 1 HP हूं मैं। ऐसे खेलेगा तू, बता क्या? उधर से स्पैम दे रहा है सामने स्मोक में। अंधा मेरे को मार देगा वो तो। अंशु एक वैंडल पीछे ड्रॉप दे। रेस पुश करती है। एक वैंडल पीछे ड्रॉप दे और एक बाय कर ले। इससे किक का ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं ना, किक का ऑप्शन नहीं है। बॉम्ब पकड़ वो ले लेगा भाई। अभी फिलहाल बैठा तो 0 पे 2 है। कोई नहीं यार, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ करने को है। मार 4 असिस्ट कर भाई। रीलो गिरेगा तेरा यार, असिस्ट नहीं देखते वो लोग। एक और होता है। नाइस वन। चल आजा। कैंसिल नहीं किया बे उसने। अबे यस कैंसिल नहीं किया। देख ऐसे तो मैं मर रहा हूँ, किल कैसे लूँ? राइट साइड है कटक। हेवन एक हेवन एक मिडिल पे है, वहाँ से कोई नहीं आ रहा। लास्ट मिडिल कनेक्टर में डैश मार दे। बी आ जा ब्रो, घूम के आ जा। ए चले जा। बी चल अंदर जा इधर ना। अरे चलना बी चलना, क्या कर रहा है? कोई ना, मिल जाते हैं ऐसे लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वेट कर, इसको फुल वेट कर, इसको फुल वेट कर काइडो। ये अग्रेसिव बंदा जाने वाला है। हेवन देख ले ब्रो। देख रहा हूँ। ये भी हेवन देख रहा है, पागल है क्या?
पुश नहीं कर रहा हो, सीटी आ सकता। सीटी देखता रहे 1 सेकंड। सेव कर रहे क्या? सीटी आना चाहिए, एक बार चेक कर फिनिक्स, नजर मार ले। बी मेन पे रुका है हमारे लिए, साथ में चल। साथ में चला, बी सही मेन पे है। रुका है हम दोनों को मारने रश के कर लिए। रश कर रश करना। चल चल रुक रुक मेरे लिए रुक ऐसा अकेले मत भाग। राइट दोनों को मार होगा, देगा। राइट को होगा। रुक जा इधर मत जा आगे, पैसे नहीं है बस मत बस जा। बस, मर गया लॉल। अरे ओ ठीक है, ये भी ठीक है भाई। चल यार अग्रेसिव खेल रहा हूँ मैं भाई, पैसिव खेला ही नहीं जा रहा कुछ भी। अंशु खेले मत, किल जाए बोल देता हूं ड्रॉप में। चले अंशु खेल भाई, फालतू का थ्रो मत कर, देखो किसी ने कुछ बोला नहीं है। खेल रहे अंशु रिक्वेस्ट कर वैंडल रिक्वेस्ट कर। अबे रिक्वेस्ट तो कर। और 3 राउंड निकालो। दे ड्रॉप दे जंप क्या कर रहा है। हां बढ़िया, ड्रॉप दे। अबे ड्रॉप दे अच्छी। जो इधर खेल रहा था हेवन जा रहा है, ऑलरेडी फेंक दिया। कहां है भाई? मान अबे अंशु गवार आदमी क्या कर रहे हो यार तुम लोग? कंप्लीट ट्रैश है भाई अंशु। कहां है वैंडल बता मुझे भाई। नहीं यार तुम लोग लगे थ्रो कर रहे हो भाई, एक रैप्टर्स है। हेवन में एक बंदा है। नाइस, एक और हेवन ही है। टीटी नाइस, बॉम्ब ले अंशु। अबे बॉम्ब ले, ऊपर जा बंदा अंशु। जेट रुक जा। एक और हेवन है यार। अंशु बहुत ट्रैश खेल रहा है यार। Player standing. अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम पूरा साइड लेके दिया मैंने। अननोन साउंड आया तेरे को भी पे। ए मेन पे सर। वॉक अबे भाई साउंड आया था रे भाई, आराम से आया था क्या? मैं बढ़िया। साउंड आया तेरे को? मैं तेरे को ड्रॉप दिया लेकिन तेरे पे पैसे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो उधर खड़े होके भाई मेन पे? अंशु सुन मेरी बात, मैंने बोला तू रिक्वेस्ट कर, मैंने तेरे को ड्रॉप दिया और तू चल दिया भाई। तुम ड्रॉप ले लो भाई। मेरे से गन मांग लेता, मेरे पास ब्लेड थे। लास्ट सेकंड उसने वो हुआ ना भाई। थंडर एक ड्रॉप दियो। थंडर उसको ड्रॉप दे दे। ऐसे मत किया करो सर रंचू राय। भाई मिड लो वॉल नहीं कर दिया इधर पास करो गाइस लिसन टू मी। 5 राउंड निकालो। अरे भाई सुनिए, रेस यहां पे जज लेके खड़ा रहता है। करो। वाह ब्लाइंड था मैं। कोई नहीं, हेवन है। व्हाट? डब्ल्यू पिक लेके मार रहा है अंशु। नाइस ब्रो, हेवन है। हील मार ले आराम से, हील मार ले। बिहाइंड यू आएगा, कनेक्टर आना चाहिए एक ध्यान से। हां अरे तीनों उधर ये तीनों हेवन होने चाहिए मोस्टली। यस, एक सीटी हो सकता है क्या? अंशु भाई लॉल भाई। हेवन 1 एक सीटी। क्या कर क्या रहा है? इधर एक कैसे वेट कर रहा है? राफ्टर भाई यार भाई कैसे तोड़ना बूमबट भाई, मार दे निकल के उसको। नहीं अरे वो अपने आप से ये सोच रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा कि मैं आगे जाके मार नहीं सकता उसको। अबे लेकिन उसका टीममेट मर जाएगा भाई। वो तो बेट करने के तरफ से खेल ही रहा है। तेरी ले रहा है वो, तेरी से छिड़ा था तू। मैंने कुछ बोला ही नहीं इसे। वो तेरे को तू एक किल पे बैठा ना, तेरे को बोल रहा है यू डिड वेल तेरे करके। मैं तो किल लेके मर गया, मैंने क्या किया? चल हट जा, मैं सीधा मिड पे पिक ले रहा हूं ओमेन का सीधा ड्यूल ले रहा हूं मैं। मेरे को किल मिलेंगे कैसे जब मैं मर ही जा रहा हूं बेवकूफों की तरह ऐसे? मेरी गलती नहीं है मरने की, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे दो सेंटिनल है पड़ी आई गेस मोस्टली पड़ी है उसको। हां पड़ी है। ये देख किल जाए, मेरे को देख किल जाए भी पे। ए जाओ। मत जा भी मत जा। रेस भी है पे। कहां पर है? क्या शॉट मार रहे हैं भाई। अरे भाई मैं स्मोक्ड आउट था भाई, देख लेता हूं। बीमेन से आ रहा है कंचुआ, ध्यान से।
किल का टर्रेट एक सेकंड के लिए निकल रहा तो मेरे को गन देना है यार। क्या रेस को बोल रहा है कितना बड़बड़ कर रहा है और खुद तो अबे तू खेम खेलना बे। दिख रहा है भाई, दिख रहा है तो देख आंखें निकाल दूंगा यहीं पर तेरी, दिख रहा है ना अपनी आंखें अपने पास रखो पता है सीरियसली स्मोक चाहिए कुछ मत कर भाई। सही है भाई मैं करूँ तो करूँ क्या हेडशॉट मार रहा है जा रहे भाई। रोपरम स्मोक ही नहीं कर रहा है। हाँ चल भाई लॉल कुछ नहीं बोल रहा तेरे को। अंशु खेल ना यार कल रात की तरह, क्या हो गया? मार रहा हूं भाई। 4 डुएलिस्ट भाई होता ही खराब है। ये मारना नहीं होता, तू रहना है मेरे को ऊपर से पीक लगी मत। अरे अंशु W दबा मत यार, मार मतलब W दबा के जा मत ऐसे यार। खत्म करो भाई जल्दी भाई। कितना मारू उसको किसी को स्मोक नहीं लेने भाई। मर ही नहीं रहे यार। 110 मारा मैं, 3 बुलेट मारा, हेड पे भी मारा। हर बार पीछे आता है सबके, हर बार मारा मारा। हाउ मेरे को भी नहीं पता ना कैसे ब्रो, मेरे को हेडशॉट पे हेडशॉट मारी जा रही है। देख रही है उसको, वो देख रही है उसको, उनकी सेज 110 टैग है वो रेस अंडर हेवन वाला। कितने राउंड्स हैं? बस होने वाला है खत्म। अरे क्या टाइमिंग है भाई। इनको ब्लॉक करके खेल रहा हूँ मैं, ठीक है? म्यूट करके खेल रहा हूँ दोनों। अल्फा है साथ में, पुश करके देखो एक बार। चल डिफेंडिंग में थोड़े राउंड निकालते हैं। रुक जा, मैं इसकी पार्टी में जा रहा हूँ। इसकी किस में जा रहा हूँ? किलजॉय की पार्टी में भाई 1 और 12 पे हूँ मैं आज से। मैं अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ हूँ मेरे साथ। हेलो हाँ भाई बता भाई क्या हुआ, क्यों गरम पड़ा इतना तू? ओ किलजॉय अभी भी नहीं बोल रहा क्या? वो बच्चा है वो शायद से। हाँ वो बच्चा है, बड़ा था मेरे को, छोटा ही लग रहा है बच्चा मेरे को भाई। और क्या ही बोलूँ मैं। आराम से किल निकल रहे थे अभी तक, पता नहीं। मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है भाई। फ्रेंड रिक्वेस्ट भी अभी वही है, फिनिक्स ही है फिर उस दिन वाला। जिंटैक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है मेरे को। उस दिन वाला फिनिक्स है, एग्जैक्ट सेम उस दिन वाला सेम ऐसा सीन किया था उसने। ये साउंड है क्या? अरे नाइस। बी क्लियर। दो आ जा नीचे, आ जा नीचे, आ जा। चलो जाएंगे 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 लेंगे। वन मोर रैम्स। हेवन जा रहा है, हेवन रैम्स। हेवन। किलजॉय का टर्रेट लगा हुआ है यार इधर। सबके सब हेवन ही जा रहे हैं, इनको साइट नहीं जाना है क्या भाई? हेवन पे बेट कर रहे हो एक दूसरे को। हाँ एक दूसरे को बेट कर रहे हैं एक्चुअली। ये देख किलजॉय को देख भाई, चला गया क्या वो? बराबर खेल रही है, उसको रोप का साउंड आया, वो भाग के जा रही है रोप की तरफ। बी चले गए। ठीक है बच्चे करो। करूँ तो करूँ क्या मैं? T1 सीटी फिनिक्स सीटी आराम से नाइस हील हो जा फिनिक्स आराम से। तू तेरे पे आने वाला राउंड पूरा। बी हेवन वर्ल्ड आउट है। प्लान बी। किलजॉय टर्रेट है ऑन साइड। टर्रेट है तेरा किसी? उसका भी टर्रेट है। Spike planted. ऑन साइड कोने में। ऑन साइड ही है। नाइस राउंड। चलो डिफेंडिंग साइड में निकालते हैं थोड़े राउंड। करता हूं मैं भाई थोड़ा। क्या सीन है मेरे को समझ नहीं आया। अभी तक इतना बुरा नहीं हगा मैं एक भी मैच भाई, लाइफ टाइम में नहीं हगा इतना। भाई केजे ट्रायड कर भाई, वो भी कर रहा है ट्रायड, कोशिश कर रहा है अपना रेस। मैं भी कर रहा हूं। निकल गेम भाई आराम से। मेरे को बहुत अनलकी शॉट पड़ रहे थे अभी तक तो। ना आईडिया भाई मेरा इधर जीतना होता है गेम्स को पॉइंट। डायमंड ऐसे पहुंचेगा ही नहीं मैं। Placing sentry. Watching here bro. अंशु कहाँ हेवन खेल रहा है ना? ये हेवन watching here. हाइड रहा है, पूरा हाइड रहा है। एक पिक हल्का जिगल। हां चलेगा, एक जिगल निकल के ए मल्टीपल हाइड हो जा अंशु। मेरे को हेवन से बैकअप चाहिए था पूरा। हेवन से ए आ जा, सबे आ जाओ। फुल माइक कितना भाई, कितना माइक हो? हेवन आ गए भाई। साइड आके कुछ बैकअप दो गाइस। अरे क्या हेवन पे स्मोक भी नहीं है भाई? अंशु बैकअप दे। नाइस थंडर। मैं रुका था ये कि हेवन आएगा। मेरे पे डबल से आते। रुक जा थंडर, रुक जा। फ्लैश दियो, रेडी हो जा। फ्लैशिंग नहीं, कोई दिख नहीं रहा।
Last back, Heaven black, over. CT. elbow. अंशु हेवन स्मोक नहीं किया उन लोगों ने खड़ा क्यों उधर ऐसे तू काइडो भाई चिल काइडो की गलती नहीं है वो सही कह रहा है गलत नहीं कह रहा अंशु पता है डिटेंड है हेवन में अरे नीचे क्यों जा रहा है उन लोगों ने पता है हेवन स्मोक भी नहीं किया था अंशु फिर भी उधर रुका है पांचों बंदे मेरे पे चढ़ रहे हैं अंशु ऐसे मत खेल इतना स्लो मत खेल थोड़ा फास्ट तो कर इधर है अंशु को पता है उन लोगों ने खिड़की बड़ी कर दी है इधर हाँ भाई उन लोगों ने आराम से पांचों मार सकता है या उन लोगों ने इधर स्मोक भी नहीं किया है तू रोप रूम क्यों गया वजह बता जरा 4-5 बंदे दिखे थे इसके जरूरत नहीं था ना तो डर गया क्या डरना नहीं बे तू और वो एंकर कर रहे हैं साइड को तू मरना है तो मर जा लेकिन तू अपने टीममेट को बचा है पूरा बैकअप देता ना मेरे को इधर में सबको मार देता सच्ची में मेरे को इधर उधर डैश मारना पड़ा अरे माइक मैं आ रहा हूं टीममेट का 2 का साउंड है तू हेवन लेके बैठ अंशु हेवन लेके बैठ थंडर ऊपर जा नीचे हां बी हेवन 1 मे बी मोर देन 1 बी हेवन मिडल है क्या हां बी हेवन तो इन हो गया on smoke in smoke killjoy 117 tag killjoy 117 on site Spike planted. nice One enemy remaining. अरे stick मार बहुत बढ़िया गुड राउंड गाइस गुड राउंड बैक 8-7 complexity in lead ओके आज काइडो का गला दिख जाएगा ओह नाइस शॉट ना तो ठीक लग रहा है मेरे को जेट कौन है मेरे को जेट क्यों दिख रहा नाम क्योंकि मैं लॉबी छोड़ के गया हूं ना अच्छा मैं वही सोचूं काइडो को क्या हो गया ये थंडर ने भाई बहुत गंदा वेट किया पूरी टीम को कोने में बैठा है वहां पर और वो स्टार्टिंग से वेट कर रहा है भाई मैं उसको देख रहा हूं ना वो पूरी टीम को वेट करके अलग ही पोजीशन पे भाग के जा रहा है ऐसे तो किल लेते हैं ये लोग भाई पुसी लोग नाउ टी साइड ओके हमें G2 का करना है बी पे 1 अंशु उधर ही रुक आई 1 मिनट कोई बात नहीं एंटी बी मैन आउटसाइड बी मैन हेवन 1 अंशु रोप रो होल्ड कर अगर आए तो अरे एक ही टैग माइक कर रोप रूम एक और अंशु एक और एक सीटी अंशु सीटी मेरे पास आएगा ना One फिर enemy remaining. लास्ट सीटी है क्या लास्ट रोप है लास्ट रोप में मिडिल आएगा किल जाए क्या फिर रोप रूम था कैसे वो रोप रूम था ठीक है रोप रूम था ब्रो बता रहा हूं माइक वॉक करके आएगा भाग के आएगा वाइट स्विंग ही करेगा आई बिलीव अंशु तू उधर है मैं इधर हूं मेन से ओपन है तो नहीं तो उसने पुसी पीपल या आई नो राउंड अब मैं किल लेता हूं भाई थोड़े से अल्टी रेडी मैंने मारा 78 grenades left. ये खेलेगा ये राउंड भरोसा रख मेरे पे ये खेल आएंगे मैं रोप रूम खेल रहा हूं फिनिक्स बी हेवन जा मेरे साथ एंकर कर ठीक है तो हेवन खेल अंशु बी हेवन जा हां जा रहा हूं ये हुई ना बात गाइस ये हुई ना बात अब खेलेंगे ना आओ भाई असली गेम खेलते हैं अब आओ हैक्स ऑन किया ना अब इधर खुले में खड़े हैं ट्रेड गेम मैं इधर जा रहा हूं मेरे साथ ये कर वेट एंड स्विच कर मेरे हां नो वन बी मैन एक आ गया मैं बी क्लियर भाई कॉल आउट ही नहीं दे रहा है यार ये नाइस You should run. साइड पे है ये पे डबल साथ चले बाद में निकल सकते हैं टेंशन ना लो हेवन One enemy remaining. हेवन लास्ट 45 टैग कमबैक अवार्ड हो सकता है कमबैक तो आराम से निकाल दे 45 टैग नाइस ब्रदर निकाल दिया गुड राउंड चलो गुड राउंड रे यार ये भाई ये गेम तो मस्त खेल रहे हैं I got your backs. जस्ट नो फ्रॉम द फ्रंट अंशु रिक्वेस्ट कर वैंडल अंशु मेड आपको वेट एंड स्विच करना है हां बढ़िया रिक्वेस्ट कर दे Thank you. ये राउंड रेडी है अंशु डब्ल्यू करेंगे मेरे का हमारे को वो लोग फास्ट फिनिक्स मैं यहां पर ये डब्बे के पीछे जा रहा हूं ब्रो समझ रहा है ना तेरे को हम वेट एंड स्विच खेलना है हमको पता है ना तेरे को तू यहां से फाइट लेते रहे निकल करके तेरे को मरने नहीं दूंगा मैं अगर आया मैं वो वेट स्विच पता है चलेगा मेडल
ए हो रहा है नो वन बी नो वन बी नो वन बी तू सुबह जाना बी पूरा क्लियर है फुल बी क्लियर है फुल क्लियर नरका डेड है उनका बॉम्ब ड्रॉप पीछे नाइस नाइस One enemy नाइस remaining. बी पूरा क्लियर है बस ओके नाइस काइडो बढ़िया इंपॉर्टेंट किल रहे फिनिक्स को मैंने को मारना जीत जाओगे तुम लोग इजी भाई बस इनका कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं मेरे को किल नहीं मिल रहे वो आ नहीं रहे किल के लिए अब खेलना भी नहीं है अब राउंड चाहिए कंफर्म ये राउंड निकालो गाइस अरे जरूरत ही नहीं है किल का भाई क्या जरूरत है वैसे भी किल 101% पास मिनट है यार हां तू सेम थंडर मेरे को कॉल दियो मैं नेड मार दूंगा जब वापस आ रहा होगा ठीक है ओके ब्रो अरे कोई ए साइड खेलो अंशु है ना लेना है ए रीटेक खेलेंगे अपन ठीक है बी पे 2-3 ओह माय गॉड व्हाट बी पे 3 बोला अभी मैं किल के लिए नहीं खेलूंगा फ्री फायर दे गया रे मार रहा था उसे मारा बी में 1 गया काइडो तेरा गेम है मैं 1 एचपी हूं कोई नहीं तेरा गेम है वो लो बहुत बी में अंशु जा अंशु अरे ब्रो डबल अप है तेरे पे डबल अप वो लोग रोटेट कर सकते हैं अंशु इधर रोटेट ही कर गए हम लोग फेक रोटेट भी हो सकता है पूरा 1 मिनट है बस यहीं रह काटो यहीं रहो ना अल्ट है ब्रो स्कॉप कर ले क्योंकि जेट बहुत लो है सही कह रहा है अल्ट मार ले अंशु अगर भी आएंगे तो देख लूंगा मैं एक को मार दूंगा अंशु अल्ट मार ले मिड से भी आ सकता है मेरे को लग रहा है एक ही एंगल देख काइडो एक ही एंगल देख गन दिख जाएगी वहां से तेरी यार ये इनका मुंह बड़ा कर दिया यार बीमेन का प्रिया तेरे को पहले दिख जाएगा हां बी प्लांट हां बी हो रहा है जा जा भाग के जा एक निकाल लेते हैं फेक दे रहा मतलब ये अकेला है इधर Spike planted. बैक साइड जाना चाहिए वो लास्ट 7 होना चाहिए अंशु सीटी 7 आया होगा डिस्कस करने को दे Last player standing. बाहर आया वो बनच किया तू लेफ्ट ही है गुड ट्राई अंशु तू कैसे मर गया बैठ जाना चाहिए था एक्चुअली इसने मेरे को प्री दे दिया नहीं मैं स्पैम दे देता हूं 4.5 सेकंड्स हो गया स्मोक कर दो अरे हां करेक्ट अरे मेरे को वो फाइट नहीं करनी चाहिए मर गया स्पैम कैसे मर गया मैं ऑफ निकाल रहा मैं मैं किलजॉय को मार रहा था तभी बूम हुआ किलजॉय को मार गया था ना तूने लेकिन हाँ नहीं मारा हो तब भी मैं मरा अंश काइडो गोस दियो क्या गोस मैं बी पे ऑफ लगा रहा हूं दूर से हां चलेगा बी पे 2 गोली चल रही है होल्ड करो मिड अबे लेना किलजॉय पीछे साथ में वन डाउन लो है वो रेस लो है 3B यार कम ऑन गुड रश कर रहे हैं यार रश आउट आ गया साइड आ गया फिनिक्स बी में चले जा स्पाइक डाउन मिड आ जाओ फिनिक्स तेरे पे अल्ट है बाद में कंफर्म करियो गुड ट्राई थैंक यू वो रश कर गया मैं क्या करता क्यों कर रहा है मत कर बिना बात तेरे पे अल्ट है अभी अरे वो तो स्पाइक लेने आएंगे ना केजे अच्छा खेली केजे अच्छा खेल गई लेफ्ट साइड है तेरे आया फिनिक्स फ्लैश निकले अब ले फ्लैश करना लेफ्ट को है नाइस बॉम्ब ड्रॉप है वापस से हेवन आएगी डिटेन हो जाएगा वो छोड़ दे उसको नहीं हुआ बस फिनिक्स तेरे अल्ट पे खेलियो हां ये क्यों एंगल पे देख रही है फिनिक्स मत देख एंगल मत देख ये वाला लॉन्ग एंगल देख रहा है मर जाएगा यार सेज वहीं पर थे बीमेन थी वेंट रूम आ सकती है किल जॉय 30 seconds left. क्या कर रहा है किल जॉय Found them. वेंट ये वॉल तो नहीं कर रहा आउट आ गया अबे वॉल तो नहीं कर रहा गाइस राउंड है यार अबे एक सेकंड ग्राउंड ठीक है किल जॉय वॉल तो नहीं कर रहा वॉल के थ्रू उधर ही देख रहा था नाइफ निकाल के बाय चलो भाई तुम ही कैरी करो मेरे से तो हो नहीं रहा अभी टेंशन मत ले ना वो एक मारा सारे वहीं पर खड़े हैं और किल जॉय पता नहीं कहाँ पर है बी पे यहाँ से भाग जाती है कहीं मैं पीछे से खेल रहा हूँ
बी पे अगर तू भी साइड से खेलो। मैं रूम से खेल रहा हूं अंदर से। अंशु एफ के तो नहीं है फाइट ले रहे हैं मेरे पे। बी कोई आ रहा है क्या मेरे साथ? मैं बी अकेले हूं गाइस। अंशु खेलना भी उसके रीटेक साथ। खेलेंगे बी। नहीं अंशु बराबर, अंशु अपनी पोजीशन पे खेल रहा है। अंशु को ए पे इको है इनका शायद। एक लग करेगा मेरे पे, मेरे वाले के लिए। यार ये इको फ्रैग लेगा ये। भागते भागते मार रही है यार ये। बी पूरा क्लियर है काइडो। एक और ऊपर। अरे -124 के। One enemy remaining. वही हेवन होगी, हेवन है। ओमेन 40 साइड मेरे पास ना आ रहा हूं। Last player standing. निकाल वाच में राउंड रैंस का। किधर मार्क कर रही है? बी का? बी जा। सिटी स्पॉन क्या? हेवन आएगा ना, आएगा भी तो, और उसमें भी टाइम है अभी। मेरा एम इतना क्रिस्प नहीं रह गया सुबह जितना। पहला फेक होने वाला है। वापस जाएगा यार वो। Thirty seconds left. Spike planted. टेलीपोर्ट मारा उसने। हां हेवन ही मारा होगा। अंडर हेवन भी मार सकता है ना। हेवन मारा है, हेवन का प्लांट है। हेवन प्लांट दिया उसने, ऊपर गया। Out of charges. वेट कर रहा हूँ कैंसिल कब करेगा। मैं देख रहा था कैंसिल कब करेगा, करना कैंसिल करना। वो लो वॉट पता नहीं। किलजॉय बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है भाई अपनी। तीनों शायद उसको स्पैम में टैग दे दिया। नहीं मैंने उसको 40 दिया था। इनका इकोनॉमी खराब होने वाला है। 40 दिया था ना तूने? हाँ मैंने उसको 80 मारा। मैंने भी 40 दिया उसको। मैंने 80 मारा भाई। ए पे आ जाओ ना यार, ए पे मेरे को लगेगा। रेना है तेरे साथ, रेना है। वो लोग ना रैम्स रश कर रहे हैं, रैम्स रश कर रहे हैं। ठीक है फ्लैश पे खेला था और इन्फो दे दिया अर्ली राउंड। ओ है बे 90 यार, एक दो बार ही हुआ है अभी तो, इतना अच्छा नहीं खेल रहा मैं। वाचिंग अपने पे मिड। ए हो रहा है। चल काइडो चल। आ गया मैं। लड़कर आता है बाद में देखता हूं इसको। हां हेवन आ रहा है। अंशु मत ले। हेवन आ रहा है। बूम बोर्ड छोड़ रहा हूं मैं। मिड रुक। बूम बोर्ड छोड़ के जा रहा हूं। Bomb buddy out. बढ़िया यार। फायर इन द व्हाट मेट? बॉम्ब ड्रॉप। बी हेवन। वेंट रूम। इनसाइड वेंट रूम। अभी भी सीवर्स है। या वन इनसाइड वेंट रूम तो। या वन इनसाइड वेंट्स, वन सीवर्स। बॉम्ब ड्रॉप मिडिल बी हेवन के बाहर। वाला मिड आ रहा है। हम प्लांटिंग सीवर। हेवन गया शायद। फिनिक्स साइड जा। वॉक करके साइड चले जा। बी पे वॉल बना दिया उसने। बी प्लांट भाग के जा। बी प्लांटिंग। काइडो लेड है तेरे पे। One enemy remaining. ऑन साइड अंडर हेवन सी काइडो। मेरा लैग हो रहा है भाई। मत थ्रो यार, ऐसा थ्रो क्यों कर रहा है? अरे लैग हुआ मेरा भाई। बीमन गई अंशु, भाग के जा, हाफ स्टिक कर दे। बीमन नहीं गई रही वो। बीमन का प्लांट है ना। राइट साइड पिलर पे साउंड आया। पिलर पे ये ना यहीं राइट साइड में। हाँ यार बॉम्ब टैप तो करो भाई। वाओ अबे नाइस। अंधों की तरह खेल रहा है। हट यार, पूरा टेंस राउंड था यार वो। इंपॉर्टेंट राउंड। अरे वो मिड पे जेट, वो सेट से 2 लोग मरना नहीं चाहिए था यार। 5v3 था यार। वो बी हेवन से रश किया लास्ट में मरा है। नहीं वो बॉम्ब ड्रॉप किया मिड पे, और फिर वो बी हेवन से बी हेवन आ गए पूरी। आई थिंक आई शुड नॉट प्ले। मेरे को राइफल लेके देखो, वैसे भी तरह नहीं हो रहा ना। मेरे को राइफल मेरे पे अल्ट है बे। क्या हुआ पता है मेरे को वो दे। स्पेक्टर दे। फाइमन रश नहीं कर रहे। स्पेक्टर मार ले स्पेक्टर में। बढ़िया। एक क्लियर है। Okay. 3 मिनट।
होल्ड करो मिडिल में बी हेवन. कैसे पता है इसको यार? 80 टारगेट कैसे पता है उसको? फ्री फायर मार. Jets grounded. City already. City 1. दो सिटी. अबे यार. प्रो पा रहे हैं. 3 सीटी. Player 126 in 1 मुंह पे अल्टी मारा यार. You did well. चलो ये किलर थोड़ा साथ में राउंड क्यों नहीं करता ना. वही ना यार. अटैक साइड पे सिर्फ 2 ही राउंड निकला, वहीं गड़बड़ हो गया. फोर्डियोलेस चाहिए यार. फोर्डियोलेस चाहिए. तभी कह रहा यार फोर्ड वाले रैंक में नहीं करना चाहिए यार. ये सब रैंक में नहीं करना चाहिए. भाई मेरा रैंक अप गेम था यार. इतना ट्राइड किया मैं. यार 21 लॉस हुआ. कैसे मिला एमवीपी? किसको? थंडर कैक को एमवीपी मिला. मेरे को बेट करके किल ले रहा था भाई वो. फुल ऑन पीछे खड़ा होके किल ले रहा था वो. भाई मेरे 5 एंट्री है. अभी वो उसका मैच कब है गाइस? चलो भाई हो स्टार्ट होने वाला है क्या? कितने बजे? जा रहा हूं सोलो के जा रहा हूं. कुछ होगा. रुक जा काइडो रुक जा. चलो बाय गुड नाइट. गुड नाइट अंशु. आ रहा है क्या? हां एक सेकंड रुक जा. चेक करने दे मेरे को कुछ. जल्दी अभी चल रहा है टाइम 9:15. मेरे को जाना पड़ेगा शायद. जा रहा है क्या? शायद जाना पड़ेगा मेरे को. शायद का क्या मतलब भाई? अरे देखने दे. किलजॉय की वजह से गेम गया. नहीं यार गेम मेरी वजह से भी गया भाई. बहुत ज़्यादा मेरी वजह से भी गया. इतना तो मेरे को भी पता है. मैं किल ही नहीं ले पा रहा था. मेरे को पहली टैप पड़ जाता भाई. क्या ही किस्मत चल रही थी मेरी. मेरे को भी नहीं पता था. यही चल रहा है ना अभी. नावी वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी. You just keep rolling right now. So Navi, this is the thing, you know, it's worthwhile to point out that I was putting a lot of emphasis on their CT. ये खत्म होगा उसके बाद वो होगा अपना शुरू वॉच पार्टी कर. लगा दे नावी एंड कॉम्प्लेक्सिटी. देखते हैं जरा. Much figuring it out, and so that's why it was so key for Navi to get that strong start at the beginning of the half. Bye KaIdo. क्या? नहीं मैं ये वॉच पार्टी कर रहा हूँ. मैं वॉच पार्टी लगा रहा हूँ. ये डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम करता है. आइडो का लैग. अबे हां भाई मेरा लिटरली लैग हुआ भाई. इसका लैग हो गया था. मैंने देखा था. लगा दे नावी वर्सेस कॉम्प्लेक्स. लॉस आया था भाई. वो इंपॉर्टेंट था पता है. और अंशु भाई डिटेल हो गया था उसके सामने. अंशु वॉक मुझे समझ नहीं आया. अंशु ने वो नाइफ क्यों निकाल लिया यार? This round with the last round with 5, the one before that with 4, so just a lot of money suddenly stacking up on the CT side. Those are all great signs, and the double up obviously staying alive and staying put. So जो स्क्रॉल से करते हो ना आदत round gap. मैं स्क्रॉल नहीं है भाई at this point in time. इसको भी इतना हुआ है ना मेरे साथ स्क्रॉल वाला. It's shaping up for a 30 rounder, bud. It's brilliant, isn't it? JKS and Blamef over at this B bomb site. Again, not fighting for banana control, which means Navi could set up everything here. And I mean, when I say everything, I mean they could firebomb this bomb site from out here. They can smoke off JKS. They could essentially leave, and especially because JKS has the AWP, for him to push through the smoke to help out Blamef, that's going to be very hard to do. So if they've realized that, and I'm sure they know that JKS is probably playing that position, go for it and leave Blamef to fight on his own. Already a couple of smokes coming in. JKS is actually pushed in front of it, which again is really important because Blamef is alone and he's going to get shut down by Momich. And I mean, JKS, I'm impressed that he sticks around. It's so brilliant to try and do that. And Yugi taking down Electronic. So in spite of a very, very good idea for Navi, it's actually Complexity to come out on top there in a 4-on-3 now. But the bomb is down. Bomb is down, but look at all the nades that Complexity have to work with here. Config but is late to the party, but he's just hai worried about there being a flank towards mid. It is still Bit who's going to be Navi or banana, Complexity but he's got all that way to cover. The rest of his teammates now starting to make their moves though. They've got all these nades, and there's Yugi point blank taking down Bit, traded by Simple, but it's still a man advantage. Although Simple has something to say about that. Simple with the triple again, taking him out. Bye. It's all on Config versus Simple. Yugi and JK. Simple and triple nikal diya bhai. Config all the pressure, but he's not going to. Simple takes him out. And Navi, 13 rounds. Simple ने 4K निकाल दिया guys. Count on Simple to get you through yet again if you're Navi. I don't even know how does the grenade not kill? I think the grenade hit him.
He had 40 health in the corner. I'm pretty sure Conflict's grenade hits him and still just doesn't do anywhere near enough damage. Yeah, Oh, see. मुंह पे पड़ा नेड उसके. And he's down to 8 health. Wow. Wow. Wow, guys. Wow. Seriously, Looked wow like ही there was an बोलेंगे और क्या earthquake बोलेंगे at the इसको? same Wow, time. ही wow वाला reaction है. There's a Wow little bit वाला of pressure there. A moment little bit of pressure. Simple Oh, ही right. इसके live match में Dude, वो that अरे shit, मैंने- like Rush has been अरे so रुको, good, रुको, रुको. so like all match long. मैं दिख नहीं रहा था क्या? पागल हो गया था भाई. भाई पागल हूँ यार, sorry यार. Lick That's जो a मारी painful थी loss. उसने Because he needs comeback the और spacing was almost good, हो ही everything गया was था. good. He needs to get that kill, and he doesn't. And so dropped the New ball a little pick. bit there. The kind of shooting that Simple was doing there is the kind I just don't think I will ever learn that, where you're initially tapping and then you have to change from the tap into like a burst and then into a full-on spray, and it's like how like at that point in time. I think it's called 10,000 hours. worth BCR of, आजकल Honda बहुत minimum, चमक right? रहा है. Honda ना बहुत ज़्यादा. होंडा ने वो डबल एज जो निकाला था उसके बाद से अच्छा चल रहा है. Simple Triple flash is away from the middle. Electronic is certainly ready to try and put on a little bit of a show here. Oh, and they actually catch the boost out. Now, think of Complexity hitting that quad side towards the pit and the A-bomb side. That's not something we've seen out of Navi yet. So, I mean, that's something maybe they're just saving it to try and do that a little bit later on. They've been really trying to get that banana fight, and they're getting that B-bomb side a lot. So, wait, Yuki's burning alive. How is he? He's just sitting inside of the fire hoping for a fight. And JKS is alone. ओह नावी लीड में आ Yeah, गया. they've Yes been bro. right. रुको मैं एक बार फोन पे बात JKS, करूँ. शायद खाना he मेरा got that kill last round, खाने का बात करूँगा. तो मार रहा है सिंपल. If only he'd had an M4. If only he'd had an M4 in this situation. जिता के जाएगा. जब Simple चलता है तो हारते And नहीं again, हैं. actually, this is reminding me very much of a what was it? A point that either Maniac or Pimp made on the desk in terms of, I think it was Pimp made the desk in terms of like, why is it that you actually go for the double AWP? You know, you're expecting a more dual heavy kind of approach. You're expecting more JKS तो करना पड़ेगा कुछ. ones, and so you just get those ops in. But क्या करना पड़ेगा? Navi is a lot of execute. JKS तो कुछ करना पड़ेगा. नहीं smoke out हो गया. भाई बेट अबे तू उस पे देख Twitch पे देख. You know, these ops are Discord में live जाऊँ क्या? Discord में live जाता हूँ क्या? इधर YouTube पे थोड़ा लेट चल रहा है ना. हाँ, Twitch is better. Some of the different maps that you might see later on. I mean, like Mirage is one of those maps where even then, you know, you can throw, let's say it's a bomb side of Mirage, you can throw a smoke to block off any AWP player playing towards CT spawn and that ticket booth, but you can't completely block them off. Like, they can jump on top of the box. There are ways around it. That's not really the same case here on Inferno. There are many places. ये अबे ये कैसे भाई? Coffins towards CT spawn. It'll completely block any AWP players playing, and then they Idea actually, भी as a कैसे लगा minimum, भाई? they have to sort of push through it, like Smoked JKS out was है ना, तो doing in the उसने boost previous round, expect which is किया. very cool. नहीं वो मतलब But it's just not. उसने देखा कैसे? दिखा ना उसको दिखा. हम मुझे दिखा भी नहीं यहाँ on पे. this map, then maybe शायद उसके पहले एक राउंड में लिया होगा उन लोगों ने सेम. most of the time on playing Dust 2, I mean, you can try and look around them and पर you'll सिंपल probably ही be मरा alright होगा with उस that. बूस्ट पे तो. So I don't know. I'm not saying the double AWP is a bad idea yet. Oh भाई -13 HP but already. it has some real weaknesses. G2 और Astralis अभी किसका support? G2. In Europe? Is he on his own? Is he in a hotel somewhere on his own? G2 whatever I यार. don't know. Does he have like a bed made of gold or something? Good point. Yeah, very high standard. I'm sure he's living very high standard. But like, you know, like, does he have any human interaction during this lockdown? Oh my God! क्या मौली क्या रहे हो इन्होंने? मैं पूरा displace कर दिया चले. That's already the push is coming through here. Like, here we go. Boomich moving Oh, on. electronic पे spot किया ना. Around Arch. Rush. Actually, that's a massive kill. Blame goes down, and Boomich toying a little bit with Astralis Rush, but he's gonna fall back in as JKS also picks up a kill. He's alone on the bomb site, and nice kill. That's a great. Guys, thank you so much for the raid, bro. Thank you so much for DBZ raid. Oh my God, भाई. Oh my God. Thank you so much for the raid, bro. Guys, enjoy करो हमारे साथ ये match. बहुत अच्छा match चल रहा है. Navi versus Complexity. Very nice. He's got this lined up. Are they gonna try and run boost their way into it? Nope. Thank you so much for the raid, guys. पहले ये बताओ किसकी raid है मुझे ये बताओ. Still gonna make it in here, but they're on a very Thank you tough so much for the mission. raid, brother. JKS, I think he Thank you knows. so much for the raid. Staying alive is the main mission. Ooh, भाई, good kill. बहुत अच्छा secure किया यार उसने. I think actually JKS is Incoming का smart क्या for मतलब है? not आज ही fighting, किया. because he knows they'd already run past. Subscribe You know, कर दो could have been guys. tempted to Subscribe go कर for दो. it. Out in the open, Boomich with a भाई, little bit of spray spray. down, come To on. left and Movement. reloading. Yeah, back चलो, around the nice. corner. There's the AK out instead, and they're right behind him. 1 versus 2. Oh my God! JKS, JKS, oh my! He's got a kit. कर लेगा हो जाएगा It's gonna be यार. too late, and Yugi, he'll win the one-on-one without firing a single. DBZ है कौन? ये तो बता. Velfonous. KaIdo, and it makes it a very Yeah, thank you so much for the raid, bro. Thank you so much for the raid, bro. That's Kashma raid. Kashma कौन है? And then all that madness as well. Yeah. So dude's getting kills Boomble left भाई and right. क्या He's ये trying to make boom it happen, bits, but it bro. just isn't He's quite like the enough. race boom bot.
now for Complexity, and this is Boomish is holding his intense own. moment था वो. But you're right to point that out. Only a single AWP. Oh my God, they can भाई. afford form में आ रहे हैं, ये लोग Complexity. हाथ Guys नहीं having to सकते skimp and DB go is a on good SMGs team. just so they can DB afford is nades. the god team. Not the best economy Complexity. Losing ये everybody वाला in that flash round बहुत like अच्छा that है. is just going to make This their flash lives is एंटी फॉलन अंशु ये एंटी फॉलन फ्लैश करने के लिए हमको ब्लाइंड कर देते या ये हमने जीशु के टूर्नामेंट में किया था बहुत बार. Navi have Can set I join themselves up DBZ? to win the series useful right here. flash. If they win this round, good Complexity kill, are good kill. completely Good trade. broke. And Navi are going to be just fine no matter how many Oh, rifles they conflict, lose. So conflict. Oh, this नहीं, is नहीं, very नहीं. alarming, isn't it? किधर देख रहा है? Wait, has the Sneaking read? up. Is he going to check the Oh, corner? देखा देखा Oh, देखा. wow, the नहीं, feed. oh नहीं यार. I don't know. That could बे have वो been a लोगों ने resolution अवॉइड or कर दिया just his यूकी ने मार eyes दिया were somewhere else, but that was अबे उसका हाथ दिखा था that उसको. was an important हाँ call to दिखा get. तो था Instead, एक्चुअली लेकिन they're going to lose control of this side of the map, and again, they're just stuck out here on Banana with no real chance to reclaim the rest of the map. So it's going to be on JKS. I'm kind of shocked Come that on, Blame come F on. isn't अगर at वो वापस least से ऐप जाते moving तो शायद वो closer, लोग चेक नहीं करेंगे अभी leading it इसको all up to him. ओ and ओ the मौली Molotov's सही है gonna मौली rain सही है down on मौली top ने of निकाला him. पर. He doesn't have a smoke नहीं to नहीं put it नहीं out, नहीं so निकाला if मौली. it's JKS Brett, नहीं बैठा he's in उधर. trouble. He peeks Oh into my it, doesn't God. get the kill, but Oh they my get almost JKS. Oh my God. This man is JKS, insane, bro. And they're going to go pick up the इलेक्ट्रॉनिक है भाई कुछ भी कर सकता है बंदा. ये कर लेगा मुझे लग रहा है कर लेगा. Yeah, that's नावी का. everything he नाइस needed स्पैम to खाएगा do. स्पैम नहीं खाएगा. नहीं Talk नहीं about coming नहीं. alive when his team needed him. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Electronic. ठीक है If भाई. it isn't simple, you Oh, got boy. electronic for ठीक है Navi. भाई. When Navi needs somebody to step up, Guys. it's one or the other. You can see it on Simple's Simple face, man. The hype is going to come through there. That is JKS कितना incredibly गुस्सा हो गया होगा भाई. He's- I mean, unless pushing through the smoke to catch him, he just barely gets the AK out in time. ये पता है Oh ब्लेम my अप का किल था एक्चुअली ब्लेम अप का You किल था can ये. see Yugi's also thinking, okay, well, it's fine. Like, TN I'm is not back even कैसे first सर? in line TN for this. गेम What's the देख रहा है. मैं problem? तो अच्छा हूँ. गेम देख रहा है. Dear. ओ भाई And again, the साहब क्या money- क्लच था यार. That's devastating. अबे They won that round. भाई JKS इसका गलती था giving भाई. them that round. ब्लेम अप कहाँ का ब्लेम अप. Man, JKS, how does that feel too, man? JKS Finally भाई you ना get a भाई chance. JKS से खत्म हो You गया. shine and ब्लेम your अप सॉरी teammates जेके fluff it. ब्लेम अप ब्लेम अप Oh my God, oh my God. Charging in, Blame of 2 big kills. चल ब्लेम अप ने Go with the UMP. Oh. Eats a dude. grenade. कान पे And पटा है. Complexity, कान पे the पटा fight सही में. continues a bit longer here. 4 versus 3. Yeah, I mean, some health lacking on Boomich. A lot of kill guns ले लेना, lacking on Boomich हो Complexity. Let's see. रश रोक Let's see. देगा. I think He's so. been rush delivering a lot. नहीं He's back at यार the site. गया. The Molotov, he's going to गया गया. put it देख out लिया. almost immediately, but there's going to be just Oh, more fire भाई. raining into his position. स्पैम खाएगा स्पैम गया खाएगा. गया They गया know गया. where he Almost is गया. back here. खत्म खत्म. And Oh. he still gets a headshot. They had him movement होता है वैसे भी, completely doesn't boxed matter. in. They did everything right. Oh, And all he needed was oh, one. नहीं, Now नहीं, नहीं, Electronic is going to be moving up, trying to get in his position. Now, he नहीं, gets इसका a little गलत bit level of पे a game gap. जा रहा यार है. थोड़ा If he'd कंट्रोल waited, Bit maybe he could have चुपचाप done निकल गया. something, but दोनों के पास गन has थे managed to sneak his way in. What थोड़ा is take this it mad round? इसका राउंड है. Bombs अब ये gonna तो be इसका planted. राउंड है They भाई. do फुल not ऑन have a इसका kit. राउंड है. So बहुत टाइम है इसके ये पास. हाग नहीं they're not सकता. fast about this. They don't even. Jami, welcome to the live stream. जल्दी उनको जल्दी लाइक घंटे मिल करो. रही है I think they इन were लोगों को. double checking B. Now they know. Yeah, just Like making sure करो, real जल्दी quick जल्दी से, before we जल्दी fully जल्दी go से. for this long rotate Sexy over dick and shot humiliate भाई. ourselves. Oh, but the lack Dude, of a talk kit. about the lack of, no, Oh, talk दोनों about long the है. fact that it comes down to bit now. 1v2 clutch. Let's see it. Info आ गया भाई बंदे पे. He's been playing, I think, better than advertised at this point in time, so I wouldn't rule him out. They do have a Utilities नहीं है. Molotov, so if they know that he's up here, they're going to throw it, and you might as well commit. Oh! He charges in, gets the 1, 10-second defuse inside, and Oh, Benny goes down. no, my God! Navi won And that this. means Navi going to be at 60, knocking Complexity out and taking it on all 3 maps. What a game this was. From overtime on Mirage and Nuke, the full revenge from Navi, and then here on Inferno. I mean, it's everything भाई we वो want out of मॉनिटर Inferno. करने के बाद Brilliant रश मरा ना match. है. ये कौन मरा? Laminate हो गई. Just we got everything we needed out of Navi. 2 monster clutches from the number. Oh 2 God players, भाई. the number क्या 5 player. गेम है यार. ये Yeah, they intense come bro. I miss together, CS:GO यार electronic जो and ऐसा खेलते थे हम simple. भाई. Those are amazing clutches to win. I it in miss the end. CS:GO That's that pretty much all I it comes used to down play to. like this. Without this happening, we're looking at Complexity winning. That's it. Oh my like God. Complexity get that round at the end, and they go on. Thank you for through. subscribing, So, Whiplash. Thank you for just subscribing. such brother. a match. What a Yes, match! मैं And the देख star रहा हूँ power sir, that but Navi I'm have to fall sad. back Simple on. It haven't just makes all become the number 1 difference. player in It 2020. really does, and you Bhai, know, why be you sad, still bro? look at the Simple ने way हमको that दिखा Complexity दिया वो play क्या this. चीज़ है. Obviously, so much to work with. Obviously,
say, you know, if they could just get that stability that you've been talking about a couple of times, you know, get the real lineup up and running in some fashion, like the core of this team, there's so much to work with. I mean, it's really impressive. F was asking, you know,
Père Noël for, you know. Yeah, क्या लिखा just है? something, If anything. movements has no I fan, mean, that means I'm no more on yeah, this they earth. just If played the world number 3 against team in the world, Boomel, and they I did such a am good against job. the Let's see world. what the I desk know. has to say about all of उसका नाम this. बूमल नहीं इमेज है अबे मैं ऐसे पढ़ रहा था यार. What a I'm so great sorry. third map मैं coming bitch our बुलाऊंगा. way. आपको कुछ No, we problem do है? manage to take the win, but certainly भाई there's many surprises. क्या गेम क्या था भाई match है बहुत यार. टाइम से All of it, mate. बहुत टाइम से नहीं देखा भाई क्या इतना अच्छा match है गेम यार. बहुत टाइम से भाई ये लास्ट मिनट जब G2 का ओरिजिनल लाइनअप था कैनिया स्क्रीम वगैरह शॉक्स वगैरह का तब देखा था लास्ट मैच मैंने ऐसा. अच्छा G2 वर्सेस लिक्विड ना हाँ वो भाई वो कुछ भी तो शॉक्स भी कुछ भी मार रहा था भी कुछ भी मतलब ट्विस्ट ने लास्ट में क्लच भाई बंदे देखते ही हेडशॉट जा रहे थे बस. मैं इतने टाइम से नावी को सपोर्ट करता हूं, इतने टाइम बाद खुशी मिली भाई. हम भाई कल भी जीत सकते थे वैसे सेकंड में अपने ऊपर सिंपल का खेला था भाई सिंपल डिजर्व करता था वो मैन अबे सिंपल ने वो स्टूडियो को मारा था ना वो वॉल बैन. वही गंदा फ्लिक. Simple saved them. Electronic saved them as well. There was a ninja defuse for complexity. सर एक बार सीएस को आपके साथ खेलने का बहुत मन है सर. 10 खेलेंगे बिल्कुल खेलेंगे People सर. may not believe it, right? But in the green room, about 20 seconds before it happened, there was a man called Maniac who predicted it was going to happen, Pim. You could see. Oh my God! कौन है किसने बोला कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नावी जीत गई. Oh my God नावी जीत गई. Simple sneaking in behind the sandbags. Simple you got a feeling. Got that little feeling. कह रहा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा मेरा $90 लगा हुआ है. I G2 couldn't जीतेगा see देख the लियो. part up just a little bit, but Simple already at this Palm point है being जीता. aggressive, going in here. Liquid For भी जीता. complexity, sure, it's well played by Liquid का Simple. match They है, Simple ठीक है. भाई निंजा कर गया ये at देख. this level, they have no reason whatsoever to leave the bomb. Ninja कर Sure, गया. all the credit in the world for Simple. It's amazing to भाई pull off सिंपल ने तो defuse भाई like क्या this, निंजा but किया था the भाई. complexity. वही तो देख as you निंजा said, कर you गया. gotta feel roughed and you gotta feel a little bit Be simple. Now I've got some भाई, magic for क्या you. देखा guys. था? You're मैच gonna देखा love था this स्टार्टिंग one. से. We नहीं get नहीं to अभी hit अभी the लगाया mic 15 top नहीं, right आलो now मैं with कहूँ this तो. one. 10 मिनट पहले लगाया. सीएस खेलोगे अभी. खेलेंगे अभी खेलेंगे आफ्टर दिस. अभी इस वाले मैच के बाद जो आएगा अभी. आपको स्टार्टिंग से होगा ना. हाँ अभी होगा ना. कितना टाइम लगेगा? होगा आधा घंटा. When it mattered most. मैच हो जाएगा. नहीं मिलूंगा. वही तो करना है 20 मिनट में करना है. G2 जीतेगा. 20 मिनट नहीं 40-50 मिनट लग जाते हैं हमको. Тихо, не надо. Нет. Я, может, за ниндзя дефу, если мне не чекнул. Второй банан ушел. ये देखो इनमें से कोई भी मजाक नहीं समझ रहा. इनमें से कोई भी मजाक नहीं समझ रहा. हम लोग Третий मजाक из समझते церкви हैं ушел. हमेशा. Четвертый уходит. मेरे को ले कुरवा करके बात करता हुए तो इंग्लिश में कर I रहे guess हैं. smoke tissue that. They're just saving. Oh my god. Мы взяли раунд. मैं चल रहा हूँ. Хорош. अबे ये क्या है? रिएक्शन ही नहीं है. बस. अबे रिएक्शन ही नहीं है. क्योंकि पहला जीतते हैं ना. It's fine. I don't need for it. क्या it's fine. I love that moment, right, where Buric is saying the देखो simple, एबिस भाई "Oh, you're कल gonna मैंने come now?" लिक्विड का सपोर्ट And he's किया. like, लिक्विड जीत "No, गया. I आज don't ऑस्ट्रेलिया need to." जीतेगा. Let's see. It's a pile-up of elements. As you welcome. it's the fact that Blameff thinks he's got a huge timing in ruins, closes down CT spawn, doesn't see anyone. It's then electronic saving has gone on A, and you can hear it from the team speak. इलेक्ट्रॉनिक में जो 1v3 निकाला था ना भाई उसके वजह से जीते हैं. 4 था. And did you see the नहीं communication? 3 था ना. 4 था ब्रो. बनाना भी मारा दो था. सीटी एक बनाना और एक ऑन साइड. Fourth one is हाँ ऑन साइड वाले को पहले मारा था. at that moment. Stellar. There's got to be content ऊपर चढ़ के. सिंपल के निंजा वाला राउंड बताएगा कोई. you know, यहीं पर था. स्ट्रीम बैक करके 3-0 स्कोर चल रहा था. 3-0 या स्ट्रीम बैक करके देखिए यहीं पर दिख They were जाएगा. being relatively calm. Neil the coach said, "Don't worry about it, guys." और without reaction वाला It's the देखो. beginning of the game. Sure, it has to be, but you know as well, Maniac. On many teams, they could have been the killer. Now, there's a lot of moments we can talk about when it comes to Simple as well, but Electronic is a man we have to look at the same time. Yeah, he stepped up again. We called him out after day one, and there's a clip that we have to show you a little bit later down the road where Electronic is saving them again in a clutch situation. ये वाला Again on the round B था. side, हाँ, 1v4 ये था. जेके इसने बेचारे ने अच्छा मारा मालूम है. Navi really decided to apply some pressure. Now Electronic. ये यहाँ पर ब्लेमर फकेगा. अभी ब्लेमर फकेगा. Planning the bomb. One वाली This is हरकत just कर where गया. you can स्मोक see the पुश. talent coming in. Complexity rushing just a little bit. The flash is Where are they? Gives them the time to shoot. Replacement from Yuki is faulty, and here this is just talent.
Electronic, उसको तो JKS का भी position मिल गया ना, उसने flash किया था. but he massively stepped up on Guys, that game. like I think and on the first subscribe map, if he you're was the new. one buying time for Like Navi and to wake subscribe. up. Let's go. And Share here भी again करो on अपने Inferno, दोस्तों के साथ, अपने very key. clanmate के साथ. Now, Complexity are eliminated from the tournament, but we didn't come in here with high hopes for them overall. Complexity They तो gave a good eliminate effort. हो They गए ना. certainly Next fought match tough 30 minutes against a में, team like Na'Vi, but you got to say for these guys, the future now is all about finding a fifth Na'Vi, man replacement evil for genius. Poison for the time being. Oh, Because we don't G2 know when he's going versus- to come oh back. my God. Is that Yugi? We're not too sure. This is It's going not to going to be good, Yuki bye. for the future. This I is don't going to be think good. so. I think I hope for Complexity's sake and for Poison for that matter that he comes back into this lineup and we G2 get to versus see them Astralis. मजा आएगा give it a देखने. real go here in 2021. Maniac said it himself, you know, JKS coming into the lineup. They haven't had a stable period. They haven't had time to Sachin really bhai, like कर showcase दे, the जल्दी real से, जल्दी से potential. like कर दो. Another player we got to mention here, JKS, he had a terrible series of all. Rappy, As said, Alpi. I think he's a player that thrives. So मैं खाना खा कर आता हूँ. खाना लेके आता हूँ. Everything is going as it is, but when मैं भी there's so आके much इधर stuff बैठने going वाला on, हूँ. मैं भी you इधर ही know, बैठने वाला हूँ. both हम on and वो off the कैमरा server, ऑफ I कर don't think दूंगा. JKS is the आराम type से of player that discuss steps करेंगे. up in the occasion. So you need to elevate him. You need to get him feeling comfortable. And yeah, this tournament wasn't good enough for Complexity, but I guess this is exactly what we expected. Yeah, you can't be too harsh on them considering the hand they were dealt. But for them, right, and for Na'Vi going forward, actually, this is now where things need to really rise up because this is the easiest opposition you're going to have. I agree with you, but I also think that we've been at this very desk during different events having the same conversation over and over again. Navi barely staying alive in a game मेरी they should favorite team win, है and then G2. suddenly सबकी for some favorite team है reason the G2 level यहाँ just पर. ramps अंशु up, का है, everyone plays a little bit better, and they're going to win the tournament, right? But they could absolutely win the tournament right now. So they have survived a very dry beginning of this tournament. unknown है, Fair यार, enough, गायब हो they're गए. in the loser bracket, but they can fight back. I'm 100% sure. 100% sure. Well, let's see if they do fight back, that's for sure. We've still got 2 more best of 3s coming your way. It may have been a fun and exciting start, but at the end of the day, we're looking at Team Liquid taking on Vitality. But before that, we get Astralis taking on G2 after the break. G2 का D2 strong है. हाँ भाई, बहुत ज़्यादा strong है G2 का team. इनके वो देखे तूने फेसिक मैचेस वीडियोस? सारे देखे मैं. पर मेरे को G2 पसंद है. हार जाती है. पहले हार जाती थी यार. मतलब उनका जो पहले वाला रोस्टर था, गॉड टियर रोस्टर जो था 2018 में 2017 में. Honestly, I would say I'm pretty average. I still think it's pretty good for how old of a man that I am. If you want a great reaction time, you should ask a guy like the Pre or Magisk or something. I'm not one of the most talented players, but I think I'm a pretty good player, so probably decent. I'm not so confident in my Sivinder tryhard Furia कर रही है आजकल. Hopefully, I'm gonna beat one of the other guys. रुको. Ooh, not that. No way! This thing's a scam. Oh, that's so bad. हम करेंगे, हम करें. Okay. I don't know what decentness in this, honestly. My mother has a very good reflex. Ah. I'm not great, but I'm good. My mom's better. I need my heartbeat to go a bit up. Oh, मुझे उसकी आवाज आई, मैंने क्लिक कर दिया. Oh my god, that was actually pretty good. 175. I'm feeling the choke, you know. I started choking. इनसे तो अच्छा ही है भाई. मेरे को भी करना है. Pro player से तो pro player जितना ही है. I don't know. It's good or not. I don't know. You know, as a bald man and an older man, 191. things tend एक to और करते generally best just of three start होता ना. slowing down. I don't want to make excuses. Oh, that was very bad. Okay, not ideal. I think it might be like the 50 191. hertz Around monitor and 170 to stuff. 200 I don't के want to बीच make में मेरा. excuses. That's what it is. इनका तो काफी ज़्यादा है यार. Yes, I knew it. I'm feeling the choke getting out. Yeah, that's a young man score. That's a young man score. 183. To be fair, it's really early. We're not used to. We don't start practice yet, so that's my excuse. Are there any in-game leaders who have done this that are over the age of 30? 5-4. 164, that's pretty good, but maybe some of the other guys is trying to pre-fight and stuff. So if they hit a 192. really वही है good अपना one, regular then है maybe they're 192. lucky, but this should be easy for me. Is that the champ time or what? I'm pretty sure it's like just 195. below. Yeah, 190 to 180 के आसपास. Ooh. Average 180 है मेरी. Whoa. Alright. I'm already satisfied now. We'll take that. That's 217, average. decent It's यार. different conditions. I didn't think I'd be 150 taking to part in this 200 kind is of a the competition. best. I wasn't उसके really ऊपर fully is prepared. bad. I don't want to make उसके नीचे excuses. is god It's like. admirable, you know, on a laptop, God-like. on a trackpad. Subscribe I'm and pretty like pleased if with you how are new things to turned the out. stream. Like का बटन दबा दो कभी. स्टील तो उम्र हो गया भाई. स्टील की उम्र हो गई भाई.
Seal is very old now. Seal is like बुढ़ा हो गया. They can be पहले अच्छा defeated, था, but they are Seal is still now fighting to get that. probably Bomb about sight to be just down to retired. device, and he should not be getting away with much here. He's going to get one more kill. Glaive try and make sure they don't recover the weapons, and that is really important. Job well done. There's enough firepower within G2 to beat most teams. Emanet gets wrecked. Nexa and Hunter, that's the answer. That's the response they need. And Hunter, well, he just slips back down into the van case. Nice. Auto gets cleared off the board. This next matchup is a big one. It's an Astralis that can still bleed. It's an Astralis that can always bounce back, though. With G2, they're supposed to be the dream lineup for these guys, but they've not quite hit the mark. And when we start off these things, we've got to start with G2 because there's so much potential. There's so much firepower. We talk about all the positives they have here, but we're yet to see it really come together. And okay, since Nico's come, it's not been a massive amount of time, but I was expecting slightly better by now, I think. I think what you're describing is that when you recruit Let's a player go, like Nico, let's it go, comes attached with G2. expectations of result and performances, right? And when Nico joined, we were ready to give them a little bit of time, giving him the possibility to find his groove and his place in the structure and how they were going to play now. This time has now expired. They've been together for a while. These should be the times where we see results coming out of G2. You want to fight at the big boys table? This is it. The Blast Global Final. There's $1 million on the line and all the best teams, the top 3 in the world is here. This is where you make a mark. In a series like against Astralis, this is where you say to the world, you take maybe one map off. You beat them. This is where you make a statement. And from G2, they still have to do it. They do still have to do it. But a man who's always beside this team and always trying to make the magic happen and glue them together is Malik, who was catching up with Freya earlier. And coming up against your next opponent here at the Global Finals, it's going to be Astralis, a team you're definitely no strangers to at the end of 2020. You only managed to take them down once in the last 5 times that you faced them. So where do you see is the biggest challenge of the Astralis side? I think they are like a great team. They prepare really well. So, I mean, if individually, like, we are showing up into the game and, like, having strong fundamentals, it's always tight against them. Like, it has to be, because we have, like, this high ceiling qualities. So, good fundamentals, showing up individually, give us, like, good matchup. That doesn't mean we win, though, because they are preparing well, and to really beat them and maybe more consistently that 1 out of 5, it requires us to really work as a team, find out ourselves properly, understand the matchup as well. We are slowly getting there. We have keys that we didn't have maybe a year ago when we like are about to play them, and I hope we will have more and more within the next weeks, months, and maybe today. Let's see. Setting expectations is Malik there, and I think that's key to do. But our expectations, like you were mentioning, Maniac's always going to be higher. Yes, I guess it's only going to be higher. Now, I like the fact that Malik mentions against Astralis, you can have the high ceiling skill, you can have a very good day, but it doesn't mean that you're going to beat them. And that's because he understands how high they are and how optimized they are as a team. Now, we've said this is not the unbeatable Astralis. I think he knows that, but he wants to manage expectations. And you should manage your expectations if you're G2, because they know the potential is up there to be the best in the world. So if you set that bar high from the get-go, you can only disappoint. I will say, though, that with all these star players, with all the quality you have within G2, there should be room for those expectations. There should be a Nico thinking to himself, this is finally the team where I'm going to win trophies enough that's going to put my name up there with the very best in the world. He's still a little bit behind Saiyam and Simple when you talk about who's the best players in the world. A way to catch up could be the diverse route. You know, win the trophies, win the tournaments, and then you don't have to be the best player in the world. You can just be the most successful instead. Now when it comes, though, onto the other side of things, right, onto their opponents in Astralis, this is where it becomes tricky, because we talk about what this team can deliver and what they can achieve. Okay, they can drop a map, but one thing, even if they're losing a map down, you never count them out. No, you never count them out, and they've shown time and time again that they are going to fight back. They're going to be up there with the very best. The consistency coming out of Astralis throughout the entire span of their lifetime. 5 years they've been together, and more or less every single week throughout those 5 years they've been within the top 10, and most of the time within the top 3, even top 1 for a big majority of the time. The problem for me with Astralis right now is that they're getting back to the groove. They're getting back to, an Astralis looking very hot, but
But there's one player right now not playing, involved in that project. As I see it, that's Bobski. So where does that leave him? Does that gonna cause some tension when the lineup? You were supposed to have a 6-man lineup. You're supposed to integrate him into Nuke. All of a sudden, you don't feel comfortable playing Nuke anymore. You haven't practiced any other match with him. So that's the big question mark to me. Is Astralis just gonna be the good old 5, the golden 5, let's call it them, where Bobski is just gonna sit on the bench and do nothing? Or are they going to implement him some more? So far, by the looks of it, we don't see Bobski enough. We're just going to have to wait and see, right? It's all a matter of time with young Bobski, but we've got to hear from Zonic as well and see what he's feeling before this one. Well, of course, now you're going to be coming up against G2, a team that you're definitely no strangers to looking at the later half of 2020, where we saw you pulling out some very consistent results against them. So why do you feel that you guys are able to be so consistent against G2? I don't necessarily think it's against G2. I think that we have been improving our game ourselves the later part of last year. I also know that now they have had some time with Nico without official matches where they can actually create their playbook and come up with new stuff, and they have found their primary 5, I would say, as they got rid of Jax. So I think it's a more scary G2 that we'll see in the coming weeks and months than we did last year. So I just hope that we get a good game, obviously, and that we can continue the level that we at least showed on Overpass and Vertigo from yesterday. But I think it's gonna be a tougher match against D2 nowadays than it was last year. Well, speaking of those potential things coming into this matchup, when I was chatting to Malik, G2's coach earlier, he was a bit nervous about the strategy that you might be pulling out of the bag here. So have you got anything up your sleeve prepared for G2? We always have something up our sleeves. I think that's our main focus in the beginning of the year has been on an individual level. I think that we have been playing a lot individually rather than putting too many hours into maybe being innovative and coming up with new stuff. Obviously we have, but I think that for us it has been from what we learned last year when we played Blast, we got stumped out of the group, and that we had a lot of focus on coming up with new stuff because we felt that okay, we ended the year strong and everyone is going to look at us and look what we do, so now we have to come up with some new stuff. We ended the year strong last year as well, but we wouldn't want to make the same mistake where we kind of lacked individual skills when we came into 2020. So hopefully this will work, but still we obviously have some new stuff, but I can't reveal too much. And this is the thing, right? I like that, first of all, he was talking about when it comes to actually G2 themselves, 'cause it's similar to what Malik said, it's in the coming weeks, the coming months on this side of things. But I think Zonic is there, he understands, right? They've still got a lot of work to do to really bring themselves to full force. Yeah, and I think all the teams have, considering this is the first tournament after the break, there's going to be a lot of catching up. One thing Astralis got going for them is the strong fundamentals, right? They've been together for a long, long time. So maybe they can catch up a bit faster than G2 that basically have to create a new lineup, a new synergy, and a new teamwork within the lineup already. Bringing Nico in, that's not an easy task, whereas Astralis, they've been together for a long, long time. Now getting into this pick and ban, we've seen a lot of Dust 2, Inferno and Nuke from these guys, but this time do you think it'll be any different, Master Maniac? There could be some curveball from Astralis. In terms of bans, it should be clear-cut, should be Overpass, removed from G2, and then Mirage from Astralis. There is no choice or no space for mistakes here now. G2, I believe, have two main solutions. Either going to be the Dust 2 or it could be the Vertigo. I could see it going both ways. If you're Astralis, they're going to go for Dust 2. Against Astralis, it's a pick that makes sense. Astralis, I feel like, have two different routes they can take. Either they go for the Inferno, which is a weakness for G2 lately, but they struggle a little bit against G2, or they throw in a massive curveball, and there you have it. That could have been a curveball. But a Vertigo pick, I didn't see that coming. I thought it would be a train, so they go for Vertigo. I'm pretty sure G2 are as surprised as I am as a pick now, which means that for the third map, I mean, we still have Inferno could be on the card here, and Astralis could have the chance. Exactly, they remove Nuke. That's a map that's been a little bit dicey for them recently. They go for Inferno. The only thing I'm surprised here is the Vertigo pick from Astralis. I did not see that one coming. No Bobski once again, though, Pimp.
I'm happy. I'm very happy on behalf of G2. I think Astralis, they are... Poor Bubsky, man. No, not in that sense. I just said Bubsky, you're like, I'm so happy. Yeah, go. He can play if he wants to. I don't care. But the map meter right here, I think that's good for both teams, to be honest. I think G2 are feeling fairly comfortable. People tend to forget that G2 were one of the best teams in the world on Vertigo before they went into the struggle period, before they went and bringing in Nico to the lineup. They play the map to, or at least have played that map to a very high level. So sure, it's a punish pick from Astralis. Maybe it's some work in the matters, you know, in terms of practice. But if you're Astralis right now, I'm not sure you're feeling too safe. You have Dust 2. It can be a very open map. And you have Vertigo, where you basically don't know what's going to come at you from G2. They used to be very good on it. So I'm smelling a G2 right here. Oh, Pimp is on the G2 train, but is it going to be all the way for them? The maps have been decided. We know where we're heading. We're starting off on Dust 2 between G2 and Astralis, and both teams can play this to a high level, but which one will take the win? You'll be finding out with Scrawny and Launders in just a few moments. हेलो नमस्ते देवशील है डिस्कॉर्ड में वैसे तू काइडो है क्या अच्छा 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 ओके चलो मैच देखेंगे गाइस मैच देखेंगे साथ में वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मैचेस ऑफ दिस सीरीज इज यू बैक यस ब्रो मैं खाना खा रहा हूँ वैसे अभी तो आई विल प्रोबेबली म्यूट माई माइक फॉर सम टाइम 5 मिनट और एंड तब तक एंजॉय करेंगे कौन आया ओ आ गया ना बढ़िया बढ़िया 1 मिनट में आने वाला भाई 1 मिनट में शुरू होगा डिस्कॉर्ड सर्वर बूस्ट डन अबिस ओ माय गॉड डिड वी जस्ट गेट बूस्ट गाइस 1 सेकंड दो जरा चेक करें Nice, bhai. Nice, guys. We got one boost. Nabya is now officially our Discord booster. Woo! क्या बात है भाई, क्या बात है. खाना लेके आया. मैं भी लेके आया हूँ जस्ट अभी. फेस कैम कहाँ है? क्या मैं अभी खाना खा रहा हूँ. मैं तो आज कढ़ाई पनीर खा रहा हूँ. मैं भी. Let's go भाई. फेस कैम कहाँ है? अभी बस खाना खा के ऑन करता हूँ फेस कैम. 5 मिनट लगेंगे. तब तक मैच शुरू होता है. एंड यहाँ पर आराम से बैठेंगे सब मैच देखो डिस्कस करो चैट पे कौन जीतेगा लेट्स सी दैट कम ऑन Match is starting, guys. Let's go. Woo! Good evening, gamers. Welcome back to the Blast Global Finals. We've got, of course, 2 more best of 3s to get into today, but what we need to focus on is the start of Astralis versus G2. We saw Pimp go ahead and predict the G2 upset in this series, and we begin on Dust 2. This kind of does leave things open. I'm excited for this series, Mohan. We get Inferno at the end. 1000 rupees में दे सकता है बस. सिद्धार्थ 1100 कर ले bro. 1100 कर ले. माइक मंगाना है इसलिए बस. जितना stretch कर सके उतना stretch. I am ready. लेकिन अगर 1100 कर सके तो please देख लो आप please. Of them, DreamHack Masters winner and Blast Premier Fall Finals from last year. Astralis pretty much stomped them out. Like it was, there's a. Let's go, guys. Let's go. Let's go. First round of the match. Hype in chat. So Astralis really separated themselves from this new G2 with Nico a little bit more. Now they're in the inaugural series.
Nico literally set a record with the amount of kills he got on Dust 2 last time. So I think we're going to look to see if he can achieve that peak again. A lot of it had to do with T-side as well. And we've got eyes on Nico right now. Yeah, he's the guy to open up shop, so that one cap player and device is dead. Dupree finding one through the double doors as the rest of G2 charge up the catwalk. This means Xyp9x is in a bit of a pickle. Guys, all donations will go towards the mic. The rotates Let's go! like they weren't going to get too much. Go! Astralis खत्म कर दिया भाई. Astralis से खत्म कर दिया. Behind on catwalk to cut this down to only Nexa. Those 2 kills were crucial. There could have been a bomb plant. There could have been a man advantage. And had Kenny been able to hang on to the car, it could have been even worse for Astralis. But instead, exclamation donate, guys. Exclamation donate. One out of the hat. They should be taking CT-sided pistol. We'll see. Because there is low health on both Dupree and Glaive, of course. Glaive के हाथ में, Glaive के हाथ में. Ooh, and Glaive, he's been spotted. Yeah, Nexa knows exactly what's up, and it's not like there's 5 seconds and he has to plant. He can definitely squeeze this as he pleases, and with 2 CTs right there, oh, that headshot into Magus could have absolutely been a disaster. Instead, Nexa taps that bomb once, goes for the duel, loses. First round goes to Astralis. Will win pistol. Pistol round goes to Astralis, that guys. one kill, Glaive low, player on cat was low. That was close. That was Missed very a couple nice. of shots. Now, we'll say G2's form coming into this year looks pretty good. Versus Furia, it's hard to gauge exactly how good they were at this event. They definitely, like, on a few maps looked very on form. KaIdo looked peak performance. Yuri looked peak performance. Art even had really great matches. And when they faced off against G2, it felt like, yeah, that game was close. But I think a lot of credit to Furia. They actually played quite well. Then we look to some of G2's pieces. Nico's there, of course. Kenny S actually not bad. Nexa was definitely all right. It was mostly Hunter, Almanac falling a little bit behind. But overall, the main core, I guess, was firing off. I think the beauty of having Nexa on your team is, like, he can be actually counted on to have huge individual plays, even over Hunter sometimes, who, you know, top 10, 15 rifler in the world. But I think the form looks very, very strong for G2. And as was cited by Device in an interview, he said G2 is the most stacked lineup in terms of talent in Europe right now. Exactly. He said it off the cuff, so I don't know how much stock he puts into it, but guys. It makes sense. You know, now with the acquisition of Nico, of course, that's what tips the scales. Yeah, that's what we expect to kind of take him to a whole new level. One of the highest skill ceilings, perhaps. So, and they had the desk interview with Hunter. And they said, like, what do you think about this match versus Astralis? He said it's always close. And it usually is usually a close 2-0 for Astralis, but usually a close 2-0. Oh, let's go, guys. We got the money from Malan. And the interesting thing about this is that we've got Vertigo coming up second, which has not appeared 11 rupees super chat. since the Road to Rio event back in spring, I believe. Let's go, boy. Ooh. Device going to kick off this round. Collateral shot from the scout. Obviously, G2 just sitting outside of long this entire time. Nico was back in T-spawn, hoping somebody would get aggressive in mid, but Astralis don't make that mistake. They don't make the risk. No need. Here's Device's first shot. The re-peek, and let's enjoy the collateral. Nice and early. We get a little bit of fireworks here towards long, but this is what we want. The buyback from G2, Malan, 4 AKs, 1 Galil, all the nades in the world. WhatsApp, let's see it. Astralis. Let's go, Astralis. G2, Vitality, probably all best Dust 2 teams right now. If there are going to be Dust 2 teams, yes, the meme sometimes G2 lose their Dust pick a lot, but they've put a ton of practice in. They have some very notable victories and big events with it. They're a good opponent for Astralis. I think Astralis right now are probably the best, and like on CT side, they have some nade protocols that are absolutely extraordinary. I'm looking for a round again where there was a situation where Xyp9x pushed off Cat in one round versus Vitality at the end of last year. And Xyp9x died without getting a kill. And then right after that, a few seconds in, we had all these different nade protocols that punished everybody else who pushed in the default when they couldn't see anybody. And that's when it made me realize, like, man, they've got so much more going than meets the eye. It'll be cool to see if anything like that happens again. Thank you, Malan, for the 1111 and also rupees. With having time off between these events, we're looking for new stuff too. More of those, more of those protocols. If it didn't exist on Dust 2, like let's see it. Where can we go? Yeah, I feel like if the new stuff on Dust 2 is an excavation site, this hole's already pretty deep.
No massive fossils. Amanek is going to drop that Molotov to the back of the site. Dupree tucked in on Humvee. Amanek kind of getting lost in the smoke here, but he is still on top of the boxes, so jumps up, gets himself 1 kill. Magus trades, but there's that split. Comes through mid. Glaive was unable to contain it, and it works out perfectly. Yeah. G2 on the board in their first rifle round. Yeah, they actually stuffed that specific push through mid B that's used to support the B players. They are Melon, a I've bit sent slow you to your skin, do bro. any Thank kind you of so much for rotation, so purchasing they're just my not in time to M4 even brother. put some spams down through the smoke, and it comes down to the 2 मुझे players in the अभी इसने दे दिया. site. मैंने The उसको TF issue की for forward कर दिया Astralis था. here, depending on what G2 are feeling like, is that they gave up these AUGs, so I think चलो, G2 one thing secured one Sponge round, I pointed think out is so. that they're going triple very nice. AUG setups on basically every single That's map. way far from securing the game. ये मैच बहुत Towards the close end होने वाला है. of मेरे को बहुत the तगड़ी feeling आ रही है. nasty Krieg meta, ना मेरे को नहीं लग रहा. Astralis were not buying Kriegs I call because 2-0. they didn't want to give them up to the CTs, because then it मेरे just को लग रहा है helps the 2-0 CTs. It helps the Gut CTs feeling आ रहा है. snowball on their side if you do give them up. So they decided just to not ना, buy ना, them जुआ or buy नहीं, जुआ one नहीं. or buy them at the end करता of हूँ the अभी half. face cam. 2 minute That दे way, मेरे को कैमी even 2 if you minute lose, दे. you're fine. So it's interesting to see that they're buying a weapon that is kind of मलन मैंने regarded भेज दिया as that तुमको much M4 को offer stronger. brother. Accept कर लो. Maybe not really recognizing its strengths on the T side as much. Bit of a shortcoming for the AUGs, though, man. That rate of fire. I feel like there's some positions where if you're looking for those multi-kill spray downs, the M4 still has the edge. Yes. It's just an awkward rate of fire on the AUG. You think so? Is it but one bullet faster, right? The kills? Yeah. The damage is decent. And Easy so is kills Oh for my Nico. god, Nico. apparently, as we see Don't Astralis push get mid. aggressive to the top of middle, Nico cracks some heads wide open. 5 versus 3 at the minute 35 mark. Nice and early अभी here for enter भी G2 मारेगा to देख. try and tie up with this T side. We get the hinge smoke through Bank mid transfer doors. detail दे दे, There are a एक couple ही of दे देता players हूँ. on the opposite मंथन, end of this. मैं I feel बात like this करता हूँ cat तुझसे, push could रुक maybe जा. net them something, but if it doesn't happen, WhatsApp those DM आ other जा, two WhatsApp DM आ CTs जा. have to just transition into the save. And unfortunately for Zipix, it's just that MP9. Yeah, it's the early warning sign. It's kind of Zipix gets in this spot and it's like, well, if they come here, I'm close up with my my MP9, I get a kill. If they kill me, I die early, can cause a rotate. Or, I live long enough that things just get really hairy and we've got a couple of CTs hanging around at mid to maybe try to help me out a little bit. But for the meantime, he's got a lot of information and a lot of information early. So we'll see where they go. Hunter's about to jump up. Tag team, the other Kovac coming up, Cat as well. But it's a very awkward duel, and Zipix can't get anything. Yeah, really efficient machine so far here from G2. Kind of pumping the brakes a little bit before they re-engaged into this 4th round. But those CTs who were at B did get the chance to rotate over. Now the bomb's on catwalk, and it's coming in with this long split. So the moment they feel resistance on both sides, they are out of there. They know the B site's open. Maybe this player gets taken down by device. Sure enough, Nexa will be a casualty. But how much more can Astralis look to get away with as G2 take their second? Well, they've got a gun waiting for them over at long. They can go and grab if they'd like. And with the bomb down, it looks like the CTs will potentially get hunted. But Magisk, low HP, still has a headshot angle to work with. There's a player coming up from the spawn. Oh, and Hunter! will take some damage, but he won't get the kill. So, Hunter dead. what'll this mean for Device? हाँ, नहीं. Taking 2 more down would be huge, but it looks इसकी like यार they're skin not going to अच्छी है give ना, him the skin chance. बहुत प्यारी लग रही है. And we are all tied up. हाँ. Nice and early. अरे Things stay नीको interesting. केनियस को खेलने मैंने What do you सिखाया chalk this था up as? I mean, और Pimp was the only happy to guy see to my students are officially making predict my name G2 for Roshan. the Nice, matchup. But if you had to give this, a 50-50, a 60-40, what you think about? So I was thinking about in terms of the way I rate teams right now, Astralis and Vitality are S-tier teams. In the A+ category for me are teams like G2. G2 would probably be the first. Oh, Nico को देखो. The first team I put up there. ये बहुत प्यारा था यार जो भी था. Besides them. And I say that they have a chance, even though they usually lose to teams like Astralis or Vitality. They have a chance, I'd say. They're the next teams up. कौन से नसीब क्या है क्या करें? भगवान जाने और वो जाने. The vetoes are predictable but comfortable for both teams. And so, yeah, I mean, I still think it's like a 40% pick based on the head-to-head, but a reasonable one. If there was a team that could beat them, coming into the new year especially, I think they could surprise. And here's another great pick
from the barrels for Nico at top mid, stopping the mid aggression early on. Yeah, unfortunate moment there for Glaive. He's up at the top of middle. The Xbox smoke blocks off what was like 3 sets of eyes in mid to try and help him. You could see him extending to the top of middle, not getting contact, deciding to come back, wary of the potential for that lower tunnel push, and then sure enough, just as he turns away, that's when the mid pick comes through. So G2 hitting the timing on the proverbial head. Zipix over towards the CT cross, eats a bunch of flashbangs. MNX still here towards middle, confirming the heavy stack up from Astralis in mid. So if nothing happens from Zipix, again, we're going to see Astralis concede. 3 rounds in a row for G2 and maximizing these moments because they are very much sitting in the driver's seat off of this economy. Lots of cash behind them, very few casualties. 1 last round, none so far here in the 5th. You don't usually see Astralis, give up the 5v4 that often, like this early 2 rounds in a row, especially taking the big risk of doing the same push again. That takes a lot of confidence to try to do, and you realize you've got a lot of egg on your face if you die in that push. So they go for that risk, and that has me curious what they're going to try next round. But of course, it is a mixed buy, so I'm not surprised surprised that they tried something a little bit more risky. So yeah, I'd say Astralis, Vitality, 2 best teams in the world, and everybody else in terms of their play as a team, as a system, is just catching up. Like they're by far the best, and then Navi, G2, probably the next 2 up. That can trade blows with them, that aren't afraid of them, even though they're not as good. And can sometimes upset in tournaments and have a new year to kind of prove that they've taken out of the break to prove that they are as good as like kind of the sum of their parts now that they have like so much talent on the rosters. A little bit of a disappointing storyline, a little bit with Navi, what we've seen recently, but still time in this tournament as well. But we're already out to it in this round. KennyS goes down to Magisk, and we've got long control as kind of a response. This is interesting because it actually benefits G2 a little bit. Even if they're not going to use it here. The rotation is back to the CTs. We've got Zipix pushed up on Cat, but this might be an expected position at this moment. The only issue is the one unanswered refrag, the one unanswered kill, excuse me, the opening kill of the round. On KennyS. Hunter's going to have a little bit of presence here by Glaive. Oh, he turns his back. Timing working out for him, but Glaive hits the Deagle up close, and now things start to get precarious for G2. Moses level reactions there. Device though caught out by Amanek. So that op answers back, picked up off of the corpse of Kenny. Magisk's scout tries to move over. Dupree has retrieved the AK, and Magisk with a kill through the smoke as he's being boosted. Although there is still that chance for the T to cross over. Man advantage held onto for Astralis. Glaive sitting inside of the smoke. And Amanek, well, he's trying to find something. And the CTs have fallen silent. Don't be fooled. G2, they know they're close. But where exactly? Oh, Nexa. He crouches behind the wicker baskets, pops up, and stops Magisk from getting anything other than those first 2 kills. Nexa plants bomb. Suddenly, G2, who looked very much pressed on that ramp, are in a post plant. Amanek just has to hit this shot, and he doesn't because Glaive gets another D kill. Nexa standing in the open, trying to keep it alive. 7 health for Nexa, and it's just not enough. The Deagle from Glaive. 3 kills gives Astralis their 3rd. And that is the first kill that comes down on the lower stairs versus Hunter. I made a joke. I'm sorry, Moses. I didn't mean it. 517 millisecond reaction time. It was probably a moment where Hunter looked at the mini-map, and that's why he died on the stairs. But this is where Glaive comes into play. Oh my god. He barely saw that. That was too ridiculous. What is that, Magisk? Every kill was nuts. When your ideal Glaive with such low HP throughout all of this is able to go 3 for 3 on shots with the Deagle. Kill the majority of the G2 players and upend their economy. Astralis didn't have that much to work with, even though they were kind of winning throughout that round. It's a matter of being able to keep 4 players alive in the previous round. Not losing all the troops they walked in with on the force. But G2 pretty quick to just cut through catwalk, get up here, and challenge with their smokes. We can see Astralis shuffling around ever so slightly. 2 players committed inside the B site. Looks like Long will be the target for G2 in the mid-round moment. So far, with Astralis wounded, they're a bit scared to go for some of these pushes, some of their catwalk aggression.
defaulty. I really like how they're approaching this. I think they got the right tempo right now. They've got cat control. They've got a good split coming out. And Xyp9x isn't in the pit, but Device gets a kill out towards the mid B setup. Yeah, so these long frags suddenly become all the more important. And even with the shadow extending, Nexa, quick headshot. Oh, the op misses from Kenny. That could have really weakened up this A site and allowed for the T's to properly split in from Cat. They've got 2 players close. This Cat peak could be big, but instead it is Astralis to fill that kill feed and take away a 1-round lead. That wasn't very good, man. They had a, first of all, I guess they couldn't figure out where Astralis were standing, but Hunter up on Cat, like he had a position where they could have crunched the players on CT who were highly uncomfortable. The player who was behind single who jumped out into the front of Cat, he should have been peeked by Hunter. They should have refragged with Nexa peeking long much faster. The CT positions here are not good, and basically G2 did not punish. Everything looked solid, and they threw one risk with the mid to be fake. But even still, with the 4 hitting A, they got virtually no kills. Nope. I don't think they did. Actually can't see that, but he'll see his friend. Anyways, that's Nico down. That's a high value target. But you know what? Hunter, I think knowing that he's gone unnoticed, is really kind of speeding this up. Bomb's right behind him. Got Glaive on site, but that Molly looks like it's going to get thrown into CT spawn. So his position might be pretty powerful. No long split to complement this. We're going to start dumping out the utility here. Shapes Hunter off of the fight. Xyp9x lending a helping hand, but with a Molly back on site, that's Glaive burned into the open. Xyp9x using the odd from cross. And goes to check back, but just as he walks away, that's when we get this flank activated by Device. That op coming in from Come on, Kenny! As ABYSSAL hits the head, and Kenny puts that bomb down. We got a CT up close. In fact, they're both right there. And Kenny is going to hit his first shot, diving back into the site. Oh my god! Dupree, oh right my back to the god! game. Kenny! This is back and forth. Are you crazy, like a perfect man? movement, right? Off right over the ledge. भाई कुछ बोल नहीं सकते 7-8 राउंड पे केनी निकाल सकता है निकाल दिया Gets into the site, comes back for the quick scope. Really sick stuff. Proactive play here from Kenny. Nice shots from ABYSSAL. I was really surprised to see Force, you know, भाई अंशु मारता है जब भी मारता है ना अंशु तभी ऐसे मारता है legit ऐसे मारता है जब मारता है and then continue the round forward, but ABYSSAL holds his ground. Nexa out long, but he got tagged by the smoke. And a couple of players may have seen that. That last flash. Back and forth though. Nico's got the quick trade. ABYSSAL trying to help out, but it's Nico getting all the kills, and Xyp9x with the wild MP9 can't find anything for it. So Nico 3 kills, and Dupree gets an answer on the opposite side of the map. Now that kind of stuns G2 for a moment. They're not quite sure if this fight's over yet. So many CTs throwing themselves. And in that meantime, we do have Dupree pushing through B, using the tunnels to wrap around T-spawn. Of course, G2 also being proactive by throwing Nico through mid doors. So there are pinches upon pinches, flanks on flanks, and a minute on the clock. So even though G2 are all facing forward, because of their positions, it's hard for Dupree to पे ऑफ कर देगा बहुत गंदा पे ऑफ करेगा भाई ये नहीं क्लियर बोल देगा अरे निको डिवाइस को तोड़ देगा फ्लैंक पे फ्लैंक आ रहे हैं Yeah, this is bomb पकड़ ले जाना मैं तेरे आगे तू मेरे पीछे Oh, you can hear him now. Too late. Yeah, I think he. Wow, maybe there for if only वो 2 सेकंड पहले आया होता if only वो 2 सेकंड पहले आया होता यार flank he decides not to hold W. Nico goes for it first, and with that frag onto the side of the device. मैं भी G2 की साइड हूँ भाई G2 किसकी पिक है I don't know. I think Astralis का here as they take a 5th round on this T side. भाई जब B पर CT वालों का 4 लोग खेल रहे हैं तो think it keeps things close, but Astralis, the economy's bottomed out. Every single round, the newest pickup, Nico. Every round has his name on it in terms of impact so far. Had stopped Glaive at top mid twice. Got a 2K at top mid. We got a 4K on this round. 3 लोग अगर spam देंगे हम लोग यही करते हैं हम लोग जब भी कोई cross होता है spam कर देते हैं मर जाता है when he's died early things have gone into jeopardy so bit scary for Astralis that we get that version of Nico who definitely knows how to play very well versus Astralis. This is a very neck and neck match, right? Yeah, other than that, I'm not surprised to see anything else.
हुआ नहीं सच्ची में कुछ खास also नहीं लगा the नहीं highest rated player in their game versus Furia with a 1.31 rating. निको ने 4-4 के लिया देखा ये वाला तो मैं देखा था यहीं पर Nico has just kind of had his name across G2's success so far this event. Yeah. ये तो लकी शॉट था ये सच्ची में तो लकी शॉट था उसका हेड के पीछे से मारा नहीं वो लो था ना वो उसको मारा मैं ये से दिमाग लगा के लिया Everything good? Tactical time? Time out लिया guys. GT mostly most likely support Kenny की वजह से मिलता है no offense. नहीं ऐसी बात. We'll find out shortly. Kenny support player नहीं है bro. Kenny aggressive info player है. G2 को mostly इधर सब G2 है. ये नब्बे Astralis है. पायलट को मैंने बोला कि B जाओ. मैंने बोला 3 हो. B गया. बाद में मेरे को बोला blame करता है. Before the game goes long, mentioning how like, he's a guy bit of a red flag on this match because there has now been time for G2 to properly work with Nico. They had that time off over the break to maybe come at this with more of a structure, with a clear picture as to the road to success for G2. And I mean Nico's delivering exactly what I think Zonic kind of had his eyes on. The impacts there so far. अबे चला अबे यार थोड़ा लेट उसको लगा बाद में पिक करेगा केनियस मोर लाइक गवार fine with it. Maybe I shouldn't be too presumptuous. ठीक है भाई It looks like long is लाइक कर दो प्लीज शेयर कर दो ताकि तुम्हें भी पता लगे और हम भी एंजॉय करें सारे आ जाओ सब शेयर कर दो हर कोई बंदा एक बंदे से शेयर भी करेगा ना मजा आ जाएगा हंटर मैक्टन क्यों चला रहा है ये कास्टर क्या छेड़ गया together at the moment. Zipix again in his position on Cat. Clay maybe about to show himself. They do seem a little bit more running into like a fake, so they're not completely committing to the site. हो गया दिमाग खराब हो गया भाई कल देख का बराबर बोल रहा है गलत now no one's अरे ये तो फर्स्ट स्मोक जो सेकंड स्मोक किया ना उन लोगों ने वो Astralis ने किया फर्स्ट स्मोक है वो देखा वो स्मोक मैंने तेरे को बोला था ये स्मोक दिख रहा है मेरे को बहुत एपिक स्मोक है वो तूने को स्मोक पुश किया अभी अरे डुप्ली पागल Dupree tries to extend अभी मरता है अभी मरता भाई even more so, but there's a lot of presence here for G2. Dupree comes दोनों This is kind of forcing G2 forward, but come on still right in position. Nico cracking it down into the CT spawn. Glaive gets his hands on that scout and oh my god because Nico keeps going. The Deagle missing as Glaive gets challenged from both sides. He not missed a couple of those shots. He very well could. एंगल अच्छा लिया निको ने बाद में एंगल अच्छा लिया ऊपर चढ़ के and the 13 5-star 10 rounds deep, each as important as the last, maintaining sight control, killing the last and the first guy refragging in every single spot. Another round where Nico's impact is the absolute most important piece of the puzzle. An amazing spray down from Dupree with a a good flash tactic, and again this was Astralis not much. This keeps Astralis out of a bye from this round, potentially flipping the economy because G2 would have been broke as well. And now puts them in a position where they're on Nico. So this is the first game, I am the hunter. He's already in this half, armor नहीं है सामने वालों के पास कोई ना हो no रैंडम था वो नहीं अबे क्लोज एंगल था वो really hard to say. Honestly, from how much impact he's had in these rounds, शॉट वाले को हेड नहीं दिया नव्या क्या कह रही है लेट्स गो Astralis और फिर कह रही है शिट यार निको भी पसंद है मेरे को सैड just kind of a weird thought experiment. तो फिर अबे यार फिर बोलो लेट्स गो CS this round shouldn't need too much from him. चल जाते हैं Catwalk already completely open for the taking. अभी मन हो रहा है भाई खेलने का कैसे भाई पहले एक्चुअली कॉम्बैट कर रहा है भाई पहले अपन eyes on here for Astralis starts to come up from CT spawn, so maybe he rocks मिस कर दिया maybe he scatters them into catwalks instead, but Hunter he finds that headshot mid-sight, and the Molotov forces Zipix to disengage. This is a bomb plant, and inevitably a 7th round win for G2. Woo! G2 very strong. Nico, it looks like it's him. Kenny भी नव्या कितने लोगों पे सिम करती है डिवाइस भी net them something. Magic just cross bottom middle. Again, we're just looking at like singular kills maybe, and it comes close versus Hunter. अबे क्या कर रहे हैं लोग? Nice. अच्छा वो जिपनेस के लिए वेट कर रहा था आप समझा वो जंप डाउन के लिए वेट कर रहा था Astralis now trailing by 3. देख लिया हाँ देख लिया सारे कर रहे हो आप
So if I'm Astralis, I'm probably. देखा है कैसे USPS फिर भी contest नहीं कर रहे I'm उससे ये thinking लोग. about like any kind of default or anything Oh, like nice slowness angle, that happens nice in the round. angle. I'm probably going to think about trying to take over upper सब भी tunnels simp based on what we've seen. सब भी simp हूँ We मैं. haven't seen Simple too Nico many. device क्या नहीं. I think the calling has been really good from G2. I won't lie. Even though some of the times they're not getting the trades and like they need Nico to bail them out. I think they're picking मैं some तो of the होता ना right भी अगर spots. guys हम LAN पे They're सच्ची में getting कभी in खेल some रहे of होते ना the early अगर aggression. कोई The हम में से defaults गलती are the करता things तो that अपनी are चेयर से catching उठ all के the कोई पीछे pushes from टपली बजा के आता Astralis. दूसरे And with बंदे Astralis को है ना too afraid KaIdo to do anything aggressive. अंशु को तो हर कोई भाई Most likely अंशु. मैं मैच के बीच में उठ के उसको मार के आता सर पे They're constantly be rotating, चाटा मारता है guessing, पीछे अंशु को which is क्या है not ये what कौन सा Glaive फ्लैश wants है to भाई do. A lot कौन of सा the CT फ्लैश है sides now with Glaive कह रहा अरे निको भी यही involve करता just है trying to get information on and sacrificing a piece to like try to take down one. And they're not even getting that one because of how good Nico's been. But I think upper tunnels has been untampered with a little bit. We saw dupreeh push it once. I think this is a part of the map that's open up to Astralis. And for G2, they can start to turn their game plan into something more mid-B focused, maybe heavier towards tunnels, and try to see where Astralis go next. But at the moment, they can kind of do anything they want still. They have the majority of the rounds, and they've really opened up both parts of the map. Get that quick little peek from Zipix. Super quick. गाजर का हलवा. So are Astralis. This is the gun round they need. He hears so many players moving down through middle that he just gets that back runner. Magisk was trying to just cower to the corner. Zipix look at this. Corralled 3 guys in the corner of doors. And Device, well, he takes himself one. Oh my god! Still Oh my god! working inside the smoke between them. He gets all shots on CT and G2 looking to walk away with the round, but dupreeh still has one hand on it. Let's go tunnels. Bomb gets planted in the B site. 1v2 situation, and they can sit and wait and try to catch dupreeh. dupreeh's gonna go the long way around. First map है कि second ऊपर देखना Around the है world. top He left can pick up this mid kill if top he left looks. में देखियो D2 first map है Oh, second he vertigo was है exposed, wasn't he? Yeah, he best was. of three. He just missed him. I hope you Inferno तक जाए I That's a really weird hope you looking Inferno rock. तक जाए Didn't even consider that he could have made this rotation. Okay, but then there legendary may be match है Hold on. legendary Oh, if he wasn't making oh okay, Jesus. Okay, nobody knew what was going on right there. If dupreeh had not, so dupreeh gave him too much credit. He was like, for sure they know I'm going to flank this way. They really didn't know. They had no idea. Nico's probably trusting the information from lower tunnels. Nexa has no freaking clue that they could dupreeh could have gone back through wall, through spawn, could be in tunnels. I wanna see Inferno. Meko bhi, Navya, Meko bhi. For sure. Okay, but another round that doesn't work out Hand from switch कर रहे Astralis. भाई. Positionally, that one was a little bit complicated. I really liked when don't Zipix retake jumped by- off Cat बढ़िया. into tunnels because he supplanted Amnek का flash, for the other nice, CT good that was flash. missing on B. There was only one guy there, and mid to B was in danger. So he became a fast rotation as a Cat player. Look That was at that, cool, look but at that, it didn't look at work that. out. Device का kill है, device का kill है. Hunter, Device on का that, kill है, free you kill know, है. really cool Oh sequence. no, Got those Hunter! 2 kills on the players pushing by the इसे smoke. देख लिया उसको लेकिन नहीं देखा. Just slips into the spawn as they walk past him. Chance to kill Hunter while he's alone here. We start to see G2 come back from long, but Hunter's just waiting. Oh no. And Device hasn't yet peeked his head over the no, catwalk. no, dupreeh no. makes a little bit of sound, and it draws the Oh, back 10 no. into the scout scope. Oh no. Oh Doesn't no, net them a kill, but dupreeh will find his trade. I think However, that info आ B गया ना, site they're open. going. You can see Yeah, the rotate info from आ गया. G2. By killing Magisk on the scout, they go right to what Oh, they want. look at the and molly, they'll guys. find that Look B at the site molly. open. Nice molly. 4 लोग A पे हैं भाई. खत्म है That'll game. be a freebie. खत्म है G2 ये on वाला fire, round. toying with their food. They are outgunning Oh, look at Nico, Astralis. look at Nico, look at Slightly Nico. better on some of these setups. Good opening Eco plays. fragger, Defaults are eh? strong. Fragger. Oh. Nico's on form, of course. And now they're even letting him deathmatch a little bit more. Get this little scramble tactic from Device, thinking maybe he can throw a spanner in the works before they put that Anshi Rai. Nexa adjusts the plant and Device. Ooh, I thought he was going to get flashed to that smoke, but he decides not to commit to it. Nico naughty Again, boy. exit kill still on the table. Oh, spam तो सही जगह Chance कर to रहा keep था. some of these tools, perhaps. Kenny S, Kenny Kenny walk S. into Ooh. it, and he gets tagged, so that forces him अगर back लग जाता into ना वो fast, game I felt खत्म like था my scene हो brain जाता glitched. ban हो जाता. Even though he For missed. second. So right now, there's no clear exit route from From G2. safe, They're from going to have to second. take a risk by losing maybe one player if they go towards mid उसको or देखो भाई tunnels. आमने को But देखो. of course, the round win. भाग रहा है you वहाँ can पर say खड़ा By बैठा car हुआ. as well. they're ninth. I think they I can am sit the by hunter, car. hunter. I'm not Use sure how much करना. Oh health भाई in dupreeh total, का but- dig shot sexy. Oh, No. zipnix, zipnix, zipnix. Oh, There it is. free kill. They're going to No, come back no, at it. no, Device is looking no, for an angle no, too, no. but nope. Yeah, I think The they were. clock saves Kenny. I think they were good.
They could have just saved by बहुत far. अच्छा kill निकाले थे उसने एक के save कर लिया. Just tossed it. With the, I think maybe with the bomb plant behind the tall box instead of under window, maybe that, you know, kind of they were worried. कुछ esports player बोलते हैं उन पे पैसे नहीं है पर उनसे ये पूछो उनकी skins कितनी की है. नहीं चलो ऐसी बात है कि skins से sponsor हो जाती है. पैसे नहीं है ऐसे को देता है. Sponsors होते हैं इनके खुद के. T-side. Outstanding. Back into the guns now. Oh, क्या need हुआ? Excellent grenade. Donate कर देते बंदे skin. It's helping Hunter open up shop. Glaive quick trade. Sipix has allowed Nico to walk through, though. This is going to be an easy pickup versus Glaive. And suddenly there's the potential for pressure on both sides of this B site. Magisk in for a world of hurt, you'd think, but he gets one with it. As Amanek extends out from tunnels, double they're going to smoke off that door twice Molly, good Molly. and get their bomb down. Kenny still I think holding Glaive's Molly. going to blame himself for this one a little bit. Let's see if there's a chance they can pull off the retake. Oh my God, this is seems going to kind be of insane, unlikely. guys. TCT's going to peel back now. Thinking Nah, about the saving. money and the op on device. हम लोग ऐसा नहीं plus करते 2v3 हैं ना. retake, but हम लोग ऐसा नहीं करते as soon we see the tunnel default this हम time. लोग usually and try it's करते the हैं एक kill round that निकालने का Astralis pressure picked to करके. go upper tunnels push. But it feels like Glaive's a bit slow to the adaptations this time. Pro player headphone and earphones There was a दोनों couple of डालते rounds हैं. where, I mean, Earphone most of the से half after the I first mean couple depend of करता है rounds आप क्या use करते where हो. no one had gone into tunnels on the T Earphones side besides just, just TeamSpeak Dominac. That वगैरह would have के been a लिए good होता है. time to double push upper And B. जो main You know, headphone here's है the वो game point sound at के लिए which होता है. G2 are trying to evolve their game plan a little bit, and it's right when Astralis decide to do their two upper tunnels push again. Now this is just reads, but of course you can kind of feel it coming, and we see all of this gap in rounds where there's just nothing being done up there, where it was an opportunity for Astralis they didn't take. But yeah, so far everything Astralis have been trying has either been stopped by just good mechanics from Nico or like a good read from Nexa. इनका reaction ही नहीं है guys. ये लोग मुर्दे हैं, जिंदा मुर्दे हैं. इनका reaction नहीं आता Looking है. sharp here this evening. On fire. पता है ये लोग breathing techniques होती है. जब हम मैं पहले सीरीज से खेलता था ना, तो स्क्रीन वगैरह ने इसलिए कंधा वो करके गया है गेम. Okay. आप समझ रहे हो गाइस, आप समझ रहे हो. केनी ने भी निकाल दिया एक बार. नीको ने गेगन निकाल ली भाई टूर्नामेंट. We got Zonic as a coach, so they want to give this round up. Yeah, sure. अरे केनी होल्ड कर रहा है, कहीं से भी उनको गेगन ना लग जाए हाथ में. 4-11 comeback scoreline. हट यार, नीको मैच लेके जा रहा है. Oh hello, Rudrax, welcome to the live stream. Jaldi say subscribe and like if you're new guys. 12 people in chat. That was pretty annoying, huh? They hit him through the right side door and then through the cross, right? Yep. Oof. Look at all those bullet holes peppering the wooden doors. Doesn't make the job easier, but that's the reward you get for being on an 8-round win streak. Turn it into a 9th and call this first half under wraps. See if Astralis, seeing as they have to force the issue in this 3v5, can rob one away. See if we get some kind of individual heroics. Nico facing in middle, catching Glaive. Yet again, he dies towards mid. Meant to be traded by Dupree, whose grenade should be on the money. 57 HP खा गया. But he doesn't quite fill up the bank. Nico, 17 health left over after that. Here we get this hard commitment into the B site, and because Dupree's got an easy line of sight, Amanek gets cut off from the front of this, and that incendiary could force them forward. Dupree checking back behind him, and sure enough, they use that chance to attack the bomb site. Now, he may not know two have already crossed. The smoke tells him they're up here, and he will find another with him. इसमें इतनी कॉमन मिस्टेक करी गाइस, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा अपने मॉली के बाद हमेशा 1 या 2 सेकंड एक बार नजर मारा करो अपनी मॉली पे. हमेशा ये मैंने यहीं से सीखा है. हमेशा मैं प्रो प्लेयर्स देखता हूं, एक्स-रे में जब हमें दिखता है, एक्स-रे दिख रहा है अभी, एक्स-रे में दिखता है कि वो लोग या तो रश करेंगे या पीछे जाएंगे, तो यहाँ तो रश करने का डिसीजन 1 सेकंड में आता है. Always watch your mollies for 1 or 2 seconds. Case as we have G2 doubled up on tunnels. Boosted. Hits his shot. Weakens Zipix for Nico to find his final frag of the half. He ends this one 19-7. And after this break, we'll be back with Astralis on the T side. It's me, Zipix. Let me kill you. Let me kill you. हाँ. To give it to me, Zipix. Tarek. Astralis C side better than CT side. Let's see what happens. Unpredictable game है bro अभी. ज़्यादा loss नहीं हुआ अभी कुछ भी. देख नीको का एम एंड गेम सेंस दोनों अच्छा है. स्क्रीम का एम गॉड लाइक है, उसको बीट नहीं कर सकता कोई. स्क्रीम का एम बहुत अच्छा है. अपने प्राइम टाइम में बेस्ट एमर था. There was no other person better than स्क्रीम एम के मामले में. I didn't. Oh my god.
Wait, I got you. Okay, just हम भी खेलें मैप नहीं भाई नहीं भाई अंशु फ्लैश करेगा कहीं से फ्लैश है ही नहीं डेथ मैच है अंशु है भाई वो डेथ मैच है देखो अंशु कहां से दिख रहा है फेस कैम करता हूं ऑन करता हूं मैं भूल ही गया था एक्चुअली गाइस ए मेरा भाई ऑफिस देख रहा है नहीं तो ऑफिस देख रहा है It's me, Zippix. Let me kill you. Let me kill you. फ्लैश दिख रहा है मेरे को Give it to me, Zippix. Oh, it's Zahu. Okay. Zaivu क्या खेलता है भाई भाई इनका डेथ मैच का सीन बहुत अच्छा है लोग वार्म अप काफी इंटेंस कर रहे हैं मतलब मजे के लिए कर रहे हैं लेकिन ये है काफी अच्छा अपने नॉर्मल डेथ मैच पागल हो रखा है नीको है भाई वो बवाल चीज है सिस्टम हिला देता पूरा Look at this guy. निको को घर पे प्यार नहीं मिलता गाइस हाँ मतलब आई सेंट यू द ट्रेड ऑफर हाँ बाद में देख लेना आप और कहाँ गया वो यस इट्स वर्किंग राइट और या बढ़िया ऑसम नभ्या यस आई वाज टॉकिंग अबाउट वन टैप स्क्रीम इज नंबर 1 वन टैप में तो क्या खेल रहे हैं अबे जिपनिक्स इतना टट्टी है देख पीछे देख कहाँ पर है भाई जिपनिक्स क्या बोल रहे हैं देख रहा था ये खेलेगा कहाँ क्यों रहते भाई ना हूँ हॉट आई नो लॉग इन कर मैं आ रहा हूँ फ्लिप नाइफ का कितने का सबसे सस्ते वाला अबिस एक्सेप्ट कर चुका मैं ऑसम फ्लिप नाइफ सबसे सस्ता देखो मिल जाएगा अराउंड 5 के 6 के 7 के में एक्चुअली 7 में मिलेगा 7 में ना 7 में मिलेगा रस्ट या Come to me. Go Astralis ओके मेरे हिसाब से गो G2 भाई नभ्या तो बोलेगा इसने पैसे लगा रखे हैं ब्लास्ट स्ट्रीम में सर्च किया तो थर्ड पे तेरा स्ट्रीम आया इतने फेमस होना कि फर्स्ट पे आएगा इस And so Astralis have their work set out for them. KaIdo How do they shut down Nico, who's got 19 kills in the first 15 rounds? What exactly is the solution to this T side? In a best of 3 that's supposed to be a close 2-0, Launders. Yeah, I mean, it's a simple factor with Nico too. Like, he can actually just be above strategy and like control the game and take over rounds like when you have all by himself. And right now the system looks very good for G2 as well, which is awesome. So everything is firing off at the moment for G2, and that's just Nico, a tough problem for anybody. Nico काफी aggressive player है guys, काफी aggressive. He doesn't care about his definitely like to hear what they have to say about it once this game is said and done. But it certainly isn't over. Just as good on T side as they are on CT. Oh yeah, he got the info. Over 50% win rate, about 55 on both for Astralis and Dust 2. Flash into middle, Nexa not blind, and that is a crime. 2 kills as they try and push through, but look, he's robbed them of their bomb. मार रहा है भाई नेक्सा मार रहा है flash and his Nexa teammates are all falling around him. Okay. It's looking like an Astralis recovery for a moment. वो केनी ने मारा ना जैसे saving the day a bit with that next follow-up kill, but Zipex, he's going to go ahead and wrap CT spawn, and look at the CTs, they push forward to all 3. Last bullet, headshot, 4K in the pistol. It's the simple factor. But Nico's not the only one who can deliver. Device coming in big in round 60. He is Mr. Consistent, Mr. Calm. Actually, my goal pura ho chuka. That was a sick 4K by him, and yeah, I actually thought this was Zipex in lower tunnels before he started shooting. Guys, my goal has been completed. Last bullet. As the mag drops out of the क्योंकि gun. कल मिस्टर अपने मंथन भी हमें 1K डोनेट करने वाले हैं तो कल सुबह मोस्ट प्रॉब्ली माय गोल कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा ध्यान ही नहीं हार गया कौन सा वाला हाँ वो ऑस्ट्रेलिया ओ भाई खत्म नेक्सा फॉर्म में आ रहा है भाई नेक्सा ने हवा में ओ भाई जनरेशन खत्म कर दी आपको चेक करेगा भाई हंटर सिल्वर है क्या डिवाइस गॉड भाई डिवाइस गॉड मंथन आ गया चैट में in the tunnels. 4K easy. Of course, that anchor from Astralis now still back in T-spawn. Blade gets off into 56. The device hits the scout headshot. Trade frags. Nice. Going to be coming in with the they need at least 3 more rounds. अच्छे से come back. He got caught trying to lurk. अभी 2 राउंड हारे तो गेम खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से. Even try this. Yeah, they're definitely fighting very hard. I want to go check actually which half it was Nico that had the
got the majority of his kills. I feel like it was actually T side, so to be consistent with the last time he played against Astralis and set that kind of kill record. Best KD Nico का चल रहा है देखो अभी 2.1 का KD चल रहा है I think इसका. Yeah, I'll go ahead and make sure. 20 kills, 9 deaths. Oh my god. That was this actually guy the is case. a beast. Either way, it doesn't look like he's going to slow down much. Invite कर दे. Wanted to bet 16th round winner Astralis, but VP game down from morning. Sad life. कल भी नहीं कर पाया तू bet आज. Very sad. तो खोलता. Very sad. Hunter को क्या हो गया भाई अचानक से इतना sexy है. Hunter भाई Nexa insane हो गया अचानक से. It's like wait something doesn't. Oh nice device. device. It was an anomaly though. 16-2'd. The very end of the year. Oh. Nexa's plucking of magic. Oh भाई पूरी generation खत्म कर दी. बच्चे नहीं होने वाले guys इसके. इसका पूरा परिवार उठा लिया इसने तो. बच्चे उठा दिए इसने तो भाई. पैदा नहीं हुए अभी तक. क्या बात है यार. Amazing. Astralis going to have one SMG on the play here in the 18th. While G2 are still in recovery mode. कैसे हो गया मतलब? I say recovery. Nico's got a deagle. So maybe he's got a little magic in him. 5-round lead still for G2 of course. एक kill glaive अरे नहीं extend नहीं किया. Nico काफी extend कर रहा है. At an early ये नानो के पास थी बता deagle. ये नानो के पास थी real Nico की deagle. Right now they're sending device again. The solo SMG as the front runner to the A site. The Maverick flying low, scouting out the area. He sees nothing for the time being, and it's that one counter-terrorist double smack from Cat. Oh, good damage. Kenny ये मॉली क्या था? Killed. 3 health as he has to Glaive का eject मॉली back था. through the Molotov. ये long And से just मॉली that किया क्या? damage alone is enough to create space for the bomb plan. Okay, so I finally found it. It was 23-7 on the CT side and a 15.5 on T side for Guys, Nico. इसने long से मॉली किया ना? If I'm not wrong. I guess we're seeing even more potential for an even more outstanding scoreline. ऊपर से आया क्या map के? Wow. And I mean, again, it wasn't like a fluff. See ya. 20 kill. Take care, man. Bye Navya. Bye Navya. मेरा भाई PC मांग रहा है. Shit, मोबाइल पे देखना पड़ेगा अभी. मोबाइल पे आजा तो stream पे आजा जल्दी से. Maybe even earn them an eco after that. And go Astralis. Here's a chance to nice Mac 10. Oh नहीं overextend कर रहा है बंदा मरेगा. Maybe he won't. A long से मॉली था ना वो देखना पड़ेगा यार वो तो सीखना पड़ेगा. उसके ऊपर से कैसे मॉली किया उसने? यहाँ से A long से मॉली किया उसने शॉट पे. Who's gonna win the map? Who's gonna win the map? I'm gonna give it to G2. Okay, let's do it. I think G2 will win. Yeah, I think G2 will win. I want a 3-map series with I'm this one. not sure though, but what do you guys think, guys? Please spam some predictions in chat. Spam it. अंधा spam कर दो. I think that makes you a brave man. कुत्ता बना दो chat को एकदम. We're gonna have to get your slow-mo prediction next to his on the desk. Yeah. We'll see. Listen, we said map. Yeah, just the map. Just the map. Yeah, this one's definitely. I don't think either team knows. They might lie and tell you they knew the whole time, but they're lying. Okay, no one gets killed in the cross, no one gets spotted as well. It's a 3-long setup here for the CT side, but the T's are trying to join them. Nexa immediately into the depths of the pit. Has Nico kind of between the smokes here, keeping one eye through it. Trying to find something as Dupree gets boosted behind the blue box. That Zippix and Dupree who has to just dive back down. He's got to crouch, but it's the cross. Nice, goes through Nico. He gets the better of Dupree, monster. who seems scoped up on the angle, but wasn't maybe ready. Oh my god! What? Zippix was so low. He gets dropped through smoke on his attempt at a retreat, but Glaive, of course, calling for his teammates to come over because he has this spacing in mid. Kenny S. Oh no, Kenny. अबे अंशु वाली mistake है exact same. देख रहा? Now that works, but he misses what could have been a critical shot. They get all the closer, and their flash is on the money. Kenny trying to hope that his teammates can rotate, but that's going to be kept honest by Glaive. And Kenny S. Good shot into Magisk. They lose that mid anchor. Dupree. Wow, I know, right? Wow, maybe pick it back up, and that slows everything down to a crawl. Oh, Nico! On his final trip back, he ends up dying. That's it. Wow. Even though Kenny misses his first shot, he gets a critical second one. And the first one looks easy, but look at this. I mean, the spray accuracy was fantastic here from Nico. Device getting outgunned by rifles more than one time in this game so far, and it's in critical moments as well. He even spots for that blue bin's boost, and they punish with grenades as well to make the spray down on the way back from the blue bin even easier. Zippix dying in what looks like an unlucky fashion, but he gets spotted, and he got tagged earlier by the HE of Nexa. So Astralis will call a tack timeout, and this is where Dust 2 gets a bit difficult, because if you're not feeling on form,
then this map is going to be very punishing. And at the moment, it's not like you can, they can kind of tactically separate themselves that much from G2. These guys know each other a little bit too well here on Dust 2. So it's a big confidence pick. You really have to be feeling it on that day. And at this moment, it feels like there's nothing stopping G2 from snowballing. I don't really see necessarily a way out of this at the moment for Astralis. And not that it's not like they can't win or they won't win another round in this half, but G2 CT side is looking super solid so far. It looks like G2 are just going to establish with long control again. It's a 3-2 setup, so mid is a tiny bit weaker for a second, Kaz a little bit weaker for a second, but since Astralis are not punishing that right away, we'll get the kind of the reset. We see Hunter falling back into mid B as well. And now we've got ZTs who are just slightly advantaged in this round with a little bit of long control, and they're fortified across the map as well. Not a huge deal. It does look like Astralis find Cat. अंजी full first copy है क्या निका है ना मैं भी वही देख रहा हूँ exact same will be गलतियाँ on the receiving end of this commitment. He is an incendiary in the M4 on ramp. He's got a grenade in his hand at the moment, so ready to throw it. But they are so grouped up right now. Maybe he finds the timing. Oh, not even. He doesn't even see them. Dupree gets that quick kill, and because of the timing there, there's no way G2 are in place. But that grenade actually does substantial damage, and the quick headshot from Hunter kind of gives them a moment to think about it. Smoke in front of the Xbox, Zipix with the headshot, and a Molly soars forward to help him. He's got this one cool off. They've got long control. I mean, it's... G2 have to save. Yeah, it's not comfortable, but Nexus sitting here in the pit. Exit later next. They're just going to let this one go. They can punish for exits, maybe. They're not watching CT spawn. Let's see how Astralis approach it. But there's definitely an opportunity to get the kills now. Remember, everybody on Astralis is down to $0, so they're looking for a way out and to go towards long. Nexa getting closer. Nice first headshot, dodges the op and gets himself a second. That's a nice upgrade. That's majority death, so all things considered, someone from Astralis is not going to have everything they want. Kenius is very happy now. I don't think Nico will be playing this angle anytime soon. We're going to zoomy on that one. ये इसने गलत खेला है. I didn't even see him. Like माना सही kill किया, but इसने देख लिया था पहली बारी में. It's like when does this ever happen? Basically, it's so clear for Dupree and for Nico. It's like can't see anything at all. Head glitching है. CS को कभी head glitch करेगा नहीं. कोई game नहीं head glitch सही करती अपनी. Here we have it though, 3 players on long again. We're gonna get another one of these fights. Remember, we had one early where the T's got stranded behind blue box and Nexa, he's got the double kill. Bomb thrown down to the dirt, flash high from Glaive, looking to eject back. Frag and Molotov on his feet. Nexa on with a 3rd kill and still in possession of the bomb. That's critical. Aminex soon to regain vision towards mid. Maybe Magis can slip up catwalk with a kill. इस हिसाब से तो लग रहा है अगर Nexa ऐसा खेलता है G2 ले जाएगी आराम से. पहला वाला somehow find this bomb back in your possession. That is Zipix, insane, he's just got to make sure they don't take over control of the double doors. So it's very much on either Magisk or nothing. But that Molly actually hits the feet of both the CTs. Magisk trying to get the better of the timing. Info, Kenny ka, Kenny. Kenny, not careful at all. Running up with his pistol in hand. Maybe assuming that because Aminek got away that it was clear for the taking. But this makes it slightly more doable. There's no CT actually inside of pit. That would have given them that long-range engagement. Maybe they decide to go fight Magisk, but Hunter, he kills Zipix on the other end, and now suddenly this looks impossible. 30 seconds, and Magisk gonna still try it. The flashbang is perfect. G2, they started to get caged, but like a rabid animal, they bite back, and now lead. Well, we got to see every second of this. It was such a beautiful round from Nexa on this hold. He even throws a perfect HE and Molotov along with spraying down Glaive to really just make sure that they win this round no matter what. And yeah, it's not been recently very good for Nexa. They need a new strategy in a lot of his matches. Astralis need a new strategy. I think I just kind of off memory was like, man, he really can take over a game. But recently he's been more red than black, I guess, if you could call it that for the ratings. But yeah, it looks like the break has been kind to him. It's a very strong performance so far in this map versus one of their biggest, if not biggest, rivals. It looks like he intends to help them snowball into what could be a single-digit loss for Astralis, which is actually something that I also go see when that loss happened. Look into for their Dust 2 matches.
crazy to think as well. This would be a 14-7 map or scoreline if it had not been for that Dupree easy headshot on Nico. Caught with a grenade in hand, standing on the ramp. G2, yes, Jatin, G2. Like karo jaldi se guys. That's the 1T round that's kind of made this a back and forth since the 17th. Solo, AK, and Scout, of course, for Astralis. Oh, so Magis. The economic woes evident. Magis is trying to get that one weapon. Oh. They've had a single-digit loss on this map since DreamHack opened fall back in October. Nico के सामने जाएंगे guys. Can they survive Nico? Can they survive Nico? Can they? Well, tonight could be the night. I don't think so. 2 rounds away from stopping that at one least. Guy, Nico. Of course, whenever you see someone at Goose, that means the G2 or whatever the team is, just they will pretty survive, confident it's going to be some kind of A play. They're sacrificing their mid piece here. Good flash for Nico. Ooh, that hit the money. I saw a few arms up from Astralis. Hunter, he gets his headshot towards mid. Nico's had enough. He decides to go for the peek, and a single kill is all you'll get. Kenny S. Looking for heads. Smoke grenade will deny that vision. Bomb carrier, though, still all the way back on elbow. He had to go retrieve it. They did have time. Couple players for G2 down in the CT spawn. Glaive going to keep eyes back behind him. And Xyp9x has the responsibility of locking down long. Utility for the retake, a single incendiary. And remember, 2 of their players already tagged, Kenny S included. Hunter, though, he's going to find a quick opening kill. Dupree looking with the D, finds nothing. So it's all on Xyp9x. 1v4, and he only gets a single frag. A 14th round for G2. 2 away from the win. And an Astralis-style retake as well, all through CT spawn and long. Great coordination, looking very, very sharp, sharing the kills as well. And man, it could not look any better. They don't look like they're going to slow down. Here's the mid lurk punished, which is a big kill to get every once in a while. You don't want to overcommit to try to find this all the time, but they're picking all the right rounds. Really. It's just everything is going so well. No, their IGL's playing well and calling well. Their star player, who they just spent tons of money on, is doing awesome. Nico everybody else hitting sharp headshots. Nico is a very expensive player. Tons of money. Super expensive. I saw think most expensive really Nico funny, content piece from Blast. They asked a bunch of the pro players, what would you do with $1 million? Buy Nico. Oh, did they say that? Buy Nico. Well, Art said buy Ziwu. And buy I was like, wait, maybe I'd have to sell myself first. Good nade. We've hit that point, boys. Be careful who you pick up. Okay. No. Come on, Nico. AK spray. Hug diya, Nico. Hits the mark, but also takes damage back the other direction. Aminex here to lend a helping hand. 2 kills to his name as the Deagles fizzle out for Astralis. All they had to work with here in the 23rd round. This is looking like a potential 5 alive situation. G2 would lead by 7 on their map pick of Dust 2. Yeah, we've seen games like this where it's like, oh, it's unlucky. This is not. I don't think there's any luck involved here, really. Maybe there's luck that went both ways. But not overwhelming luck for G2 in any sense. They've just been better today. I mean, we haven't even had a 1vx clutch yet for all of the rounds G2's won. There's always been a minimum of 2 players alive. So good shot. Wow, nice shot. Yeah. It is fun to watch G2 be this good. Nico. Right? Nico. I mean, when we saw this version of G2 when it first was unveiled, like it had immediate success, and we thought to ourselves, like, if this is what they're going to pull off now, my God, there is no limit. But then they kind of took a bit of a tapering off, and now 2021 so far so good. 15 rounds for G2, as said, 7 map points, and really no sign of stopping. So that retake through CT spawn from the last round. And this is kind of what Astralis love to do so much, just avoiding the cat retake, coming through mid, getting killed by the lower guy, getting killed on cats, they just come through spawn, come through long, and take these fights, which they seem harder, but in some sense, you like risk less on the rotation. So, okay, 7 rounds to go. Astralis, you gotta dig deep. Nothing else to do tonight, might as well try to fight to win this series early, if you even are able to win it. Now, even though I was thinking close 2-0 for Astralis, G2, have odds on both maps as well. Okay, NOA boost here from Hunter, waiting for the jump up, and it doesn't seem like they're totally aware of this at the moment. Oh, actually perfect flash. Nice. No, Glaive mows down both. I eat my words completely. Nicely done between him and Xyp9x. Come on, Magis. Flashbang certainly helped out. Magisk, he's just going to commit to the corner, and this should get him a 3rd kill.
for Astralis. Oh, is he peeking? Amanek wary of it, peeks in, but the immediate headshot. So it's only KennyS's op with a single kill this time for G2. Seems like Astralis aren't going down without a fight. But of course, a little head boost in mid that we haven't seen yet from G2 CT side, and that one flashbang, I mean, they were just standing in the open. Yeah, that was really nice. I mean, that's a little bit of G2, right? Like in the first half, we saw every opening tactic work out so well for G2 on the T-side default. Unanswered spray downs, holds, yeah, just denying any potential for refrags. Kenny. And KennyS knows that he is a high-value target at the moment, being hunted down. See if we can get a little bit of a frag movie in the save. Left side. Kenny, look. Ooh, would have been a nice flick. He's feeling pressured from both sides now. Yeah, they're coming for him. Flash goes off. Oh, he's hiding. Good try, you can run, but you can't hide, Kenny. That's a 9th round for Astralis off of the back of that opening double kill towards doors. 3 alive bodes well for the economy, but look, arms up, chances down. 5v3 straight out the gate. Minute 50 on the clock at that point. Yeah. All right, let's see if Astralis have any more opening tactics that might be able to just get that quick 5v4, 5v3 if they're that lucky. G2 जीत रही है. You know, even with the 5v4, the I'll just shoot way up, so that could be good enough. Just goes to show you how good G2 have been. Quick KennyS, man. Sharp as ever. Magus goes down. The one time he gets to use the op, he doesn't even get to see his opponent before he dies. Timing kill tha. Prediction kill tha. They waste no time. Astralis coming from tunnels into the catwalk play. G2 shuffling feet back to have 2 guys on site. We saw Nico manage a kill from Goose previously. Just lets them extend into the elbow. And then snaps it back behind him. Dupree going to charge in. Clears it. Successfully. Nice headshot. Gives Device the chance to plant. And Kenny tries to get the shot through boxes. Hunter 1 and done. A 3v3 duel? Does he want to? Pop back up. Oh, risky. Device playing around with it. This is a big op fight. I feel like it's going to get him killed. Oh, never mind. Gets Kenny the turn from it. And now it's a 2v3, turn 3v1. Nexa called to arms, looking for the spray down. And Device makes it a multi. Very nicely done. Yeah. I thought he was really risking it. Kind of risking the whole round there if that kill comes down. Taking the duel versus long, always scary. But they had the flash tactic as well. Always count on Astralis to maximize their duels with utility. Really good stuff here. KaIdo, are you here? And the op fade, is that new for him? Op fade for Device? I don't even think that's his. It might not be his. Maybe it's Magisk that he bought, that he dropped afterwards. Troll Device added with the Broken Fang operation. Oh, all right. Attack timeout called for G2. I guess, no, just because 5 rounds of difference, 10 rounds here. We're getting a little bit of the Astralis magic. What's that? We're getting a little bit of the Astralis magic, of course. That Dupree kill, that clean like that blades out towards Goose, headshot instantly, swings things back. Device winning his duel versus KennyS. Scammed. I don't think they have anything to be too shaken up about, but they do have to save on this round. So, sure enough, double digits, right? We dodged that danger zone of single-digit round wins. Tonight's not the night. Device has been getting out-dueled most of the time. So I think he's starting to get the confidence back. That first half was definitely, he was pretty despondent. Riflers were getting the better of him. It was a bit too slow for KennyS. Very rare you ever see a situation where he's, we're 25 rounds in, and he's 45 ADR. Glade pops up. There's a clean pickup towards the catwalk. He's looking for more of these counter pistol kills. Good shot, Glade. Oh my god. Blasts nice, Kenny away. And the bomb's going to swiftly cut its way through long onto the bomb site. These guys on roller skates, pirouetting into an 11th round win. Among Us के दिनों से यहाँ पर and a bunch of free ones here for Glade. He spots all 3. Go back. He'll need to fall back. He doesn't want to give up an AK. He can see the victory. Nice. How are you doing, brother? Wants to believe in the comeback. For the first time after a long time. He's gonna make sure they give up no advantage. Oh my god! Yes! Whoa! Quick little stab in the back. That's money in the bank for Nico, and an AK if he can manage to survive the round. Of course, that ominous threat
of running back so to the bomb site. We've already seen one ninja defuse today. Nico के हाथ में एक ही आ Not going गई, to happen this Hunter time. के हाथ I में would M4 like आ to गई, officially next put अपने it out SMG there पे है. that while we were sat in the SMG green वगैरह room पे है. and we were watching that defuse kind of unfold, Maniac called it. Simple's Ninja like 20 seconds in advance. Maniac, yes. big brain, आपको notification खींच के लाया. Dead on. But it's not always about the brains. Sometimes it's about the bronze. And Nico shows us that as he spinal slices poor Dupree. Biggest matches जो अभी तक Look at him just awaited है. crumple over onto the ground. Awaited matches It'd be में से symbolic बहुत if he ऊपर takes है. that one AK and then he turns Like it into like somewhere some here. crazy 4K And round. बाकी matches I सारे think they somewhere should be here. scared. They give him a really, And really this is strong not even gun. the final, I don't know that if they is the were. I thing, think they this might is have been not able even to the buy final. no matter what. Anyways, here maybe. No. Yeah. Are they saving? Easy. Well, I see five. Good knife, yaar. Very good Ops knife. been thrown. actually. Ogs trickling in. I wonder if that AK actually influenced their ability to buy because he gets them 1,500 plus the AK, and now Kenny can Buy the hop op, on this with some money left over as well. I mean, that $1,500 injection is 100% how Nico affords the op. I thought that this was a. मैंने बोला था ना exact same I चीज thought कि this अब was a Kenny good के हाथ map में for op आ Kenny. जाएगी, He's उसके 9 and हाथ में वो 15. M4 He's आ hit some जाएगी. really important shots though. I'm sure of it. Not just trying to back my own narrative here. I swear हाँ, to God. He's समझ hitting रहा हूँ. important अब shots. ये देखना, अब ये वापस से कुछ ना Those कुछ 9 scene kills. बनेगा. 9 kills. Wow. 9 kills. Worth more than the 25. Not true at all. Nico has almost single-handedly won rounds in the first half, but we're no longer in the first half. We are in the second, where Astralis are bringing it back. Good flash, good smoke. They have now taken 3 rounds in a row. Oh, decent nade. For the second time on this T side. I wonder if they're reading Balls this of steel, properly. as They're device kind of called. anticipating Balls maybe of an upper steel. push. They've got this default going in. I don't know if they're going to walk in if it wasn't smoked or not, but the 3 CTs are here in the B site, and it is kind of just a standoff. Oh, he's trying that. They try to sit and wait patiently. Device in danger I again, thought he's late trying naded, that, of course. क्या कहते हैं इसको? But it doesn't seem like the CTs have any Line up. plans to try to punish these positions. Let's see how far Almanac comes up. He's in the tunnel now, ready to be flashed. Yep. And he does find Device. That's the op down. Instant trade. I wouldn't take that trade if I was Astralis. Bracket This is क्या gonna भी be a after little this bit I'll show you, worrying. huh? After this I'll show They you. do still have some mid-control, and nobody's there to stop them. Magisk They is haven't waiting for the extended mid around guys. from the CT spawn. Magisk Kenny S is is just coming back to waiting. get I hope eyes he's on it. just waiting, bro. He's leaving the bomb for Zippix to come back, Oh. so he's going to try to get a kill by himself. Oof, this comes down to awareness. Hunter's right there, but there's also a player on card. Abhi, Yeah, Nico, he gets him Gavara, blindsided. G2 now man advantage. Could be the round. 3 kills away from a win on Dust They're 2. pulling the goalie on B. The bomb is outside of the B spawn, and Glaive is on Cat. There's a chance for him to pull out the fake, but they don't know what the rotation is for the CTs. Nico scours out mid and gets punished by Zippix. Glaive, though, jumps down. That could have been costly. Hunter, he's trying to fall back, Oh my and Glaive God, just Glaive. looking to stay Kya alive. karke Comes raha, at it Glaive? again, but we've already got Dupree Plant banana hai, inside of the plant bomb banana site. hai. He heard the Hunter reload. seems aware, and he almost stops it. 7 seconds left, and the bomb just barely gets in. All they had to do was nothing. And they would have had better odds of winning this round. Instead, they went for that mid push to try to get They're back some saving. information. Oh, and that they bomb can do left this. back and They can spawn do this. opened up They the can do round this. for They Astralis. can do this. Please How don't. has that Oh, happened? Should have been very over when hard. Matt just died inside the B site. Chalo, All they had they to don't do have was money. nothing. They're saving. They don't have money, guys. They're saving. And इनके बाद it starts vitality और to liquid का है. get a इनका bit best of 3 more है. scary. The thought of actually bringing this map to OT becomes real for Astralis. Insane, bro. They're punishing mistakes, now winning rounds they weren't supposed to. They're looking confident here. They even lose the opening kill of Device. Instant refrag, but their Insane. opera gets I just dropped can't down. say anything. They You're don't not- get to see their plan through, the one that they wanted to use to crack open B. G2 started with the correct setup as well. So surely, Good trade. they यहाँ पर get ये trade बहुत slightly अच्छा था. nervous now. This trade would have cost them the round, by the way. And Astralis, of course, Ooh. their number one quality is the calmness, right? The fact that no matter where it is, it's a major event, they always play the same. Nico का दिख रहा है थोड़ा सा uneasiness हो रही है Nico को. Cool as the Danish sea. Flashbang off the double doors. Quick routing here from Dupree. Gonna shove his face up against the smoke. G2 are nowhere to be found, but remember they did invest on this. Sitting on max loss winning and bonus. leading. Astralis, if they win this one, officially on fire. आ गया क्या नशे And करके. G2, it seems like they want to contend for this cat control using Kenny S This as can the either front go runner on into the overtime off, or this can be welcoming some do or sort of die a round. peek from mid. If
they were to boost a player sooner, then maybe Magis could हमने have भी been किया हुआ है ये caught. situation Now से he's हमने past that 8-15 से comeback किया danger था I zone. remember. Here's And an I area I want to was sell you the on right now. match Okay, MVP rogue grenades on because everybody. मैंने एक series MP9 से in double hand. kill लिया Kenny था. S Jumping can double save this kill. game. If they lose Inferno 13 पे A plus side पे saving jumping into balcony से नीचे potentially कूदते पेट में OT double kill. situation. But Kenny S right now, CZ full से. strength, full That utility, I was and the on the match right MVP side. most time. Molly goes to catwalk. And we We've won got that 3 match and we CTs won kind the of finals. jostling position और हम inside of हार elbow. जाने वाले थे उसके Everybody अगर वो standing in ना the no निकलता man's तो land. 100% A confirmed था critical हमारे cap peak could kill them all. I miss Scream, But bro. here One comes tap, Magis everyone misses tucking into the corner, dodging that flash. Nexa's right there, but he just lost his head. Oh. And now suddenly things are compromised. These I two wish, cap bro. Yeah, I players wish I have to could show come you deal guys with that. Magis, and Nico's going to do just that. Kenny could Oh, still no, deliver. no. They've got 3 bodies Nice, onto nice, the nice, ramp, Kenny. and they're trying to pop No, up Kenny, onto the no, site no, no, itself, no, no. but Kenny still No has Ultra, this Kenny, no smoke. Ultra. It's slowly fading, and Glaive shoots him right through it. A man advantage for Astralis and a bomb plant. This could convince G2 to concede, but Aminex kind of locked in spawn. He gets a chance to exit, and I think G2 walk away. A 13th round win here for Astralis. That just was just annoying enough, and there was a gap in the timing that allowed G2 to go back for cat control, but then the Magis winning the duel, Nico refragging is one thing. Kenny doesn't have any impact from the cap corner as they're crossing onto the site, and then Nico doesn't get another. At the very least, the silver lining on a very dark cloud is that they get the save because their money is absolutely destroyed. No chance for Astralis to go for this, and the round wasn't close enough that they were influenced in attempting to retake. So that can be nice. But Astralis now on fire, and we will see what the options are for Kenny S. Does he have enough for op and armor? 5200, yeah. He'll have to make a really tough choice here if he wants to go glass cannon or not. मैं उसमें था वो Now this smoke is no surprise. Lenovo Legion का लिया Lenovo Legion का था Supreme LEM थे वो भी last round जब 3 man spray down किया था better than standing on the cap brick and getting Molotov out or playing some relatively standard position, but he couldn't hit the shot. सब अच्छा खेले भाई सब अच्छा खेले वो 14-15 राउंड था 14-15 राउंड था Oh, he was locked into the corner, but Zipix arrives in time to deny इसने 10 Hunter. HP में 1v3 That's one of the निकाला rifles 10 down HP में for 1v3 G2. spray down कर दिया Came into the round with 3 of them. सारे अलग-अलग जगहों पे थे spray down Now they're going to have to rely on the double deagles. बहुत मजा आया था उस दिन तो सारे नशे में थे सारे के सारे एकदम हाई थे boosted into the catwalk. Let's see what he can मैं deliver. तो 20% लॉस पे मार रहा था भाई Nexa on catwalk with a deagle. मैं और अंशु दोनों का 20% लॉस था And he gets himself the head of Glaive, 9 health. Magisk to bounce back with the double. He sees the following pistol player, so Magisk basically cleans the board of G2. And Astralis push this game the distance. Leave it to Magisk, sharper than a Japanese chef knife. Here on cat, all by himself, playing that position. That Hunter would play on the T side, being so annoying just to pass, trying to stay alive. If you come into his territory, he wins. When he needs to come for you, usually wins as well. Now Manez looks like he'll die without getting one. Astralis within one of taking this to OT. I thought this was a boring game, Connor. I thought this was a game, boring from the perspective of G2 just rolling over the Nico show. इन्होंने जो टाइम आउट लिया था जीतने के बाद on to map 2. No, it's not like that at all. No, things get interesting, and they can still be interesting for G2. There's still a chance to close here with 2 wops. It's just the confidence that has been stripped and ripped from their hands that we have to call into question, and that has created the baggage that leads up to this final 30th round in map number 1. They're going to be thinking about it, but they can't. They have to try to forget it. लेकिन मैंने मारा वो गेम 1 round at a time. And they Good find shot. another 5v4. Dupree, he's on the front run for this. Okay, Loses good his shot, life Nico. as Nico Nico tries to निकालेगा answer Nico the निकालेगा save. Nico He's hoping that फूक मार मौली पे फूक मार नहीं स्प्रेड हो रहा नहीं Sufficient. He's cancelled out their mid Worth watching, yes, bro. Worth watching. कैंसिल होगा मिड कैंसिल कर दिया इन लोगों ने Followed up with damage, Nice, but Nico. Astralis had already disengaged that much further. This is They're so sitting close. here and man. hoping that maybe he tries to take a chance. नहीं वो आगे Device जाके looking to इनको lock निकाल him रहे हैं in. early round का अभी या तो ए जाएंगे या तो बी जाएंगे Amanek back on Plaque. Gonna be what? in the collateral. Just down to 17 health after that shot. Device just died to Kenny S. Come on, and Mike, G2, come on. playing with everyone's heartstrings, pushing no, it down no, to the limit. But now it's gonna take Nice, Kenny. 1v4, and Magisk doesn't have the health. 16
14. G2 take map in the final few moments when they needed him the most. He puts together the kills and really just wastes and burns through the stamina of Astralis as they string him along, give him hope, only to close it in the final round. God, Astralis string 6 rounds in a row on that T side to take us to round 30, only then to falter on the final hurdle. They face plant here on Dust 2, but we've got Vertigo up next. And I think that makes this series really interesting. So ladies and gentlemen, we'll be back shortly with the next map in this series. Woo! कमाल भाई मेरे को एक सेकंड को लगा था गया इनके हाथ से मेरे को सच्ची में लगा था गया इनके हाथ से जब वो अंदर घुसने वाले थे insane these guys are insane proud of my students they did it I had trust in them अमन ने कोलाटरल से जीताया नहीं उसका पहला शॉट जो था वो जरूरी था केनीएस ने ऑफ शॉट मारे दोनों के दोनों ये वाला शॉट देख सेकंड शॉट देख लास्ट शॉट देख केनीएस ब्रो केनीएस दिस मैन कमाल गाइस कमाल निको ने अकेले मिड कैंसिल करवा दिया यस निको वी कांट फॉरगेट निको ना होता ये राउंड इनके हाथ में नहीं था अच्छा वो इनिशियल फ्रैग जो निको ने लिया बहुत इंपॉर्टेंट इनिशियल फ्रैग प्लस मॉली एंड एवरीथिंग दैट ही डिड ब्रो ये किसका मैप था ये G2 का मैप था पिक उन्होंने बोला था G2 पिक था वाओ गाइस वाओ कैसा मैच था गाइस प्लीज गिव मी अ डिटेल्ड रिव्यू इन चैट स्पैम करना करो फर्क नहीं पड़ता मैं हाइप हो गया भाई ये मैच की एंडिंग में भाई ये मैचेस बहुत दिनों के इतने अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं सीएसगो में हमने 3 साल पहले मैचेस देखे थे ऐसे और उसके बाद हमने छोड़ दिया था क्योंकि कोई मैच अच्छा नहीं था कोई भी नहीं लेजेंड भाई कोई मैच अच्छा नहीं था जो हमें अच्छा लगा इतना अच्छा लग रहा है भाई दिस मैच आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम भाई ये मैप कौन सा है मैप देखना पड़ेगा यार दिस मैप इज अ वेरी गुड मैप प्रैक्टिस के लिए अच्छा है वेरी नाइस मैप क्या नाम है मैप वर्कशॉट परफॉर्मेंस BI ब्लास्ट परफॉर्मेंस अच्छा ओ दिस इज फॉर दिस मैप दिस अच्छा वो इसी टूर्नामेंट के लिए सिर्फ नहीं हम लोग भी बैक खरीद कर सकते हैं डाउनलोड आई थिंक सो मी नॉट इन डिस्कॉर्ड मैन ये प्राइवेट डिस्कॉर्ड पे है हमारा टीम डिस्कॉर्ड है मंथन इस मैच के मैं 2 महीने से वेट कर रहा था भाई बहुत लोग वेट कर रहे थे इस मैच का अंशु भी बैठा हुआ है अभी कहीं ना कहीं तो अंशु भी बैठ के देख ही रहा होगा भाई लेट मी चेक हां अंशु भी कहीं ना कहीं बैठा हुआ है यस अंशु राय समवेयर वेयर इज ही आई डोंट नो वाओ भाई क्रेजी मैच था दिस मैच वाज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम मैं भी भाई बात कर रहा था किसी से लेकिन मैंने के रख दिया एक कान से बात कर रहा था वर्टिगो नेक्स्ट से अरे एकदम सही था ये मैच बहुत वेल प्लान्ड था G2 की तरफ से भी ऑस्ट्रेलिस भी अच्छा कंपटीशन दिया ऑस्ट्रेलिस ने एक्चुअली नाइस ट्राई दिया है भाई ऑस्ट्रेलिस ने बहुत अच्छा खेला है अपनी तरफ से मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिस का टीम एमवीपी वो था डिवाइस हां नहीं डिवाइस था टीम एमवीपी पुराना मैच नावी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेक्सी था लिक्विड था ना नावी वर्सेस लिक्विड कल हमने वो भी किया था कल भी किया था हमने मैंने शायद थंबनेल चेंज नहीं किया थंबनेल बहुत वो यूरो वाला थंबनेल ठीक है अच्छा था लेकिन ये हो गया इसके लिए वापस चेंज कर देता हूं इसमें पुराना हो गया रुक जा वेयर इज दैट थंबनेल्स यस इसी में है ना थंबनेल ठीक है लेट मी एडिट द थंबनेल बॉयज एंड गर्ल्स ये लोग क्या वालो खेल रहे हैं क्या कौन लोग ऐसे देख रहा था टाइम पास वेलफोनस क्या कर रहा अच्छा ओके thumbnail has been updated probably not sure देखने दे रुक जा अभी कॉल आया है VC क्या उनका नहीं हुआ मैं आया केनीएस वगैरह से बात करके उनकी गलती की बात ठीक है ब्रो ठीक है नहीं हुआ थंबनेल रुक जा लेट मी चेक हां हो जाएगा 1 मिनट में हो जाएगा YouTube है ना YouTube टीबो नेटमैन खेल रहा है क्या चिल्लाया निको भाई कौन Look at this guys 1,27,000 watching It was looking a little bit scary Wi-Fi का स्पीड कितना है तेरा अरे हाँ मैं ये रिएक्शन टाइम करूँ आओ भाई देखते हैं जरा रिएक्शन टाइम to get it over the line 16-14 and that's what we want to see from a game of Counter-Strike between these two teams that was better from G2 that was a nice game and I think you can hear in the emotion that they both felt both parts felt
that could have been an overtime game because Astralis, they were having that decent signature move where they just scrape by, they just win G2 rounds. G2 is supposed to win. There was a 4v3 that G2 left away at 15-11, and then suddenly you start, the fear starts creeping in. Are they going to push it to overtime? So you can understand why G2 felt relieved. वही ना यार अभी मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ by the way तो I think यहाँ पर FPS कम होगा इसको लगा डाला लाइव जिंगल वाला चल गुड नाइट बाय बाय कैमकरन थैंक्स फॉर कमिंग अभी 100 mbps आ रहा है आना 150 mbps चाहिए मैं स्ट्रीम भी कर रहा हूँ प्लस ये 1080p में देख रहा हूँ प्लस डिस्कॉर्ड में भी हूँ तो दैट इज व्हाई इससे पहले नहीं 2018 वाला नावी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 60 था वो मैंने लास्ट मैच देखा था 2017 या 2018 में ही कोई देखा था मैंने केनियस का ही था मैच G2 का ही था उस टाइम वो भी था शॉक्स भी था देखो पता है आज तक कोई भी मैच मेरे को इतना हाइप नहीं कर पाया जितना Cloud9 वर्सेस FaZe ने किया था Cloud9 अरे हाँ Cloud9 वर्सेस FaZe वो कैसे नहीं वो एक था और उसके बाद ये था एक क्या नाम है इसका Luminosity एक और था Luminosity वर्सेस नावी तक कौन सा था पता नहीं 2019 नहीं 2018 ई लीग मेजर आई रिमेंबर अरे वो कौन सा था जो एसके ने कमबैक मारा था क्या था वो जिसमें वो कोल्ड जीरा टाको कोल्ड जीरा अरे वही मैच जिसमें कमबैक चालू करने के लिए उन लोगों ने मेरे को याद राउंड पे कमबैक चालू हुआ वो राउंड पे कोल्ड जीरा ने जंपिंग कॉलआउट मारा था नहीं रे अरे हाँ मिराज वाला ना हाँ वो कौन सा नाम क्या था मैं भूल गया सामने कौन सी टीम थी एसके वर्सेस नावी लिक्विड एसके वर्सेस लिक्विड एंस वर्सेस नावी भाई एपिक था एपिक गेम देख मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू मी सीएसओ का सबसे एपिक मैच था ये एसके वर्सेस टीम लिक्विड का सेमीफाइनल्स था वो एसके ने दोनों मैच 2-0 जीता और दोनों में एपिक कमबैक मारा सिंगल डिजिट डबल डिजिट कमबैक मारा ऋषित स्ट्रीम खोल के बैठ जा थोड़ा वॉच टाइम दे दे भाई केनियस के किल 12-17 मतलब इतना कुछ खास नहीं डिसेंट था लास्ट का जो इंपॉर्टेंट राउंड था वो निकाला केनियस ने सारे इंपॉर्टेंट किल केनियस ने लिए Absolutely. I mean, Dust 2 is the map where KenyS should actually shine, but I'll flip the script and say it's very good for G2. Like you're saying, Jacob, it's good that G2 can win with KenyS being a little bit absent. I like the fact that on this last clip, this team speak clip we just had, imagine Vertigo KenyS ने जिता दिया तो KenyS is quite clear. This is not the KenyS from back in time that would be sort of mumbling and muffling, not happy about the situation. He's quietly with Amex. I have your tunnel. Anyone jumps on the box, I got him. Even though he's at the bottom of the scoreboard, so this is a great time. Now, if you move back to Astralis, right? They win the pistol round, they convert, that's 2-0, and then they only win 4 rounds in the first half. Oh my God. It was the same problem against EG, a very slow this is like start. They pay a heavy price. Once they get activated, and I'm talking about Magist, I remember by late in this game, that original shroud. किसी ने ये नहीं देखा ना अभी तक एसके वर्सेस लिक्विड का वो कौन सा भाई सेमीफाइनल था वो 2016 या 17 के मेजर का और उसके अंदर पहला मैप था मिराज सेकंड मैप था कैश पुराना कैश दोनों मैप में लाइन से एसके ने कमबैक मारा है बेस्ट और सिंपल का निंजा था या does this give you that feeling okay Astralis they know we probably should have won this or we could have had a chance to win this and then we come back and clap them on Vertigo. I think G2 were playing well Rishit, on their T side. I Amazon think Prime G2 है ना pressured Astralis into a lot of mistakes, pressured them to a lot of clutch scenarios. You saw Nico, you know, when it was a 4 versus 4 or 4 versus 3, they always turned it around into the favor of G2. So I don't think Astralis played a bad game against G2, and I don't think they sit back with a feeling that you like they're going to run away from Vertigo? victory. I think they faced a well-playing G2, so we got to give them the credit. Now moving into Vertigo, that's going to be a different scenario, right? Because that is the mapping of Astralis. You and I were discussing it. We're not necessarily agreeing with that choice, right? Of course, Astralis, they have a reason for it. But last time they pulled out a Vertigo pick was against Vitality and they lost 16-4. Back then, you were equally surprised. So what is it with Astralis and Vertigo? We need to see it pay off. Yeah, I agree with you. I just have to do a mea culpa right here. I was surprised in the veto, but the truth is I hadn't forgotten, or rather I forgot that G2's last Vertigo was a long time ago. Yeah. That's an information that kind of missed my brain here. They haven't played it since mid of November for G2 on Vertigo. So now I'm a little bit less surprised by that Vertigo pick. Had I had that information, I would have had a different feeling on it. What is Nico going to do there? Where is Nico going to play? How do they organize this map around? Do you just leave Nico on the B side? But that could be a little bit segregated. You don't get much action. You want to have your Nico activated. Think about Dust 2, what we just seen right here. On the CT side, he was that third element from the A side moving about. Sometimes goose, sometimes on B, sometimes CT spawn. You give him that
freedom to feel the game and have the impact. भाई मजा आ रहा था मेरे को तो मैं भाई मजा आ गया वाला मैं लड़की से बात कर रहा था moving around the map. KaIdo Who's की going to be लड़की next से up? बात कर रहा There are a था lot of questions surrounding G2 and their setup on defense. I don't have all the answers quite yet. Now with Astralis, right, and Vertigo, it gives me one of these feelings where it's a map that very much suits the style of Astralis. I think you have each player in position where you're comfortable depleting. The Bianca is doing a good job with that. You can be aggressive, you can be defensive. You have device lurking around with the AWP, both towards A, towards mid, towards B for that matter as well. So I agree with you. As a map, Vertigo is a very, at least can be very tactically in that sense. Also something that plays in towards Astralis. If there's one duel I want to highlight in this game, one thing I want to look out for, it would be device against KNES. Both of these AWP players, they're going to roam around and sure, when I say AWP players, you know, look out for how many kills they get with the AWP. KNES and Dust 2, he had 11 out of 12 kills with the AWP. On a map like Vertigo, between ये अच्छा राउंड था वो 3v2 कर सकते थे वो सेव कर लिया so he needs to be viable. If he cannot find impact the same way as device finds impact with device, that could be the difference maker. Not in the sense that KNES is not as good AWP. ये important round था Device is a better rifle than KNES. So look out for that duel and look out how many times KNES is actually able to afford the AWP. Now, you can correct me if I'm wrong here. When it comes to Vertigo, I feel like some of the AWPers struggle a little bit more than on other maps to find the openings, to find the gaps. Actually, Vertigo offers smoke usage, right? Towards the A round. I think teams are now trying to always renew the way they approach the A round, because at the very beginning of Vertigo, it used to be just an aim map, straight up, people just peek from everywhere. Now you have smokes being thrown from CT spawn fast, and AVP at the edge of these smokes. So yes, it can be a little bit complicated. The B side has become very AVP-centric with all these players in positions. But you were talking about the structure of the defense, Jacob, on Vertigo for Astralis, and there was just one man. Is Zip. I think Zip is in a different position that he's used to with Astralis, right? You see him ramp or be on Inferno, being very quiet. He plays towards A. He's aggressive. He's fighting. You're right. He's fighting. He's aggressive. So he's one of these players that has to step out of his comfort zone to fight. But the good news is, so far for Astralis, he's been activated in this tournament. Now, guys, we were there during DreamHack Masters, right? And we saw this one here on the mouse sports side of things. It was prettiest Vertigo coming out. Then they suffered a defeat to Vitality and Big as well. These are the Warriors The thing is, we're coming out of a break, so there's two unknowns in this. We don't know how well Astralis are prepared on the map like Vertigo. We don't know how long they've been practicing and how much effort they've been putting into the map. Same thing can be said for G2. As Match said, we haven't seen them play since November, so a lot of stuff can have happened in practice. You know, maybe these two teams have been practicing against each other without us knowing on the map of Vertigo. So we will have to wait and see, and there's some questions that will have to be answered. What I do know is that the G2, they used to be good on Vertigo. KNES in particular with the AWP, he had some of those games where he had 30 frags. If he can replicate that level of performances with Nico and Hunter going off, then Astralis, they're going to have a tough game on the hand. Well, let's find out if Astralis are going to have a tough time. Off to Vertigo we go, and it's coming right up after the break. G2 are looking for a potential 2-0, but Astralis are always going to try and do what they do best, and it's take us all the way. Hopefully you enjoyed the stream, bhai. Thank you so much for tuning in, and thank you so much for आने के लिए. Thank you so much for आने के लिए, and I hope तुम कल भी आओगे, because streaming तो regular का धंधा है, and hopefully हम कल plat 3 चलेंगे. नहीं तो uninstall. नहीं तो देश के मार लेंगे हम. अगर गीगन ऑफिशियल मैचेस में यूज करते हैं तो अपने कॉम्पी में सब आरआर क्यों करते हैं? क्योंकि उनका काउंटर नहीं आता ना. और ऑफिशियल मैच नहीं भाई, हाई रैंक पे खेल सारे काउंटर रहेंगे. हाई रैंक पे आते हैं सबको काउंटर, लो रैंक पे ऑफिशियल मैचेस पे गेगन लोग यूज करते हैं, पैसे मिलते हैं जीत के. कॉम्पी में कहां लोगों को जीत के पैसे मिलने वाले हैं? किससे आ रहा है? No matter what, you have to get kills ना, you have to secure round. तो वो वैसा ही सीन है. यस, मेरे हिसाब से तो सही है. Easy plat 3 to you. Bye good night. लोग गेगन कम बाय करते हैं क्योंकि गेगन 5000 का है. इकोनॉमी ब्रेकर गन है, और सेकंडली अगर दूसरे सामने वालों के हाथ में आ गया ना, वो मैच ब्रेकर गेम है, गन है, मैच ब्रेकर गन है भाई. लिटरली 10 रुपीस का पेप्सी मेरा भाई. हमने कितना कमबैक करा है हमने वही गेगन के लिए. ऋषित तेरे को याद है? अरे बहुत वाला टूर्नामेंट. हां D2 डिफेंस पे मजा आता है. MM में तो D2 में बहुत ज्यादा कमबैक करा है. स्मोक कर दो, दर बजाते रहो. डॉक्टर डेथ वोल्ट सिंपल या KNES? Actually wait. Okay. Simple और KNES. ये धर्म संकट वाला मैच, ये धर्म संकट वाला क्वेश्चन है ब्रो. मैं me be like twist. रुक जा काइडो मेरे हाथ में 2 उंगलियां गाइस. मैं कैमरा पे कर रहा हूं, so he can't cheat, okay? I can't cheat. Pick one.
दो उंगलियां काइडो नंबर चूज कर 1 या 2 अरे उस टाइम क्या रहा था कि पढ़े हैं नहीं हुए ना सिंपल इज अ बेटर ऑफर ब्रो सिंपल इज द बेटर ऑफर ब्रो सिंपल hey sorry couldn't be active on stream today Radhika हो जाता है I completely accept that Radhika it's okay like करो आ गए तो जल्दी से मेरे लिए मेरा फेवरेट एमर ट्विस्ट है मेरा फेवरेट प्लेयर एमर अच्छा मिडिल फिंगर मैंने तो बोला था दो हैं और मैंने बोला काइडो को 1 या 2 अब उसने ये चूज किया तो मैं क्या करूं I'm just being honest ट्विस्ट का एम इतना क्लीन है ना भाई ज़ाइवू या केनियस 100% केनियस ब्रो नहीं यार ज़ाइवू भी अच्छी ऑपिंग कर लेता है 100% केनियस हां केनियस की ऑपिंग बेटर है लेकिन ज़ाइवू की ऑपिंग में ज़ाइवू इज डेफिनेटली नंबर 1 रीच का अच्छा लगता है डन ऑसम राधिका ऑसम हेलो एंड यस भाई 7 दिन बाद मैं एक और बूस्ट लगा दूंगा सर्वर पे गॉड लाइक इनकी मर्च अच्छी है यार मेरे को इसकी मर्च चाहिए G2 की होपफुली वन डे हमारे एक टाइम हुआ करता था जब मैं गेटराइट का गेम देखने के लिए पागल हुआ करता था अबे हां जब भी कोई ऑफिशियल मैच होता था गेटराइट नथिंग गेटराइट यार शॉन गैरिस कहाँ भाई का क्या बंदा है यार हां भाई क्लाउड9 कितनी ओपी थी भाई पहले भाई वो पता है क्लाउड9 का बेस्ट रोस्टर वही था नहीं क्लाउड9 का बेस्ट रॉपर वही था श्राउड नथिंग अपना स्का और क्या नाम है शॉन गैरिस और सुवीटू के ज्वाइन किया था फिर और उसका G2 का नीको कह रहा हूं केनियस स्क्रीम शॉक्स अपना और एपेक्स और क्लास एक और कौन था वो टाइटन से उनकी टीम में आया था एनबीके था पक्का से हैप्पी था हैप्पी तो तभी था जब वो ये आया था ना चार अंधे डीगल मार दिए थे स्मोक में हां वो इन्फर्नो वाला राइट पहला रोस्टर जो था ना टाइटन का रोस्टर G2 पे शिफ्ट हुआ था उसमें एनबीके था कैरी ऑप्टिक को कैसे भूल सकते हैं ऑप्टिक की बात ना करो आप इंडिया में कोई जीरो वाला ऑप्टिक में ही रे ओ मैच स्टार्टेड गाइस मैच स्टार्टेड लेट्स गो फर्स्ट राउंड ऑफ द मैच व्हाट इज गोइंग टू हैपन गाइस गन आउट some pretty sick individual form on the opening map come on please let's see how crazy things can get here 50 some odd stories up. It's a long way down, both figuratively and literally to the lower brackets. Oh my god! Kenny! More of that. Next up, he's gonna Kenny, आप मेरी मार लो. No, it's Nexus kill. Okay. Kenny, आप मेरी मार लो. Sometimes they look way too crisp, but let's Kenny मारे भाई. Defensive ले ली इन्होंने पहले सही है. सब वेट कर रहे हो उधर. The CTs with the quick flank and the quick headshots, crisp. Oh my god. All can be. No space. Layout change कर दिया. Smoke criminal all the way. Scream. First, quick one, watch it again. नहीं मिली भाई. Scream का एम अच्छा है. Watch this replay. Nexa hunting them down. Nexa and Kenny is quick headshots and yeah, just suffocated them really. No space at all. मैंने सिर्फ रीटिंग में खेला है. See that level of confidence. I think Nexa can carry on this map. It's definitely a map that's for me personally the most interesting player is Omnic on G2, especially on their T side. For the map where I think he adds the most value, one of the most values of any player on any map. अभी सीधा वैल्यू के much for the mid lurks as well as a lot of the A ramp utility that he'll use. सीसी नहीं आएगा क्या? सबटाइटल? He really can. नहीं लाइव है लाइव में सबटाइटल्स कैसे आ जाएगा? केनी सर तोड़ रहा है सिर्फ भाई. चाके मेगिस का भी सर तोड़ कर आ गया. नीको को ओ भाई मार. Could be on the money. ये फटका. ओ 89 HP खत्म. 90 damage on that one. As if it wasn't already hard enough with 5 blocks and nothing else to work with. वही बड़ी बात है. हाँ तूने बताया. Hunter's gonna make a lot of money if he has it his way. And make it a third. A full house from the content copyright बोल रहा हूँ. अच्छा. नहीं मैं Twitch से stream कर रहा हूँ ना. They lock it up. Let's see what the buy is going to be like. That's very nice. I mean, no casualties plus lots of money made on the MP9s. As good as it can be for a start. If there's going to be a way for G2 to win this game, it'll be with pistols and clean conversions. So AKs are bought up here for Astralis. There are no option play just yet. It's too early for that. And let's see if they can tear through this bonus round. They know exactly what G2 have. So let's see how they approach it. What was that, bro? Madge is going to be here just about every single round, holding for the mid push.
And usually it's Dupree underneath the B stairs. But this time it looks like he's with Device, either looking for a boost or just allowing Device to take up this position. This is kind of how Dupree would play it. So भाई ये बहुत महंगी है भाई. iBuyPower का sticker लगा रखा है इसने. Flash for the peak. Gotta be cautious with that construction hold. This is an enormous amount of space being created. I mean, almost even Glaive dies at this point, he's done a lot, but he even gets a kill. 50 HP damage. You can cut anybody else out of the equation. Aminek's gonna take to the close corner. Glaive को देख. Glaive's still right there, तू start कर मैंने login किया मैं आता हूँ 2 मिनट में. Also working up from the B ramp. There is another player where Glaive just died. Aminek upgrades, but Magisk takes the place of Glaive and delivers another couple kills. मेरे को दूसरे उसमें drag कर दे GT किसी और voice channel में. आजा मैं करता हूँ तेरे को आजा. He was up in middle making more space than time. There's no other way to put it than Glaive on the round right here. Damn. He gets the first kill, but he also gets one of the B defenders, and then the trade comes out very late. And Aminek gets put in danger as well. Magisk comes out with the 2 refrags, and that's it. Now, Astralis' T-Sidle's map is terrifying because of how they brought A and B at the same time. This last round, we saw the 2 players who would be separated, Device and Dupree, working both on B this time around. So, I want to see if the game plan is evolved coming out of 2020 for the T rounds. But the way that Dupree put it was like, sometimes you feel like the map is just kind of random, whether it works or not. And I think after like looking at why for them, it's just because they rely on just like an individual to open up one side of the map or the other, and then they feed off of that energy. But, tactically, they don't really just go into full executes. It's really just about grinding up that map control, forcing an engagement, and then trying to take the 5v4 into an execute later on. But not really ever just skipping that part. It's too easy to eat the B nades and the A nades to do anything all too quickly on this question map. mark, bro. Why would he do that? They could just walk into this B site. He just wasted 2. They're completely free. Nothing will stop them whatsoever. Aminek, hell, I mean, he's playing not even on construction, but the middle side of the sandbag. So all of this can be taken at 0 cost. They go for the Molotov to just make sure that this close wooden wall is clear. Dupree boosts up and over, expecting maybe some sort of presence, but maybe G2 can scramble their way back over fast enough. It feels to me like this is just going to transition into the immediate save. I mean, to see them lose these rifles, having such little utility for a retake and no kits, just let it slide and hope to make a round win in the 5th. You notice how Dupree jumped and then missed the jump? I wonder if he did that on purpose. In case there's someone sitting at the wood wall, because you're always going to see their head jumping. So if he misses the jump, then they spam and he's not sitting up on the boost. इतना तो टार्जन ने भी नहीं सोचा होगा ऊपर चढ़ते हुए get another default see if he tries it, but नहीं अरे सबको पता है लेफ्ट से भी लेते हैं बंदे 3 मैन डबल बूस्ट होगा ना 3 मैन डबल बूस्ट plus side हां फ्यूरिया ने बनाया empty फ्यूरिया को करते हुए देखा था पहली बार मैंने बनाया कि नहीं पता nobody नहीं responding to मैं वही सोच रहा नहीं बनाया पहले से ही है बूस्ट मैंने आज से पहले कभी डबल बूस्ट नहीं देखा one kill मैंने versus सिंगल बूस्ट Aminek. देखा हमेशा उन्होंने 2 लोगों को एक साथ पुश किया ऊपर and oh, is he wrong? 2 बैठे थे ना डिवाइस और ऊपर आ गए थे ग्लेव और अस्टालिस अभी अस्टालिस sitting पिंच next कर to रहा the है भाई cans. This one slips through. This is a Astralis, very easy second very round. very close Literally यहाँ zero पर ना आप contest ढंग on से that B retake कर side. सकते हो यहाँ पर आप ढंग से होल्ड कर सकते हो यहाँ Literally. पर either they come was or like that. कहाँ in गया Malik's chair. He's बंदा actually chair on a छोड़ के chair चला गया behind Nico. सूसू ब्रेक नहीं खेलना यार मेरे को और मैडम जी मेरे को जाना Sitting on a chair beside like नहीं क्यों खेलो तुम आज Next to the solar panels. अरे दादा panels. मेंबरशिप कब चालू होगा मेंबरशिप चालू होने वाला है हमारा Right. pushing With just a USP. It's just that he's just the info gatherer, the reporter. सच्ची बताओ He's the paper boy. Okay, he's not a threat at all. Zipnix को देखो भाई ये He's the informant. He's just trying to get some information to share it. हमारे Everybody else यहाँ has क्या guns. कहते He's just got a हैं wooden न्यूज़पेपर वाला stick. For the local newspaper. बेटे He just सुबह ना wants an सुबह interview. कल ऑस्ट्रेलिया जीतेगा नंबर 2 This is going to be more of the same. Guys, can we I get guess some so. There's predictions no one on in here, chat? so 11 okay, people, let's see let's if go. he misses that jump. Can you again. please spam? I Or I guess here they're going. Yeah, they do. Rami, They do. Oh, they can do you it just please to get spam the. Astralis or G2 I'll in just chat? do. Come on, G2, support your G2. favorite teams. But I think Come on. what was I go for different G2. last I time think was he nice stayed nade, crouched good flash. underneath. Good फिर morning. सेम कर रहे हैं फिर सेम कर रहे हैं और ये So it did make a sound. क्यों G2 नहीं होल्ड But I कर don't know if the other guy just मुझे भी didn't नहीं समझ crouch. आ रहा. Why are they खेल रहा है leaving? वो गैम्बल know. क्यों कर रहे हैं? इजी है रिटेक That's में it. ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतेगा. Round one, exciting game, huh? ये जो पहले What's इजी going हुआ on? था You still like पहला Vertigo? वर्टिगो तो याद है अब ये डब्बे इतने Well, खुले at least there hasn't been smoke spam. Oh, it's coming.
Astralis, That's G2, what- come on, आने दो, spam Definitely कर go दो, to the spam B कर दो, side, अंदर that's spam what कर we'll दो. get. If there's no smoke ban, ये someone's डब्बे wrong. भाई for बहुत sure. उन लोगों ने ये कॉम्प्लेक्स कर दिया अभी से. Yeah, he's right. पहले नहीं था इतना कॉम्प्लेक्स. पहले का याद है वर्टी को जब हम लोगों ने टूर्नामेंट. जब बट विंडो ज्यादा होती थी एंगल्स भाई, भी नहीं है. पहले जब चार विंडो होती पांच थी ही ऊपर, एंगल याद है? Relationship. As a troll, All or maybe अंदर just के for डब्बे बाहर आ real, they सकते should थे. just finish हाँ the डब्बे ऐड हो construction. गए उधर बाजू See में what the विंडो. final product looks like. Right? I mean, that's the beauty of ये Vertigo. आसान It'd है be such an retake easy भी. map to make हाँ changes ये to. रीटेक आसान है. Kenny and Nico मेरी पसंद है, but I want Astralis to win. मेरे को That'd be फ्रंट sweet. आसानी Yeah, से and then they खेला can जाता have है. मेरे को a half G2 build जीतने का मन 53rd कर रहा है. floor. मेरे को प्लीज G2 जीते भाई. Take Please क्या है 1900 damage for मेरे falling को off भाई the मेरी बहुत 53rd टाइम से floor फेवरेट instead of टीम है G2. 1836. 3-4 Okay, साल हो गए. here it is. The execution, the dry Zipnix run, 999 with the Nike smooth, players. Zipnix on भाई क्या? to the B Zipnix का side. मिराज वर्ल्ड Beautiful में अभी तक stuff. They यूज clear करता all the हूँ. angles. मिराज B side Everybody बोल, उसकी वीडियो बनाऊंगा that मैं they बहुत need जल्द. to kill is dead. And मैं how to hold that's, sides में मिराज वाली one of the वीडियो bag. बनानी है. G2 You don't even know actually what reminded me that, man. hit them. मैं भूल गया था. You think we'll get the kills this round, Landers? Maybe some smoke spams this round. I think we'll get some kills this time. You know, alternatively, they could also, because of all the bomb explosions, take the building down a few floors. Easy kill. Oh Astralis down a few pegs as next Man, मुझे लगा सच्ची बताऊं, मुझे लगा नेक्सा उनको बनता है. to get this मैं opening एक kill. इनको भूल Finally, गया a little bit of resistance नेक्सा का मूवमेंट. coming through from G2. इसका सीढ़ी से नीचे कूदा. Oh, but he gets caught. Smoke spam. Glaive Whoa. catching him on इतना the नीचे retreat. गया भाई, Is he- सीधा नीचे. I don't think so. Couldn't have seen him at all, Look right? at that smoke, man. That's a Luck, full lucky smoke. shot. Yeah, full You know what smoke. Glaive does with smoke. Doesn't 3 Cs. Doesn't care about Close smokes. right. Okay, so Spam we'll मत दियो wrap up the डुपरी. stairs. Still 2 CTs here to fight. And अभी okay, अभी बराबर they B side hold smartly कर रहे हैं, नहीं retreat. करेंगे They even drop a smoke ये as देख well. रहे That's very close. सपोर्ट देख रहे guys, flashes के But साथ. नहीं yeah, commit this करेंगे. approach Deny कर fails. दिया, Could have पूरा- turned पूरा into a deny full कर 1B दिया. hit, but instead Zipnix they लेकिन push for a अच्छी position. वो position A at पे mid at अकेला है least. भाई. बेट एंड स्विच कर सकते हैं यहाँ पर ये लोग. Zipnix का देख. Nico's हाँ, got देख this रहा हूँ, far देख रहा back angle, but or is that sorry? Is that Hunter? कर सकता है कि Zipnix. Glaive, what are you doing, bro? I'm not sure. B Oh, it's, B कर रहे हैं, Nico's B over 8 on the कर रहे A हैं वापस side. से लोग. B 8 करने वाला है वापस से. देखना जितना Hunter's एक्सपीरियंस just है मेरा behind. मेरे को लग रहा है B करेंगे. Basically on top. Maybe Roller A पे cover. एक Gonna be the info है. front अब runner. 2 आ गए ना. अब sound आ गया. And Nico's gonna Rotation hang आ रहा है, on rotation आ रहा है. to the blue Zipnix, boxes. Zipnix. Hunter अभी plays Zipnix पीछे देख. next to the crane अच्छा, inside ऊपर of the नीचे, smoke. अच्छा. Kenny S gets a kill elsewhere Map on the देख map, रहा so हूँ. it is very हाँ, much मार this दिया three-man उसको. cohort you see on your screen for the T's. Astralis being cut down one after another. There is an answer from Magisk, but he loses so much HP in the process that things are looking tricky. good nade, bhai. And Nice Amanek nade. all the अरे while Amanek getting खत्म closer step by step. खत्म कर दिया. Fake plant from Magisk draws out Kenny into the kill, and sure enough, it is then Magisk to fall here. So G2 tying up at 3 rounds apiece. The moment they throw something at the base of B. Because I guess they were just saving, so they just played it full pacifist mode. The last round ये they राउंड had पास a भी bounce, कर and सकते then हैं. they ये राउंड पास भी saved when they करेंगे. had one person on B, just really anticipating a lot more A hits. And the anti-eco calls very smart for Astralis, but yeah, as you नेक्सा ने mentioned, अच्छा as दिमाग soon लगाया पता है. ये as राउंड स्टार्ट they में अग्रेसिव start किया है to, लेने को. uh, उसको पता है B catch on होल्ड to नहीं the हो रहा fact that पैसिव it could में. be a Yeah, B he's default in right. the beginning. सही कह रहे हो. They are well rewarded. उन्होंने And as soon actually as ये they हो have the सकता है जान utility के to do किया. something about it, you हाँ can't throw क्योंकि B Nexa होल्ड down नहीं हो रहा there ना. with 2 राउंड से Molotovs. अंदर उन्होंने कमिट कर रहे हैं confidence सीधा दिया लोग. सामने Hence वाली why team they को were B का. playing A on those half तो saves. नेक्सा ने सोचा कि अर्ली गेम में पिक ले लेता हूँ एग्रेसिव जाके. अगर मरा तो Almost होल्ड हो ही नहीं नहीं रहा. नहीं You can G2 का apply. कंट्रोल है भाई. And oh, did हार्ड they कंट्रोल ever. है G2 का. कहाँ फटी. हाँ निको ने still बहुत सही पोजीशनिंग की है उधर. Same situation, same setup here for G2. Yeah, देख I'm नेक्सा actually वापस आ गया really के बैठा है. हाँ भाई मैं देख रहा हूँ. ये देख. वो बात अलग है. Don't नेक्सा want पोजीशन to अलग deny लेके a push, but you're also पोजी kind of करके बैठा upset. है. सेम Maybe चीज नहीं कर रहा. Next Dupree सिर्फ wants to go info in ले and रहा try है. to work that. I Middle think का this is a और really important Steve part of Nexa this नहीं game commit plan करता भाई because ज़्यादा. this was the space that's always given to Nexa is basically Astralis suicidal. versus most of their Suicide other bomber है opponents. basically. Nexa. This area या around तो the मारेगा और staircase, अपनी टीम so को info अरे देगा. इन्फॉर्मेशन making देखना this a focal कितना point है. of ये the देखो game plan. The only ये issue लोग is the amount of resources. They're giving हाँ up नहीं 4 है players उधर to spot स्मोक this. भाई वो मॉल ही नहीं Hunter takes बुझा a
भाई. little too much damage there. I'm so And, yeah, Nex is still unsatisfied right around. They're now. starting to make a decision. Next वाले गलत टीम पे छोड़ा भाई, गंदा decision. God, this is such a good call. Look at the timing on this. टुकड़ी देखना. Just in ऐसे sneak in कर रहे हैं. गंदा मैंने बोला गंदा decision. The headshot and can't quite catch the second. Nexa going to stand his ground a little bit. 40 HP, and he does significant damage to Flavor. Kenny then cleans up shop. Around the side of green. पीछे गिर मत He's got जाइए. utility trickling in, पीछे making मॉली him आया a ना, bit इसका पीछे बड़ा uncomfortable. Drops the frag on the dead ये body भी of एक एंगल है Flav. मेरे को नहीं पता. Little tidbit of damage, but nice, Kenny. हाँ, angle अच्छा था Good Kenny का. angle just on the side of the green box. अब Device blocks off that line. Windman मैं use करूँगा Plant यार. his bomb. He's hoping Magus can run Guardian up or fast simple? enough Guardian. to try and help him. नहीं, Because hopping he's the already Guardian. taking Guardian. damage, but Richard. Device pops up over the दिख तो रहा orange. है. Device. Nico is right अबे there दिख तो रहा on है. the side of the wall. मार. Device अबे देख रहा होगा भाई, नहीं दिख रहा होगा Magus यार. now in position.
takes that front runner slot, lets Device fall back, put a little bit more more distance between him and the bomb, and the retake is coming in strong. It's gonna be a run boost. Hunter thrown past the smoke, and it works, but the collateral falls onto Kenny. He's on top of the bomb. Time's ticking quick, and Magic keeps in the back. Astralis with the 1-round lead. Oh, with the clothesline. Kenny gets away, headshot with the USP, but he won't be able to save. He's dead. And a 2v3 post-plan on B site is a rarity. That is not an easy round to win. Most maps, even 2v3 might give a slight edge to the T's, but on this map, such a high percentage of CT rounds won on the retake, even in even numbers. So this one's going to very much sour the mood for G2. 4-3, and it causes a save. Critical moves by Magic. Props to the run boost. Cool way to kind of throw off the nice consolation. Device. Had they not been lined right up for Magic, would have been a nifty way to retake. नहीं भाई इनका वर्टिको स्ट्रांग है एस्ट्रॉलिस का होल्ड अच्छा है इनका Astralis और Furia जो दोनों का बहुत अच्छा not a स्ट्रांग good है look for होल्ड अच्छा है नहीं इनका आएगा इतना तुम्हें मैंने Furia से बहुत सीखा है वर्टिको में मैं कमेंट्री कर दूंगा मैं कास्टिंग कर चुका हूं on बहुत this बार 8th round. They are very much clumped up towards this. मैंने हिस्ट्री के लिए टूर्नामेंट कास्ट किया था फ्यूरिया में यंगस्टर है अबे इको राउंड है इको में almost the third. Hunter retreats and the bomb is now planted. Dupree watches for the flank and that kills Kenny. गंदा ऑफ एंगल है T round for Astralis early on. Kenny frustrated हो गया रहेगा Kenny बहुत ज़्यादा frustrated हो गया रहेगा तो ऑफ एंगल से very very clean anti-eco. एक बार दे दे यार एक बार दे दे Definitely high potential for the CTs. मार दिया हेडशॉट मार दिया भर दिया on this map. भर दो It's very hard to rotate back and forth between A and B because of how quiet you have to be the whole time. And because of that, anti-ecos can get very, very scary if you pick the wrong side. कितना स्पैम देते हैं भाई ये लोग गोलियां देख रहे हो is there a chance? दीवार नहीं रह गई अब Crispy little hacker 1D here from Almanac. He won't find what one. is up? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई मैं बहुत अच्छा हूँ मैच बहुत मजा आ रहा है अबे हंटर पागल भाई for the cause. लाइक अभी जिंदा थोड़ी ना बचेगा वो पैसे का It's a slow grind. पहले जाना था ना उसको आगे थोड़ा सा रेट पैसे मिल जाते हैं ना and you can see why वो एक किल निकालने के this is really just about not losing hope for either side and I think Astralis have the benefit right now of just being able to be in pole position plus gathering money on the टाइम आउट लेता है ना बाद में आगना चालू looks like he's got some ideas. Every day you see him talk. No. The cams. कितनी बार नोटिस किया मैंने Sometimes I feel like they forget he's there. No, there's a lot going on upstairs for Zipix. Maybe so much they just like too much to put into words. He talks to himself more than his teammates. Yeah, he's like these fools. भाई बेइज्जती कर रहे हैं लोग कास्टर तो इसकी बोल रहा गंजा है बोल दिया गंजा है भाई अब फेज नहीं खेलती क्या Sharing some words कैमरा में घूर रहा है तू तो बाद में real mistakes to be फेज पता तेरे को बोलूं फेज कब खत्म हुई मैं तेरे को बता दूं फेज का डिस्ट्रक्शन कब चालू हुआ जब बोल ऑफ मैच चल गया हां 2019 उसके बाद से खत्म हो गया फेज मैं उम्मीद नहीं so even like the kills नहीं गार्डियन भी गया था जब नहीं गार्डियन गया था तब इतना खत्म नहीं हुआ था गार्डियन जाने के बाद भी फेज ने थोड़ा जीते टूर्नामेंट्स ऑल ऑफ मास्टर जब खत्म हुआ ऑल ऑफ जब गया ना तब खत्म हो गया We'll still see. You know, it's really just about who has got the composure right now. Next is going to spot बहुत अच्छा फेज का एक दूसरा भी तो प्लान है going to be hasty over towards mid. youngsters हैं I don't realize he was spotted as well. He just भाई रेन क्या खेलता था भाई रेन तो अभी भी बढ़िया his teammates to come and help him and even goes out for some more. Solid play from Nexa there. I love the fact that he gives chase into that mid play. You could see him on the retreat. Could not escape the death and bomb on top of it. So all three of the players towards middle picked apart by Nexa and Nico. I think if we do it mic'd up for this game, that would be a cool one to hear from him and his teammates what the information was and how he called it. The approach was just perfect. Kenny goes for a timing shot. Gets drilled through the yellow, but he doesn't die. 8 HP and they have the bomb. 8 HP, 35 HP. But 4 भी तो है ना Kenny's on that angle. Nico's ready to line swing if Hunter actually needs someone to help. But that is not the case. Once G2 have their hands on that bomb, they tighten their grip. And Astralis, despite walking through the B site, cannot take them back. So here's Nexa's play. I thought he was going to get caught as he jumps up there. He was in the process of jumping. Glaive gets half his health off, and this was cool. Chasing down the third kill in mid. Magis could not run away fast enough. So I was wondering if Glaive saw him when he was shoulder peeking, because the way Glaive was walking up, I was like, does Glaive even realize
that Nexus could peek him right now. And then, CD side की utility yeah, that बहुत timing strong है almost was not even in Nexus' favor. Astralis का utility कम खतरनाक है क्या भाई? Astralis नाम से utility चलता है भाई. Yeah, another very, very, very tight round from that perspective. Info बना रहा है. Zippix Panic create करें दोनों sides पे और फिर abuse करेंगे कहीं ना going towards B. It's been a very game करें plan. वापस से. एक चीज notice किया Nexan aggressive आना बंद कर दिया. Ground बहुत ये tense चल रहा है. And it has to do with either बिल्कुल mid एक or B this game, sound आ गया. which is something that's a little bit new. Sound आ गया उनको. Sound आ चुका And है. interesting. Retake. Wow, they're going for the double. चढ़ो ना तुम्हारे. Shot lead मारा है भाई. गया जला. CT stay alive. There's some good 14 damage. HP भाई 14 HP. But I don't know who I'd rather be right now, because we cross a minute, and the T's might be a bit stirred up about the fact that they got pushed out of this position with that re-smoke. You see G2 moving towards the A site fast enough. Whether or not Astralis knew there was 2 players on that position, man, I think they get extra bang for their buck from that frag grenade. That is the reason that half of G2's players are so low. Molly here at the feet of the sandbags, extinguished by Hunter. Nico can hang on to his story in case Nico का वही काम रह गया, वो smoke कर गया था. For him, but Dupree with a bit of a curveball. Pick up kill on Amanek. Nexa back at the B bomb site, playing from quad. Not the best position, but if he just keeps his face in it, then he has back turn. He's spotted. Magic's finding him over the side of it. Kenny S. Up shot. Wall bang, from Kenny. Dupree, but Hunter, he's helping out, and there's no plan because he comes off of it. Now there's only 8 seconds, and this means Device has to stick the plant or come in with these kills. And Nico, he just has to live. No time to get bomb plant. Nico is the round, but bro. G2 and Nico will prevail. And this is actually a very tense game. So close. He even loses that duel. That's it, of course. Last person alive, but no time to stick it again. Device needed to get off and just go for the duel. Straight up. Go Astralis. Go G2. Sandwich. Go G2 right now. Actually go G2. बहुत कोशिश कर रहा है भाई G2. Nico is so exposed to the peak, but Device thought maybe he had the plant. भाई aim पूरा बचा के. Oh, Kenny. It's all in the hands, baby. Bomb deck भाई right panic there. भाई. Nico, I Kenny know ने kill लिए हैं भाई. I know this feeling. I understand this feeling, bro. Choke underwater again. I'll try. Don't be so funny. Astralis अभी एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं. Pretty good map. Honestly, hate it. It's starting to crank up. Okay, dude, those Nice first 2 try, rounds were Astralis. like the most boring भाई, thing I've ever nice seen. try, Empty Astralis, sites with full बहुत execute. अच्छा खेला G2. 4 rounds later. Basically, we're उसने actually जिताया into the Kenny game S now. ने So वाला, 10 rounds deep in this first half, and things deny are कर getting दिया interesting. And it's not. no. There hasn't मेरे been को a third map single देखना है, मेरे को slow भी A देखना ramp है, सच्ची crawl. बताऊं तो. They deserve a third Been map. मैंने पहले ही मैंने ये बोला था कि 2-0 होगा. देख को लग रहा है मेरा prediction Okay, right. 2021 Vertigo looking good. Shaping up. Shaping up. Guys, go ahead and share with your friends and family. मेरे को पता लग रहा है नहीं भी होगा क्योंकि स्टार्टिंग साइड इन लोगों ने पिक किया है ना G2 ने. Magic, good shot. Pre-fire आएगा, pre-fire. Gonna work those magic fingers, Kenny. Connect कैसे नहीं हुआ? Both sides. Don't tell me the pistols prevail. They've got Hunter, magic Hunter, and an Hunter. AK in the mix, and sure enough, things working out. Hunter, come on. Gonna shave Hunter, one off the behind you. middle. Plant An हो रहा है. advantage here for उसको पता Astralis and a है, bomb Amanek plant निकालेगा on ना. this B site, but Amanek, Unchecked, his position unchecked. unknown, and he doubles Yes. into it. Nice. Both Zippix and Yeah. Glaive Dupree take it नीचे, out of Dupree it, नीचे, and he इसको पता already नहीं has किधर an है. understanding that Dupree's cut off. That Molotov दिमाग है भाई. guarantees them a defuse if they मार just भाई. jump on They it. don't even stick. They should be. They're so could've confident it's the A ramp. Plus, that smoke is going to expire. Do not let Dupree back into this round. No way. No. Now he's going to stick it. He gets the इसमें defuse काश through in the ऊपर- end, but this round could have been done 10 seconds sooner. Amanek I Amanek guess, का play round it safe in है. case ये पूरा Dupree round Amanek और managed Hunter to के get ऊपर in 2 front of Hunter ने that मारे 3 Molotov. Amanek I ने. think the Plus smoke rep at the Amanek top भाई, of the plus stairs is what creates that Yeah, uncertainty. there's a second one. Patience है भाई इन So, लोगों में अपने में this नहीं is आएगा तो. such a sick round from Almanac. लोग He's in LAN पे भी jeopardy तो for खेल रहे 1 हैं ना, second उसी because he हिसाब gets से dinked देखते here, हैं हम which I think लोग gets ये लोग LAN पे ये LAN पे चल रहा है. ये लोग सारे same boot साथ में ही तो बैठे हैं. साथ boot ये camp लोग पे तो बैठे साथ में हैं. बैठे for the हैं. guy playing हम the लोग- bomb हम लोग- didn't हम know लोग about the अलग second panic बन guy जाएगा ना हम or लोगों the में. third, so didn't know if there was हम one लोग अगर flanking साथ holding बैठे that तो from the हम- stairs, हमारा भी यही and सीन just है. Nico was को really मार smart दिया about the way भाई. he approached that. Loved that Nice play, pass. and this is a lead now for G2. Okay, Zippix यहाँ पे काफी. There's Astralis Oh, on cruise control there for a second, but G2 have now नहीं यार, really लगा ही नहीं disrupted their plans. लगा ही नहीं. Come on, guys. अच्छा फोर्स में था लास्ट राउंड Astralis का. I think Kenny को दिखेगा, right? Head दिखेगा ना? No idea. Oh. In abundance.
And Dupree, nice shot. Dupree starts off with a headshot. He's really just beating the recoil there. मैं होती तो smoke में ही spray चालू हो जाता. Flash towards middle. Nico gonna have to avoid it for a moment. Comes in though with a headshot versus Glaive and then goes back to alley-oop himself. Nico. आतंकवादी So Nico. nasty. Nico भाई You know, Nico he's है. got some of the best spray accuracy. Nico में Nico. I mean, wouldn't even a stat. Kenny आगे मत जा, अंशु राय मत बन. Kenny क्या कर रहा है भाई? Kenny क्या कर रहा है? अंशु राय बन रहा है यार. अंशु और Kenny खाएगा की similarities हैं भाई. मैं अभी notice किया. सारी गलतियां सेम है. Is the Prince stream falling out of favor at all? Are people still using it a lot? अब Oh man, people are still all about अच्छी it. चीजें है ही नहीं. कॉमन है. अगर रिफ्लेक्स ने निको को मार दिया मिड पे राउंड तो राउंड हार गया. अस्ट्रालिस जीत जाएगा यार. अगर निको मरता है इधर. कम ऑन. बहुत डिफिकल्ट है लेकिन निको का मरना है. निको का एंगल देख. निको का एंगल देख. Slick, but the five deagles of Astralis not smooth enough to rob this round away. Still 2 kills. I support G2. Be happy with that. But a 7th round for G2 now as they win 4 in a row. They are G2 डिजर्व करता है. अस्ट्रालिस ने कितना कुछ अचीव किया है भाई. थोड़ा अचीवमेंट G2 को भी मिलने दो. Had fun so far. Picking this apart and seeing there's just so much जोने खिला रहा है ऐसा लग रहा है. Seeing how even the kill distribution is. तन्मय भाई शेयर भी कर दो एक right now having a bit of a अगर आपके struggle. दोस्त हैं जो सीएस को And देखते हैं Nico starting to pull ahead a little bit. So having a great time on Vertigo so far. Good smoke. बीचों बीच प्लान किया smoke. And I mean the fact that he can अंतर एक पिक लेने की कोशिश कर रहा है. by himself is a little bit scary for History very much. Finally, he'll get taken out, no kill, and it's Device to do it. The Hitman. Hitman device, yes bro. नहीं no mercy नव्या सही में no mercy. मेरे हिसाब Contract से out on Nico in this series. Finally, it's been. My call for a 2-0. कप्पा call 2-0 कर दिया. इसकी आवाज नहीं आ रही. Sometimes looked uncomfortable on Vertigo, honestly. I think early days Vertigo, he was amazing. Come on, Kenny. If he can have some नहीं ये क्या कर रहा है? क्या हो रहा है इसको आज? for some reason. Kenny, what is happening, brother? I think he really kind of crafted some of the early CT peaks down ramp. Right? He had some nasty angles, but then everybody learned them. कब तक Kenny? लास्ट मैच तो हुआ है भाई. ये देख तो एक राउंड हुआ है. 2-3 राउंड भाई बहुत इंपॉर्टेंट राउंड निकाले. Got to get into the combat opping. KaIdo एक क्लिप दिखाता हूं तुझे भाई. दिखा. अभी आई है. What do you think are in these backpacks? Look at all these guys got backpacks. Launchers, explosives, and money. Ball is popping on the B site. We're right back to where the T side started. Empty B sites. Even in the 4v5 with guns. There is nobody here to stop Astralis. It can get one kill now. This can be done. That's the bomb down. Oh, this can be done. Yeah, they come in from the wrong This can be done. direction. Kenny Almanac on the other side, I believe. Next guy's on the flank. Almanac now coming in. And he wins his duel straight up. Big trade frag. 3v2 and this threat. Parabot वगैरह कौन है? Over their head from the flank. Trying to be seriously on that. Device, he's going to keep it serious because he needs to create space for the post plant, and Kenny, a single shot will take him, but the USP gets the better of it. 5 health on Kenny S, who did a great job of chewing up those little angles. And Kenny S now on top of the bomb. He's going to stick this defuse. Zipex not peeking. And of course, that internal clock, that's why the man talks to himself. Because he's got this under wraps at Astralis to keep it within 1. But these shots right here by Kenny, they had a completely evacuated bomb site. He catches the bomb carrier, anticipates the green peak, gets out before anybody can trade him, and even wins this pistol duel to give himself a chance. Yeah, that's the only reason they were even close to winning the round, and it did bring them really close, but you had to do everything. End to end. The opening kills and the clutch. It was just a bit too much to ask. USP is again here for G2. Somehow managed a lead, even though I feel like Astralis have won a high percentage, or gotten a high percentage of anti-eco rounds. हार गए क्या वो राउंड? हाँ. Kenny ने 2 मारे. On the appropriate site. हार गए. The player from the sandbags distracts Nexa, so Zipex Come on, slips guys, in with a kill. Guys, can we get some hype in chat? 14 people in chat. Come on. Not comfortable with such presence. Criminal. And again, the B site's open. हाँ ना, back shot भाई. Happens. आज भी मारा simple electronic में मारा. Because on Vertigo, you can hear everything. अभी इस मैच को मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ. This is definitely the map where I feel like you have to walk more than anywhere else. ठीक है. भाई.
for बहुत good intense reason. चल रहा था लास्ट मैच में Astralis off of that intense call. का था बहुत Will मजा slip आया this over to the A side. You think about how many times they've been लास्ट मैच conditioned अरे to क्योंकि run over Astralis to का the B कमबैक side मारा था empty. मालूम है बहुत हाई दुबरी का गेम है 14-16 जीत रहे हैं ये लोग दुबरी इको फ्रैगर Good calls here by Astralis to guarantee मारा a headshot, 7th round. Last Okay, question that is, was who takes this questionable. lead as we close the first 15? That's a great question. एक गन चाहिए इनको एक गन निकालेंगे It's गन hard to say. I feel ओ like भाई 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 we've got a tie game. Eco I fragger है, think bro. G2 have actually played a little bit हाँ, better गन मिल in गई the but नहीं opening मिली rounds for Astralis, which actually I boosts them want up a little bit. Astralis But to win this match, but they they go also to have the shown their third game map. plan is quite Let's see strong. what happens, buddy. Just Anything the can happen individual now. Nikos Strong very, in very the good city, here. strong I think बहुत this is an strong है, unknown बहुत ही quantity ज़्यादा for them as well. Zonic has mentioned that when they watch demos, they watch a lot about भाई the star फाइनल player. है क्या हाँ 'cause that नहीं player has फाइनल the नहीं most है space, बट that's फाइनल like से their ज़्यादा हाइप primary इसकी है threat in a lot of the games. So, watching someone like Nico, it'd be hard to prepare for this match. Considering they wouldn't be able to see him in any officials on this map. मैं तो G2 हमारे यहाँ पर सारे G2 पे हैं मेरी चैट में मैं एस्ट्रोलिस के साथ हूँ Again, we get that early A presence and smoke grenades exchange. Zipnix नशीली There's already ये हर राउंड एक ही a चीज group कर रहा है of Zipnix Astralis अब players आदत feeling पड़ out गई the होगी B यार कैनियस steps. वगैरह को पता लग गया There's होगा only उनको one player in position to ये defend भाई this. It's चार लोग क्यों Amanek. गिर रहे हैं इधर He throws अबे an ड्रॉप incendiary कर down दिया at एक the feet दूसरे of the को B players, and that actually has them भाई kind of जस्ट इमेजिन scattered. कोई गिर जाता अभी उधर हम होते This गिर जाते position's been called out by Astralis though previously भाई with अभी तक grenades. भाई We गैम्बल saw like कितना कर रहे 100 हैं अभी तक तीन damage लोग done उधर between the two चार लोग CTs बैठे हैं standing उधर here, and that's definitely a threat. info मिला। Imagine they open up the site Nico with confirmed utility. But instead, Nico. it's going to be the duel Nice. given भाई towards गलत Device खेल रहे हैं and गलत खेल रहे Zipnix. हैं Kenny has looking to trade back with his अरे op, but he ये just Kenny couldn't scope just as the chance was his. Does Kenny hit the tag shot. दिया भाई tag टैग दिया दिया डिवाइस So बड़ा बड़ा invested on Sixty A tag. ramp. They don't have any info mid. They don't get the first trade on the ramp as well. So even though it's coming मार 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 Flash Kenny हाथ दे का दो। सिले अबे What a headshot. भाई Kenny Zipnix follows up. And now he's finding his आठवां impact round here इनका in the भाई। waning round of this first half. Device Next आएगा focused भाई, next on भी the गया, short next भी shelf. गया। And there's Ay. Nexus. These बोला मैं। esports are just getting their heads Next आएगा taken भाई, straight मैंने on. बोला ना। And Nexus kills, these are crucial. Buys time for Amanek to get over, but the bomb just ejected back down ramp. They could straight नीचे up चला कर रहे गया हैं? बॉम्ब नीचे चला गया lol। full B Amanek control इधर here क्यों for आ गया? Astralis. Yeah, डुपरी it's को open देख, now, डुपरी but they को। kind of have to ओ run. भाई ये गिर गया ये वाला हो गया गिर पकड़ गया। लिया Honestly, not work in their favor, especially the amount of time left on the clock. क्या अखरोट पकड़ And लिया this is वाले the नहीं, नहीं, मर गया, for मर गया। Dupree, it seems like man, it came close. Almanac almost के पास winning क्या angle that, था? but this is the bomb getting planted now. 1v3, and this pass that was just spotted a हो few गया। seconds ago. Nice will rip. get भाई Nexa eliminated. 1v2 can do Still this. low health here, very low Ace के लिए HP 1v2 for है। Nexa. He's got to 19 first HP है। find his opponents and also kill them. 40 AI puts this at 19 bullet 7%. है 19 bullet है come on 40 HP for Nexa. He would need the वन ace टैप दो भाई 1v3. लेट्स गो Call him Will Smith if he wins. नहीं He's got the Hit smoke नहीं है grenade यार to cover up the bomb. Positioning Doesn't देख रहे हो? have a kit Headshot currently ले on दो him, so at this point it seems impossible, नहीं, and नहीं, Believe will नहीं, make it नहीं, so. नहीं, Despite क्या G2's खेल best रहे हैं? efforts in that अच्छा string खेल of 4-round wins, it's handle करना आता Astralis है। to Chill close guys, with a Astralis trio will of win। rounds भाई and push this no 8-7. predictions अभी क्योंकि To break। कोई भी जीत सकता है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिस ने बहुत ऑस्ट्रेलिस का ही पिक किया है उन्होंने बहुत grind ऑस्ट्रेलिस किया का है। पिक है ऑस्ट्रेलिस का पिक है लेकिन साइड ऑस्ट्रेलिस का पिक अपने G2 का पिक है और G2 हार गया साइड Yeah, he's right. 7-8 का हाफ था He's right, guys. बहुत hard grind किया ऑस्ट्रेलिस ने, but they can still lose. मोस्टली actually. ऑस्ट्रेलिस जीतेगा ये They can still lose, but they can also win. बहुत बहुत गॉड लाइक खेलना पड़ेगा इन लोगों को ये मैप भी खेला है भाई, 1.6 में खेलते थे हाँ, भाई party, पुल डे pool पुल डे party, पुल डे pool party, पुल डे pool पुल day, पार्टी है pool पुल day, डे pool day, pool day, पुल डे कुछ तो है भाई Grenade होता था, जमीन खेला है पे भाई, बड़ी ये मैप होती थी मजा भाई। आता बहुत मजा आता था। हाँ, मेरे को आज तक नहीं पता था इसमें बॉम्ब किधर प्लांट कर अबे वो पूल नहीं के नीचे बॉम्ब होता था। पूल के अंदर होता है pool के अंडर अंदर, वाटर हाँ, नहीं underwater। अंडर वाटर नेड भी होते Nade हैं भी होता है, हाँ, nade भी नेड होते हैं है। अंडर ठीक है, वाटर nade, तो right. खेले क्या? Flashback. Come on Australis, go Australis, नव्या। ये देख नेड है क्या नीचे हाँ, होता है, कोने में होता है, हाँ। नेड, कोने में होता है। ये डेथ मैच खेल रहे हैं क्या ये वो है ऐसे, ये वो बस बैटवे का डेथ मैच
भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है मैप, मुझे याद है। वही ना, ये मैप बहुत अच्छा लगता है। सही में यार, ये ऐसा डेथ मैच मैप होना चाहिए 6%, सिर्फ 6 लोग या फिर 8 लोग मैक्स। साले पबजी बना दे। नहीं अभी डेथ मैच कह रहा हूं नुबड़े। तो टीडीएम भी होता है पबजी में। ये क्या कर रहा है? आर्ट ब्रो, प्रो प्लेयर। वो उसने आगे वाला मारा पहले। ओके प्रो प्लेयर ब्रो, प्रो प्लेयर। आर्ट प्रो प्लेयर। मेरे पास है वर्कशॉप मैप भाई, बहुत अच्छा मैप है साहिल, बहुत मजा आता था 1.6 में।
एक बात बता, तूने 2020 के HLTV की रैंकिंग देखी? नीको है ना टॉप पे? नहीं चूतिया जाइबू है भाई। जाइबू और सिंपल वो सेकंड पे डाला भाई, मतलब जाइबू ने अर्न किया है भाई। अर्न किया है, पर फर्स्ट भाई क्या बात कर रहा है, सिंपल क्या बात कर रहा है। मतलब मैं मानता हूँ नीचे से ऊपर आना मुश्किल है, पर भाई ऊपर से ऊपर रहना मतलब सिंपल कैंपर। ये कहाँ नॉस्टैल्जिया का देख भाई कैंप कर रहा है, तीन एंगल देखता है। मैं कितने साल का था? मैं आई थिंक 12 या 13 का था। मैं अपने कजन्स के साथ खेलता था घर पे। याद है हम लैंड बना के खेलते थे इसको। मामा का कैफे था तभी, पैर में गोली भी खा रहे थे। सिंपल भाई, वो भाई चक्कू मार दिया बे रश ने। देख सिंपल साला रामी भाई। सिंपल तो अभी भी उस निंजा कर गया। ओ 8 भाई, ठीक है यार। चश्मे या 8 कौन है? 8 वो है फ्यूरिया का प्लेयर है। P90 चलाता मेरी तरह। अच्छा प्लेयर है वो बहुत। भाई मेरी तरह ही खेलता तो अच्छा ही होगा ना, कैसी सी बात है कर यार। सही बात है। बॉट चलाते ना P90 भाई। मैंने लैंड पे 16-0 किया है। चप्पल पड़ी थी सामने माना, लेकिन सामने तो चप्पल उड़ती आई थी भाई। अबे रश को नाइफ निकालने भी नहीं दिया। हम तो कंडीशन 0 से फैन है भाई। मैं 1.6 में खेला था, उसके बाद कंडीशन 0 भाई अपना ऑफलाइन वाला खेलते थे एक्सपर्ट मोड पे। मजा आता था यार पहले खेलने में। चलो let's start again. One round makes the difference here for the first half of Vertigo. 3 rounds in a row to close from Astralis. भाई डिवाइस पर बहुत पसंद है। Looking Vertigo. प्रिकॉशन सही नहीं है इसका। Like a 2020 Vertigo. Oh, ये बात निको। निको, welcome to G2. Let's go. Didn't over attack A. निको भाई फोड़ भी रहा है ना, इतना 12 किल पे फोड़ेगा। लास्ट में different game sizes of fastness. कैने भी खेल रहा है ये मैप तो, अगर एलेक्स is literally put on the Duns cap and run up A ramp over and over again. Just because it's what the map encourages, not because they're stupid. Actually, you know, it's just like unfortunately it's just what you got to do to win. But Astralis found a way to get a cool half out of not doing that. Nice flash. He actually makes the most of that. He was just caught jumping beyond the nice trade. So we've got G2 trying to fight their way tooth and nail up this B ramp. Everybody from CT side is now in position. Still more than a minute to play. Let's not get crazy, boys. Sit back and just wait until Astralis unravel this stack on their own. Yeah, they've got to be suspicious about A, and of course, there's just you can still push down to deep A or out to mid, but it's just less likely on this map. There's more respect in that regard. So sometimes sitting and waiting or rotating back, it's fine. You don't really feel the need as much to like go and clear every single angle. It's a lot scarier to big flank on Vertigo than most other maps. So let's see what's going to happen now. Next takes a spot. तो कैनी नहीं जिताया ना He was here earlier. He's got a USP, which means he's got one good shot, and he could really open this whole round up again. भाई इतना टाइम है इनके पास। Looks like they're going to commit. गलत खेल रहे भाई G2 गलत। बहुत स्लो खेल रहे हैं पिस्टल राउंड। Looking out towards mid. मैटर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो पिस्टल राउंड है। OP spam in chat guys. OP spam in chat if you're watching. Participate in the chat. He's going to come in a bit later, it looks like. Nice. Nice. ये वो वाला still boost है। sees nothing, but Hello. that's very much a ruse. A run boost? Okay. Oh, throws him in the middle of the site, tries to challenge the ball, and Smash is coming back to save it. What a weird situation that was. Astralis cleaning up the kills, but nice try, teammates in the end. That was almost sick. Like they saw him and he could have gotten the kill. That would have been. ओ भाई इसके दाढ़ी ये पिस्टल राउंड में रन बूस्ट कर रहे हैं। God, that was so नहीं I mean, नहीं यार नहीं happening. So if his teammate dies, then that guy could have got turned on. Either way, Astralis locked down another start, another good start in the second half. Bonus round coming up. G2 no investment. Looking for a plant. Deep grenade hits Nico hard. कितना? ओह 21 HP Deep निको। in the bones. चमाट खा लिया। आर्मर नहीं है ना उस पे। चमाट खा गया Easy निको नेट DP control. Nico. And that's all you need to keep stuff stacked at A. But he goes exploring on his own. And it pays off. Not only getting Kenny early, but they've got map control for days, Mohan.
when you have stickers, yeah. souvenir stickers like this on devices, Prius, can you inspect his gun for if it has two different teams on, is there a reason? It's like the match that they play. So the souvenir case is dropped at the end of every round. You get the autograph sticker of the player who was the MVP in the round, the team sticker of the two teams playing, and the sticker Oh, for bhai. this round would have been matches. It's easy versus the eco, but still 3-5 performance and no casualties for Astralis as they take the double digits. इसका भाई इसका चेहरा ही नहीं हिलता भाई ज़िपनिक्स का तो टेंस और ज़िपनिक्स दोनों का भी कुछ नहीं अबे नाफ का कल याद है What will the buy अबे हाँ नाफ का पता नहीं लगता वो रो रहा है There's no family need for guy. an op here. Family guy, And now yeah, it's you know, we got to see a different style of Vertigo in the first half because Liquid में Astralis controlled the half, but now G2 dog gets नहीं it उनका and shows a different pace. So if their game plan leans towards A, that's what we're gonna see a lot more. Hunter here is throwing some grenades. And I think I like G2's T side, just about how Nico fits in at this point. I like how Nexa calls on this map. I love Almanac. Watching Almanac on this map, I think he's a very interesting player to watch here. He does a hell of a lot, maximizes every second. And again, sometimes an entry, sometimes alert. Here it looks like it's a B focus again. Interesting. Stuff seems to have changed a little bit. मेरी फैल्कन for water element है मेरी नहीं Fully down. Kind of frazzle them. They have to smoke it out. And I love the fact that Astralis try to apply that weapon pressure at the same time, but Amanek's ready for the peak. 25, Still tons of 24, damage 79. done. That unarguable. It's a matter of getting the second kill on the bomb site. You can see Magic starting to flirt through the CT spawn. That volley should bank on the corner, but there's nobody there. Dupree can still afford to hold this position. More utility being thrown, but none of it on the money. एक kill तो minimum None of आएगा it to counter Dupree. Yeah, We've got the boost up behind the wooden wall. The second player coming upwards as well. अबे ऊपर करो The ऊपर device करो gets closer step by step. And he takes Hunter off the bottom of the totem pole, draws players back, but Amanek in the meantime can still move forward. Either they chop their way down into the Nice Molly. and Kenny S's trade kill gives them 20 seconds to somehow get this bomb down. Zipix takes position inside the site. Remember, 2T's low, incredibly so. One of which now removed. Kenny's killed, but still they walk forward and they expect Device on the flank. However, he's here on construction and it's spotted. He can't stop it. Device 3 kills and Astralis with an 11. It was a great round from Astralis. So many different moments. I'm just like reacting on it. Like, oh my god. Whoa, hey. Skin वाली ले skin वाली ले भाई 1v2 and kind of knows what he's running into. Even Nico's waiting for him, misses वो his पूरा first पैनिक bullet, बना गया भाई bomb फट के चार हो गए Look at all the nades that get thrown from Astralis at all these different timings. Like as soon as it feels like they can actually enter into the site, and the smoke is down here, a cool kill comes up for Almanac a couple of times. And honestly, without Almanac's kills, I think this round falls apart completely. Like that opening, when they threw the nades down, it peeked through the grate on the side of the site. That could have been one that just stomped him out. And Astralis is late all these different times is what really made this difficult for G2. Just continue forward. Even when they had the man advantage, even when they knew Device was behind them. अबे रुक गए रश करते रुक गए Device in a high pressure situation doesn't look at the smoke. Thought they'd start wrapping around the ramp instead. He loses his head. And G2 with a man advantage. Gonna try to keep up the heat here. Use this moment for what it is. Because it all unfolds so fast, the rotates weren't quite in position. And now we get more of the same. A fast A play. And a 5v3 to boot for G2. Glaive's going to extend out from the back of the site. And Dupree, well, he's applying pressure on the flank. Can't manage to get himself a second. Two of the 3 on G2's side. It was a little bit messy in this post plant. There's some holes here. Everybody's kind of overlapping on the same positions. And that means Magic and Glaive can kind of walk in. This takes attention away from them. And now Glaive can come in for the spray down. There's not enough time. He gets this kill. We can talk about jumping on the bomb, but no. Nexus saves the day for G2. मैंने भी देखा था हम लोगों का भी सारा एम बॉलिंग जैसा लग रहा था जब हम एक्स-रे में देख रहे थे ना लोगों को मैंने रिप्ले में देखा था. We could have had a situation where Glaive peaks sooner when Magic taps the bomb and activates him. It was chaotic, and that's what Astralis are creating, and they're almost flourishing off of it, but you know, G2 stays strong this round. Now they just gotta wrangle up their communication, make sure that they've got their head on straight for this following round, because they kind of are finding openings. They're out dueling Astralis in places. They're still
kind of hope here for G2 to actually. Oh my god! Device 2 rifle rounds in a row, dead in the exact same position up there at heady. Blind through smoke. Nice shot. The headshot connects. निकाल दिया उसने निको ने ऑपर का ले गया Temporarily takes down the cannon. Device गंदा कर रहा है, gets his एक hands clutch on का it, निकाल so दिया। that's only Zipix now with the deagle. ओ निको को देख भाई बहुत एकदम ऐसा लगता है इसे Cost बहुत them barely मारेगा any utility. अच्छी पोजीशन पे No health taken from G2 for the man advantage, and all the छोटे time in the lineups world है, here छोटे as well छोटे to work. ए पे देख रहा है कितने लोग हैं Hunter the इनके front runner. Oh, miss कर दिया। Magic's getting the better of him. Magic second Swinging the big निको green. भाई क्या था वो शॉट वॉल G2 not going to let him die in vain. Still taking steps towards the A site. We do have Zipix behind sandbags, and he has a smoke grenade in case they Molotov him out. नेक्सा But I लंबा wonder if they throw it. नेक्सा नॉटी हो रहा है नेक्सा नॉटी Molly हो के रहा लिए है बोल रहा है, Molly के लिए बोल Jump रहा है। up into the sandbags. There's no way they're going to forget about this, right? You'd think Molly not. कर There it is. तीन लोग हैं पे Now he could just buy some time, and he is. The smoke goes down eventually. Zipix 4 HP, backs turn. Zipix starts hitting shots, and he's given a bigger chance. He dives back into the cover of the smoke. But Amanek, he's done a great job of clearing the bomb site in the meantime. Okay, they probably, okay, this is where Nico needs to hold this. They need to communicate and corroborate, right? Here, they know that the player's locked down. They need to secure the bomb with the other one, have him covered. Oh, they're not covering with either, exposing himself to the sandbags. 1v1. Yeah, and it's just a pure 1v1 for Dupree to win. That was just not... की शक्ल देख इसकी शक्ल देख barely scraping by on some of these rounds, and like this is pure autopilot. They throw a Molotov at sandbags, execute onto the site. Don't even see if anybody throws a smoke down on the sandbags. Zipix kills a guy and then spams until his deagle runs dry, and then hides in the sandbags again, and then ends up being the reason they win the round. Communication मोटे needs to be way tighter for G2. निको भी बोल रहा है मोटे Zipix can't even seem to believe it. Hagrid Be a bit more deliberate. एक बार दाढ़ी में आग लगा दूंगा पीछे रैप कर रहा है भाई doesn't smoke himself out, and he's worried about someone यार peeking him. दाढ़ी में आग लगा दूंगा एक माचिस डाली ना पूरा खानदान जल Maybe clear the जाएगा sandbags too. ओ इसने लेंसेज लगा रखे क्या नहीं ना आईज इसकी ऐसी क्या लड़कियों को बात कितनी है अच्छी यार। लगती है ना ऐसी हाँ आईज यार, ब्लू सही आईज बात है और हस्की पे Ultimate tunnel vision here for G2. 90% ग्रीन भी होती है What? Okay, he wasn't even exposed. That's not even Almanac's fault at all. Dirty, Just off the sound cue completely. dirty. ओ भाई ओ भाई Okay, ओ I'll भाई take that. एग्रीड हार्ट अटैक That makes things look a little bit more ridiculous. एग्रीड तुम बाप बनने वाले हो बाप है वो But पहले still, I mean, why is he alive? अगर तुम किसी और बच्चे के बाप बनने वाले हो कुछ भी हो सकता भाई मां बनने वाले हो गए I see you. एग्रीड तुम्हारी दाढ़ी And I see the struggle for G2 in this round. Two deagles, पीछे मुड़ते ही चलो हंटर को देख Hunter's looking to create a bit of space here. कुछ ज्यादा on the जल्दी A-ramp. पहुंच Nobody गए behind sandbags गंजा this है। round. गंजा Great है। grenade. पड़ेगा भाई Perfectly हंटर के timed. कितना पड़ा डाल है Excellent angle. पट्टी पर कर दो दिया डेढ़ पड़े Hunter down to हाँ ठीक है 44. ठीक है नव्या ठीक है उगा लेंगे अपनी दाढ़ी हंटर को देख Nico सब tries a पीछे couple चला of wall गया bangs as his entire team is clumped up here together. ये है पुसी भाई ये है पुसी नहीं जा रहा है धीरे किट्टी पार्टी बना रखी है इन लोगों ने यहाँ पर इसको देखो ये यहाँ पर Wave क्राउड्स not लेके looking to नशे take कर a रहा है risk here by challenging देखो around the देखो short उसको देखो cell. उसको देखो Just kind of peeking it, jiggling. बोल दे मैं क्या बोल रहे इन्फर्नो खेल लेते हैं छोड़ दो Looking to stay alive. Eagle contact and a Molotov comes back. Then he ओ gets अबे aggressive. अबे But he can't ले मार दे वॉल थ्रू मार दे हैक हो kill जाएगा anything just yet. Even Magic's not able to find the opening, but this is still information gathered. Not able to find the opening. The story of my life. Stat नहीं लगाते बस घुसते एक जगह Not able to find Well, one rifle, one off, two rifles for the other That side. ओ लग जाता Utility is a big problem for ओ both लग sides. गया लग गया Someone gets killed. Yeah, matter of time ओ before मार दे someone's ओ stuck their face where it मून shouldn't. वॉक कर गया स्लाइड किया ना मून इसने वॉक कर स्लाइड किया दिया भाई स्लाइड किया Yeah, he पैर sees दिख those रहा है। feet. वो देख रहे हैं And that's Hunter also taken out of this one. So Nico's अरे AK ग्लेव भाई three-piece coming कुत्ता है through क्या from ग्लेव Glaive. पागल Just पागल है takes क्या his position सबके as पास आर्म Nexa पर answers helmet है। back. This would have to be the ace, and it's just not going to Ace happen. चुरा लिया Astralis उसको। slowly Ace चुराया, squeezing the life out of G2 on that गाली दे रहा A-ramp, है। giving उसको themselves देखो, a उसको 13th शक्ल देख round रहा है। and a solid 5-point lead. And a ton of SMG Oh, kills to भाई boot. तभी अंशु को मैं बोलता हूँ तभी अंशु को बोलता हूँ Wouldn't स्मोक have में had स्पैम this मत many दे consent- स्मोक में I स्पैम mean, they're मत दे assuming यही G2 होता है could potentially force back. They wouldn't have bought this many SMGs. लेकिन नव्या They क्या didn't कह रही have है to. कह रही है अभी वो दाढ़ी उगा लो So पहले it was a फिर आना good तुम आग लगा opportunity for दे G2 to get back into the game, but they ठीक है भाई, don't good. manage it. देखो मेरे को पता Honestly, है कि they've done लड़कियों this को to themselves a little चॉकलेटी bit. That लड़की first पसंद half was more interesting. The Chocolatey? second half is a थोड़े little से। bit too messy, at least for my साले liking. मीठे मीठे नहीं बोलते हम And चॉकलेटी बोलते we'll हैं see if it है, results in मीठा anything. है।
But for the meantime, I think खट्टी है तो Astralis खट्टी can kind of chill and do what they've been doing. आम And पापड़ it's है for तू G2 to see if they can come up with any interesting हैग्रिड को देखो, adaptations. हैग्रिड को देखो, हैग्रिड को देखो, क्या But, डिलीट कर रहे हैं भाई, ग्लेफ ने कुत्ता बना Astralis दिया। having now picked up 8 of the last 9 rounds. ये It's जुआरी been a होगा। while since we've 2-0 been का able क्या to हुआ? praise G2. KaIdo? And it shouldn't come in this one Prediction, either. Full KaIdo कितने पैसे blocks गिराए थे until I say that. मैंने एक रुपया Astralis ही है भाई Some Vertigo armored King. Eagles, and they decide to come in with a little bit of a असली half वर्टिकल किंग तो buy. हम है भाई। Hunter has कोई an हमें AK in the थ्रोअर end. है हम साले। कोई हमें जिता के दिखाओ। Oh! Maybe it works Blind out में for मार the दिया। Vice. He hits a zinger of a first op shot. पंप हो रखे हैं। Even despite being 2-0 था लेकिन blind. डिवाइस Oh, नॉटी हो गया। नेट That kind of takes the wind out of the sails initially for नेट मार G2. दिया भाई। Going to be a very tough spot to recover. Kenny वॉक कर गया। अबे गवार बॉम्ब लेके जा रहा है। But instead he finds Kenny नहीं है ना off वो। guard. And the bomb's now been thrown out to the open. Hunter's AK makes contact towards middle, but now he's down to 2 health because again that off device doing significant damage. Hunter and Nico side by side swapping weapons. मेरे भाई मेरे को तेरी गंदे भाई ये ले मेरे भाई What feels like an unwinnable situation without bomb control. Okay, now we switch languages. क्या कह रही है, देख देख क्या कह रही है, थाईलैंड की लड़कियों को पसंद है चॉकलेट वगैरह, जो भी बोल रहे हैं। देखो चॉकलेट ही होता है, ना ज्यादा दाढ़ी ना ज्यादा कम दाढ़ी, एक बीच की लिमिट होती है जो आ जाती है। Conclave of CTs. And that is the best. And I have multiple Let's sources. down to top it off. Dupree on the other side, ready to shoot someone in the back of the head. Oh, okay. And right now, unless 3 Nico's on my aware enough to find Snapchat him. That's a gun for Just Hunter if he imagine wants to Nico grab wins this it. round. 40 seconds up. Nah. And Oh, let's see. The Waller, preem is coming Waller. soon. Let's see if it actually results in a kill. No. Zipix will be one better. He's been sharp today. It's 14-8 for Astralis. The round one, they're so close to the finish line, and it feels like they're just winning the game with the pressure. They're staying on top in terms of communication. They look less shaky in the mid-round. And yeah, I mean, apart from that, there's ideas from G2. They're trading. Their ability is good. भाई वो pro player था 1.6 का. Communication that's lacked a lot. And the chaos that Astralis is creating is just kind of the perfect counterplay to what G2 are bringing, especially on these A-ramp hits. कुछ भी कहाँ भाई मैं बता रहा हूँ भाई मेरे प्रूफ है भाई। We're getting still a high level of play from everybody in the server. You know, Hunter's a bit of an outlier, but all of Astralis popping off. This is very much the whole एक package. राउंड नहीं जीतने दिया। देशुल ये क्या था? Oh yes. Dupree's going to be taking his position down at the base of B. Gets them as they come around the corner. Significant damage, but no kill for Dupree. Flashbang over top of the site. Glaive next at तीन किल आएंगे Aminek and Nexa under the rug. Magis by his side, and then they're met by Molotovs. So spot for G2 to be in again. Just the comfort here on this map. Very strong CT side from Astralis. A near impenetrable half thus far. Kenny S. Poor Kenny S. ये वाला थ्रो कर देते हैं। 30 HP to work with. नहीं versus 4 ahead of him. ये मैप ट्राई हार्ड के लिए है बट of the 6 rounds that we've seen from Astralis' CT side, only one by way of retake. It's just been a shutdown on all fronts, really. Yeah, I think this is the most clean round that we're going to see one here from Astralis, like versus a full-on rush up into the B stairs. And this is where it feels like G2 are just kind of releasing the tension a little bit. Like, okay, we need to try something. Change of pace. They did go for a fast A-ramp hit and win. One of the few rounds they've won in this half. But now that they turn their attention late towards B after losing a few defaults, it's just a bit too easy for Astralis. Dupree's damage, while he doesn't get a kill, is very considerable. Softens up the 2 targets that come in. Kenny scoops one out of the side, gets spotted 15 seconds left. Some threats coming around the corner soon. But yeah, it's hard to say that this off alone is going to save the day for them in the next round. It looks like he won't. ये एक साथ 4 एंगल देख रहा है ना बेवकूफ बच्चा to take us to that third. अंशु आएगा इनका Inferno up next. And you know what the beautiful thing about that is? Assuming Astralis close here. के भी कम था भाई वो I'm going Mr. Bean. Like if this is a close series and that's going to be the closest map. And G2 absolutely have stepped their game up, you know, on Inferno to a point that I say they're competitive with Astralis by tie. I'm super looking forward to the third map if we go there. It should be the best of the series for sure. Finally the rematch, I think the number one thing I was looking for coming into 2021. Here's the opening kill again for Glaive. When it rains it pours. Devices stop dying early on. He's got
खत्म करना है Kill अब percentage even gets Nico, and it's 5v3 already. Yeah, 18 rounds from Astralis in the first half, and now what has been a near impenetrable defense. Flawless stuff coming out of them yet again. This is just G2 getting outclassed on a map that Astralis figured they had their number on, and they were absolutely correct. Amanek and Hunter gonna try and salvage what they can towards this A site, but because of Device's utility, it buys time for the rotate. There are flanks coming through from Astralis. They can smell blood in the water, and they look to chomp down on what's left of G2. But Hunter, he got a frag kill over towards the A site, working with the MP5. FBI है उसके हाथ में FBI 50 seconds left on the clock, completely outgunned and outnumbered. Dupree, at a moment's notice, could swing out for the kill, and that's exactly how this one ends. Astralis, 5 rounds in a row to close. They finish this map on fire, and I think that's safe to say, Mohan, they felt on fire this entire time. Yeah, this is a very important series, I think, for both teams to prove something coming into the new year, and it's not over yet. Inferno will be a banger, and it's for G2 to show us that they really have some cool stuff to carry on with them. Because I'm really convinced that their form is there. They fell apart a little bit there on Vertigo, but that's okay. Of any of the maps, I think that's the one exception. I mean, just the fact that we finally get 3 maps in this head-to-head series, right? It's constantly those close 2-0s and constantly on Dust 2 and Inferno. So ladies and gentlemen, that's what comes up next. We will see you soon enough. दोनों का strong actually पता है बहुत ही ज़्यादा strong है दोनों का गजब का strong है दोनों का मैंने देखा है लोग खेलते हुए भाई उधर कोई बोल रहा था ना 2-0 किधर है वो इधर बैठा है वो मैं तो खेलता नहीं मैं वैलोरेंट खेलता हूं मैं वैलोरेंट खेलता है मैं वैलोरेंट खेलता है सीएस को तो मैं जानता ही नहीं क्या सीएस को क्या चीज है भाई कभी खेल ही इसका रिएक्शन अच्छा था ये चिपकली बन गया था बीच में ओ भाई ये तो मेरे को पता नहीं समझ नहीं आया क्या हुआ कैसे गंजा 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 मैं आया रुक नेक्स्ट मैच चालू होने का पहले आता हूं मजा आ गया गाइस मजा आ गया बिडू यस ना मजा आ गया पानी लेकर आता हूं मुंह धो कर पानी लेके आ भाई यही मुद्दे सॉरी मतलब व्हाट फुल स्क्रीन करते हैं भाई लेट्स चेंज द विंडो गाइस काफी फन I did not expect this to be this good. I did not expect this to be this good. मैं फोन लाया गाइस अपना चार्जिंग से एक सेकंड रुको स्टार्ट्स देखना है दोनों टीम का रुक यहीं पे लगा देता हूँ मेरे कान दर्द हो जाता है फिर हेड पेन होना शुरू हो जाता है हेडेक हो जाता है भाई बहुत ज़्यादा हेडफोन नहीं लगा रहा मैं ऊपर स्टार्ट्स देखना है इन्फर्नो का है इन्फर्नो में क्या है दोनों टीम का देखते हैं ज़रा स्टैटिस्टिक्स स्टैट्स इन्फर्नो Astralis राइट इसमें वो कहाँ था यार मैं भूल गया ओ मैप्स का कहाँ होता है ये रहा मैप्स इन्फर्नो ओके वाओ वेट व्हाट दिस इज लाइक केनियस को एटलीस्ट 120 ADR लेना पड़ेगा टू विन इन्फर्नो केनियस कर सकता है इन्फर्नो इन्फर्नो इज अ वेरी नाइस ओपिंग मैप इट्स वेरी नाइस इट इज डेफिनेटली डूएबल अगर केनियस अपनी जी जान लगा देता है तो डेफिनेटली डूएबल ब्रो डेफिनेटली ओ बाय
G2 का देख भाई 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 बाल इतने लंबे हैं मेरे G2 का देखें हम The pressure was on Astralis in the first half, but then they came back into it, calm, cool and collected, only letting one T round slip away, and even at times with lesser weaponry. And I'm going to come into that SMG round, Maniac, because that was something I thought, okay, this looks bad. This could be the breaking point. This is also exact same, but not even that was going to stop Astralis this time. Yeah, I really like your reaction to some of these Glaives killed with the UMP. I was like, no, he's not going to get me done with the UMP. I heard you go really high in the octave. I didn't think you could reach that level. Look, for Astralis, this was a very controlled win. I think we should name it. They proved to us why they were picking Vertigo. It was a very dominant approach. Even on the T side, I agree the first half was actually competitive, but you could see they pretty much knew what they were doing. Dupree was doing a good job opening these rounds. They gave away like 2 clutch situations, a 5v3 and a 4v3, I believe, that Astralis had control. And Kenny S, with the AWP, was doing good work, but overall, they were the better team. And that was a problem in terms of map pool for G2, because Vertigo is not up there yet. You were seeing some of those protocols fall apart as well. I remember the time behind sandbags, it was just chilling there. They molly it, he smokes it, and they just forget he's there after even smoking it. And he should be known, you know? The little mistakes, the little details are really the difference maker here. Yeah, I think you could see which one of these two teams were the better one on Vertigo. I fully agree with Matt. You're saying the first half, very competitive, could have gone back and forth. G2 couldn't have gotten away with the lead. They won the piston round, got off to a good start, but couldn't quite keep it up. Now, this second half, though, I felt if you would have played that half 10 out of 10 times, it would be the same result. There's no answer whatsoever for G2. It's even one of those scenarios, if you played in a practice where you play all 15 rounds, despite after losing, I'm not sure if they would have gotten another round on that side. Right, they were completely outclassed by Astralis, so definitely fair. Astralis won here. 16-8 is a fair representation of the game, so no problem for me. We move on to the next. We move on to the next one, but before we do move on to the next one, Maniac, we got to talk about Device's magic flank coming in there. Yeah, he had a couple of interesting flanks. Usually लंबे time में हाथ देती है. It's also the fact that Astralis won a lot. Kenny pressure में आ जाता है. Last में बस. Right there, round number 18 is a round that hurts. A 5v4 for G2, followed by bonus round, but Device tries in from behind, and then look how he's playing. He's not giving away any kill. He pulls back, smokes in front of him, makes sure G2 have to commit to the B side. They cannot go anywhere. They have to hurry, and they hurry through the Molotov, which is finds the first kill. It's still a 2v3, but Device is not done quite yet. That gives time for Zip to reposition. He's going to dance around the pillar. He's only got an MP9, but it's good for 1 kill at least. He's going to get traded, and then again Device. He changed his whole position. He was behind them, he smoked them off, and now he's going to surprise them with a very clever flank and good job from Device. I say that's a round that hurts because that's what we call a bonus round. Astralis didn't really invest into that. They had MP9s, they had UMPs, FAMAS, and still they won it, and they made a lot of cash. I agree, and I agree. And I think we can pull up the clip again. I just want to, point out one more thing. You said Device is playing so well. G2 at this point, when Device is smoking off, they don't have to hurry. There's still time left in the clock, but he's stressing them so much. The fact that he stays alive is stressing the entirety of G2, so they forced their way into this bomb site, even though they could have waited. This is one of the mistakes you make when you're not that comfortable with each other yet. I'm sure when experience kicks in for G2, when they play together for a long time, when Vertigo is a little bit more comfortable for them, they wouldn't make these mistakes, but they got pressured by the fact that Device stayed alive, by then made the mistake. Making those mistakes was certainly something that paid the price here for G2, though. And I will say from them, okay, it was uncomfortable for them when they did move over to that T side here, but it just felt like Astralis were very well more comfortable than we even expected, right? Because we were a bit confused about why that pick came in. Yes, sir, and it's been the story of this event for Astralis so far. In the first game against EG, they pick Overpass, a map I didn't think would be in their first pick draft. They show us that they can play the map. Now they pick Vertigo against G2. So petit à petit, as I say in French, they are broadening the map pool they play and the maps they can pick, which means that for the further opponents of Astralis, it's going to be such an enigma to figure out, okay, what kind of map are they going to pick against us? Because we know they play Nuke, we know they play Inferno, but now they add Overpass and Vertigo to the mix. What about Train? Maybe they're good on the map as well. So they are slowly building a map pool that is a championship-winning map pool. Now, though, guys, we go to Inferno. And if you go back to the full series, do you remember that incredible overtime game we got between these two when Nico was first on the G2 There is no comparison. Yes, I do, and I remember Kenny S having a hard time in the matchup, if I'm not mistaken. Yeah. I wouldn't give him the sole reason as to why they didn't win that game, but he was a big part of the reason. 79%, I think Kenny S have done fine tonight. I think that's not going to be the case here, so that is one factor going out there. Another one is that we saw Astralis play against EG on Inferno already, and sure, it was the first game of the season.
season. Sure, Glaive said there was a little bit of jitters going on, but that was not a good performance for Astralis. They have to do better because G2, they were looking dangerous against Furia yesterday, doing a good job. So I'm not too sure if Astralis feels too comfortable right now. Of course, when you look at the map, Inferno, for Astralis, historically speaking, it's a good map. But G2 are looking strong, G2 are looking fired up, and I think KNES is slowly but surely getting some more impact, and he's going to be needed on Inferno. And you're missing one more point to add to that. This is a G2 who last time wasn't on boot camp, and they now are. Absolutely, I agree with you. The boot camp definitely comes into play here. We talked about G2 and their Inferno game. I think from Furia we had a couple of conclusions. First of all, their city side is very versatile. Sometimes they've been aggressive. You'll see Nexa and Hunter combining to push down middle. Sometimes they'll play double in apps. You'll see KNES peek towards second mid. You see them take banana. Against Furia, they never ever stop to change and switch things up. Really hard to play against. But also what is funny, and I know that from talking with G2 a little bit, is that at some point they were considering Astralis like the model for Inferno. Okay. So it's actually like the stunning gun up against the Master, which is just the story of Counter-Strike. Astralis have been a model for Inferno for the longest time. So we see at this game who can play, you know, the better Astralis-like game. But we spoke about this, right? Okay, Astralis at times have not looked so comfortable. Yes, it was the opening game there for them. But G2, they are such an up and down Inferno team. They are, and it's hard to get clear on how they're going to perform. One of the big factors, win conditions for G2 would be Nico. And Nico so far in this tournament have been playing hearts out. It really looks like he's ready to make a statement here in 21 that he wants to be not only one of the best players, but also win some trophies with G2. If he can play and replicate the performance he had against Furia, where he was top fragging with 25 frags, he was looking good today so far, then Nico is going to be dangerous. On Inferno, though, his position on the CT side towards the smaller bomb side, as Matthew has pointed out a few times, I don't think you get the most out of Nico in that position. That is not the best spot for him. So if Astralis can try to, I wouldn't say bully him, but take the banana control, make sure to make life hard for Nico, what else does G2 have to offer? KNES, sure, he's playing fine, but he's not going to take over the game. So it's going to be, as Matthew said, it's going to be the Master against the study guys, and you need someone from that study team to go out there and make the difference. Whether that's going to be Nico, Honda, or KNES, it has to be one of them. Who's it going to be, though, when it comes to the Astralis side? Because you spoke about it, at least in the first game, Maniac, that there wasn't one person stepping up to try and match the level of Nico. It was more of this team consistent performance that we got out of Astralis. Yeah, it's been a shared and a joint effort for Astralis. It's fair to say no one really has an MVP performance so far. I have to say I've been fairly impressed by Zipnik's skill. I think the way he was taking some of these duels, I have the moment where he peeks into KNES, which is sandbag, and like a quick two-shot straight up in the head. We are not really used to seeing Zip at that level, at least in terms of skill, so that is pleasant to see. Dupree has shown some moments opening up sites, which is great. I think we maybe expect a little bit more from Device as well. He's a name that must be up there. But because we are going into Inferno, I am going to go with Magisk. I think he's the name that always comes about when we talk about Inferno on the CT side, playing that pit position where he can make so much difference, so much impact. He has to be the man. We said the narrative moving into 2021 is that he doesn't have to be an IGL anymore. He can focus on his skill, on his performance. Well, now is the time to do so. And one of the things when it comes to that, though, right, you've got to look at is utility damage on this side of it. I'm glad you mentioned it, because I wanted to point out the utility right there, James. Because it almost feels like whenever Astralis is playing Inferno, they always start ahead. You know, all the opponents, you can say, they start with 90 HP because Astralis would have already naded them down. So G2, sure, they must have studied the way Astralis used their nades, but Astralis are still the best. We see that time and time again. So if you're G2, you have a game plan, and that is 100% sure not to take too much utility damage, because you don't want to be wounded when you go into the bomb sites. If they can avoid that, I think they have a shot. Yeah, they do have a shot indeed, but both teams have a shot as we've gone to a third and final map. It's a rematch from the full series between Astralis and G2 on Inferno. Utility damage is bound to be high, but only one team can march on forward. The other drops down to the lower bracket. Come back after the break and find out who that's going to be. ये है bracket, by the way. मेरे ख्याल G2 esports और टीम लिक्विड वो होगा. G2 esports और टीम लिक्विड का होना चाहिए मैच, टू बी ऑनेस्ट. लेट्स सी, मतलब ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है. थैंक यू डैड, थैंक यू काइडो. अब भी देखा मैंने टाइटल चेंज ही नहीं हुआ यार. अब भी किया मैंने, पहले नावी वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी
going to be tough. और मेरे को क्या चेक करना था स्टीम ना वो तो ऑफ स्ट्रीम करना बाउंटी डॉट हाँ वो मैं सोच रहा था कि लॉगिन करके देखूं जरा कुछ 36 रुपीस का बिक रहा है बे फ्रैक्चर केस बेचूं या होल्ड करूं फ्रैक्चर की मर्जी है अभी फ्रैक्चर तो लिमिटेड था ना बेच दे फिर बाद में रेट इधर-उधर हो जाएगा ना 36 रुपीस का बिक रहा है गैम्बल है बहुत बड़ा ग्राफ देखे इसका ग्राफ देखते हैं उस हिसाब से बेचते हैं जान 1 को क्या रेट था भाई ना लेकिन अभी उससे ऊपर चल रहा है भाई उतना ही रेट चल रहा है अभी उतना ही चल रहा है एक्चुअली yeah you're जान 7 को क्या गिरा sell this bro अभी मैक्सिमम प्राइस पे चल रहा है I'll sell it at buyer pays 36.2 5 रुपए काट रहे छोटी सी ट्रांजैक्शन के खांडू है भाई स्ट्रीम वाले क्लच केस भी बढ़ रहा है अपना नीचे नल्ले बैठे हुए क्या कर रहे हैं लोग कौन वो GTA खेल रहे हैं लोग 45 रक अमाउंट इनको बोल जाएंगे नहीं आए मेरा इंस्टेंट सेल हो जाएगा अभी सिर्फ एक बात बोलोगे ये मैच होने के बाद बहुत हाइप होने वाला है इनको खेलेंगे एक्सीएस का हां मैं बोलता हूं तू नीचे जाके बोल दियो अभी हां मैं अपने क्लच केस भी बेच देता हूं हाई जा रहा ना 2 बेच देता हूं एक होल्ड करता हूं 22.6 ना 22.59 पे बेच And as all good best of threes should go, this one taking us the distance. Inferno is where we end up here, Mohan. And Inferno between these two teams specifically is generally a treat and a half. Exactly. Always delivers the action. Always goes into overtime. And honestly, that's what I'm looking for tonight. Yeah. Yeah. I'd say apart from the last time they played on Inferno, I would say like, well, I mean, it's with Nico is like the big thing. How much improvements have come? I feel like G2's Inferno has improved a lot. I'm really hoping they just continue to play a good style CT Inferno the same way Astralis will play, the same way Vitality will play, same way we saw Furia play, same way we saw EG play, not the way Navi played. Okay, just play like properly for information and then we're good to go. I know Nexa is always going to be good about it. The last time they played, they put an emphasis and value on the information. It worked well for them. It came close. And this is going to be the hardest team to, like, one of the hardest, if not the hardest, them and Vitality, to take a win on. But would tell a lot, and it's making this game very interesting to watch. We'll see where it goes. मेरी इन्वेंटरी देख रिफॉर्म की है मैंने Astralis really pulled away on Vertigo, but there's no telling what this map has in store for us. सोने जा रहे हैं सब. Oh my god, there's chickens everywhere. मुर्गियाँ 6 of them over here in apartments, man. There's no CTs. No, they're all outside of the apps. Right here on short side, one underneath the balcony. Nico getting curious here. Look at the angle of Dupree. Looked like he wanted to try to catch a man in mid. And, well, he's got 2 kills before he goes down. Now it's Kenny S at bat. Device and Magis. Oh, nice. Nexa, that's a big pickup from behind. Takes the 2-man advantage into a third as Magisk is all that's left at half health. He tries to deal with Nexa. Great distraction and great kills here from Nexa. Peeling it apart from behind. Crazy that Nico can almost misplay by walking into mid, past Dupree's angle, holding from Boiler, and still get 2 kills in that way. Maybe Nico check करने गया कितने लोग हैं. That's just the kind of player he is. So they sit there, wait for this exact. Seems like they almost kind of expect it, and then as soon as they're thinking, oh no, what if it's going to be some kind of B play and check for mid, they end up getting pushed. But the flash does not do enough, and yeah, Nico's just too hard to stop. बिना smokes के first में नहीं कुछ कौन करता है भाई इन्फर्नो भाई kill feed block हो रही है कैम से थोड़ा पीछे कर ले for Astralis. ये pro players second round should absolutely fall flat. बिना आर्चर smoke के जा रहे हैं push करने को. Keeping an eye on how much money G2 can make and how much money G2 can save by minimizing losses. ऐसी strategy नहीं होती. Complex like कर दे जल्दी से. Kind of surprised. I feel like I'm like when we watch Kenny S, it feels like I don't really get what's missing. Like I know he's one of the smartest clutch players in the game. Like so smart when it's just like 1vx. Always throws his utility in the right spot. Like peeks the right thing.
finds cool timings, very creative on the spot. But in the mid-round moments, sometimes he's just missing flicks. Like, it looks a little bit more uncomfortable. And I just keep thinking about the fact that he's talked about how he's been watching a lot of device demos and stuff. But, okay, we've got the push coming up to the top of mid. Pressure on Hunter. Oh, Marani. He falters. Lose 1 kill to the favor of Astralis, but they double it back into the boosted Fomus of Nico. And he's going to keep firing off towards ramp, looking for his second in the round. However, KennyS now peeking deep down middle, making money with the SMGs is G2. A couple kills for the Fomus of Nico as well. They're just sprinkled in, but a clean second round after winning pistol. And we've got Astralis in with the black. You know what I mean, though? Like, what is the deal with KennyS? Like, how come? 9-6. Does he just need a new house? Because, like, it is a huge part of his brand to be, like, hitting flicks or being in uncomfortable spots and get his way out, but it's like, it feels like it's hot and cold, and it feels like there's a lot of cold right now. I mean, if we look at his match history, he's not doing too bad. But, you know, games like we saw last game, it's just some important moments he's not there. He's always as smart as the KennyS we always know, but those Kenny flicks, they seem to be very, very off and on. 20 damage. 9-6, 62. Nexa naughty हो रहा है, Nexa naughty हो रहा है देखते थे. Okay, 3 rounds in a row. Bottom banana control, you love to see it. जल्दी हो रही है Nexa की से क्यों आगे जा रहा है? Yeah, liking what you see so far? Absolutely. I could see the fumes coming out of your ears when we were watching Navi. It's hard to watch Navi sometimes, CT Inferno. So 10-5. G2 8-7. G2 I love. Used to be a team. 8-7 Astralis. Okay. There are early days. Similarly. Plenty of time to still make mistakes. Laga. See if that comes into fruition. Right now, we've got Astralis walking up banana, and of course, G2 have conceded it. 1 minute left. They were peeking down early, but backed up slightly. ये important round है, बहुत important. Very important. Still a crossfire set between Nico and Nexa. They just threw a smoke grenade down, but Astralis look to do the exact same thing, it seems. Nobody's shooting over on the CT side, plus they have mid control, so rotations a bit laggy here for a G2. This is a very, very good point in the round for Astralis. 40 seconds up and no rotations in sight. They did peek, but G2, they're not brave enough to make a move. It'll come down to this hold. Yeah, they're inside of the fire. Nexa is going to trade one back. Hanging on. Swapping guns into the M4. He goes. 20 shots in the magazine. Good enough for a follow-up. And Dupree's going to try to chase him. Nexa doing substantial damage. Device still stands on 80. Bomb to the back of the site. And KennyS tries to challenge. Wow, 2 Kenny, kills. nice. Run through smoke. Double headshot. No plant. Excellent third round for G2. It was okay. Right there around 7 out of 10 for G2. Comes down to a really good hold. They played for info early. It was a good counterplay from Astralis, who just waited out. And the only reason it works out better for Astralis coming up to the top of banana is because G2 didn't get any nade damage in on them, so no unconfirmed damage in the first, half minute of the round, whatever. And so you'd think they have pretty good odds coming into the site with the execution, with all the proper nades and etc. But they get, 390 damage off between 2 players. So good stuff between the boosted position of Nico as well as the incendiary from Nexa and the delay of game from Nexa as well up at Quad. My God, and this puts Astralis onto just Deagles. So we've got G2 in a position where they can kind of turtle up and chill if they like. Some blink grenades to complement this defense, and yeah, they're really just chilling at this point. Oh, try to flick. नहीं flick मत मार. Device को ही पड़ा उल्टा damage. Molly deep convinces them back. At the same time as Dupree kind of sniffs out the situation from Boiler. Maverick has just fallen off of the balcony, so there's not going to be any contact given over by G2. Very much just sitting with a player in pit and library, offering both arch and short side. So this is an invitation from G2, an open door. See how far forward they move at the 45-second mark. Cross है भाई बहुत तगड़े Looks like Dupree's going to have to be the front runner. बहुत अच्छा cross है. They've got 2 smokes still on Astralis. If they wanted to cancel out both pit and library, that would put all of the pressure on the shoulders of Hunter. And we start to see that utility trickle in. So sure enough, it's the fight inside a sight. Flash meant to prime Hunter, and he tries to swing around the corner. KennyS, he's got himself 1 kill, but Glaive and Dupree with the Deegs able to take 2 off of this, and it puts Astralis in the post plant. Not to mention, AK and Ump picked up.
Those flashes were sick. They actually thought about turning around to save just for a second. Don't know if they're going to continue on with this. Maybe we're looking for the easy kill. If that doesn't come and enough time ticks down, they potentially turn their backs up. It looks like they're committing. Okay, they get the kill. They start running now. Second one comes in. It comes down to Glaive in the pit. He doesn't find the first Eagle kill. Bomb past half. One coming up in the graveyard. The 1D does not come through. Next, it defuses the bomb. It's a close call. I really would like to see the flashes on that delayed attack. They threw them in such a way that it felt like the attack was already underway, but then they came through and still blinded the players on site. Just very, very nicely done from Astralis on the attack. It makes them look kind of foolish the way they die, turtling up, holding the site, but the spots were kind of just fine. It was just really good utility usage, I feel like, from Astralis to make the most of that. Running in before that smoke on library pops as well. That's why KENYS is able to get a kill. And that second smoke they had thrown into pit shifted a player into little pit 4-0 where he lost his head. So really cool. Really cool. So cool, so modern, very Danish. Zipix, he's dead. He was just looking to hold the apartments in the first, or not first, but lucky shot. पहली बार मैंने देखा कि बंदा AK versus M4 it's already 5-4, easy pickup, but again, kind of a lagging rotation through arches, and with KENYS being taken down low, we get that utility usage out of the B player. Now G2 are starting to sprint over, trying to come give Nico a helping hand. Nico doesn't have much help because KENYS is already so low. Molotov's moving forward from the CT spawn. Dupree is forced out of the barbecue pit. And Hunter, well, he's boosted up just in the nick of time. Takes down a player. Smoke phase. Man advantage here for G2. No bomb plant yet. Poor device. Stuck behind the box. Have to maintain numbers. The molly does nothing. Bomb is stranded. Look at this rotation. Almanac, he's too sharp. He's watching the flank here, and they've got enough staff on the site at this point. They don't even have to worry about that. And they just kind of have a gap where a device could have potentially walked off with one, but doesn't seem to affect the CT setup at all. No. Even though the information isn't there. The thing is, Hunter gave up the angle. That's a big pickup. And now Hunter, you can still see him kind of pulled in two directions. He was watching Device, who waited so long before making his move. Dupree and Device absolutely milking this mid-round moment. Let's see if Amanek can pull up with the clutch. Doesn't have a kit currently on him. Good night, bro. Good night, Kami. Thanks for coming. Got bodies and kits ahead. Good night. Device still over towards New Box, giving up a bit of a shot. Dupree now can turn his attention around. And Amanek's going to get called into the open. He rounds the corner, gets the first, and that's substantial damage. 3 health. All the Device has left needs to be the USP, and Device shuts him down. I wish he had that. That was such a nice free transfer. I think he even got an extra bullet or two through the missile crates at the quad position, and here's Nico trying to do some damage on the hold. So we really have this belabored experience on the attack towards B. This is crazy, the amount of patience from Device. Now, I do think it is a little bit ugly from the perspective of, first of all, Dupree hits a great shot, but like, KENYS is supposed to die if he misses there. He just needs to hit that one. That was and so nice. yeah, this is a round that should have gone G2's way. But it is also a round where Astralis, they try to punish. Okay, going in for the trades from apartments. Kills go down. Man advantage here for Astralis. Slight health advantage just because of Zipix staying alive, winning his last engagement. Nico sitting on lane by himself with a smoke. Fast into the mid-round, but an early spray down as well from the other Kovac. And Nico will try to join hands with him, but ends up getting taken down. Hunter just looking to stop it, but he loses his head to the hands of Dupree, and Kenny's going to save because there's no way he gets into this one. So G2 wanting to get aggressive launchers and biting off more than they can chew. Yeah, at least, you know, I think at least they tried something. It's an early tactic. It fails pretty hard in some sense when you go for something, you know, in the middle. You're really hoping that you're not just going to get mowed down. But too many players in ult to fight him, and everybody was on full alert. Kill a piece between Zipix, Dupree, and Glaive. एकदम पूरा वो हो रहा है, मैच हो रहा है उसमें. Magisk, who ended up dying. उसी के लिए बना है ऐसा लग रहा है. So we'll take a second look at this duel as well. That's probably a big one. Nico gets that, plus Hunter's still alive on the site. Then they could talk. But there's some frustration. That's okay. But on that last round, like we're seeing Astralis, and keep watching for this. Astralis
They're telling themselves if G2 aren't playing for banana, they're going to try to punish. मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, मेरा रीड अच्छा रहता है लेकिन हक देता हूँ मैं. देखा है मैंने बहुत बार देखा है. They're going to keep execing B as long as it's not contested. How much stock do you put into this solo Kenny S round? अबे कौन है? कौन लाता है इतने गंदे कैमरा एंगल? Day it is for Kenny. Sure. ये देखिए 5-1 at the moment. Yeah. अच्छा लगता है भाई. The day itself in question, but a decent मार enough दिया start मुर्गी मार दी भाई. on Inferno. मुर्गी मार दी चाचा. He's going to move over to the A side off the back of this one. You call it. How many kills? Good flash. 2. क्या खाओगे काट के? And the rounder. Astralis win and he saves. Okay. He's going to get boosted here on the head of Amanek. Dupree already kind of whizzing shots by. Oh, that's a nice one. Right into the glaive as he jumps into the top of the ramp. So Kenny, to kick this off, obviously not a retrievable weapon for the rest of his team. So he still has a lot of work to do. सबका वही सीन है. A lot. Plus speaker's advantage. Yeah. नहीं CS:GO में इतना वो सीन नहीं है. He's playing over on our side now, and of course 3 members in G2 on the B site. वो skill based. But it is Amanek with the deagle, right? If anybody else is supposed to get a kill, it could be this sidearm. Valorant में बहुत सारी चीजों का advantage है. Like skins वगैरह का pretty scared right now, but they keep numbers. Valo में abilities हैं. Kenny's peeking down mid, and he got himself a second. Amanek, he's not been checked. Oh, this is perfect. What? Amanek, up close and personal. Kenny gives us a trio of kills, and G2 rob around. Full house. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था That was beautiful. Yeah, moved around इन्होंने nicely. भाई ये भी सही बात है. जितने प्रो तो जाते हैं उतने कॉमन एंगल नूब एंगल into the archway, and Amanek didn't overplay his hand. Sat up there and waited. गैम्बल करके बैठ गया. मैं Here's एंगल the पे नहीं first करेंगे kill. चेक और नहीं किया. Right into the belt of his क्या opponent था यार on वो? blade and moved out quickly. And this is a great spot to stand in. अभी अगर वो Also नीचे ना because देखता you हेडशॉट stop खाता. them in a position where you can see their model fully, but they might be completely एंगल smoke अच्छा था blind. मैंने कहा. Just close enough to the smoke. And also crouching against the wall there, you saw how the pit player, who hadn't been able to extend to the opposite side of pit, couldn't clear him. Yeah, true. So no line of sight there. Really good job at minimizing risk and maximizing Tactical potential. timeout. Kenny S swoops in Blame for Hogan. to deliver a third. So exceeding expectations there in the 7th round. Kenny taken to the top of the scoreboard alongside Nico, except Kenny doesn't die. He is 8-1. As we start this 8th round. The only thing that just keeps going through my head for G2 is just please don't play scared, please don't play scared. You know, with the amount of like the players that they have, and like even on when they didn't have Nico, like they should they take that seriously. They're a team who touched top 1 in 2020. Let's go G2. But sometimes it feels like they don't play with the confidence they should have. Anshu right player Looking भाई. for what the response is going to be. We got fast up to the half wall, and Device, funnily enough, you know, he's got the most polish on him, but he always gets down and dirty with these plays. First man up to take all the HE damage and go for the fights. But Kenny hits the collateral, dives into the bomb site. They give chase. Kenny comes back, and he's looking for even more. They're close, and Kenny's so crisp. So we're back into the 2 versus 2. There's no bomb on this play. So things have to slow down. But what a recovery from Kenny. Magus posted up in the right spot, and it looks like he's sacrificing going to be very stoic about where he places his crosshair. Holding first for construction for quite some time. Now tossing some grenades. The bomb is not going to get planted just yet. He is trying to encourage some kind of push, and it does come. Hunter pushes forward instead of backward off the Molotov. Looks like it went a little bit too deep, just taking a peek at the minimap. And now Dupree Wait. in some kind of awkward walking engagement with Amanek. Two kind of lurky boys, right? Dupree's always in the halls. Amanek always in the halls as well. Oh yeah. But it looks like Amanek might get one in the back of the head, and now we've got the long distance run to the bottom. Get the kill. Get the kill. Oh my god! And he finishes this off. He doesn't know where the bomb is. Wow. अभी इसको bomb नहीं पता था. He thinks that's the easiest way he's going to win the round. He takes one more step towards Arch, and he is done for. He was Phantom चला रहा है भाई. Valorant खेल रहा है भाई. By Dupree. Phantom चला रहा है. Perfect angle. Kenny ने भाई जो मारा है. भाई क्या These Kenny Kenny है shots. यार. Beautiful. Why couldn't he get the 4th one though? Kenny खेल रहा है भाई, निकालना है उसे. Moment. ये लगा था ना, आई कनेक्ट हुआ था. ये रिएक्शन रेट पे मारा उसका. That's frustrating. He heard every footstep.
It was like the baby running gif, you know, runs into the room, runs out of the room, right? In and out. Turns around with an AK, shoots you. Divine intervention on G2. Oh, man, that was what the quite unfortunate. Crucial round as well. That would have been, you know, the back and forth that would favor Astralis because the economy would have been non for G2. This suddenly could have been a tied game. But now G2, they've got an open door to run away with a solid CT side. It's going to be a bit of time before Astralis have a buyback. मैंने ये 16 बार देखा अपने सपनों में. But let's see if they can make magic happen with the Deagle and the Tech. यार ये बंदा क्या कर क्या भाई? And this too, right? Had he just kept running towards the B site, he would have been caught in the air. He was thinking, oh, great, I can take the engagement now instead of playing a post plant. But Dupree didn't even have the bomb. Kenny Haksa bhi bahut ganda hai. Things are getting electric here on Inferno. But it's Astralis who are shocked as they're down by 4. Glaive gives chase. And the grenade damage is decent. He doesn't get much off with that Tech 9. Pistols on the precipice of this A site. Flash ready रख Hunter, flash ready रख. Trying to inch their way closer. Again, more chip damage being dealt versus G2, but मर गया. That's what they needed, an opening. Glaive finds the Tech 9 frag. We've got a man stranded in the middle. Hunter, he's got Amanek trying to help him over towards the pit. Hunter gets only one. Now it's up to Amanek. Goes down dry. Nico peeks. He gets a second. And he just dives into the cover here. So a 2v2. Bombs down inside of the site. Mac 10 player could pick this up. Zipix instead has to wait for that incendiary to burn itself out, and this buys time. Nexa's gonna wrap around through middle. And all the while, Nico just sits inside this smoke. Bomb inevitably planted. That's money and something here for Astralis, but it's Zipix in a clutch, and you know what that means. Nexa about to peek. Nico looking to come in, synchronized with him. Zipix trying to shave off the 1v1s, but it's just not going to happen. Awesome push in with pistols from Astralis, but a 7th round win for G2. Absolutely perfect shoulder peeks, and let's take a look at Nico saving the day. Tracking him like an overnight package here. Out the air. That's madness going down, and this is where a couple of very kills come in for Astralis, and you think they're going to overwhelm the site. Nico performing. You think they're going to steal back the eco, get right back into the game. But yeah, Nico absolutely saves the day. Another early, huge lead here in kills. Kenny has keeping up though. 11 for him. Yep. That's 12-5 is Nico, 11-3 for Kenny. Star players दोनों अभी Kenny और Nico चल रहे हैं. Nobody on the side of Astralis really performing above and beyond. Not yet. Dupri कोशिश कर रहा है बस. Boys, जय माता दी करिए नव्या, जय माता दी for Astralis. Dupri हमेशा कोशिश करता है. Dupri उनका एक अच्छा player है बस. Dupri और Device. Molly बहुत अच्छा है. ये learn करना पड़ेगा. Glaive के call out. Buy in the last one. The G2's money's on the line right here in the 10th. जय श्री अल्लाह. Astralis dodge a bullet with that bomb plant. Come in with a nice bolstered buy. This is very much a chance for them to jackknife the half back in their favor. We'll see. Jerk off. Sizing up the A site, but yet again, G2 kind of playing Amanek up on Balk, one man inside of Library, no longer forcing the issue close to middle or boiler. And these smoke grenades over top from Astralis create space. They create a bit of ambiguity. G2 not sure what exactly is going on. Yeah, but they're so... This is what I was talking about, you know, like don't play scared, don't play scared. They have no plans to retake top banana, no plans to retake lane. They literally don't have arch, they don't have any vision on the team. They can only come back through lane actually. Glaive goes 1-for-1 with them. Kenny S in a tight spot, but a good flash from himself. Ends up netting a kill. 3v3, the rotation starts to come over Amanek. We've got to see him do something. Other than those Deagle kills, he hasn't provided much in terms of pit holds. Such a crucial player. Now's his chance. Gets one kill, dives into the cover, can't quite get it. So damn close, but it falls onto the shoulders of Nexa. 5 seconds to spare. Matches cleared, and Zipix with 11 HP. He's dived back behind the column. Molly throws him into the earth. Nexa wins the clutch. Way to save the day, and
another heroic effort by another G2 Nexa 1G? That's so nicely done from Summit 1G Nexa. भाई, वो summit का अलग ही था भाई. Yeah, no, I guess they did have plans all along. Coming back through mid, man, I was thinking this is just crazy. Like, how can they sit back for this long and let Astralis take up so much space? But they go back in for it. Croatians come in just in time. And Amanek with that final dink might have also helped full send this round for Nexa. Hands down. Look at the utility usage here. Just the zoning grenade on the Molotov to push him out to the right. Zepix is in an uncomfortable spot. Another 1v1 loss for him. G2. Let's go. G2 keeping that momentum. We've got an Astralis pause at the moment, talking things over. I still do feel like they're late to the call. They need to be a bit more proactive and a bit faster. Sure. It's so messy when they come back for bracket control. It never feels like they're in full, like they have the full information. And, that means to me that Astralis are still in this half, and they could have won a number of these rounds. Good rifle work from Kenny. Yeah, no, definitely, yeah, insane for sure. It's true. He ties up even better KD than Nico. 12 kills. Nico का 2 का KD, Kenny का 3 का KD. Who has the lead in ADR? Of course, that's Nico. 122 to 86 for Kenny. Most of the time, so you take what you can get with ADR. But he goes glass cannon this time. Just tried to praise him for his rifle work, and you know that M4 looked good last round. Looks like he wants to swing the cannon. They're going for the boiler. Oh my god, timing, no cover, blade peaks. Oh no, and that's going to allow for them to come out from balcony. Kenny with one more, gets himself 1 kill. Oh, nice, Kenny. Kenny. And he still holds the line. He can't quite get that quick scope. Quick scope. Blocking off vision from Nico and giving Astralis another A site post plant. Awkward timing for that boost as Astralis round the corners of middle. The full belts of utility here for Nico and Nexa. Do they take this chance? Did they run this retake? They've still got time to make it work. Bomb at the halfway point. They've got a utility, so much utility to dump for the amount of time left over, plus the pit players. It looks like they're going to try to get this damage in, and they do get the kill. Can they move forward off of this? Figuring out how to use their utility. Molotovs come out. One on the side defends, and the other in pit maintains the crossfire. No chance for Nico. No, he's just going to let this bomb pop. Hopes not to go down with it. Ooh, gets away alongside the 2 players of Astralis. So I like that they just flustered Astralis a bit there. Definitely with that double frag grenade kill, there was a chance where they each pick up a frag and jump on that bomb within all of the chaos, but that is not the case. Astralis, their 3rd T round to the board. And Kenny is the only player to put up frags on this A site, this second one, to deny the balcony peak. This is just the worst situation, right? On the CT side, you're going in for the boost, of course. On top, you're going to have the triple lane setup. You're going to have the back of halls watched. It's the strat that's coming towards you. But Glaive, it's just Glaive's vision on these rounds. He's always the first to peak. He's taking the first engagement at top mid. It's always at a good timing. He's being so annoying right now. And he's got a high percentage of wins on his opening kill attempts. That's just putting so much pressure on G2. एक वो क्रॉसर बन जाता है ऑप के लिए ऑप भी राइफल की तरह चलती है स्काउट तो 100% to support this AK on Nico and Astralis, I mean, maybe it's not clear to them exactly what kind of guns G2 have, but they're going to come into this B exec and maybe there are some odds here for G2. Yeah, Nexus still up. Does a little bit of damage, device down to half. Panic करा रहे हैं device को ये लोग. Chipping away with the pistols. Magisk also sub 50. Down goes device thanks to Kenny. A USP shot through the smoke. Why not? They still don't know about Nico inside the site, and we're going to see. Crazy shot. The bomb gets dropped. They go back to hold. Looks like they might come back into this site, but Kenny tries to get an AK a bit too soon. Maybe that actually draws them back to the B site. Had they walked away, it's only one player on A. Now Nico's AK can still prevail. Molotov right behind him, and Magisk susses out the situation. Double kill on the re-engagement. How many gets them everything they need? How many times have you seen Magisk just dismantle Crossfire and B on the entry like that? Really beautiful stuff. Actually, Crossfire right now is just that second oranges peak that Nico has been in a couple of times this half, as well as on top of the second oranges, where Zipix plays a lot. I think that's a fan favorite for sure. He's so strong from that spot.
Amanek not needed in this round, was holding out on the A site to make sure no one had to rotate. नहीं Amanek, इसको कोई message करो नहीं. इसको कोई team message करो नहीं bro. At the bottom of banana. करेगा एक को करेगा. गांडू पीक लेके मरेगा मैं तेरे को बता रहा हूँ. G2 with 8 rounds. It's already such a respectable scoreline. Zipnix. And they don't seem to be done just yet. पर आ गया है तो Astralis showing us a strong game. Give him the laser beam. Oh नहीं नहीं. देख मैंने बोला था ना पीक लेके मरेगा ये. पहले ही बोला था मैं तेरे को playing पीक लेके nice and मरेगा. safe, keeping 4 players alive and taking that 4th round of the scoreboard. Still, work to be done for Astralis. Had a chance for G2 to really extend this lead, but the money's not there for this round. So another little half buy before they can try and kind of close out this first half. Wow. Torture. No, not enough money to invest. Give them another one. Okay. Nico पे deagle नहीं है what? So, what will be the plan of action? Next time deagle नहीं दिया Nico. The map. I don't think there's anything special coming Off out. देगा ना Kenny को. Off देगा Kenny को. Kenny पे है आपके खुद के पैसे. इकतीस सौ ही है. बंदे देगा full utility भी ले. Went up in towards the halls, but Kenny the only deagle low हो गया मादर चोट जाके. ये उसने किया था क्या नाम है? अंशु ने. अबे नहीं 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 ये only deagle वाला TT side forward. Astralis ही थी शायद वो. Astralis ही था या. Flash. एक डीगल सेटअप बाकी सारे P250 and 5 सेट. Kenny दे दे Nico को deagle. Really no chance for G2 with the way Astralis are squeezing this one. Leaving bomb all the way back in spawn, and the off chance that something goes awry. अंशु क्यों हंसता है हमेशा? बेट बना देते हो अंशु को सालो. भाई अंशु है ट्रैश इतना. Following procedure into the A site, everything's going good. Eco frag है डुबरी कट्टर. Surgical accuracy. Eco में eco है डुबरी. That's why you obviously kind of want to see something like a stack or a push or something. नहीं गंदी हरकत नहीं. Standard position as if you had rifles, but no innovations today. A little flavor, a little life, some fast. Not the case here in the 13th. So G2 let a 5th round slip through, but they're playing for 9 or 10 on the CT half. So it looks like with the way these rounds have gone, it'll just have to be 2 rounds in a row for G2. No economic फिर से ऐड आया फिर से फूल के वहाँ से लेगा. Comes in. इस बार फाउंटेन चलेगा फाउंटेन चलेगा. पानी see the tally of grenades lining up for all of the CTs. Kenny has full strength with the AWP. A great half from him so far, 15 and 7. क्या स्कोर चल रहा है? 5-8. And what will be the opening play? We've got some deep Molotovs coming in. Device trying to cheat his way up to the top of Banana. They push into his position, but he doesn't get 2 this time. He doesn't get any, in fact. Hunter will win, and from there, just recede from the Banana. That's all they wanted. And he's also one of the A players, so he remains fortified in terms of HP and numbers. Really looked to me like Hunter didn't have vision. Hunter मटके मार रहा है क्या? So much inside of that smoke. दूसरी बार ऐसे aggressive जाके लेकर पहले बार याद है एप्स पे जाके लाया था एक. Now it's up to Glaive to try and take it back. There's 3 T's here, but Glaive very far ahead. Look at him go. What the heck? Smoke late हो गया यार वो. From CT with a double kill to his name. Everyone other than Zipix is slain, and it's all on the Clutch King. G2 very strong position to take away a 9th CT round and gun for that double digits in the first half. That was a little bit uncharacteristic. Crazy Glaive. I didn't. I was like, okay, he's baited out grenades. Oh, he's still he's fine. Yeah. I was really surprised that they just committed this hard. I mean, of course, if he gets a kill, we can talk, but maybe I don't know what he was expecting. But he's just following a feeling. Not around you see every day. But it works out really just fine for G2, who have 9 rounds, looking for 10. But again, because of no eco damage on those previous rounds, full strength buy here with Device on the AWP. Push smoke है वो पूरा. बाय अच्छा है बाय अच्छा है. Very nice as well. Device get tagged through matches. Kenny. What? Putting up the damage. Taking names today on Inferno, the top fragger for G2 here as this half comes to a close. No answer yet from Astralis, looking like a 5-10 half unless Glaive slips through arches. He has found timing. Kenny's not watching. Kenny, he's going to fall victim to this. And how much more can Glaive scoop away from G2? This is where you need to retake lane on CT side. Arch is taken over. Ooh, a chance, but Nico hits the headshot. Puts a close to that one. Zipix, he's going to get himself a bit of success still towards the A site again. We've got one man over towards Pit and Amanek. Without flash through smoke, GG, yes.
And yet arches remain open because of Glaive's expedition through the CT spawn. They've got a choice to make. Amanek, ooh, tight duel versus Zipix. Low HP for the two players. Pops the chicken and device. Throws the flash out and finishes this half for G2. 10 rounds on the CT side. With this third map lying in wait. Join us after the break. G2 हार जाएगी. कैसा लगा हाफ गाइस? हाउ वाज द हाफ? क्या बोलना चाहोगे तुम देवशिल और काइडो? भाई हाफ अच्छा था भाई. मेरी प्रेडिक्शन थी 9 किल. गाइस तुम चैट वालों, हाउ वाज द मैच? हाउ वाज योर हाफ? कैसा लगा हाफ आपको? कैनी अच्छा खेल रहा है, मेरे को तो अच्छा लगा. कैनी के कुछ शॉट कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है. कैनी पता है भैंस चोद लास्ट मोमेंट के लिए रुकता है टर्न ऑन होने को. वही ना, लाइक वो पैनिक सिचुएशन में होता है तब अच्छा खेलता है. अरे यानी गलती करता है, आज पूरा लीक कर देता है, साइड देखता है वो बस. पीछे से नाइफ होता है, जीवस होता है. अच्छा मैच चल रहा है यार अभी तक. तो स्ट्रीम कर रहा है. हां अभी भी स्ट्रीम कर रहा है. हां बचे अभी 6.5 घंटे हो गए. मैंने नोटिस ही नहीं किया. सीएसगो खेलेंगे बिल्कुल, इसके बाद खेलेंगे. इस मैच के बाद भाई पंप हो रखे हैं अभी सब. भाई क्या मैच चल रहा है ऋषित, देख तू जरा. ये मिराज जैसा क्यों लग रहा है? मिराज ही चूत ही है. क्या है ये चूत? देव चूत है क्या? सेक्सी हाफ है ना, सेक्सी हाफ था भाई. G2 वालों ने काफी अच्छा खेला. कैनी के इसमें नीको ने इतना काम नहीं किया जितना कैनी ने. मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूं, घर की लाइटें विटे बंद कर. ठीक है. इसमें इतना देख, नाफ का एक्सप्रेशन ही नहीं है भाई. नाफ एक्सप्रेशन लेस बंदा है. मौत आ जाए ऐसा रहेगा, इसका बेटा हो जाए ऐसा रहेगा, ये लॉटरी जीत जाए ऐसा रहेगा, ये HLT में टॉप 1 पे आ जाए ऐसा ही रहेगा भाई. इसका स्प्रे ची, मैं इससे बेटर कर लूं यार. भाई जब मैंने अपनी M4 बेच दी कुछ 1111. नाइस. क्या 1111? क्या 1111? M4 बेच. अच्छा किसको बेचे? मलन है ना, चैट में आता है. अच्छा. एंड माय गोल आपका क्रॉसहेड चाहिए मेरे को कल. अब से भाई कंडीशन वो तेरे को पासवर्ड दे दिया. हां मैंने देखा. मैं पापा मैच खत्म हो गया. मैच खत्म हो गया. हाफ टाइम है. हाफ टाइम. अभी अच्छा होगा, कमबैक होगा. देख नाफ स्टोन कोल्ड. यस, नाफ का रिएक्शन ही नहीं होता. ऋषित और कुछ तुम लोग चैट ऑन कर लो यार, जरा स्ट्रीम ऑन कर लो, थोड़ा वॉच टाइम आ जाएगा, मोनेटाइजेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा. मैं ट्विच पे लगा रखा मैंने. चल तेरी स्ट्रीम देख लो. ट्विच पे तो देख रहा हूं मैं अभी, तभी बोल रहा हूं. अब देख मेरी इन्वेंटरी. हाँ तेरी इन्वेंटरी देख लेता हूँ. मलन यही है, चैट में ही बैठा है. बताओ, ये होती है डेडिकेशन गाइस. मैं अपनी इन्वेंटरी से पूरे वॉचिंग को खरीद सकता हूँ. सिर्फ मेरे को अपनी P250 सैंड ड्यून बेचनी है बस यार. अच्छी है ना. स्टार्टर एक अनचार्टेड. ओ आसिम उसको हाय बोल. कुछ हाय बोल रहा है. वो ग्लॉक वो अच्छी है, मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है. एक आसिमोव ग्लॉक वो बहुत प्यारी सी है. बटर कप मैं भी सोच रहा हूँ वाटर एलिमेंट बेच के वॉग ले लूं. एक वाटर एलिमेंट और थोड़े पे. तेरा अच्छा है यार. शुरू हुआ क्या? नहीं. ओ भाई ये राउंड बहुत गलत दिया. ये राउंड तो बिना भाई हंटर का तो 1-1 चल रहा है क्या मैप स्कोर? नहीं ये G2 अगर ये वाला जीत गए तो जीत जाएंगे. ये भी इतना चिल्लाते हैं. नहीं 1-0 चल रहा है या 2-1 चल रहा है? लास्ट है. वही तो पूछ रहा हूं. 1-1 वही तो पूछ रहा हूं. पहले G2 सेकंड ऑस्ट्रेलिस. अब डिपेंड कर डिसाइडिंग. The power of putting these players side by side. You know, we saw G2 at the end of 2020 kind of all in their own place, doing their own thing. ये अपर ब्रैकेट का फाइनल मैच है क्या? And they've got it together because they're इतनी 6 कम टीम है इस बार लास्ट में. Taking a best of 3 over Astralis for the start of 2021. And they've got 3 players who had a really good half. Nexa 12-7, Nico 14-6, Kenny S 16-6. ये ज़्यादा रिस्की नहीं है. USP के सामने तो बहुत रिस्की to put together this lead, and they got some very fortunate some comeback rounds. Undoubtedly, I mean they're a team full of skill. I think we saw those in that mic'd up segment just now. The amount of pressure in those 1v1s, that's why they're popping off, because they know how close this was. And they, it's honestly, I had more questions about their CT side than their T side. I'm looking forward to their T side a lot. So we'll see. You know, Astralis will still be an equivalently potent threat in the second half on their CT side, but
Yeah, we have no idea where this game is going to take us. Nico की आवाज ऐसी होगी guys. What a banger of a third map it's been so far. यहाँ पर लगता है 3 लोग हैं Everyone guys. playing back in their positions. Watching Sixer bot. G2. Candidate है मैं नहीं जा रहा बोल रहा. But no matter how much time they spend, it doesn't seem like they're going to get any more information that can influence 100% same है. मतलब where they Kenny go. जितना अच्छा नहीं है, लेकिन अंशु सारी वही गलतियां करता है जो Kenny ठीक करता कर रहा है तो क्या नहीं. Hunter just lining up the God Flash for B, and Nico wrapping towards Arch. He'll spot the Vice. Maybe this will be the first duel of the round. Ooh. Okay, well, clear victor right there. Clean little headshot. Here comes the pop into the B site. CT's giving up some real estate, definitely. Zipix fades back beyond coffins. Glave's here with him. And this bomb's going to go down. So we've got a man advantage for Astralis with 0 kits on the play. Yeah, they've got someone holding banana, lots of HP, and pretty good spots. Smoke goes over top, so that's going to kind of cancel out Hunter in terms of holding off on the CT cross. Pressure on Amanek. He hears many footsteps coming through construction, and we've got G2 sitting in the backside. Kenny S catching a kill, and a second into Glaive. He's been so good, and now Hunter emerges through the smoke. So G2 about to take the second pistol. Dupree has no time to defuse. G2 with an 11th round win. Smoke is used against them. Clean stuff in the post. अरे नहीं रे तुम लोग खेल रहे हैं मैं बहुत थक गया रे मैं सुबह से सी फुटबॉल भी खेल के आया था. Is having very clean stuff from Emo holding it down. He could have even afforded to die. That's how far ahead they were here at this point of the round. You see the clock is already ticked down so far. Very, very good stuff. And now it's, officially, I mean, what can you say? Their game to lose, right? Kenny's looking good, Mohan. Yeah, very good. It's a good game for him. It doesn't really give me more confidence in like the overall. निकल जाएगी ना फिर Astralis just because he can and then he doesn't. But in this game particularly, what magic! A little bit of magic with that Desert Eagle. Uh-oh. The first player kind of turned his back to him, assuming it'd get traded. And now Zipix with the Dirty Deagle pushes it on to Nexa. Damage done. Dupree right inside of the smoke, and Nexa makes sound. He throws another smoke on the position and could just prioritize plant. You know, minute 15. I feel like he's calculating everything properly. I feel like he jumped right into that, knowing there was someone potentially there, trying to suss this kill out. But the deagle has fallen back right into the perfect position. He might get shot in the side. Yeah, that's it. Dupree, nicely played, man. Could have sat there on the other side of the smoke, let Nexus clear things out, and then had to take a fight. But that's not how it went. Let's relive the magic triple. One in the back, one in the chest, and one in the head. Nice. Shot that third kill. Zipix, did he get the first one? Yeah, Zipix got the first. Yep. Okay. Yep. Epic shots, guys. And ride the highs. Endure the lows. That's tough. Not necessarily anything wrong with going B fast there. Like, you know, strategically, it's totally fine. Sometimes. Yeah. Just got owned. Just got owned. Yeah. Got owned. Got to walk it off. Walk into that deep crossfire. It's going to happen. See if they can get the ball rolling. But I mean, just nothing but Glocks. G2. So no surprise that Magisk chews up a couple players. He's going to stick around with the USP. Now the M4 device, good for another kill. Glaive makes a little bit of bonus money, and the hunt is on. Only Nexa left up. Seventh round for the Danes. One of the struggles that Astralis have cited in the past versus Nico, I think I interviewed them, DreamHack Map after their win, was about Nico. And Nico able to fight them when they take bottom banana control. And Magisk said Nico's a good player, but the way he was peeking, like I didn't really think much of it. But he was still able to get the kills. And he said because Nico's aim is so good, he can get away with that stuff. But that's just a perpetual threat, right? You know, you can have the right strategy and stuff, but Nico could show up at your front door, kick it in, and get everyone. So I think that's a problem for them that they're going to have to think about, depending on where he's going on these defaults. But sometimes he will be a threat towards your banana control. And you know that Astralis are going to properly throw attempts at it very often. Here's one right now. G2 waiting it out, trying not to get some counterplay just to entertain. मैंने एक बंदा स्ट्रीमर देखा था उसने डाइनिंग टेबल पे अपना सेटअप लगा रखा more utility if they can. All the while they go and take on Hall लगा रखे मॉनिटर का with Hunter and one other. ऊपर है नीचे नहीं है मेरे इतना बड़ा है
माउंटेड है दीवार पे CTs feel नहीं confident मेरे about what टेबल पे ही they've पड़ा है thrown down मॉनिटर so के राइट far. से And माउंट the करना T's, दीवार they पे haven't tested this at all. मैंने पता It नहीं seems यार like they'll just move kind अरे of वो directly प्रॉब्लम पता कहाँ into आती है जब तुम a सब full A साफ करेगा ना attack. तो बार-बार माउंट से उतारेगा Device gets some information on that कितना arch टाइम peak. लगता है पेज ही तो खोलना Bracket control is one temporarily here for G2. डिवाइस काश तो मॉनिटर साफ ही नहीं किया अच्छा इको वाइस समझा क्या बोला वो मैंने सुना नहीं And it seems no decision has been made just yet. Nico, how curious is he getting? Just about to turn that corner. निको में चुल तो है कि किल लेने जाना है चुल है निको में मेरे में भी चुल है लेकिन मैं मर जाता हूँ निको मार देता है भाई बात Ooh, nice flash. Great timing there for Astralis. Taking down Hunter with zero chance of a response. They've got Nico still sizing up the B site device. Here's this good dink, great damage. Aminek and Kenny, after killing Nexa, both taken down to the sub 30 HP. Glaive tucked inside of the CT spawn gets wrecked. He lands a little bit more damage onto Aminek. Maybe Nico can take control of the situation. He has to clear second oranges, and he misses his chance. Now that wide swing denies the bomb plant. Had he hit the headshot, then this could have been a round for G2, but instead, an 8th for Astralis. Actually comes down to Xyp9x picking the perfect time to swing out. Like how he swings out, 4 seconds थे भाई to get it cleared. That was a very tense moment, right? Nico's the only player 4 seconds के time he absolutely must win this duel, and that allows him to take Kenny down too. And Kenny, he's got no choice but पता भी तो नहीं था साइड पे that is equals 300 damage straight up by device on the archway, and a good flash tactic in the halls. And you can see, even when it feels like it's a pretty innocuous round on the CT side from Astralis, they're always thinking about doing something to try to get information back somewhere. They're finding it in such a clean way that's really hard to stop, and it must be frustrating for someone like Hunter, who was apartment shopping for like a whole minute. Right. Yeah. Only for someone to come in and what would it be called if you were like trying to find an apartment and someone comes in and buys it? They put down a better offer than you and take your apartment. Happened to you recently, right? It did happen to me recently. Yeah, I was like, damn, this is hitting home. It resonates. I don't know, snatch it. I feel like he snatched it away from your apartment. Yeah. क्या नहीं इसका देखो हाईएस्ट है नहीं हंटर का हाईएस्ट है Okay. अबे यहाँ पर 50-50 बैठ क्यों हैं लोग? Let's see. The match is paused for the meantime. Everything's pretty even. You know, no red flags in terms of ADR, which is very nice. We've got a spillage on the keyboard. Spillage on the play. Kenny S ने वो कर दिया होगा. Orange juice, water, coffee. Red Bull. What are we talking about here? Red Bull गिराई है Kenny S ने. क्या टेक्निकल पहुंच आया? Kenny S ने Red Bull गिरा दी keyboard. You ever put your keyboard in rice? In rice? Yeah. No, does it make you play better? No, if you spill water on it. अबे वो पी रहा होगा रखने में गिर गया होगा. मजाक कर रहा. Never need to. I don't think it actually works that well, but yeah, the idea is that, you know, because like नीचे रखते हैं भाई. I mean, it definitely works like cell phones. That's 100% true. 100% works. Yeah, Same thing with keyboards. Yeah, but I mean, do you have a dish big enough to submerge a keyboard in rice, or do you just pour the rice on top? घुसा मार दिया भाई. Oh, we got a nosebleed. Oh, that's the spillage. Wait, that's the spillage. I don't want to look at this. I'm weak. I have a weak stomach. Please play like this, Aminek. Let's get to... I think that's how you should. Really. I can't wait for Aminek to get an ace. We cut to the player cams and he's just standing there with a ghost on his nose. A ghost. COVID वगैरह हो गया क्या? He's just getting nervous. Yeah. Oh my God, we might win. Oh man. तो बोलेगा निको के शॉट्स देके परवर्टेड हो गया मैं नाक से पानी खून. I haven't had a nosebleed in a long time. You sure? The hotel's pretty dry. इतना क्या हो गया भाई उसे? अरे भाई बहुत प्रेशर होता होगा. I think you've नाक से खून आ गया इतना क्या? We're spoiled here in Copenhagen. ये देख रहा. Just a game changer. Chat. Sleeping about 3 hours a night. ये बोला nosebleed. Talk cancer, cocaine. I'm gonna ask him for a new car. Cocaine ले ली भाई ने. Good luck with that. Horny. Drugs. Horny. Cocaine. मैच के बीच में horny. Cocaine. Medicine, Do you please. have an answer for why Astralis Your nurse always here. seem to be in a new place? Medical pause. Like every member, we got the blue light room. Yeah. Like we used to have the angle with Dupree where he had the candle beside him. Yep. And then we saw Zonic sitting beside Glaive and Device in one of the angle, but now he's at home. But then sometimes they're in the office, and sometimes they're not always on the same computer. Player connection issues. आजा. Is that the secret? देख भाई इतने 2000 बढ़ गए. Either way, this land situation that like we've got someone nosebleed हो गया to bring Aminek और अलग से YouTube पे भी होंगे.
That's G2 के Lanergy. player को That's Lanergy. Okay. That's camaraderie. कमलेश भोपाल That's something we couldn't get वो तो fully दिखने में online. भी वैसे ही लगता है कमलेश भोपाल से लेकिन गोरा है बस It just feels like you can. The अरे losses हुआ are so अमला much का more बाबू अरे palpable. कुछ नहीं तंबाकू नाक से चबा दिया आज थोड़ा नाक से चबा दिया in the rooms alone. I mean, there's no arguing against it. You hear players all the time in interviews talk about how like when you're separated from one another, when you're not side by side, you just it's like hard to bring players out of their lows. Yeah. And you're not all feeding off of each individual high. Yeah. You know. Don't do Nico drops a clutch next to don't do you. kids drugs. You could hear how much they were popping off in that निको mic'd भैया up तुमने segment. कभी That sounded like a lamb. तंबाकू हमें चबाता है Meanwhile, we haven't gotten those segments from the kinds of moments with the teams not alongside one another. So yeah, dude, it's real. Big land energy. For sure. किसका And we've गया got नेट everybody नेट नहीं readying गया उसका up. नोज ब्लीड हो गया Cool. G2 के एक प्लेयर का नोज ब्लीड हो गया कनेक्शन इशू है ना वो भी कनेक्शन इशू है ना I बॉडी like में when I connection- don't know what चलो, happens, and we just have to piece it together like a Right, mystery. yeah, it's like a यही था murder, शायद a मैंने murder की था mystery. बद्दी थी जगह Here at Blast. I feel like just a अबे viewer. उधर एमएनएक का मुंह एडिट क्यों नहीं किया For you guys' Ah, patience, didn't we got save Evan you. उसका नाक इधर हो covered in गया blood. Gonna have to be the Save killer it. because he Yeah, has that solo AK here for G2. अच्छा हाँ यही है True. अकेला A lot of अकेला ही के लिए responsibility for someone with an injury. सेव किया था ना Maybe that's why he's bleeding. He accidentally Plant bought नहीं this किया and था Nexus slapped him. Nexus not keeping full of violence. IRL. Jokes aside, this is a big round because Astralis only trailing by 3. Anshu Rai and us And after Anshu losing Rai and the us every single second round half pistol round, Anshu Rai bounced भी back अभी दिख रहा है immediately मेरे with को the बाजू में Deagle बिठा हुआ Force लौड़े को and haven't बाहर lost की a वजह round मारती since. है Aminex मैं starts डर to गया slip इनको मेरे कान beyond में the आवाज आई mid थी play. Yeah. And with Dupree having just picked up that mid kill, उसने I think, मारा I mean, you know, that kill क्या could mean a चीज़? lot to the setup. Aminex slips ये Aminex का through. kill है। It feels like there's a chance. yo, Oh, he's really, really patient about it. There's still 2 players here on the archway. ये क्या One कर रहा है? shows himself. One more was in the arch, but then he gets shot in the back by Dupree. ओ ये क्या आ गई AK gets blown in Thank this you. direction. thank you. Dupree here dismantling the 20th round for Oh. G2. He's on for the ace. मर्डर मार दिया Through smoke. ग्लिफ will के लग take it. जाते हैं यार कुछ भी देख The चिल्ला रहा ninth round for गाली दे रहा Astralis, and an easy one at हिंदी में that. दे रहा है, No हिंदी में। mishaps whatsoever from that solo AK, and now कल G2 bounced back with a buy. नहीं Mac मारूंगा 10 लौड़ा on मेरा किल Aminex. लग गया है हाँ Very capable with the mini Uzi. इन्हीं क्या हुआ Not ये quite, पतली you know, छाती mini नहीं हो रहा क्या Oh yeah, I got you. कह रहा मेरे को भी Now to अटेंशन दो stay यार up, stay इधर आओ positive within 2. थोड़ा इधर इधर भी यही है हमारी छाती हाँ इधर थोड़े बाल है इधर भी मारो जरा ओ भाई भाई Everyone's been following along. There's been a lot of interesting stuff that हल्का सा happened in this match so कमबैक सा हो far. रहा है हल्का सा 9/11 हो गया No idea टेररिस्ट how it's all going to culminate. We're still a lot to learn here about how Astralis will play on their CT side and what we can expect. बिल्डिंग when गिरेगी इन the stars सर्वों will की continue to shine, अभी यूट्यूब वाले बैन especially देंगे with Kenny S and अभी अभी ओसामा बिन लादेन बैकअप ला रहा है ओसामा बिन लादेन बैकअप ला रहा Kenny है has very much a supportive role on the T side, Nah, where then- he then AKs a now, lot, rarely ops, if ever, and throws a lot of the Dupree का grenades XP देख for their executes, nice whether one. it's A, B. कहाँ गिरा है मैप पे See. नहीं गिरा रिवाइज नादिन दिन ना कर रहा है इधर ओह नाइस Bow down. And ooh, next up Ooh. to a crisp device. Almost gets back at it with another, but Aminex jumping around these corners with the Mac 10, and the B site is wide open. Flashes come through from the CT spawn. नहीं भाई फट्टू की तरफ से क्रॉस And Aminex now has to plant this bomb. He will get it in time, barely, as the Molotov and fire भाई रुला दिया भाई CT frags coming back. Hunter eats the flash, and that pushes this onto the shoulders of Kenny S. We know he has some कर clutch in लेगा him, but Kenny Dupree नहीं चलाता है popping क्या up over भूल गया coffins as Kenny crosses to the corner, and they've got the retake Kenny under चला ही नहीं पाता है wraps. शाम कह रहे एयरप्लेन्स It's crazy इनकमिंग how maybe that plan isn't even possible if Aminex doesn't get that trade. ऊपर Jumping से up भगवान का onto प्रसाद Car गिराएंगे in that I am fashion with the opposite Mac by 10, Ara. winning the duel versus device opens that round up completely. But it only allows them to get the plant. They don't survive in the post. भाई डुपरी पे Nades गेमिंग come चेहरा in शायद इसी वजह से मार रहा with haste here, the incendiary कितना and the उल्टा हो रहा है Molotov, or the incendiary and the HE, excuse me, मैं तो प्लांट देख के and the मरूंगा continued pressure. And that is actually such a key piece of the Kenny को क्या हो retake गया is अचानक? while the bomb is getting planted and people चैनल are में finding their चाहिए spots उसे। to put pressure on Like कर with दिया the किसी ने? grenades and getting damage there. Do not ever let off the gas pedal in that regard. You've got to fight for every single inch. Dupree running down mid with the ferocity and putting together a अबे nice नहीं spray पे to गोले keep सकता Nexa था out. निको Device combined with him, gets a kill, and is able to नहीं, potentially बच fall गया भाई, back. It flash looks like he was आया about to ऐसा। get hunted down, but finds a way बैकअप out. फ्लैश किस Yeah, तरह ate a flashbang there on the chase, so G2 10-11 weren't हो able to गया। extend into device. He's got a little
bit more of a comfort zone now with the smoke up.
तेरे मुंह में टट्टी. An advantage for I believe Astralis. I believe in Hunter Hunter. could not help at all. I am the hunter. अरे भाई मेरी थक मम्मी का गए भाई birthday 2 है. मैच इनफ इनके Sitting at the coffins. मेरी मम्मी का बर्थडे गाइस बाय द वे चैट And आज शुरू हो गया है. looks like we've got the feeder Can we get happy birthday? Maybe के पास utility है भाई होल्ड करने के लिए. Mowing down as they run out. Tons of damage being done here by Glaive. Frag on the mark. चला दे Fire on the feet. Zipix on the smoke. गया And just a bit more utility damage here. Glaive takes the boost up and body bags another with the smoke kill to boot. So, sure enough, we are all tied up. थोड़ा spam कर दो And of course, for the time being, G2 gonna have to hold off before they get another buy. Yeah, he's so close. He's so मम्मी ऐसी quick जवान with those fast tactics. I'm not sure if the Molotov is there to interrupt the smoke or if it's there to make it seem like they're still mulling out sandbags or something else just to take their attention away from that or to bait out some kind of grenade that's used when they're sandbags, timing. But that's an interesting one. I'd like to take another look at that for sure. And maybe on a future round when they throw. But we're just down to pistols for G2. The nades are here at least. If I spots an opponent, Never mind. incendiary off the mid, and the teeth will start to crush. But they get punished for their fast take. As it always is, Yeah, the She-Hawk Astralis chilate hain utility yaar. on Inferno is just so good. Close None of call. these guys getting a chance to fight from G2 with being on full HP. Kenny S with the P250 finds himself a solo frag, and that's all they get, G2. Astralis taking a 1-round lead as they dismantle the pistols, but G2 look to bounce back now. However, a solid CT side again. Of the 8 rounds they've played in the second half, G2 only picked up that pistol. Yeah, they're definitely in the rhythm. It makes it, they're playing it like it looks very easy for them. Scary sign for G2. Of course, they've still got stuff, and we'll see if they do any of it. But right now, some of their slow defaults are getting called out. Some very good protocols, punishing grenades, you know, flashing tactics, and everything. Okay, Nico tries to stop this push. That's a good opening kill. Gangsta from the back lines that hooks him up. And the AG, very Next time slightly खेल does लेंगे. some damage. But the 5v4 means more than anything else. भाई ये होता है कॉन्फिडेंस वहीं खड़ा है वो उसको पता नहीं What the heck? Kenny क्या बोल रहा है? Now they're gonna go with the double team. Although it doesn't actually result in a kill. Device's eyes go crossed. They come up the halls quickly. The rest of the teams are going to join him. Magisk is all alone. He gets put in the dirt. G2 near flawless round here. As they shut down that initial banana control, go right back at that A site. Flash was fantastic. And the follow through, that double peek onto device. Good stuff. You know, I think that like the shots through the wall could have indicated to him the warning sign. Because if somebody's in that room, then it means they're already primed for a double peek. You've got a player on the right side of the hallway. And moments later, sure enough, it comes straight at him. No kill from the sniper of Astralis, and G2 tied right back at 12. Their first round since the pistol. That's good. I mean, they extinguish the flame. It looks a very confident round. They get away with a small bolt on the default on banana with Nexa, with Nico. And they play that advantage to its fullest, taking over Hall's control safely. You know, of course, this could be a situation after this kill where, you know, they don't play this properly. Device gets away with one frag, and they're back to figuring out how to get back into the round with no incentive for Astralis to push anything, but instead they just keep pushing this advantage over and over again. See if they can convert for consideration. Dane's having a grand old time. Economy still healthy for Astralis. They'll be able to buy even if they lose this. Live from Copenhagen. We're right where we want to be for the final few rounds of this third map. Yeah, totally. An interrupted winning spree to tie up the game. Both teams 4 away from winning. Strong first half from the team that's struggling in the second. Questions about what comes next.
जला दे नेक्स्ट जला दे उसको निको को जला दे Here's a position where there is a gap in the time where G2 could try to punish, but Astralis, I think they feel comfortable holding their grenades. G2 do take a little bit more time than most teams in these spots. You don't want to go for the retake of information too quickly in that position, because then you're not going to do it twice, right? चलिए फ्लैश तो दिखा भी आते हैं वर्सेस तो भाई कहां से मारता है कहां Nico can make where he just takes a dry duel at the top of the site. He might be able to find one. मारो निको पीछे बढ़ गया Magisk 2, but he stays silent. Amanex already out on balcony, and there is where Magisk will stop him. There's another player to come out soon enough, and Magisk's going to throw down that preemptively. Flash goes high. No kills come in until Device finds Kenny. And now G2 down to the 2v4. 20 seconds. They may just have to save. They don't really have what it takes to completely rebuy in the next one. So 2 guns will make the difference. Non-consecutive round wins for G2 yet again. Wow, what exactly happened there? Well, they come out to fight Dupree. I'm actually shocked that Dupree even gets one. He eats the flash. Like it's his favorite meal. Like he's won the entire time. He's straight into the apartments. I think he even has to adjust to make sure that he's lining it up within the doorway. And then he gets the kill. This is like shocking. And then Magisk is like has no idea someone's come out here, and Amanek is just like doesn't even think that Magisk could be anywhere in the pit. After not seeing him on the balcony, maybe assuming he was underneath the balcony or something, but he's wrong about that. And then they just putter to the wall, have to save. Kind of a disappointing way to go out. We're going to need a little bit more ferocity here from G2. See if we get in the 26th. Back at it with the guns. You love to see it. नहीं हमेशा कर रहे हैं तुम्हें तो होगी ही तुम्हें तो होगी take control of the game. Like, see if he can try to make a play on Banana. It's totally viable. We've seen multiple people do it. A lot of the IGLs, Arrogant, Clave. We've seen Nico try this, where it's just at a certain time at the top of the E, if it's all clear, you're trying to take a fight on somebody at first, oranges are on CT spawn with your rifle. Just a dry duel. Can be a really annoying thing for them to deal with. We've seen G2 use this boost before. He doesn't know that somebody's on the right side. But there is a chance that they walk right into his line of sight. Actually, मेरी first gun थी वो जिससे मैंने मस्त enjoy किया था. Third smoke thrown from Astralis here at the top of Banana. So very successfully burning a minute off of the clock. They're trying to put some pressure on A just so that somebody takes a risk on the B site, but there it is. See what happens. 5 HP for Nico. He's going to pick up the kill, but he barely stands at this point. And Device, who's been on point, looking to lock down middle. Kenny S on the other side, not with his AWP. Yeah, they got a wrong read. It's Device alone. And a heavy presence. This could be everything here for G2. Device is going to have to turn his attention. Gets the Deagle kill blind, but then comes Kenny in from mid. It's Dupree with a kill. Over towards pit, though. A player slips through. And therefore, the bomb plant also in their back pocket. Kenny kills Glaive as he's forced forward, and it all falls to Magisk. We tied at 11. We tied at 12, and now we tie at 13. The rounds exchange hands continuously, and it's another one that's just so strange, right? Like the tactic doesn't work out too well. It comes down to just this pure duel between Zipix and Nico, and as soon as they win that, Glaive gets the idea. It's probably going to be the B hit. That's just a blind gamble. It's not correct, but it was earned because of the kill that G2 won. And then it just comes down to the fact that Device, he gets isolated, he gets flashed, so he can't even fight back. He's lucky to get the one deagle kill that he did, and then the split is absolutely perfect. And once again, they're right back into this game. Of course, Astralis still have odds in this half. They have been playing very, very well overall. They look more solid. The rounds that they win look less rickety than the rounds that G2 win, but we are in the closing moments. There's a bit more pressure now, and G2 might be getting some confidence back having won some of these most recent rounds. Buys upon buys. Still some cash in the coffers for Magisk after this one, but everything's getting shaky here. The nitty-gritty begins. Oh, very quick from Kenny, trying to find a target on Banana, and he takes it. Falls back with 14 HP, yet another round, like last time.
where G2 take that 5v4 but barely keep their fifth man up. लेकिन बहुत रिस्की था भाई, बहुत ही ज़्यादा रिस्की। भाई जल के आया वो पूरा। And seriously, our entire halves were killing people without him, so it's a rarity to see that, and that's an interesting way to use it. He knows he's going to get naded down low, trying to go for that. घर घुस के बिना इनविटेशन के। But these are the risks you love to see G2 take with the talent they have. Again, अब कोई रोटेट ना करे ना निकल Astralis might जाए। have the better system slightly. And oh no, smoke actually gets blocked. That could have gone to Moto. This could change things up. They can't let it shake them though. Zipix. He'll get pushed out of position a little bit. Amanec coming through the smoke to fight him. Zipix adjusts, but Nexa takes him down in the trade. Dupree over towards the pit. He stops it. Device in the corner. He cowers. And Nexa's going to take down his head. It's a 2v2 instead with Dupree still towards that pit. Dupree above and beyond for Astralis as he sits on 23 kills. And he's going to go ahead and step out into the open. Magus throwing his incendiary as Dupree gets another kill. Nico's taking it down to the 1v1. And Dupree's in the open. 41 health. Both teams need it. And Nico needs to reload. Dupree's back into the pit. He's got a little bit of cover. He's got a little bit of time, but he doesn't have the kit. And Nico just let him equalize the health. Now Dupree's on the back of the bomb site. Still no kit. And Dupree, he taps it once. Coming in with the kill, but not with the time. G2 back in the lead. All he needed to do, Dupree needed more than anything for Nico to commit, and he couldn't get that out of him. G2 breaks the curse. They get the 2 in a row finally. They actually could close this game out after such a big comeback from Astralis. Man, Nico just dancing with death there, giving him the hip on that little bit of a jiggle peek. I hope we get the perspective from Dupree. These are some never committing to the gunfight, never giving him the chance at a headshot, but keeping him so distracted until time was the biggest issue. He can't even pretend to stick. Just not enough time by the time he gets there. I like this because I like Kenny S coming out, being used like a scourge up banana to go for that opening kill. A lot of bravery there. He was very directed. He took the damage. He got the kill. He got out. And then we had Amanec, who also just created space, jumped through for the trade to make sure that the rotations couldn't come in quickly, made sure the team knew that they were going to get to the site. So going through the smoke, you're going to trade me. They got the kill, they committed. It wasn't pretty, but they got the job done. Couple of SMGs for Astralis. Oh no. No chance for Kenny to go for that opening pickup banana this time around. And even if he had, Astralis sit back. Tidbit of damage with the nade versus device, but he stays posted on the angle. And he's got Zipix right behind him, hanging on to that smoke grenade for the moment he shoots. Let's see it. Device with one, jumps up, gets chased back by Amanec. It's Zipix here in the corner, looking for more than one. Mac 10, good for the double, a triple. The MP9 goes big. And Hunter, well, he's still here. And his entire team just died. 13 rounds each. Those are his missiles. That second orange position, whether it's on top or behind it, he is so damn good from there. We saw him beat up Nico from that position in that critical 1v2 situation, holding on to the site with time against him. I can't believe he puts them all together. Even that long-range one, that's brought to you by the glasses. Sure enough, man. No way he hits that without glasses. I could not see that player pool. Zooms in on it and look at this. That struggle. Kenny. Finally breaking through this curse of a CT side. They are strapped for cash. A tough decision for G2 to make, whether they invest in this one or let it slide and play for OT. Yeah, I'm just glad I'm not in their position. I have no idea what the best course of action for them is. How much money are we talking about? Oh my god. I mean, you can't good money. Oh my god. Honestly gonna do it. Alright, let's see it. Holy hell. Listen, I don't know. It's a brave call to make to get everyone to agree with you to do. And look at this. They don't have a single respectable gun. It's all going to be these pistols. It doesn't mean that they're going to win, but I think they listen, if there's one thing that Nexa can do where he stands out as an IGL is call a good strat on a half box. Dupree's gonna go right down into the T-ramp, kills Kenny, and Amanec's not ready. 3 kills from Dupree. No respect given
as he takes them वो सब down. छोड़ इसमें भी कहीं वैल्यू की तरह कैश दिखता हो कितना मजा आता हो But Nexa loses गेम ही दिख face जाता and पूरा Hunter क्या हो is रहा है all that remains. G2 गया As quick as they come in with the buy, अभी बाय राउंड है अभी भाई it gets नहीं denied. है ब्रो Hunter has to नहीं walk है away to lick his फोर्स किया wounds. है This is it, man. फोर्स किया dude. They tried it. I'm so नहीं sad. उन लोगों We ने didn't even get to see what the utility was going to do. बराबर है We No didn't know chance. what the strat was to set up. They were all in position and alt, and immediately Astralis shut it down. The disrespect. The perfect अगला counterplay. टूर्नामेंट खेलेंगे डिसाइड किया इन लोगों ने Runs right at him. And I love the fact that it's Dupree just boiling over with confidence. That took him to 28 kills on this third map. कमिट करना ही पड़ेगा उसको अभी 10 मिनट है भाई And proving it tonight. Hunter upgrades into the AK. Hits him with the one tap. There's no way he can win this Flash? round. नहीं पोज ही नहीं Want to देगा bet on that? Sure. Okay. 9 बुलेट्स है भाई Safe bet, to be चढ़ fair. गया But he did get that second kill with 76 HP. 9 बुलेट है He would भाई need the ace and a 1v4. नहीं भाई पता है जानबूझ के स्मोक में गैप दिया है जानबूझ के 15 rounds for Astralis after being down नहीं 5 देख शक्ल देख रहा हूँ They stuff him at the goalpost. Guys, This this is is the face of Dupree a getting in the rapist. way of things. Even Even if it was going to be a Kenya's- cerebral round and there was Dupree a way to sexy get guy. back into this, it Dupree looks like a flash was being जा रहा हूँ, timed मेरे for को the top of backup mid दे for them device to get पीछे। out there. But that's KennyS going down first, Backup and then the का two flash दे players who देगा are going to entry, Almanac up front, of इनके course, बाय देख फिर से वैसा ही बेकार सा and his teammate लेकिन both बात just यार, getting हो सकता है, blasted हो away सकता with है। नहीं utility नहीं kits. अरे Well, maybe we Overtime can see what खेलना they था यार want to इन्हें। do because Kenny it's a Kenny similar सब buy भाई, here. in the भाई first लास्ट round. राउंड भी थी See if अबे G2 यार। can pull it out of the hat. GG हो गया Device posted with the op कर on दिख गया। mid, misses the flick. ये मार देते ना And स्कोर falls खत्म back. लगेगा Does तेरे open up भाई, space a डेढ़ little bit. They're गया actually opening up भाई। plays. Device को jabs. And a second with Dupree in the mix as well. Device हाँ डिवाइस मार दो भाई हो गया G2, भाई they give us a hell of a run here on Inferno, taking it all the way to 30, but there's just no chance for Nexa. At Astralis, they've done it yet again, but a closer series than ever. And some तो very का बता इसमें ले लिया भाई 16-14 आओ बोला था ना कमबैक होगा The G2 of 2021 takes Astralis. कमाल का मैच था भैया Another 16. दोनों प्रेडिक्शन अच्छी गई तीनों बल्कि वर्टी को भी बोला था वो जीतेगी Series wins in a row here for Astralis over G2. कौन? It's close once again. It goes to a rare third map, but Astralis भाई continue हाँ to win. मेरे को पहले बता 10 ये कमबैक मार देती है भाई डिफेंडिंग अच्छी है बहुत Does इनकी too what we know from these teams, and sure enough, what we इनकी का expected city from side these भी थोड़ा teams. easy है। Incredibly इनको close देख to के one लगता on नहीं both अच्छा Dust खेलते हैं 2 बट and भाई बहुत Inferno. अच्छा कोऑर्डिनेशन They show that always delivers, just like Blast. We're gonna throw this over to the desk so they can wrap up our. खेलते हैं आजा मैं थोड़ा ट्राई भी करूंगा कुछ का बोला 90 डिग्री का हो गया वो कुछ सो हो गया गया हो गया वो सो गया सो भाई ये गया गेम क्या सो जाऊंगा जाके भाई जल्दी चलो भाई जल्दी एक गेम खेलो भाई पानी मैं भरने पढ़ने जा रहा सिद्धार्थ सैंड बैग चेक करते हैं इसलिए यस ब्रो क्या ही नहीं कुछ भी यार 1439 fps ओके G2 ने यही बड़ी गलती करी है इसने कुछ चेक ही नहीं करा सही में यार G2 should have checked अस्ट्रालिस ने इको कर लेते ना ये सेकंड लास्ट राउंड हां सेकंड लास्ट राउंड इको कर लेते लास्ट राउंड बहुत गंदा नेक्सा के पास भी एक ही होती ना पता है वो लास्ट में 1v3 डाल सकता था वो बहुत गंदा डिसीजन लिया उस पे डीगल थी भाई भाई मैं पढ़ने जा रहा बाय सिद्धार्थ बाय ब्रो थैंक यू फॉर कमिंग गाइस जो मैच देखने आया थैंक यू सो मच गो मत करिए एक सेकंड रुक जा ऋषित हां सब ये टाइम पे बोलते पढ़ने जा रहा हूं सब सो जाते हैं जाके मेरी सीएस ऑन थी तब से KaIdo इनवाइटेड मेरा वो डिस्कनेक्ट होगा तो वापस इनवाइट दियो गो करके देख हां होगा मेरा 100% तू डीएमजी कब बना बे बाय जा रहा मैं बाय ब्रो डिवाइस बहुत अच्छा खेला यार डिवाइस ने लास्ट डुप्री भाई डुप्री एमवीपी है इनवाइट भेज डुप्री वो लास्ट में ले गया 3 किल हो गया इस स्लीप पीसफुली गो ऑस्ट्रेलिस बेचारी नव्या तब से बैठी हुई है इधर सपोर्टर भाई सपोर्टर ईयरफोन पे खेल रहा हूं मैं पता नहीं कैसा खेला जाएगा देखते हैं इंशाल्लाह भाई वैलोरेंट में बल्कि स्पीक वैलोरेंट में ईयरफोन से मजा आता है में ईयरफोन्स वैलोरेंट में ईयरफोन से मजा आता है हेडफोन्स कहां गए वेलो में आता है सीएस में नहीं आ सकता इसमें है इसमें हेडफोन्स कहां गए है लगे हुए हैं ट्राई कर मिराज तो खेलते ही नहीं भाई ये लोग डुप्री अंडररेटेड है डुप्री हां यार अंडररेटेड है आई जस्ट पहले डुप्री ने लास्ट मोमेंट पे खत्म जो किया है ना भाई डुप्री ने एक्चुअली कुत्ता बना दिया पर्सनल असिस्टेंट बना दिया सबको लास्ट मोमेंट पे आई मीन बिच डुप्री के कितने 28 29 किल्स किसते थे हां उसके लास्ट के सेकंड राउंड में उन्होंने बोला कि फिन आए अपने में फिन एडवेंचर टाइम वाला नाइस
वो घुसते तो एक किल कंफर्म पक्का। अरे वो ट्रेड भी लेते हैं, ऐसे घुसते हैं कि एक मैं मरूंगा तो कोई और मार ही देगा उसको। इसी तुम आए क्यों नहीं अभी तक? हो गया मेरा ऑलमोस्ट। हो रहा है यार, हो रहा है। मैं तो साले मेरे इतना टट्टी पीछे, तब भी मैं पहले आ जाता हूँ। अबे तूने खोल रखी थी गवार। नहीं हाँ होता है भाई, फर्क पहला गेम बहुत टाइम लेता है लोड होने में। इटली सर्वर है क्या? मेरे को 50 आ रहा है। ओके ओके उसने मार दिया। इटली सर्वर है क्या? कहाँ का सर्वर है? 70 पिंग आ रहा है मेरे को। क्या बात है, क्या मैच था। टैप टैप गेमिंग चलेगी आज तो भाई कड़ा। हाँ भाई हम सारे ऐसे खेलेंगे एकदम ट्राई हार्ड। देख क्या है ना अभी पंप हो क्या है। कहीं आग रहे हो भाई गंदा। सारे आगेंगे। G2 बन रहे हो गए तुम लोग। 90 डिग्री कीबोर्ड कर रखा, देखते क्या हाल है। के ओके नव्या ओके। जीटी वाले दोस्तों का हाल पूछ के आ रही है नव्या, क्या बात है। पहले बता दो बारका का भी मैच चालू है। हाँ बताया बारका का मैच चालू है। कुछ तो भाई कुछ पता नहीं क्या सीन है। कुछ जिग्मा पड़े रहते हैं। फुटबॉल का एक मैच मिस नहीं करते। फुटबॉल का स्क्वाड में बैठ के देखते हैं। अच्छा मैच था यार आज का, गजब मैच था। मतलब ये 3 साल बाद जाके 4 साल बाद जाके अब देखा है ऐसा मैच। वही जाएंगे अपना रेगुलर। तो ऑस्ट्रेलिया अब G2 के पास चांस है ना, बाहर तो नहीं हुई है ना? हो गई आई थिंक, एलिमिनेट हो गई। G2 बाहर हो गई। हाँ एलिमिनेशन था प्रोबब्ली। अच्छा Where's your Jake? What? Fall down? क्या बोल क्या रहा है पागल वागल है क्या? ए डीबीजेड का क्लाइंट टैग लगाना। नाइस कार्ड बी आ रहा है। आई एम टेक बंदा। वो मेरे को हेड देगा तेरे को मारते मारते। मारा हाई मिड मारा। नाइस बैकअप। वैन है लास्ट। अंदर नहीं वैन है। बारसा में बारसा का भी मैच चालू है। अरे बैक साइड हक दिया। 32 दिया मैंने, राइट में गया बैक साइड। अदर काइडो। ओए काइडो डीगल पड़ी है तेरे राइट में। डीगल पड़ी है अपने फिन की। किधर पड़ी है ये बताइएगा। मैप में दिखता अभी तो नहीं है। एक्स साले सेज की तरह। सेज की तरह? व्हाट? हाँ तुम्हें सेज नहीं खेला कभी? कौन सा सेज? वेलो में खेला उसमें। मैप में दिखती है गन्स कहाँ पड़ी है? हाँ एक्स दिखता है जहाँ अपने बंदे मरते हैं। अबे ताकि रिवाइव दे सके आसानी में। नूबड़े अरे बॉडी का बे यार क्या ही बोलूँगा इसको। एक बार 90 डिग्री टिल्ट करके खेलता हूँ मैं। हाँ ट्राई करता हूँ। मैं भी यही खेल रहा हूँ। अंडरपास डेड। फ्लैशिंग दिया। हाई मिड है। ओके ये आप देखियो क्लियर है। वन हाई मिड डाउन। हां बी है। वन मोर हाई मिड। हाई मिड वन स्टिल। हाय 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 हाय। दो लोग हैं हाई मिड। वन मोर माउस को थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल रहा है 90 डिग्री टिल्ट पे। हाँ हाँ बेटर ग्रिप है। ग्रिप अच्छी है। ग्रिप अच्छी हो गई। भाई मेरा एक दोस्त है वो उस पे खेलता है टॉवल पे। टॉगल पे? इतने बुरे दिन है उसके टॉवल पे। और भाई उस पे 2080 है सोच रहे हैं। अच्छा पीसी 144 हर्ट्ज जी सिंक। हाइड्रा रशित और फाइट मतलब नहीं ले रहा रे डूड देख तो सही। किसी का डी रैंक मैच है जो बॉट्स आए हैं। वन एमएन डाउन। अबे मारा फ्लैश दे मिड पे टॉप मिड। फ्लैश में टॉप। नहीं रहने ए अंडरपास। हां देना था एक्चुअली। अरे डाउन कौन? 72 लास्ट टॉप मिड। टीवी रो पेन भैया फुल ऑन थ्रो भाई। देख पहुंचने तो दो सर। छुटिया तेरे पीछे पड़ी थी अंडरपास वाले के डेड बॉडी के नीचे। Actually, you know what, you are right. Can I have a drop? Watch. ये ले डीगल देख। डीगल नहीं P250 सीधी दे मेरे को। देवशित यार मेरे को टूर्नामेंट खेलने का मन कर रहा है उधर से। लेकिन यार क्या ही करूं। मैं अभी तक एक भी टूर्नामेंट नहीं खेला। तेरा लैपटॉप नहीं हॉकाई का भी तो नहीं हो वो मतलब बहुत टाइम ले रहा है। वाई फिन वाई। नाइस। एमएन वन मोर।
एक और एमएन पैलेस कमिंग है आउट आ गया यार क्या कर रहा हूं 90 टैग है एमएन टेट्रिस आ गया 90 टैग एक और है एमएन वन मोर पीछे भागा बॉम्ब ले लिया उसने वापस Flashbang 7 hours 23 minutes 8 hours की स्ट्रीम होने वाली है क्या किधर है ऊपर था ऊपर अब अपर में हां टीवीएस के वहां पे उसका कॉल आउट क्या होता है यार हां मेरे को भी नहीं पता राफ्टर तो वैलोरेंट में बोल इसमें भी बोलूंगा मैं तो हेवन भी बोलते हैं उसमें तो हेवन नहीं बोल सकते नहीं हेवन बोल कॉल्स सकते बोल हैं आ गया एमएन आ गया हां एमएन क्लोज साउंड आया बाहर आ रहा है फिर मैं तो जा ही नहीं रहा मैं तो यूं ही खेलता रहूंगा लगा के बैठ वही है वो अभी भी ये नहीं चला रहा मैं क्या है ये गंदा प्लेयर है भाई मैप में देखा मैंने इसको हकते हुए ठीक है भाई मेरे से नहीं चलती मैं एस्ट्रॉलिस का फैन कह रहा मैं ऑस्ट्रेलिया का फैन अरे अब कह रहा मेरे से नहीं चलती तो मेरे को मैं चलाऊंगा सीखेगा आज ऑस्ट्रेलिया आज ही सीखूंगा मैं आज ही मैं देख के आया हूं मैच मेरी टीम जीती है वनडिंग मारना यार एक को ना डोंट स्मोक पिन मैंने वैसे तो लगी क्या throwing a grenade यार उसे सरेंडर करवाओ एक और खेलना है नहीं और नहीं deploying flashbang grenade out नाइस शॉट throwing smoke बस हाई मिड था ना या लास्ट वन हाई मिड मेरे को तो नहीं दिखा मैं हाई मिड पे ही था इतनी देर से मार दिया क्या तुमने जिसने मेरे को मारा दोनों को मार दिया हाई मिड पे अच्छा ठीक है पालीस क्लियर है ब्रदर 90 डिग्री से थोड़ा कम हाई मिड है लेकिन हाई मिड है गुड नाइट हु वन अपना वो जीत गया वो क्या नाम है उसका भाई के ले रहा हूं भाई मैं तो एक ही ले रहा हूं सारे जीत गया कहां है अबे कितनी ऑफ हो गई थे मैं तो डीगल खेल रहा हूं जब तक मरूं ना 2 है क्या 7 का केडी चल रहा है यार मेरा एक डीगल मेरे को भी दे ये थोड़े दिनों में गिव अवे होने वाली है डीगल पड़ी है ये जो टॉप पॉइंट वाला ना उसको मिलने वाली है ग्रिम को मिलेगी throwing fire grenade out throwing flashbang चलो फ्लैश दे पॉप फ्लैश दे लो रैंक का उधर देख दीवार की तरफ देख वेंट की तरफ देख flashbang अंडरपास देख रहे हैं भाई बी अकेला हाई मिड है नाइस शॉट मैं कैसे मर गया भाई हंट करने मैं तो जस्ट आया था फ्लैशिंग दोनों में ही है क्या दोनों वही हैं एक तो पैदल जा रहा है ऊपर है हां दूसरा भी उधर ही है मत जा ऋषित incendiary out आज कितने घंटे की स्ट्रीम हो गई 7 और 26 मिनट्स हो गए अभी करंटली भाई करना 2 दिन की एक बार भाई 24 आवर्स की एक स्ट्रीम करूंगा मैं एक बार माइक वाइक आ जाए सेटअप वेटअप हो जाए सब माइक कौन सा ले रहा है BM80 कंडेंसर माइक मेरे पास बहुत सेक्सी माइक है मैं यूज नहीं करता अरे बहुत दिक्कत आती है यार मेरे टेबल में ना बहुत दिक्कत आएगी ये फाइनल है क्या टेबल को पाइल्स है क्या हैं इवन फ्लैशिंग हाई भाई इनका ऑटो स्विच ऑन है क्या पता नहीं अरे लो रैंकर्स है यार पुश करो ना फिर डर क्यों रहो रात को लो रैंकर ही आएंगे ना हाई रैंकर थोड़ी कैसा लगा फ्लैश बहुत सेक्सी अबे पीछे था लॉल देखा नहीं तूने नीचे नहीं तू वहीं से तो आया कनेक्टर से अरे तूने कनेक्टर पे फ्लैश फेंका ना मैंने उस हाई मिड की तरफ देखा ये यहाँ पर
एक टीवी रूम में खाए मेरा I guess। एक तूने मिड पे फ्लैश किया। फिन तो नूब है भाई, फिन भी नूब है। मैं देशल की बात कर रहा था, सॉरी। अरे तूने मर्द है क्या? Are you man? वॉचिंग क्या चूतिया आदमी है तूने पिस्टल ले घुस जा, very low, 1 HP, 1 बचने के लिए। No, he's not 1 HP. This. अरे 1 HP टैग दिया उसने 92। नहीं मत, अबे 92 टैग दिया 92। किसने? चुप हो जा। देवशिल दिया क्या तेरे 92 उसको अच्छी है। चू बना रहा है मैन का लड़। देवशिल का बोल ना। These guys are lying to you. These guys are lying. You saw him amen, bro. How could you sneak me on mid? Don't listen to these guys. They're literally. अरे तूने देखा तो सही, अभी तो देखा तूने जाते हुए। These guys are fucking with you, bro. I'm telling you. No, bro, we are straight. What? ये जो आइडिया दे रहा है वही कर रहा है। No, bro. They are not. Okay. A plant, a default. 99 वही 92 वही ना 92 था अच्छा भाई वो 19 था 99 नहीं। हाँ तो कॉन्फिडेंस तो आ गया ना फिर। झूठे फिर में कॉन्फिडेंस तो आ गया ना। मैंने तो थोड़ी टैग दे रखा है, मैं तो देशल को देख रहा था। 32 दिया था मैंने तो। रुक जा मैंने रुलाता हूँ मैं। भाई प्लाट भी जाना है काइडो कल। हाँ जी क्या, मैं तो खेलता ही नहीं वैलोरेंट, मैं तो लूडो प्लेयर है हूँ। तू। I know you are right. Nice flash. काफी रुला दिया तूने मेरे को। लाइव दे रहा हूँ देख ले। अटक जा सारे फ्लैश। अरे यही बैठा है, मैं अंधा था यार पूरा। कहाँ था सारे फ्लैश कहाँ था? राइट में क्लोज। 77 टैग ऊपर। यही बैठा है 77 टैग है ऋषित, पिस्टल कर दे। लेफ्ट में। अबे स्मोक कर दे और छुप जा फिर से। चीजी हो गया। पैक करेगा वॉचिंग। बढ़िया। पैलेस। बॉम्ब हाई पे है भाई। फिन लास्ट पैलेस ब्रो। भाई मिड बेचारा जूस हो गया यार, सही में सिल्वर है। ऋषित ने देखने लायक हरकत किया फिन कैन यू ड्रॉप मी M4? फिन ब्रो ही इज लाइंग, डोंट ड्रॉप हिम एन M4। वो नहीं मांग रहा, वो उसकी मम्मी मांग रही है बिना बात। What? I'm sorry. Let's move out. Nice volley Rishit. भाई ये वाला मोबाइल मत होता भाई। Grenade out. ओ भाई Grenade out. भाई अगर ऋषित मर जाता ना मैंने बंदा नेट से अपने। फ्लैश दे रहा हूँ ऋषित, फ्लैश दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। दो लोग हैं। ये हम गंदे फ्लैशेस दे रहा है भाई। 10 दिन से वेट कर रहा है वॉचिंग बस। ये ले वॉचिंग। मेरे को भी मरवाया इसने ऐसे। Flashbang. काइडो केडो। अरे वो वहाँ पर है। 45 टैग। वहाँ पर है। बॉम्ब नहीं है उसका, बॉम्ब नहीं है। बॉम्ब तो उस पे था। फट गई थी दिल में आके मेरे। बी हो गया साइट है। हाफ एचपी। नहीं कूदा नहीं है। कूद गया। चूतिया साइड पे मैं हूँ ना, मैं अंडरपास केयर पिन। मैं जूस कर दूँ अंडरपास में। हाई मिड वॉच पिन। ना हाई मिड, एक बार हाई मिड देख ले फिन प्लीज। नहीं इधर आके आगे थोड़ा सा भाई प्लीज। हाई मिड देख ले। यस ये गोली चलाएगा मैं नीचे कूदूंगा। नहीं भी चलाएगा तो भी कूद जाऊंगा। थोड़ा और आगे हो जाए एक बारी में कूद जा। वैसे चेक तो करेगा नहीं कोई। है नहीं। एम इन केयर। एम इन आ गया मुझे। बाहर आ गया वो तो। प्लांटिंग डिफॉल्ट भाई 10 करके जा रही है भाई।
10. अभी ऑफ चला। Sorry. I would report this guy. I would report this guy if I was I you. need a drop. I need a drop. क्यों बेटा आ गए ना सही जगह पे? भाई मेरे $0 हो गए My brother was playing, bro. He said he doesn't like you. Sorry. I personally like you. Why do you personally like me? Because I'm gay and shit. Sir, I'm gay and shit. क्यों ऋषित यार आ रहा था ना वो? अंडरपास ओए अंडरपास देख कहाँ भाग रहे हैं? Gay gun seriously. वो थप्पड़ खा गया। भाई KaIdo ये ऋषित हेड पड़ा उसे 98। मुझे दे दे। गेगन बार फेंक गेगन बार। KaIdo गाड़ी। नाइस गेगन उठा। टीबेस है 10 का दिया मैं उसको। टीबेस है ब्रो। नाइस। अंडरपास किया रोए। अंडरपास आएगा। मोस्ट प्रोबब्ली अंडरपास। मार दिया था इसने। क्या पैनिक कर रहा है ब्रो? 59 टैग। अरे नहीं मेरे को पीछे बैठा होगा मेरे वो। एक हिट का नव्या आती है 52 पड़ता है। में आ गए। नव्या अभी नहीं थी 2 की वॉचिंग थी। नव्या आई गेगन रखियो। KaIdo क्या कर रहा है गेगन? क्या कर रहा है ऋषित? क्रिंज गेगन। अबे यार उधर दे भी दी तूने। नव्या हम एकदम प्रोफेशनल टीम की तरह खेल रहे हैं। हम भी ऑस्ट्रेलिस की तरह खेल रहे हैं। बाद में वो लोग नावी की तरह ना खेलना शुरू कर दे। कम बैक मार के मिड पे वन टाइम। वो मॉली की उस पे भी स्मोक कर दिया भाई। गंदे प्लेयर है साले। ठीक गया वो फ्लैश स्मोक कर देते हैं। और पहले P90 लेके आ गया। P90 वाला क्या? हाँ P90 वाला। जलेगा वो। चल गया। मेरे को मैं लैग होने लग गया। पैलेस था ना एक। कोशिश मार दे ऋषित को मार दे। पम्प्ड अप। नहीं। अरे करना। नहीं बड़वे नहीं। एक फ्लिक मार दे ऋषित। एक फ्लिक मार दे। एक फ्लिक ऋषित। एक शॉट मारना है। रामखोर एक और किल चुरा गया तू मेरी। अबे मार दिया। एक तारे से हाँ। क्या गंदे प्रैक्टिस करता है भाई ये लड़का। भाई मैंने 3 लोगों को 69 2 लोगों को 69 इन 3 दिया। दोनों का किल वॉचिंग चुरा गया। मुंह में भी ले लेना। मैंने तो वन टिक मारा ना पैलेस वाले को। एमएन वाले को। नहीं आई डोंट केयर ना। टैग तो मैं दिया ना। सामने वाले कट्टर थ्रोअर नहीं है भाई। उसने मैं तो नो स्कोप मारूंगा भाई। ऑफ तो नहीं है ना? हाँ तो मेरे को तो नहीं मारना चाहिए था ना। ये रहा। गंदा प्लेयर है भाई। पैलेस ओ मार गया। भाई गंदा एकदम भाई। मैं नहीं देख रही बारसा का मैच। मन नहीं हो रहा। अबे क्या था ये यार? ये हो क्या रहा है? खत्म करते जल्दी। हाँ सोना है मेरे को भी। बिना कैंपर देना। 7.5 घंटे की स्ट्रीम हो गई भाई। तो अभी भी स्ट्रीम कर रहे हैं मैच। मेरे को लगा बंद कर दी तूने स्ट्रीम। 300 350 FPS आ रहा है। भाई डबल डिजिट में आना है। आ ही रहा जब FPS तो। ये है ना अपना देवशुल। फिन ऊपर है मेरे से। जय अंशु राय। नहीं ब्रो गंदे फ्लैशेस कर। जय अंशु राय। भाई देखिए स्मोक क्या कर रहे हैं लोग। एक लेफ्ट को गया एक राइट को गया। बॉम्ब ड्रॉप। राइट बी पे से आ रहा है लास्ट। सिटी है। अबे नहीं आया मेरे को साउंड आया। ऋषित का साउंड आया। बी पे मरा है ना अंडरपास केयर। ये पड़ी मेरे को कहीं से। रामी KaIdo। रामी मानो।
प्यार नहीं मिल रहा क्या घर पे? कैसे मुड़ा पे? भाई फट जाती है यार 16-0। एक बार क्या कैजुअल में यूज किया था, किक कर दिया मैंने मेरे को। ये तो आने दे ये रहा। ये देख काइडो, ये देख। लीगन में इतनी बुलेट्स क्यों है? अबे मुझको लगा मेरा लग गया। एक बार कैजुअल में भाई बैन हो जाना चाहिए वैसे लोग के जेगन कर। नहीं मैं नहीं जा रहा आगे। मैं नहीं जा रहा आगे। बट गीगन में इतनी बुलेट्स क्यों है भाई? 90 बुलेट्स किस चीज के लिए? क्योंकि वो गे है ना। ऑफ में भी नहीं होती इतनी तो। हां एक ड्रॉप दे। आज अलग ही डिप्रेशन हो रहा है भाई, मैं लोफी गाने सुनता रहता हूं। थैंक यू। मैंने दे दी। व्हाट? मेरे को खुद यकीन नहीं हुआ। ऋषित ने एक ही मांगी, मैंने दे दी बिना मना किए। भी तो डीगल ओनली चला रहा है। अरे हां राइट 90 75 आई मिनट। मरा नहीं गाइडो वो, मर गया। ओह अच्छा मॉली में चला है। मर गया। अंडर पास एक होगा। ऋषित पूरा देखिए अंडर पास। एक हिस्सा छोड़ दे कहीं। है क्या है? क्या है? मैं पुसी लिखने वाला था लेकिन मैंने कहा सब्सक्राइब कर दो भाई। सोच आपको अब से कमबैक चालू। XD लिखना शुरू कर दो ना। वही तो चाहिए हमें। XD लिख दे कमबैक नहीं होगा। हम उन्हें एस्ट्रॉलिस बना देंगे। XD लिख दे कमबैक नहीं हो पाएगा भाई। देख मैं एमिन पे वन डिग मारता हूं। वॉच दिस। ऐसा ना है। बी तो आए नहीं भाई। भाई क्या गंदी गन है भाई, एसजी क्या गंदी गन है। ए पे आ रहा है। व्हाट? ए से आ रहा है। 97 दिया था मैंने। 96 97 भाई क्या गन है? व्हाट? इजी है क्या? 3 वन डिग हाई मिड होगा। 3 वन डिग मार दिया मैंने। अंडर तेरी पोजी पता है ऋषित? गंदा प्लेयर है भाई, बता रहा हूं तुमको। भाई ऊपर गया। क्लिप निकाल दूं एक बार, रुक जा। क्लिप करने दे एक बार, कहीं गायब हो जाए। 16-0 है, वाचिंग 16-0 है, प्लीज थ्रो मत। नो स्कोप। देवशिल वो कह रहा थ्रो मत कर, तू कह रहा है नो स्कोप मार। अबे छोड़ना। नो स्कोप। तो 16-0 कौन सा तेरा रैंक अप करा देगा? गंदे लोगों के साथ खेलता वो तो रखा है तेरा रैंक अप। भाई 3 वन डिग मारे मैंने। बच्चे हैं वो, सिल्वर है भाई। तू 5 मार। उड़ते मारती। ऋषित को भी तो मारे। हां भाई 4 हो गए। 4 वन डिग्स हो गए। यू आर राइट, आई एम बैड एट मैथ्स गाइस। थैंक्स फॉर दैट। ये आएगा क्या? गंदा प्लेयर है काइडो बहुत। शाम कह रहा YouTube का लिंक डालते ही हैकिंग स्टार्ट कर दी। स्ट्रीम स्नाइप हो रहा है अब देख। नो स्कोप। ए प्लांट है ना? अच्छा डीग मारता है ना। 5th one dig. Is that man where I think this guy is? CT बॉट है। Show me your TTs. पक्का CT है भाई, बॉट है। जंगल आ रहा है घूम के। कोशिड़ी के डिफ्यूज करते हैं ना। अबे लोडू। अबे आ ही नहीं रहा। भाई कहाँ से घूम के आए? ना नो स्कोप भी मार लेता है इससे बढ़िया। कैरी सब जमा करके कैनी को ऑफ दे देते। मेरे को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा पैसे क्यों नहीं बचे G2 के पास बायर करने के लिए लास्ट राउंड। देखो YouTube पे लिंक डालते ही हैकिंग शुरू। भाई क्या वन डिग था यार वो अंडर पास वाला। घूमते मैंने वन डिग मार दिया घूम के। वो भी ऋषित को। वो भी नहीं इससे मैंने एक और बंदे को मारा था यार। एक 68 टैग है। Astralis vibes or what? गंदा प्लेयर है। 68 डेड। एक 41 टैग है। एक 41। What? भाई चिल लूड। ये टीवी रूम लास्ट टीवी रूम। नहीं एक और क्लिप निकल गया यार। क्या फ्लिक था गाइस वो? व्हाट वाज दैट? सिल्वर को मार रहा है। अबे फ्लिक था वो। सिल्वर छोड़।
था तो है ना साथ था तो सेक्सी शॉट भाई। मेरी गेम अटक गई यार। क्या किया था मैंने वो एंगल? क्या यार वो क्या व्हाट? अरे बस भाई गांड लेगा अबे क्या? सिल्वर को मार के मत बजना भोसड़ी के। अरे सीधा हेड पे मारा फ्लिक, वो दिखा ही नहीं वो। हाई रैंक आ गेम आने के पहले भाई ये कर रहा है। भाई ऐसे नहीं पहुंच जाते एली किड्स, ऐसे नहीं पहुंच जाते, समझ रहे हो? मेहनत लगती है थोड़ी, तुम नहीं जानते। यस मैं दो आईडी में पहुंचा हूं। कह रहा बात। वेरी पोलाइट काइडो, थैंक यू। फिर मैं डुअलिस्ट हूं, तू बॉम्ब रख ले। काइडो और मैं डुअलिस्ट से एंट्री ले लेंगे ब्रो। सेंटिनल बीजा फिन अकेला भी जा। चले जा बीच चले। वॉच दिस। अबे वो जा भी। अबे मारता। अरे दो भी जाना था यार अकेला। अरे अरे क्या वनडी मार रहा है। टीयर से कनेक्टर खेल दिए भाई। मोंटाज के लिए सही रहेगा। They deleted you bro. मोंटाज वगैरह के लिए सही रहेगा। They ended your entire career for no reason. They ended the career of you for no reason. They ended you for their career for no reason. गाइस हमें सोना चाहिए, ज़्यादा रात हो गई लग रहा है। Exactly, बोलने वाला था मैं। अब सुबह तो भाई मैं हर दिन 9:30 बजे उठ जाता हूँ क्लास अटेंड करने के लिए, फिर क्लास खोल के सो जाता हूँ, फिर नींद नहीं आती क्योंकि गिल्ट हो रहा है, स्टडीज़ मिस हो रही है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। फिर उसके बाद उठ जाता हूँ 10 बजे 10:30 बजे तक। मेरा तो कल ऑक्सीजन लेवल इतना कम आने वाला है ना भाई, रात को लेटता है तो 90 प्लस रहना चाहिए या फिर 80 प्लस। 95 प्लस होना चाहिए, चूती है। नहीं 94 93 से नीचे जाए तो डेंजरस है, 90 से नीचे जाए तो खतरनाक है, लाइफ रखनी है। एक घंटा बाद सो जाओ। क्या यार लेकिन क्या यार भाई ऑस्ट्रेलिया सिल्वर है भाई, इनको इतना इजी वनडीज लग रहे हैं ना मेरे पास। हाँ तो वही ना, मैं मोंटाज के लिए क्लिप्स बन रहे हैं। मोंटाज वालों को क्या ही पता चल रहा है तो मेन आईडी पे ना, एक्चुअली है तो मेन आईडी पे। मत मार फिर। इजी शॉट हक देता है। खत्म। अरे मैं वेट कर रहा था क्या कि क्लिप शायद ये ले एस्ट्रालिस लाया, मैं ये एस्ट्रालिस लाया। तुमको एस्ट्रालिस चलानी है क्या? एस्ट्रालिस चलानी है किसी को? चलो मैंने एस्ट्रालिस फेंकी है उधर। अच्छा मैं एकदम ऐसे एक्टिंग करता हूँ जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में होती है, एकदम इधर देखना, ठीक है? सारे इधर देखना। Are you ready guys? Are you ready? Watch this. अंशुरा चलाते हुए भागना मजा आएगा उसमें। चलाते हुए क्या बोल रहा है? Please specify. चलाते हुए भागना मजा आएगा। अरे नाइस शॉट। ट्रिपल बैन होगा भी कोई वनडी के चक्कर में। सारे बैन हो जाएंगे भाई एक करके। 40 वर्सेस G2 इन अ नटशेल। ओ मिडिल बिहाइंड यू। भाई मर तेरी ऐसी की तैसी। भाई यूज कर रहा था। मैं एली बन गया गाइस। सबने एक साथ चेक किया। सबने एक साथ बंदा है भाई। एक तो जूस कर तो दिया जूस, दबा मिस कर दिया क्या एमएन में जूस? मेरा एस्टीमेट है सामने सिल्वर एलीट मास्टर सिल्वर एलीट थे एस्टीमेट। गोल्ड नोवा अगर एमजी निकले सामने 1000 मेरे 1000 गोल्ड विंस नोवा कंप्लीट हो गए। एक ही एमजी मेरे होगा 1000 विंस कंप्लीट हो गए गाइस। वाओ अबे गोल्ड इतना बुरा खेलते हैं। फिन को देख अबे इतना बुरा खेलते हैं। मैं भाई फिन के साथ था पहले 3 मैच से। सॉरी ब्रो, सॉरी। फिन के साथ था मैं भाई 6 किल पे। मैं भी बस खत्म कर रहा हूँ भाई, हो गया मेरा भी। मैं आई एम टायर्ड नाउ। 7:47 मिनट्स बाय स्ट्रीम। खींच दिया, कुत्ता बना दिया स्ट्रीम को। चलो बॉयज मैं भी जा रहा हूं। चलो गाइस गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you so much for tuning into the stream now and every single person जो आया। I am very tired now. मैं आउटरो भी नहीं दे पाऊंगा। गोल्ड तो ब्लाइंड बिल्कुल नहीं लग रहे थे, मुझे भी नहीं पता क्या कर रहे थे वो लोग। अब मैं सोने जाऊंगा, मेरे को नींद आ रही है। I'll see you all in the next stream tomorrow. And this has been the longest channel on my stream. This has been the longest stream on my channel. This has been the longest stream on my channel guys. 7 hours 47 minutes and 48 now.
Thank you so much for tuning in. I'll see you all in the next stream. Till then, good night, stay safe, have fun, don't cheat, and I'll see you tomorrow. Bye bye. Peace out.